strong. They read his position. The answer is no. He finds another. Catch over the side of the basket. कुछ भी पता है अभी जी के बारे में? मेरे को नहीं पता था बाबा। हाँ, ये आईजीएल है, मुझे नहीं पता था। सारे आईजीएल्स खड़े सामने। ये देखो टॉप 2 अपने रीजन के। भाई दो भाई तो इधर ही खेल रहे हैं। एक भाई घर में, दो भाई एक टीम में खेल रहे हैं। तेरे को समझा ना वो लोग का एंट्री लेट क्यों हुआ? वो लोग टॉप 2 टीम है। वो ऐसा है क्या? PIIIIIIINK और DRX पैसिफिक का। बाबा गलती से 2 लाइव कर दिया मैंने। भाई टीवी पे दिखा। इसमें लाइव हो क्या बताओ ना? इसमें लाइव हो कि नहीं? बढ़िया बनाया यार। भाई ये लोग का म्यूजिक भी इसमें लाइव हो या नहीं? अब जा रही है। हेलो कर रहे हैं, बाद में क्लेम नहीं आएगा ना? कोई है चैट में? कोई है? ऐसा जाएगा। कोई है चैट में? को मैं खुद देखता हूँ भाई। है एप्पल है। हेड से कैसे हो? क्या मैं लाइव हूँ? गाइस? बंग्स भाई एनी प्रेडिक्शंस? Bro, it's gonna be bleed yo 2-0। मेरे को भी लग रहा है bleed 2-0। मेरे को भी लग रहा है। देखो भाई ब्रेन एम सब कुछ है उसकी टीम। थोड़ा सा कैसे हो गाइस? व्हाट्स अप? वेलकम टू द स्ट्रीम। मेरा आवाज, मेरा पंखा, सॉरी मेरा कैमरा सब बराबर है? सब बराबर है? इशप्रीत भाई मेंबरशिप चालू है। इशप्रीत भाई रियल फैन, रियल फैन। लेट्स गो। आ गया देख। Am I back? जी भाई ये सब हटाओ भाई, ये सब नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? और इसका मैं बैक हूँ या नहीं? इसको बोलेगा आ गया। वर्टी भाई कैसा? वर्टी भाई व्हाट्स अप? बस कैमरा बराबर है? बराबर। इसका कहाँ पे? हेलो बैन किया है T1 ने एंड दैट इज बिकॉज़ यू Hello. पोजीशन खिलाया जा सकता है फाइट के ऊपर एंड ब्लीड इज क्रेजी। मैं लाइव क्या लड़के लोग का एंट्री नहीं मिला क्या ऑडियंस में? क्या सीन है भाई? अरे बाबा नया ब्रीज लास्ट टाइम तेरे को याद है ये नॉर्मल स्टेज है, बड़ा वाला स्टेज बाद में। दैट इज माय समझ फर्स्ट रहे हैं? क्योंकि ये VIP ये दो वाला स्टेज है ना। क्रिएटिव है। T1 तो स्पेशली बहुत ही ज्यादा एक क्रिएटिव टीम है। नाउ दे आल्सो हैव साया। ये वो नॉर्मल वाला है शायद। लास्ट ईयर इन्होंने कोई चीज करके आया कि नहीं बताओ? आया कि नहीं? लोटस का कॉम्पो इसमें हो कि नहीं लाइव? हेलो यार, इतने देर बाद स्ट्रीम करो, मैं भूल गया हूँ। कुछ बताओ। इशप्रीत भाई कैसे हो? करम भाई, हेड्स भाई, अनिश भाई कैसे हो? व्हाट्स अप? यार मैं खुद को लाइव नहीं देख पा रहा हूँ। क्या सीन है? यूट्यूब ग्लिच है। फाइनली कितना डिले डाला? 0 Because once again we all know recently after the changes on the Zero delay. थोड़ा सा जरूर फेवर करेगा। इन चेंबर के पास ना कुछ है, मतलब rendezvous is so perfect। प्रेम भाई तुम लोग जाओ मैच जीतो, ठीक है? Just get one and just get back। C पे कितनी बार देखा है, A पे तो just है ही, मतलब सीधा 25 भाई कैसे हो? व्हाट्स अप? चलानी है। और ये जैसे प्लेयर हैं उनको तो पता ही है मुंडी देखती है। बट द इंपॉर्टेंट फैक्टर इज दिस इज गोना सेट द टेम्परामेंट ऑफ द शो। यस सिंपल बात है, ये सबसे पहला मैच इस पूरे के पूरे शो की स्ट्रिक्स भाई आपका प्रेडिक्शन क्या है वैसे? आपने हमसे ब्लीड शर्म कर यार, थोड़ा तो सपोर्ट करो T1 को। भाई मेरे को एक बात बता।
तो क्यों पूछा इसको Bracket में रहेंगे, प्रेडिक्शंस क्योंकि का? अभी थोड़ी देर अस्कांडे पहले पे ही है। नोटिस करिए भाई रियल रैंक तो रेडियंट है मेरा। अस्कांडे अस्कांडे वाले अगर प्रेडिक्शन स्ट्रिक्स देंगे तू अस्कंडे मैं भी अस्कंडे हूं भाई सेम भाई सेम रियल रेडियंट सारे नसकांडे। एक टाइम पे रॉसी के साथ कंपेयर करता था टीबोन निकला भाई ये वो देखना मेरा जरूर पड़ेगा, बेटा अगर कितना होगा नाक कटाएगा तो लोग भाई- चालू कर रैंक पुश। how notorious that halls was, but born to victory. भाई मेरे को बता बिंक्स तू एक ही गेम खेलता है पूरे 3 साल तक और मेरे तू को एक बात बता, एक ही गेम खेल 10 गेम खेलता है, तू भी एक ही गेम खेलता है ना, भले टाइम के बाद खेलता तो एक ही है। मेरे को बता तू एक ही एजेंट खेलता है पूरा साल एक ही कौन एजेंट से 20 एजेंट खेलता है भाई खेलता हूँ भाई स्काई केओ कौन सा खेला है भाई। खेलना पड़ा था खेलना पढ़ा था। मतलब यार देखिए हाँ। पहले मैच में कर लो दे पटेल कैसे हो ब्रो व्हाट्स अप दक्ष भाई कैसे हो। नेक्स्ट टॉपिक तेरे पास बहुत पैसा है उस पे कुछ बात कर। टॉपिक एंड पैसे नहीं है। मान लिया मतलब मैं ठीक है मैनिफेस्ट कर रहा हूँ अब ये पहली और आखिरी बार हो जाएगा ब्लीड जब ब्रीज खेलेगी Yeah. अगली बार से टीम इंस्टा बैन करेगी फिर क्या करोगे आप फिर दूसरा मैच खेलोगे Extra दूसरे पे stats? 13-0 करोगे अंकुर भाई कैसे हो अंकुर भाई व्हाट्स अप। मेरा सवाल यही है आप खिलाओगे किसे क्या बाकी सारे प्लेयर्स आई गेट इट पता लग जाएगा। फ्लेक्सिबल फ्लैश भाई स्ट्रिक्स मेरी जान कैसा लॉन्ग टाइम नो सी हाउ डूइंग बेब्स व्हाट्स अप फ्लैश भाई कैसे हो गाइस इतने सालों बाद। duelist है तो Initiators, why not for actors, these guys but then again why to compare हर एक टीम डिफरेंट होती है हर एक प्लेयर डिफरेंट होता है हर एक That's प्लेयर का the fact. अप्रोच बिल्कुल अलग रह सकता है गेम के अंदर तो अब ये सेटअप चीजें- तो मस्त है इनका VCT का। ब्रीज का मैप है देखिए जाने को आप डबल डुएलिस्ट डाइव इन करवा भाई पैसिफिक का स्टेज मस्त है ना। वेरी गुड Yes. नॉट अ प्रॉब्लम बट हमने T1 को आई इफ ये सेटअप भी अच्छा है। हाँ अच्छा पूरा गेम Same mouse pad. वाइपर योरू सोवा एंड दैट साइफर Cypher. ये कॉम्पोजिशन हमने T1 को भी पहले खेलते हुए देखा है सो डू दे स्टिक विद द सेम डू दे चेंज मे बी एक्सक्यूरेट को लेके वैसे एक्सक्यूरेट भी बहुत फ्लेक्स प्लेयर है ऐसा नहीं है Exactly. कि स्टिक्स टू वन रोल ही कैन प्ले एनीथिंग Any role. साया प्लेयर को मुझे लगता नहीं आपको शिफ्ट करने की जरूरत है किसी चीज से He's a complete player. दाबेली भाई कैसे हो स्ट्रिक्स चोमूस चोमूस मत बोलो भाई That's the question ना। ऐसा मत बोलो। यही चीज आपने जैसा बोला है बाकी टीम्स भी सोचेंगी कि भाई देखो T1 का तो फिक्स सॉर्टेड है ना उन्हें क्या चेंजेस करने बट चोमूस तो मत बोलो भाई। ऑल्दो हाँ इसके चांसेस बहुत ज्यादा कम है बहुत ज्यादा हमें ऐसे चेंजेस नहीं देखने को मिलते स्पेशली ऑन अ स्टेज लाइक दिस बट वुड लव टू लुक फॉरवर्ड टू दैट हां हां ऑल्सो थोड़ा सा कन्वर्सेशन से मैं हटूंगा बिकॉज़ द स्टेज लुक मेस्मराइजिंग क्योंकि मैं 3-4 बार देख क्या अब से रेगुलर करोगे मोस्टली तो ऑब्वियसली ग्रीनिश कलर एंड ओह माय गॉड नहीं करूंगा शायद से करूंगा Look at that. But चलो, Fritz, get back to the conversation. And that करूंगा मतलब रेगुलरली मतलब करूंगा एटलीस्ट वीक में 2-3 बार तो करूंगा एटलीस्ट। बहुत सारी Try चीजें करूंगा। discuss करने को, हाँ। बहुत सारी चीजें जो कि आपको दिखानी पड़ेंगी एंड बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है काफी सारी भाई ये और ऑब्वियसली वो रोल फुलफिल करना जो आप Yep, रोल of ले रहे हो course. जस्टिफाई करना इंपॉर्टेंट है Yes. क्योंकि अगर आप बराबर। को फिल अप कर रहे हो जस्ट ट्राइंग टू हाँ। फिल समवन एल्स शूज तो आपको ये चीज बतानी पड़ेगी यस यू मेंट फॉर दैट एंड आपने एक और चीज आई थिंक सो अभी थोड़ी देर पहले अरे, when we were आर्यव on भाई page, कैसे जब हो? यहाँ पे What's videos चल up? रही थी, you mentioned कि सिमिलर कोचेस पे स्टिक करा जा रहा है हां तो अब भले ही कोच सिंपल है बट मेंटालिटी तो बदलती है ना इतने ब्रेक के बाद यू हैव दैट Maybe, टाइम यू maybe. हैव दोस प्लेस कि आप एक पर्टिकुलर प्लेयर के अराउंड चीजें बनाओ या फिर हाँ. प्ले के अराउंड प्लेयर्स को घुमाओ तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट जी हां अब ऑस्ट्रेलिया सिक्स होता था अमेरिका की वॉच पार्टी करता भाई उसके लिए मेरे को अलग राइट्स लेने पड़ेंगे इसके लिए राइट्स लेने पड़ेंगे भाई अमेरिका की कह सकते हैं ना अर्ली उन्होंने अपना और रात को 3:30 बजे कौन करेगा बाबा बट ये का मतलब अब एग्जैक्टली तो हमें डेट बताई नहीं गई इंक्लूजन जी। की पोस्ट आता है हमें पता है उससे पहले पाइपलाइन के अंदर महीने भर से काम चल रहा होता है जी। और आपको अनऑफिशियल एक कंफर्मेशन मिल जाता है फिर यू आर इन आप खेल सकते हो हमारी टीम के साथ एंड लेट्स जस्ट गो ऑन एंड गाइस प्रैक्टिस पता है मेरे को लग रहा है T1 के पास है थोड़ा चांस जीतने का पता है सर्वर में खेल बैठ के खेलना लीड is a different जीतेगी, thing as but compared to when you come शायद and से join. T1 So that करेगी will also कुछ तो करेगी into consideration. Yes, सा फीलिंग आ रहा है पता है champions 2024. important stepping stone for Yes, them once again woke up every game perform किया हुआ बाहर ये काफी VCT किक ऑफ 2 एल स्टेज 1 क्या है integrated circuit है शिवाज exactly अगर आप पूरी कुछ समझ नहीं आ रहा consistent है throughout the year या throughout the main First in each group goes straight to the playoffs. The 3 teams who finish second will play in a single round robin where the winner joins the playoffs in a single elimination format. Come out in- The first phase is a GSL format where teams are तो अगर जी जीती यहाँ पे फिर यहाँ पे जाएगी separated into 3 groups, and the team to come out
फिर First in each group goes straight to the playoffs. The 3 teams who finish second will play in a single round robin where the winner joins the playoffs in a single elimination format. कंफ्यूजिंग है, व्हाट द फक। Intense battle during अभी VCT. भाई क्या बोल रहे हो? हम तो बढ़िया, आपके आने से और बढ़िया हो गया। आप बताओ स्ट्रिक्स भाई। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है क्या हम मैं भी सही बढ़िया, मैं भी बढ़िया। इतने टाइम बाद आ रहा हूँ, अच्छा लग रहा है भाई। इतने सारे लोग हैं, अच्छा लग रहा है। बिंग्स तेरे को याद है? हेलो, हाँ बोल। जो हमने थाईलैंड में फाइनल्स देखा, एक्चुअली सेमीफाइनल ज्यादा वो था, ओपी था। फाइनल से इजी था लीड के लिए ऐसे। हाँ फाइनल इजी था, सेमीफाइनल्स वो था। बहुत मजेदार था सेमीफाइनल। आया प्लेयर। ए प्राइस पुल क्या है इसका? $1 million। सिक्स भाई अगर तू यही सब बात करेगा तो मेरे पास तेरे लिए एक वो है चीज। सुबह सुबह स्ट्रिक्स आया मतलब फ्राइडे को पार्टी नहीं किया, इसका मतलब। कुछ भी है भाई, कुछ भी, कुछ भी। मैं उस दिन लोनावाला में मिले थे ना, मैं और स्ट्रिक्स मिले थे ना लोनावाला में। मोबाइल में सिर्फ यही बात हो रही है, हाँ वो 2 करोड़ इधर डालो, 3 करोड़ इधर डालो, चलो चलो। इतना सक्सेस है। ऐसा हो तो ऐसा भाई बिंग्स, वरना ना हो। हाँ प्रथम भाई कैसे हो? प्रथम भाई व्हाट्सअप। क्या आईफोन 15 Pro इसके Max साथ, कुछ भी इसके नहीं है पास? भाई। हेलो भाई मेरे पास फूटा हुआ फोन था भाई, देखा नहीं क्या? टूटा हुआ तो वो हमारा डीजे का भाई था। कोई मेरे से डीजे का पूछे। फोन जो टूटा भाई जो फेंक है अंदर फोन, भाई वो छोड़ो, वो गमला भी फेंक दिया था, वो गमला भी टूट गया था। हाँ उसने बाटे से फेंका था। अबे वो वास भी टूट गया था पता है भाई उसका फोन तोड़ के कमेंट भी क्या था, अभी 150 का फोन बोल रहे बाटू। अरे मेरे पास सरीन का पुराना फोन है, वो दूंगा। एडिटर बोलता मेरे इतना मेमोरी से अरमान भाई कैसे हो? क्या? अरे बोलता लवड़े उससे ज्यादा महंगा तेरा गमला है। और अमीर आदमी का चैनल भी है भाई, ऐसा मत करो यार, गरीब हो यार, गरीब हो। अबे उसका लैपटॉप भी टूटा हुआ था ना भाई, उसका सब कुछ ट्रिप में वो पूरा एडिट टूटा ही है उसका। वो ट्रिप में क्यों आया पता नहीं उस दिन, कुछ तो किसका मुंह देख के आया पता नहीं। वाला दूसरे वाले को भी उसकी शील्ड खत्म करके जा रहे हो। Exactly. I don't think so इससे ज्यादा कोई टीममेट चाहेगा। 1.5 player for 1, yeah, it's a good trade, I'll take it. Good trade, good trade. ट्रेड एंड स्पेशली वहां पर अगर हम एक और पॉइंट लेके आए। आईडी पास याद आ गया भाई, आईडी पास फॉरवर्ड पासवर्ड किया, फिर जाके मेल आया, फिर के मेल पे जाके नया पासवर्ड सेट किया, फिर वापस भूल गया, फिर वापस फॉरवर्ड किया। भाई इतना टाइम लग रहा था तो फिर लेट हुआ इसलिए। एक्सपीरियंस पे भी बात आती है, इसलिए मेरे को लग गया 1-2 महीना। once again we all know, we always appreciate क्योंकि जितनी जल्दी उन्होंने टीम के साथ जेलअप करा, जितनी जल्दी लीड लिया है। क्योंकि जैसा कि आपने बोला डुएलिस्ट का रोल फुलफिल करना भाई होता है, एंट्री निकालनी है, स्पेसिंग बनानी है, पिक्स निकालने, क्योंकि जब तक डुएलिस्ट नहीं चमकेगा वो एमवीपी टाइटल उसके सर पे नहीं आएगा। और नहीं आएगा बराबर, के सर पे चमकना चाहिए, चमकना चाहिए। आर मेंट फॉर दैट रोल एंड ही डिड। कास्टिंग तो है भाई, कास्टिंग तो है। ऐसी रहती है कि ठीक है अगर मैं इस बार नहीं मार रहा ना, मैं टीम के लिए खेलूंगा, इंडिविजुअल नहीं बोल रहा आप मुझे पकड़ रहे हो पकड़ लो, लेकिन मेरी टीम करेगी। दैट्स द फैक्टर एंड दैट्स द एक्सपीरियंस द गेन। आई कैन अंडरस्टैंड, एज अ डुएलिस्ट आई कैन अंडरस्टैंड। ये के साथ एक और चीज है, वंस अगेन वो टीम के साथ स्वैप इन करना। देख चैट देख मोड किधर है, तो वो थोड़ा सा क्या हुआ गाइस? लेके जरूर आता है, चैट साया में प्लेयर की भी चीजें रहेंगी। बट मैं यही सोचूंगा कि अरे मेंटालिटी बाबा टॉक्सिक ना बनो गाइस, प्लीज प्लीज टॉक्सिक ना बनो फॉर प्लीज। अस कहना आसान होता है, राइट? बहुत ज्यादा इट्स आसान। इजियर सेड देन डन कि भाई डबल एलिमिनेशन है, जैसे कि मैंने बोला एक्सपेरिमेंट कर लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात कौन नहीं है। किसको गाली दे रहा था बताओ? सरपंच दे रहा था और कौन दे रहा था किसको? भाई डबल एलिमिनेशन है, एक्सपेरिमेंट करेंगे तो दिक्कत आएगी, पहले आ रहा था। टेम्परामेंट चेंज हो जाता है। गाइस मैं मोड कोई सीन नहीं, मैं हूं। Also there are some set of plans जिसके अकॉर्डिंग टीम चलती है, वो नहीं वर्क करे तो आते हैं टैक्टिकल टाइम आउट, और फिर टैक्टिकल टाइम आउट के बाद जो दिक्कत होती है फिर वो डबल। अब वो भी उसके 2 पहलू है, हार गए तो डबल तो क्या 4 टाइम्स हो जाएगी, जीतना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। टैक्टिकल टाइम आउट एक हथियार होता है कोच का, वो हथियार अगर नहीं मारेगा तो फिर तो टीम तो चोट खाएगी, और वो सारी चीज़ें ज़रूर गेम के अंदर आएंगी। बट वो तभी होगा मैं कहूँगा जब आज एक स्लो स्टार्ट मिलेगी किसी भी एक टीम को, एंड ऑफ कोर्स दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी।
अगेन द मैप ऑफ ब्रीज इज वन ऑफ दोज मैप्स जहाँ पर अटैकर्स थोड़े से फेवर्ड रहेंगे। देखिए अगर आप पहला मैप ब्रीज है, फेज अच्छी तरीके से आप नहीं पहला मैप वो है। टूरिस्ट कौन खेलेगा देखना है। मैं पहला मैप ये है, ये डेरियन भैया खेलेगा क्या डुएलिस्ट? पहला मैप ब्रीज ही शायद। वाह ब्रीज है। ध्यान किधर है भाई, कैसा वॉच पार्टी कर रहा है? मैं सुनने में ध्यान है, सुनने में। जंक भाव कैसा है? भाई क्या हाल है? रुचिर भाई कैसे? रुचिर भाई समझ रहे हो? के लिए वी आर एक्चुअली वेरी सॉरी, क्योंकि थोड़ी टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से नो प्रॉब्लम फॉरगिवन। बहुत ज्यादा बड़े फैंस हैं। कास्टर से पहले वो थोड़ा फैन एंथुसियास्ट हो जाता है, बट वी हैव टू कंट्रोल दैट। हमें भी इंतजार नहीं हो रहा कब ये मैच स्टार्ट होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मैच जरूर स्टार्ट होगा, लेकिन आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। अबे ब्रेक चलो गया। कौन सा लैपटॉप है? मेरे को लेना है। प्रेडेटर हीलियोस, ऐसा क्या है लैपटॉप में? i9 14 जेन, ठीक है भाई, इससे अच्छा मेरा पीसी है भाई। अभी आपको क्या दिख रहा है स्ट्रीम पे? I'm just watching some cuties. ओ भाई आ गया भाई, ये देखो। We would like to apologize for the display, sorry delay. नहीं वो नीचे का मत पढ़, सामने क्या दिख रहा है? क्या आपको क्लोथिंग का ऐड दिख रहा है? हाँ मतलब वो वाला नहीं है ना, ट्विच वाला नहीं, नॉर्मल ही है ना ये। हाँ नॉर्मल है। पेज मेरे को ट्विच का वैसे आ गया अचानक से। एग्जाम्स खत्म आपके? एग्जाम्स तो कब के खत्म? एग्जाम्स कौन रहता है? जोड़ी बाय कैसे हो? जोड़ी बाय टेक्निकल डिफिकल्टी ये लोग ने बोला नहीं क्या? अबे ये माउस मैंने सुना है अच्छा है पल्सर। 175 वॉट्स देगा, क्या फर्क पड़ता है? 1000 वॉट्स लेना तो ले लो भाई, मैं दे रहा हूँ। Fortnite? What the fuck? पंक्स भाई ये चेयर दोगे आप मेरे को? ये वही है क्या चेयर लौंडा के घर में? नहीं ये वाला सस्ता वाला है। सस्ता मतलब कितना है? आई थिंक होगा $1000। भाई मेरे को तो वो ठीक ठाक लगा यार भाई तो क्या है ये डॉलर्स, मिलियन डॉलर्स? हाँ वो रुपीस में बेंचो बात करेगा डॉलर्स में तू? हाँ तेरी भीड़। थिंग्स भाई ये मॉनिटर है आपके पास? नहीं इसलिए आप गंदा खेलते हो। तेरे पास है? नहीं है। मत करो ये सब मॉनिटर की बात है। Red Bull gives you wings. क्या हो गया? It hurts हो गया क्या? It hurts. नहीं हमारा अलग है अच्छा। You can talk about headphones, peripherals. Zowie मॉनिटर बाप है यार, लेकिन सेक्सी है। सेक्सी तो है। भावेश भाई कैसे हो? भावेश भाई मॉनिटर करके इसका ऑफिशियल पार्टनर है, पता है? इतना बाप मॉनिटर है करके। क्या बोल रहा है टिबो? पंक्स भाई ये वाले ऐड में है, ये जो कुत्ता है वो आप हो। क्या? मिसिंग फ्रैक्चर तो यार। स्ट्रिक्स क्या वाला था? ओनली वन टाइम ब्रो, वापस से सुना था। अरे बासुंडी की गांड सुना ही नहीं मैं। सबसे पहली क्वेश्चन, बासुंडी की गांड क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय बासुंडी फर्स्ट ऑफ ऑल?
बांसुरी भाई ये बहुत महंगा है ना क्या होता है पोलो बांसुरी मतलब? रैल्फ पोलो महंगा ब्रांड है ना गाइस रैल्फ पोलो जो ऊपर से बजाते हैं वो मुंह रहता है महंगा ब्रांड है ना तो नीचे क्या रहेगा तो 2 विनर जाएंगे मद्रिद मास्टर्स क्या लूं कैसा रहा कॉलेज टूर्नामेंट अच्छा था फक व्हाट द इसका 37,000 घर चला जाएंगे रे बाबा अच्छे तो है पर दिखने में अच्छे तो है भाई अच्छा तो है भाई Red Bull gives you wings. भाई 30,000 के नीचे कुछ है हाय प्रख्यात भाई कैसे हो व्हाट्स अप प्रख्यात भाई लॉन्ग टाइम नो सी Destroyer 69 yes sir buddy what's up अबे क्या तेरे को कुछ दिख रहा है अच्छा Red Bull gives you wings. Red Bull gives you wings 37 के इतना का मैंने आज तक कपड़े नहीं लिए होंगे सेम ब्रो सेम अस मनन भाई कैसे मनन भाई निमिष भाई कैसे निमिष भाई माफ करा निमिष भाई चैट नहीं पड़ा ये एड एक कार का है 25 मिनट्स के एड्स लगने वाले अभी सिर्फ चालू नहीं हुआ ना एक बार चालोगे फिर कुछ नहीं ब्रेक्स पंक्स में आपके पास पल्सर है चॉकलेट है ना खाता हूँ मैं ये कौन सा चॉकलेट पल्सर चॉकलेट नहीं खाया तूने अंदर मिंट रहता है रहता है रुक चेक करने दे हाँ उसके तरह बे वो क्या है वो एक और था ना फेमस ऐसा पट करके फूटता है सेंटर में पल से वो अच्छा सॉरी भाई पल सॉरी छोड़ दे रे बाबा छोड़ दे तू आरआरक्यू की टीम अच्छी है हाँ यहाँ पे हम पल्सर पे है तुम भेजो टीम पे ध्यान दे रहे हो ये जेन.G किस में था रे पहले आर वे इग्नोरिंग बे क्या हुआ अरमान भाई हाय तो बोला अरमान भाई इतनी बार हाय बोला आप वापस लिख रहे हो यार चलो चैट पे ध्यान दे आई एम गोइंग समझे ना इधर वॉच पार्टी देखो मैच से कुछ सीखो हाँ क्या मेरे पास नहीं है बाइक में मेरे को एक ही चीज पसंद है डेविड और उसका बच्चा क्या बोलते हो स्ट्रिक्स क्या सुना नहीं बाइक में डेविड और उसका बच्चा पसंद है कि नहीं ये कौन है डेविड सन फुल कैम हो ना फुल कैम हो थोड़ा ऐसा लग रहा है मैं नींद से उठ के आऊं ऐसा लग रहा है क्या नेक्स्ट बार रेगुलर स्ट्रीमिंग हो जाती तो हो सकता है मेरा प्लान वही है मेरा लॉन्ग टर्म फ्यूचर प्लान वही था कि मैं आज से रेगुलर स्ट्रीमिंग चालू करूँ एकदम 24 आवर्स 12 आवर्स 6 आवर्स ऐसा स्ट्रीम कंटिन्यू रखते ही जाऊँ प्लान तो है मेरा इस बार वैल्यू स्ट्रीम किया करूंगा हर्ष भाई करूंगा बुलेटिन बाय थैंक यू फॉर द मेंबरशिप बुलेटिन बाय रियल फैन रियल बाय द वे गाइस थोड़ा
हो सकता है। ऐसा लग रहा है नहा के आए हो। हाँ क्या हरीश भाई, रियल फैन, रियल सब्सक्राइबर। और कौन कौन स्ट्रीम कर रहा है वॉच पार्टी? बेंग्स, टी-बॉन, हर्ष, अंकिता, शेरलॉक, बहुत लोग है बे, बहुत लोग है। भाई नया कैटेगरी है बे टीबोन, यंग एडल्ट्स। हम यंग एडल्ट्स में थोड़ा स्टार्ट हो जाता तो। क्या तुम यंग एडल्ट्स में हो? हाँ। तो मैं किस में आऊंगा फिर? बुंड एडल्ट्स में आते हो, बुंड एडल्ट्स। जिस हिसाब से आप रोज बाहर जा रहे हो ना रात को, आप सिर्फ एडल्ट्स में आओगे कुछ दिन में, ठीक है भाई? थोड़े दिन में ओरी जैसा ये भी फेमस होगा। एक कुछ भी भाई, इंस्टाग्राम में फुल ऐसे स्ट्रिक्स ऐसे हाथ डाल के ऐसा फोटो लिया ना, मतलब फेमस। ठीक समझा ना मेरा मतलब? हाँ, सिर्फ एडल्ट्स में आओगे तुम। लैंग्वेज बिहेव, लैंग्वेज। सर्च इंजन में स्ट्रिक्स वैलोरेंट लाइव नहीं, कुछ और आएगा। स्ट्रिक्स बुलबुल ऑन टॉप। साथ में वो भी रहेगा एडिट। सुधर जाओ भाई, सुधर जाओ। तुम लोग दोनों साथ में पार्टी करते हो क्या? कौन साथ में? हेलो गाइस, एडिट हो गया बे, थोड़े दिन में वो सबसे टॉप डीजे बनेगा इंडिया का, देख ली। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। बतूरा भाई व्हाट्सअप, कैसे हो? मैं तो एकदम मोटा हूँ, आप कैसे हो? अरे मैं पतला हूँ। हाँ पता है, इसीलिए बोलो, इसीलिए टारगेट किया आपको। बट्टे कौन है ये बदतमीज आदमी? बदतमीज आदमी, तमीज से बात करना सीखो टीबोन भाई, घर जाएगा। माफ करो, बोला ना भाई, अपोलोजाइज किया ना। क्या वीडियो डालो 10:30? अब चल रहा है वीडियो तेरा 10:30 वाला। फिक्स भाई, मैं भी तुम्हारे कॉलेज में हूँ। हाँ कैसे हो भाई? कौन से डिपार्टमेंट? बट प्रेडिक्शंस क्या है? तो चप्पल कहाँ पे है? प्रेडिक्शंस बर्थडे आ रहा है नेक्स्ट मंथ, क्या प्लान है? किसका बर्थडे? मेरा? Gen.G कौन? मेरा बर्थडे का प्लान्स पता क्या है? घर पे बैठूंगा, वैलोरेंट करूंगा, रैंक ग्रैंड। नहीं मिला सुबह से। अरे नहीं मचा, वर्कआउट चालू किया ना, दिमाग चालू नहीं है भाई। क्या चालू किया? वर्कआउट। ओ भाई या वही देख रहा हूँ, व्हाइट फील्ड कल हिल रहा था पूरा। स्लाइट मैग्नीट्यूड फाउंड इन 80K वाला लैपटॉप बता दो। पता नहीं यार, लैपटॉप्स का नो आइडिया। अच्छा था गाइस, +1 वाली जोक्स। अच्छा था। जस्ट सेइंग, अगर फैट शेमिंग का किसने बोला तो टीबोन स्ट्रीम कर रहा है। वाह भाई, हाँ। मेरी ये सब ठीक है। हम कुछ बोले तो फैट शेम। अरे नहीं, टू बी ऑनेस्ट टीबोन बोल सकता है क्योंकि फैट के पास फैट शेमिंग वाला पास होता है। Well, I just lost that weight, yo. अभी देखेगा फैट Playing like Nadal these days. नडाल अब बैडमिंटन से शिफ्ट भी हो गया टेनिस तक। बाबा टेनिस भाई बेस्ट है भाई, टेनिस अभी मजा आता है। ट्यून भाई, आपको मेरा बैडमिंटन का वीडियो भेजूं, देखोगे? हाँ भेजना। Would like मतलब to break the tiles, yo. ये सिर्फ वार्म डाउन सेट का है। कल वीएलटी की पावर देख लिया भाई। नहीं वॉच पार्टी नहीं, खुद को तोड़ने आज। अरे रे बाबा, नहीं बच्चा, नहीं बच्चा। अरे जो स्ट्रिक्स मैं वही दो एनी चीज टाइम। है। अभी तुम लोग गंदा सोच रहे हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। मैं रैकेट होता है, एंड बैट कॉक पे नहीं, बोलते हो उसे? शटल होता है। कॉक बोल दिया सीधा यार। आई थिंक ब्लीड विंस इट 2-0 ब्रो। ए शटल को कॉक ही बोलते हैं बाय द वे। Yes. शटल कॉक बोलते हैं। शटल कॉक बोलते हैं या शटल बोलते हैं? में कॉक भाई ही ये बोलते पेरिस ने हैं। शूट किया। सिर्फ कॉक तो नहीं बोलते हैं भाई। बोलते हैं कॉक। नहीं, कॉक जैसा। हाँ नहीं, शटल बोलते हैं वरना शटल कॉक बोलते हैं। हाँ भाई, तू अकेला नहीं बोलते। मेरा टर्न हो गया अभी। किसके साथ खेलता था भाई तू? मेरा सर्व हो गया अभी, तू मेरा कॉक ले। क्या? हाँ या तू ऐसा बोलता था? फिक्स नाम है इसलिए नहीं बे। अच्छा, लेजेंड में अच्छा है। फिक्स बताओ क्या सीन चल रहा है तुम लोग की? यार आती नहीं क्या?
हम लोगों की याद आती नहीं है, माफ करो। आती याद, इसलिए तो आज स्ट्रीम किया मैंने ब्रो, इसीलिए आती याद। मैं ट्राई करूंगा रेगुलर रहने का, ट्राई करूंगा। अबे ये मेरे को ये क्यों नहीं दिख रहा है? क्या बोलते हैं मेरे को? हाँ नेवर माइंड, एवरीथिंग फाइन नाउ। और बताओ चैट कैसे हो? 6 भाई आप लाइव नहीं आते हो क्या? आता हो ब्रो, मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीम करता हूँ रोज, मेंबर्स ओनली। ओजस भाई कैसे? ओजस भाई व्हाट्सअप? कैसे? मेरे को खाना मंगाना है यार, तब तक खाना मंगाते आ जाओ। स्विगी या जोमेटो दोनों है मेरे पास। खाने में क्या मंगाऊं? स्विगी। टॉप रेस्टोरेंट पुणे। अच्छा रेस्टोरेंट चेन से। बट ये फिक्स इंस्टा पे लाइव अपडेट डाल दे। अरे पापा डालना पड़ेगा क्या? थोड़ी देर में डालता हूँ। क्या खाया जाए? अमूल का रेस्टोरेंट आ गया, व्हाट द फक। ये सब नहीं खाना है। मिसल मंगाओ। मिसल नहीं भाई, थोड़ा प्रॉब्लम होगा खाने में, वॉच पार्टी में दिक्कत होगी। द ग्रेट इंडियन खिचड़ी, व्हाट द फक। कुछ बोल स्ट्रिक्स। हेलो ओला। वही आ रहा है। पोकेमॉन 2.9 है भाई। मैं 1 स्टार का खाऊं क्या आज? सॉर्ट बाय रेटिंग। ड्रिंक्स भाई घर पे हाँ। आप भी क्लीन करना स्टार्ट कर देना। या देखा लेकिन वो थोड़ा गाली तो दे रहे थे आपको क्लीन करने को, लेकिन करना सॉर्ट स्टार्ट बाय। हैवी क्लीन। माफ करो, गलत लग गया। अभी माफ वो करो। 1 मील वाला सीन ही नहीं है क्या आपके? 1 मील में भी क्लीन। अच्छा बट वैसा करना तो रात करता है शायद रात को। you'll get loose skin मचा, don't do that। 2.4 से खराब तो किसी का रेटिंग नहीं होगा। you'll get loose skin मिलता है आपको 1 ही मील खाने से। ऐसे ही प्रोटीन का स्नैक्स कुछ साइड में रख के चबाते रहो। अरे तो 1 मील में मैं इतना प्रोटीन खा रहा हूँ, कहाँ से लूज? आज क्या खाया? कितना ग्राम्स का प्रोटीन खा रहे हो 1 मील में आप? विंग्स आज क्या खाया? 1.5 किलो और ग्रिल्ड चिकन। 1.5 किलो? क्या आपका शक्ल बिग्स का और पेट भतूरा का है क्या बोल रहे हो? ग्रिल्ड चिकन और एक ग्रिल्ड फिश। मैं भेंचो वो आता है तो मैं उसको उस पे थोड़ी डालता हूँ, क्या बोलते हो वेट मशीन पे, भाई चिकन तो कितने पीस का है, फिश कितने पीस का। मैं नहीं मतलब आप ऑर्डर किए ना, तो बेसिकली आप ऑर्डर करो। चिकन का ब्रेस्ट एक ब्रेस्ट KFC नहीं भाई। 1 breast is 275 grams to 320 grams। बर्गर खा सकते हो भाई, बर्गर खा सकते हो, बर्गर खा सकते हो। है इसलिए मालूम मेरे को। चिकन का ब्रेस्ट है बोला। ग्रिल चिकन सिर्फ कहाँ से मंगाता है तू? ब्रेस्ट याद आ रहा है तुझे बट्टो? त्रिभुवन भाई वैसा ब्रेस्ट नहीं, चिकन ब्रेस्ट का बात कर रहा हूँ मैं भी चिकन ब्रेस्ट की बात कर रहा था भाई। हाँ चिकन ब्रेस्ट का याद आता रहता है ब्रो। हाँ वो और ग्रिल्ड फिश का या फिश मतलब फिश का ब्रेस्ट नहीं रहता मालूम, लेकिन एक फिश का वो पूरा पीस खाते हो ना, वो डायमंड शेप वाला जो आता है, तो आप करीब 60 ग्राम्स का
60 ग्राम प्रोटीन का अच्छा ही है। वाटर इनटेक आपका? वाटर इनटेक 4 बोतल पानी 2 बोतल चाय। गाइस बताओ ना 2 बोतल चाय। ग्रिल्ड चिकन कहाँ पे है जो बिंग्स खा रहा है? 2 कप तो चाहिए। नहीं यहाँ पे 3 हो रहा है बट हाँ नहीं वाच पार्टी का तो नो शुगर इन वो शुगर तो बुर्गर बंद भी खा कर लो। दिया आपने। आई थिंक इट्स टाइम फॉर दैट टीवन भाई सीख लो कुछ। शुगर बंद करके शुगर का क्यूब खा रहा है हरामजादा ये। क्या खा रहा है ये शुगर का? शुगर बंद करके शुगर का क्यूब मिलता है ना वो खा रहे हैं। वो तो और घर पे पकड़ लिया। वो तो और अरे बात करना सीख ले भाई। और अनहेल्दी है वो तो और अनहेल्दी है। जाएगा बात करना सीख ले। डांस करना चालू वो ट्विस्ट टंग हो गया ट्विस्ट टंग हो गया। स्ट्रिक्स में क्या कर रहे हो आजकल? एग्जाम हो गया? एग्जाम कौन देता है भाई? सीधा प्रिंसिपल का रिता स्ट्रिक्स। बढ़िया था। टाइप भी होगा बाप का। सीधा इवो में आप स्कूल में टॉपर थे? स्कूल में सीट्स बेचने वाला स्ट्रिक्स। टॉपर तो मैं था, बाकी में टॉपर। सच्ची? क्या टीबोन टॉपर? आई मीन टियर 2 बोल रहे। टियर 1 90% अबव वाले, टियर 2 90% बिलो वाले। आई मीन 80 से 90 तक। ओ इतना तो अच्छा था। टियर 2 वाला था। तो फिर मैं टियर 3 में गिन सकता हूँ। अदर्स बट तो कृपया टियर 5 वाले एक नाक से बात तो कृपया क्या मैं 12th में बिजनेस स्टडीज का टॉपर हूँ स्कूल का। बिजनेस क्या? वेज ऑडियंस है कोई? कडल्स हो गया भाई वेज ऑडियंस तो होगा कोई ना कोई। उसका टॉपर स्कूल में 97। हाँ जी एक ही बंदा था क्लास में। हाँ बस ठीक है। मेरे को एक बात बता बट्टू, सीधे मैगी मंगाता हो ना भाई। टॉपर होके ना तो जॉब कर रहा है ना बिजनेस भी। के बाद 2 डिग्री भी है उसके बाद भी नहीं कर रहा हूँ। वेंडीज खराब लगता है बे। इसीलिए तो पापा बुला के मार के भेज देते हैं। नॉट अ गेमर ब्रो, यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग फॉर। बैक टू माय स्टेपल फूड। भाई इस साल कुछ भी करके हो जाएगा भाई। पहले मैं करता तो है एक्टिंग मारने का। अब बाय एक्सक्यूज मी आप इतना बाय कैसे हो? तुम आज पनीर नान खा लो। व्हाट? पनीर नान ऐसा कुछ आता है? एक्टिंग में आना बहुत डिफिकल्ट होता है। मेरा फ्रेंड में बहुत कहाँ पे भाई पनीर नान? तो यार ब्रो इट डजंट मैटर हाउ मच हार्ड वर्क यू पुट, यू नीड टू पुट इन स्मार्ट वर्क एंड हैव कॉन्टेक्ट्स। एक्टर में हीरो बन के हिट हो गया वो हिट है, वरना भाई हीरो नहीं बनने का भाई नहीं है भाई। भाई फोकस हो हीरो में रहता है भाई। कभी तुम लोगों ने जो ऐसे ब्रो आई टेल यू होता है तो कभी तुम लोगों ने नोटिस किया हीरो के अलावा किसी और को देखते हो? आई टेल यू अ वेरी सिंपल लॉजिक। हीरो का क्या सीन होता है? दिखाया किसी ने? शक्ल अच्छा होना चाहिए, दिखाया किसी ने? होना चाहिए और जिनके पास ऑलरेडी इंडस्ट्री में है उनसे लड़ाई करना होता है। मेरे को वो सब रोल्स में जाने का इसको तोड़नी है ब्रो। जाने का ऐसा एक रोल में जो मेरे को देख के इतना सेक्सी लगता है ये वाला, इतना सेक्सी लगता है। कॉमेडी वगैरह वायग्रा वाह। ओके गाइस गुड नाइट, थैंक्स फॉर द टाइम यो। पिज्जा खा लो। पिज्जा तो कल ही खाया ब्रो। तब तक एक काम कर, अपने सारे गर्लफ्रेंड्स का नाम बता दे, तब तक मेरे हिसाब से टेक्निकल खत्म हो जाएगा। एक भी नहीं यार सच में, नहीं तो बता देता। पता है मुझे एक सेकंड में आया वापस। तो फिर जो तू डांस कर रहा था किसके साथ कर रहा था? एज ए रिस्पॉन्सिबल बेटा आपको ढूंढनी चाहिए पापा के लिए गर्लफ्रेंड। मैंने ढूंढा है, वीडियो में थी कोई तो। कौन से वीडियो में? अब मैं तेरे को फिर से बताऊं, मैं डायरेक्ट एक काम करता हूँ, इस बार मैं डायरेक्ट टीबोन को बताता हूँ, ठीक है? वो डिसाइड कर लेगा। नहीं इट्स ओके के साथ। हाँ जब मैं बोला है वीडियो में तो है भाई मन किया कर रहे सब स्ट्रीम पे मत। हाँ तो चुपचाप मानने का ना। कौन सी अभी मेरे को फोर्स किया तू बोलने को, एक्सपोज करने को फोर्स किया। हाँ तो नाम बताए। नाम तो नहीं है वो, भूल गया ब्रो। वो वही दिन क्या था, उस दिन के बाद कभी दिन के हिसाब से गर्लफ्रेंड बदलता है। इसकी वीएंड की सक्सेस देख रहे हो? वो मतलब हाय हेलो बाय इतना ही था ब्रो। ओ हाय कितना बजे बोला था याद नहीं इतना। 10 बजे। और फिर बाय 10 12 hours।
अरे क्या मंगाना था? बिग स्पाइसी पनीर रैप एक और क्या मंगाऊं? हो गया क्या? वैसे और क्या खाते मैकडी से? मैं कभी पहली बार मंगा रहा हूँ गाइस, पता नहीं, फर्स्ट टाइम ट्राइंग मैकडोनल्ड्स। एक बहुत फेमस नाम होएगा जॉनी स्ट्रिक्स करके। जॉनी स्ट्रिक्स, द ओनली प्लेबॉय ऑफ पुणे। मत करो रे बाबा, मत करो। एक्सियन स्ट्रिक्स वगैरह इनका लाइफ सेट है। जॉनी स्ट्रिक्स का पहला वीडियो मेरे से टीचर स्टूडेंट या फिर स्पोर्ट्स कोच ऐसा कुछ। अरे मैं स्पॉन्सर करूं हाइफन बाय कर सकते हो, बट एक बंदे के पास एज अ रिस्पॉन्सिबल स्ट्रीमर मैं 60 व्यूअर्स को सबको मैं स्पॉन्सर कर सकता हूँ मैकडी। सिर्फ तुमको पुणे आना पड़ेगा, तुमको सबको एक बर्गर दूंगा एज अ रिस्पॉन्सिबल स्ट्रीमर, सबको दूंगा मैं बर्गर एक। तुम मत देना, मैं दूंगा। कार्तिक आर्य मेल, ये क्या है? मेरे लाइफ में भी दो एडिट आ गए, स्ट्रिक्स भी दूसरा आ गया तो मेरा हो गया। एक और एडिट कौन? वेट स्ट्रिक्स यार, अच्छा मेरे को लगा स्ट्रिक्स भी डीजेइंग चालू कर दिया। ए इसका वो तो खत्म हो गया ना, कॉलेज स्ट्रिक्स हो गया क्या खत्म? नहीं एक और साल। तो अभी क्या फाइनल्स? एक और साल मतलब थर्ड ईयर लास्ट सेम। क्या करता है तू? इंजीनियरिंग? यस, कंप्यूटर साइंस। इंजीनियरिंग में हाउ कम देयर इज ओनली 3 years? प्लीज 4 years, there is 4 years. Can I do one more expose of Strixx, please? भाई कंप्यूटर इंजीनियर्स कितने हैं यार आजकल, सच्ची। ये इंजीनियरिंग नहीं कर रहे, इंजीनियर इसको कर रहे हैं। उस दिन मेरे चैट ने इसको 2 क्वेश्चन पूछा था, भोसड़ी का टाइपिंग का आवाज आ रहा था, गूगल से आंसर उठा के कुछ भी भाई, कुछ भी, इतना झूठ कर। नहीं उसी टाइम पर स्ट्रिक्स मेरे को मैसेज कर रहा था वैलोरेंट में, उसका आवाज आया होगा आपको कीबोर्ड पे। हाँ। सॉरी स्ट्रिक्स क्वेश्चन का आंसर नहीं आता इसको। सॉरी स्ट्रिक्स पे बचाने का कोशिश किया। डिफाइन इंजीनियरिंग पूछेगा, वो भी गूगल करेगा पेज। तो मेरे को बता बीकॉम का फुल फॉर्म क्या रहता है, बता। बैचलर्स ऑफ कॉमर्स। कुछ तो आता है, कुछ तो आता है। हो गया, कुछ तो आता है। वाह वाह, है कि मैं तेरा बाप हूँ, बड़े में हो गया। बैचलर्स ऑफ कॉमर्स। टिबुन भाई आपने क्या पढ़ाई किया है? हां, बैचलर्स ऑफ इंजीनियर्स। हां, शॉर्ट फॉर्म नहीं बोला, डायरेक्ट फुल फॉर्म बोला। व्हाट? ये क्या है गाइस? व्हाट द फक? ये देखो जल्दी देखो। मेरी गांस भी लेना, मेरी सांस भी लेना। W चीज मिली है, W चीज, गाना है, W चीज मिली है। ये क्या है भाई? I just missed धोनी दिस चाइयो। ये क्या है? पता है, इसीलिए बोल रहा हूँ। देखा था आपको पिंक सेक्सी चीज मिली है, फटाक लपक करके। सेक्सी चीज मिली है, सेक्सी चीज मिली है। बीकॉम क्या किया आपने? बिग जनरल सेक्सी चीज मिली है। हाँ, जनरल ये रहेगा, कुछ तो रहेगा, टेस्टी रहेगा भाई। होगा या जस्ट सेटिंग कर रहे हैं भाई, पता नहीं यार, इतना डिले उधर नहीं था। पहली बार ना डिले। उधर भी बताओ कौन कर रहा है? बताओ स्पॉन्सर, कोई कर रहा है स्पॉन्सर? बताओ जल्दी बताओ। उसके बाद थोड़ा 10 मिनट में फटाक से ये करके चालू कर दे। चलो बैक टू बेसिक्स, बैक टू माय स्टेपल फूड। एक ये मंगा रहा हूँ, एक मैक्स स्पाइसी पनीर रैप। और कार्तिक आर्यन मील कहाँ पे है? कार्तिक आर्यन मील मिला? ऐसा कुछ कहाँ पे है? नहीं है ब्रो यहाँ पे। कार्तिक आर्यन यूपीआईडी दो स्ट्रिक्स। नहीं, मजाक कर रहा है पेन भाई, मजाक कर रहा हूँ।
इधर करो। आर यू फैन? क्या लिखा था? मशरूम मिले, मैंने पढ़ा खाई तो। खराब है भाई कार्तिक आर्यन का मील। ठीक है ठीक है ठीक है। हॉट चॉकलेट, मोका, स्प्राइट, बेरी लेमनेड, क्या अच्छा रहता है भाई? आई थिंक कम तो जिस स्ट्रिक्स वी ट्रीट यू। श्रेयस भाई ओडिशा आने के लिए मेरे को 10 ट्रेन लेनी पड़ेंगी, 10 ट्रेन, और फिर उसके बाद 10 कैब लेनी पड़ेगी, फिर जाके आऊंगा मैं ओडिशा। इतना दूर है भाई ओडिशा। कहाँ पे करो फातिमा जी को। क्या मेरा लोकेशन लीक होगा अभी? सेफ साइड। चलो गया। चलो Thank you very much for joining me here to talk about. We've got VCT 2024 Pacific about to kick off. So अरे वो है let's क्या? go एक ahead बात and right off पूछूं। the top with PIIIIIIIINK. 26 घंटा, सॉरी 12 दिन। How they look. कौन आएगा ब्रो 12 दिन चल के? इससे अच्छा मैं खुद खा लेता हूँ यहाँ पे। सबसे बेस्ट तो यही है। 12 दिन। कान में हाथी का लैंड लौड़े लैंड इतना बड़ा लैंड। भाई मेरी स्ट्रीम ये किसका बोला था तूने? फिर कोई जाए चल फिर कोई फिर बुलेट ज्यादा को तो मैं नहीं सुना। जब अपन खाना मंगाना है। मेरा कंप्लेंट है कॉलेज में स्मर्फ ना करे तो क्या ओपी ओपी कर रहे हैं वहाँ पे? आप है नहीं तो किसने लिखा है? आदित्य पाटिल। एक हमारे कॉलेज में टूर्नी में स्मर्फ कर रहा। भाई अटेंडेंस के लिए खेलता हूँ मैं। भाई मेरे को एक बात बता, अटेंडेंस के लिए खेलता हूँ मैं। एक सेकंड, जब उसने मेरे को सुपर चैट करके बोला है तो उसका रिप्लाई तू सुपर चैट करके दे ना। ये क्या डायरेक्ट रिप्लाई दे रहा है? ऐसे नहीं यार। पढ़ा यार आपने। हाँ बीकॉम तो पढ़ाई किया हाँ ना। थैंक यू यार। मैंने अभी मॉर्निंग तेजस बाय मॉर्निंग। एक ने 100 रुपीज दिया, ठीक है, और बोला कि मेरे यहाँ पे सुबह के 6:30 बज गए। मैं बोला ये कौन सी इंडिया में रहता है, मेरे यहाँ पे तो 12:30 बजे, 6:30 कैसे? तो बोलता है बंस भाई मैं वीपीएन डाल के ये वो करके। मैं बोला मैं नहीं मानता, वीपीएन हटा के बता। और उसने मेरे को 3 पाउंड्स दिए। लव यू। सेम 40 रुपए का ब्लू सुपर चैट के लिए। इस भाई इतना पैसे होने के बाद भी ये सब कर रहे हो आप। भाई पैसा हो तो ऐसा वरना आज ही पता है सुबह बिग्स को 150 गिफ्टेड मिले। 150। भाई मुझे भी दे दे यार एक गिफ्ट। हाँ बंक्स भाई एक ही चाहिए गिफ्टेड। ओ फक अभी थैंक यू फॉर द 50। व्हाट द फक? इतना झूठ मत बोलो, आएंगे नहीं वापस कभी। Very solid foundation to build around. So you've got like these superstars. एक चीज पूछो बिग्स को मेरी तरफ से, हाथी का कौन सा इफेन भाई? इट्स ओके आई विल डिस्क्लोज द मैटर। इसके बारे में बात नहीं करेंगे अपन। थोड़ा अपन फैमिली फ्रेंडली, फोकस ऑन द गेम। Now bringing his talents over to Japan. This is something that I think Zeta. मैंगलोर राजा विल ट्रीट यू। मैंगलोर में क्या ट्रीट दोगे? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। मैं मैंगलोर में क्या ट्रीट दोगे? कोई रेस्टोरेंट बताओ जल्दी अच्छा वाला। मैंगलोर थोड़ा पास में है, थोड़ा सा पास में, ओडिशा से पास में। तो अगर मैं चल के आऊंगा तो मेरे को ये रास्ता लेना पड़ेगा। बराबर बराबर। यहाँ पे मैं फोटो निकाल सकता हूँ। मुझे यूज करके आपने 50 गिफ्टेड लिया।
ये बिंग ये कर रहा है क्या स्ट्रिक्स? हाँ स्ट्रिक्स लव यू यार, सच्ची में बहुत क्यूट। क्यों? हैं? तुझे कभी देखा नहीं था क्या स्ट्रिक्स को? 2 रुपए का इसका वो करता है ना स्विमिंग, बहुत ही गंदा स्विमर है। मैं 2 रुपए का स्विमिंग ऐसा? मेरा स्विमिंग तो तूने देखा स्ट्रिक्स, एनी कमेंट्स हाँ बता। अच्छा तो था, अच्छा तो था। लव यू बेबी। हाँ बिंग्स को अच्छा नहीं आता था, पर। लेकिन रात स्विमिंग को करने के बाद 3 आधा बजे पानी को बाहर स्विमिंग निकलता करने का। था। एक डीजे ने बहुत स्विमिंग में डाइव मारूंगा बोल के आधा पैर काट लिया। और स्ट्रिक्स तेरे को पता ना हम किधर देख रहे? हाँ किधर? रात को 4 बजे को एडिट को डाइव करने का स्विमिंग पूल में, बताओ वो भी 2 फीट की स्विमिंग पूल। उसका पट पैर से लगा लेग रे, कट। बेचारे का पैर भाई लगा। गलत लगा था यार उसकी। वे वो छोड़ो, फाटू उस पे कोलगेट लगा रहा है। बोल रहा है कि क्या? bleeding stop होगा, चोट बोल पे कोलगेट लगा रहे हैं? कोलगेट लगा रहा है, बोला बोला ठीक होता है। लगा दिया, लगा रहे क्या, लगा दिया। अरे मेरा बैक हो रहा है ये माउस के बटन से। टेबल अच्छी है। Fatu bhai, thank you that you didn't study medical sciences for us. Love you. वरना 100 लोग का जन्म ले लेता है पक्का। ये नाम सुना सुना लग रहा है, मेरा फ्रेंड है। वैसे डिसेबल कैसे करते हैं? स्टार्ट ये बटन से मेरा लत आगे लग पीछे हो गया रहा है, रहता यार, आगे पीछे हो रहा है, ब्राउजर आगे पीछे हो रहा है, देखो। ये डिसेबल कैसे करते हैं? हैं? होता है या फिर नहीं? कोई तो बोल रहा था मैंगलोर के बारे में, टीबोन मैंगलोर से उसको कुछ। टीबोन थोड़ी लेके जा रहा है, टीबोन थोड़ी ट्रीट दे रहा है। ओ भाई मैं ये भूल गया था। काम भुवनेश्वर विल ट्रीट यू नहीं है आफ्टर वो बोराटे। वाशी से 40 रुपए? हाँ हाँ, क्या बोला सिर्फ तू? 4,000 देने चाहिए, 40 दे रहे हैं। 40 शर्म, शर्म, बिंग्स भाई की मम्मी ने मेरे को जो सपोर्ट किया शर्म। है, कभी नोटी हो रहा के बहन के लौड़े हैं। वाह भाई, नोटी हो रहा। कुछ अच्छा बोलो तो यही होती है तुम लोग को। कोविड टाइम्स की बात कर रहा हो यार बिंग्स भाई, कैसे भूल सकते भाई हो? बात तो है, बात तो है। सॉफ्टवेयर से होगा माउस सेटिंग्स। कुछ चाहिए आंटी, आज चिकन मिल जाता तो। बात तो है बे। बात तो है। जब ये घर बूट कैंप में सब मंगा रहा था, तब मेरे मॉम ने बोला था कि क्या करना है? बाहर का मत खाने दे, मैं कभी बढ़ नहीं जाएगा भूलूंगा यार, कभी नहीं। +1। ये रीजन की वजह से मैं अभी मैंगलोर जाऊंगा मेमोरीज बनाने। फॉरवर्ड बैकवर्ड निकालो ना। ये गया बेंच। डिसेबल मतलब कुछ अच्छा बोले तो बीच में बकचोदी कर रही है, मतलब अच्छा बोलता भाई, है लेकिन वो बट डिसेबल सीधा वो बटन ही डिसेबल हो गया। नहीं बोल रहे, समझ रहे? अचानक से तो हंसते हैं, तो फिर क्या करूं? इसलिए मैं आंसर्स रेडी रख रहा हूं। न्यू टैब। कहाँ पे है? हाँ, फॉरवर्ड बैकवर्ड को ये निकालना पड़ेगा ना। डिफिकल्टीज ब्रो। कैसे निकालते हैं? क्या सीन है? हेलो, कैसे निकालते हैं? रिस्टोर डिफॉल्ट कर। ये अपनी इधर क्यों होता है बे? लेकिन अभी सीधा आना चाहिए, ब्लीड को बाय मिल गया, मैच खत्म हो चुका है। पंकज भाई व्हाट्सअप। पंकज भाई कैसे हो? ओके बाय। नासिक कब? नासिक पता नहीं, टाइम है, टाइम है भाई। इनका क्वालिटी खराब है या फिर मेरा? When Envy is your top player with firepower, you know, and he's not your duelist, like, how is that going to work out? Not changing the core too much. इनका क्वालिटी खराब है ना स्ट्रीम का। भाई Other एक than वो themselves, है, I don't expect मैंने that the देखा results था are going to be ट्वीट, that उसपे different. But by putting जिंग NVG ने on the लाइक किया और Sentinel, मैंने you're now लाइक किया, पता है? solidifying Jeremy. तो कुछ बड़ी बात है? I ask the predictions of G versus Zeta. Bings, what do you think, man? पूछ भी कैसे सकता है? Bro, I'm just asking. I don't know if Zeta is. It's 2-0 G with both map scores of 13-0.
देखो जीटा का वो प्लेयर्स थोड़ा क्या बोला ये? कीज में जा। हाँ मतलब अच्छा खेलते हैं लेकिन इसको भी क्लोज गेम आएगा। कीज साले कीज में तो नहीं है भाई कुछ। देश के खिलाफ। हाँ ओ देश के खिलाफ कभी नहीं यार, कभी नहीं। कल ही आ रहे हैं देश का पैट्रियोटिक स्ट्रीमर पार्ट 2। ओ स्पेलिंग बोल उसका। यार लेकिन क्या सीन है डिले का? ये लोग वो क्यों नहीं दे रहे रीजन? उधर दे रहे थे यार, सब बोल रहे थे क्या हो गया। अरे बाबा नीचे लिखा है ना, पढ़ ले थोड़ा। वी वुड लाइक टू अपोलोजाइज। अबे ये वो है जो प्री रिकॉर्डेड। बाबा प्री रिकॉर्डेड है लेकिन नीचे देखना, वी वुड लाइक टू अपोलोजाइज फॉर द डिले। अरे अब ये क्या, ये भी प्री रिकॉर्डेड है? चूतिए, ये पूरा उनका सीन है। कुछ तो दिया मैंने। अरे जब भी टेक्निकल डिफिकल्टीज Strixx, why होएगा। the fuck is this guy so brain dead, man? I agree ब्रांडेड तो है। टेक्निकल डिफिकल्टीज होएगा तेरे को यही मिलेगा देखने को। अरे बाबा इसलिए उन लोगों ने लिखा है ना इधर। मैं पूछूं क्या उधर फोन करके? हाँ वही टेक्निकल डिफिकल्टीज में क्या है। कॉन्फ्रेंस पे लेना फोन। मतलब माउस किसका नहीं कनेक्ट हो रहा, किसका पीसी उड़ गया, फ्लोर पे अचानक से पानी आ गया बारिश की वजह से। गुरु भाई कैसे हो? हाय बिलियनर गुरु भाई का टाइम आउट जल्दी। क्या मतलब क्या टेक्निकल डिफिकल्ट? ऐसा कुछ है तो फिर हम हर स्ट्रीम पे अलग चल रहा है। 500 गिफ्टेड। क्या सुना नहीं। इंजीनियर है ना तू? यस हाँ बता क्वेश्चन बता। क्वेश्चन बहुत उधर जा, फट से उधर जाके टिक कर क्या। चलो मैं पता है प्रॉब्लम क्या उधर। हाँ माउस कनेक्ट नहीं हो रहा है एक का। कैसे पता चला? मैसेज आया है ये का। अच्छा सिक्स बाय माउस कनेक्ट नहीं हो रहा, थोड़ा टिप्स एंड ट्रिक्स बताओ। हिंदी बात क्या ये ने तेरे से? तो आती है हिंदी भाई। अच्छा अभी इतना बातचीत हो रहा है तो यही का फुल नेम बता दे आराम से गूगल के लिए। ये का फुल नेम बताओ, पता है मेरे को। जेकब वाइट एकर। भाई अच्छा फ्रेंड है ब्रो, अच्छा फ्रेंड, ऑलमोस्ट बेस्ट फ्रेंड। ये पता है कब बॉर्न हुआ था? 1998। हाँ एक घंटे के डिले पे 8 घंटे के ऊपर हो गया अभी। हाइट वाइट क्या अभी इतना सब नहीं देखता मैं। जब फ्रेंड को मिलते तो हाइट ही दिखता है, तो कुछ और देखता है। Razer V2 Pro गॉड, ये वाला माउस यूज करता है ये वाला माउस जिसको मैंने अबेंडन किया 10 साल पहले। ये वाला माउस जिसको मैंने 10 साल पहले फेंक दिया था। लास्ट अपडेटेड। बात तो है, मैं थोड़ा और 1 घंटा तो सोच सकता था मैं। यार कोई बताओ क्या हो रहा है यार। But I feel like it's going to start at 1 p.m. लिखिए पीडीएफ है सर। स्ट्रिक्स मेरे को दिल से आवाज आया। भाई दिल आज से। मत देखो कभी ये ना एग्जाम जैसा है ना आज। सारे स्पोर्ट्स प्लेयर्स का फाइनल एग्जाम। मॉडलो वायरलेस हेलो 1000 दिन पहले हेलो। फिर भी बाबा इसमें जीतेंगे तो आगे जाएंगे ना मेरी। 1000 दिन पहले से मैं यही यूज कर रहा हूँ, यही यूज कर रहा हूँ 1000 दिन से। 0 अपग्रेड 0। चलो गया।
तेरे 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 मैं बैक हूँ, बैक हूँ, शायद से मैं बैक हूँ। हेलो मैं बैक हो गया। हेलो आवाज आ रही? हेलो आ रही है भाई, आ रही है। आ रही है। यार टिपन भाई, अगर चैट तुझे बिना क्या वजह बीटी डालनी इतना है तो बफर? क्या यार करें? मेरा इंटरनेट गया था यार, इंटरनेट वाला क्या कर रहा है पता नहीं यार। मेरा ऑर्डर भी आ गई। अराइविंग इन 10 मिनट्स पर मेरे घर के नीचे है। सीन क्या है? बस बेल बजी तो बताना, ठीक है? हर्षवर्धन भाई, कैसे हर्षवर्धन भाई? लॉन्ग टाइम नो सी, लॉन्ग टाइम। मैंने ये क्लोथिंग ब्रांड का चेक किया, घर चला गया था मेरा, घर चला गया था मेरा। पोलो राइट पर इतना महंगा कैसे है भाई? कौन लेता होगा? है मुझको लगा 1400 रुपए का। घर चला जाएगा ब्रो, कैसे? ऐसा क्या है इसमें? ये कॉल आ गया था, वाह। Red Bull gives you wings. कौन से कॉलेज है वो इंजीनियरिंग कर रहा है? मैं कर रहा हूँ MIT WPU। दरवाजा खोल। What the fuck? कब से बेल बज रही थी? What the fuck? कब से बेल बज रही थी? Bitch. What the fuck? वो बेचारा पता है ऐसा गंदा लुक देखे गया मेरे को। बेचारा एकदम गंदा लुक देखे गया मेरे को। सुरेश भाई 5000 भेजने थे ये बोलने के लिए, पता है? 5000 क्या? 40-40 रुपए। वो तो ध्रुवेश भी इतना हरामी है, चैट में मैसेज नहीं डालेगा, सुपर चैट करेगा, उसके लिए पे करने पे टाइम लगता है, वो करेगा, पर चैट में नहीं डालेगा कि बेल बज रही है कब से। और ध्रुवेश भाई, आप बाथरूम में क्या कर रहे हो बाय द वे, फोन लेके? हाँ क्या सीन? बाथरूम में फोन कौन लेके जाता है? क्या सीन भाई? कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। क्वालिटी क्वालिटी।
फिर से भाई घंटी बजी डिंग डोंग। मत करो रे बाबा मत करो। अबे इन्होंने वापस 20 मिनट। कहाँ दिख रहा है तेरे को 20 मिनट? सबसे पहली चीज तू कहाँ देख रहा है स्ट्रिक्स लौड़ी? ओए ए जी बोलते हैं। तू कहाँ देख रहा है स्ट्रिक्स? कहाँ देख रहा है स्ट्रिक्स? अबे देखेगा देख तुम्हें भी। टेंपल गए रे? कहाँ देख रहे स्ट्रिक्स? अपना नॉर्डविन पे। अरे हम ट्विच पे देख रहे हैं। अभी वो आगे पीछे अलग कर देता, ठीक है, वरना तू अगर आगे रहेगा तो तू चुपचाप डिस्कॉर्ड लीव करके फक ऑफ हो जाता। ये कहाँ से देख रहे हैं आगे जाके? ये यूट्यूब नॉर्डविन पे देख रहा है। अबे वो लोग ऐसे ही डालते हैं। हाँ ऐसे डाल के फिर सीधा थोड़ी चालू करेंगे वो लोग। हो सकता है भाई करते हैं भाई। मेन इसमें नहीं आ रहा है ना टाइमर। नहीं मेन में नहीं आता टाइमर। मेन में वो वाला टाइमर आता है 3 मिनट्स म्यूजिक के साथ। क्या सीन है इतना डिले? पता नहीं। Show what he had. However, despite not having too much repetition and iteration on the stage, I liked the potential that he showed in 2023. I have a lot of faith in Big Time and Spin as the coaches to try to get these लास्ट guys में in अमेरिका place. में भी ऐसे हुआ था ना, याद है क्या about the पिंक game को? when you 1 think घंटे का about रात को they've याद है? got some veteran talent, they've got some players who've been there, done that. But one that made very minimal changes. उसके तेरे सोने के बाद एक ऐसा गेम गया जो बैच ओटी पे ओटी गया, पता है? उनका बाय कैसे हम कर पाए? तब मैंने बोला था काश। बस कौन सा देखना है? नॉर्डविन वाला फास्ट रहेगा। नॉर्डविन वाला देखना है ना? He looked very good, and he had some great moments. कौन सा देखना है? When Envy is your top player with firepower, you know, and he's not your duelist, like, how is that going to work out? Not changing the core too much, keeping pretty much everybody together. Yatim bhai, please, please, I don't Yatim. expect that the results are going to be that different. But by putting NDG on that Sentinel, you're now solidifying Jeremy as that main. नेट खत्म हो रहा। हाँ क्या भाई कितना नेट है बताओ? It was Jeremy. I mean, the way he's able to get some of this spray control on multiple people, really lock down a site. भाई next 5 मिनट में चालू नहीं हुआ ना? Actually have overall a bit more fire. तो last में 10 minutes मिनट is going to be greater than the parts this time. भाई नहीं This is going to be नहीं होगा भाई, देख ले चलो। a lot of that is going to fall on Warbird's देख ले नहीं होगा। try to make sure that he can have them ready, that he can have At least 10 minutes. just different iterations of prep ready to go depending on what teams they're going to be playing against. Now let's talk about a team entirely that has a lot. यार पैसे नहीं है देने के लिए And कुछ। made some sweeping changes to try to do so. It's going to be DFM, Detonation Focus Me, obviously a. ए स्ट्रिक्स तो उसमें कितने जाता रे? शार्क टैंक क्या बनाऊं कुछ का? हाँ उसके लिए चाहिए ना कुछ तो प्रोडक्ट चाहिए ना। प्रोडक्ट पैसा चाहिए उसको। तू इन्वेस्टर रहेगा, तू बाकी बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। वो लोग पूछेंगे बैकग्राउंड क्या, बोल पैसा है। बैकग्राउंड क्या? ठीक है। उसके बाद भी पूछा क्या बैकग्राउंड है, बोल वाइड बैकग्राउंड में फोटो दूं क्या? पैसा है, समझ रहा है? अच्छा आंसर्स रेडी है, तू जा सकता है मेरे हिसाब से। या फिर बिग बॉस व्हाट्सएप। हाँ नहीं नहीं सिक्स बाय सबसे बेस्ट आइडिया है। तेरे को लड़की पटाने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स दूं। बता बता। खतरों के खिलाड़ी में जाके एक हेलीकॉप्टर से ऐसा नहीं चाहिए नहीं चाहिए। मैं बोल रहा हूँ तेरे कॉलेज की गर्ल्स विल बी लाइक ओह माय गॉड ही इज माय स्ट्रिक्स। परसों ही तो मैं डांस की थी क्लब में इसके साथ, ही सो हैंडसम, ऐसा करके। मैं बोल सुधर जाओ बाबा सुधर जाओ। मैं बोल रहा हूँ ये हो सकता है। भाई पर ये क्लबिंग में मजा तो नहीं आता पर लेजिट में। जाता क्यों है? मैं जाता नहीं हूँ मैं इसलिए भाई बोल रहा हूँ। ऐसा कहीं हुआ है कि क्लबिंग में एक लड़की आपको लाइन मार रही? अबे कभी गया ही नहीं, ऐसा होगा कब? देख अभी तो फिर से बाप को मजबूर कर रहा है। झूठ बोलो। कभी नहीं हुआ कभी नहीं हुआ। पक्की बात है। तो जो नहीं हुआ है उसका तो मैं वीडियो भेज ही नहीं सकता। बराबर है स्ट्रिक्स।
एक बार हुआ, चल एक बार हुआ, एक बार ही हुआ है, एक बार ही हुआ है, एक बार ही हुआ है। अभी उसी प्रूफ में है कि दूसरी बार आया है करके, वो भी प्रूफ है। अब बता, अब ये मत बोलना 2 बार ही हुआ है करके प्लीज। मैं एक बार, एक बार। टीबम पे आपके साथ हुआ है कभी है? क्या बात भाई, क्या बोल रहे हो? आपके साथ कभी हुआ ऐसा, कोई लड़की आके? इसके साथ तो थाईलैंड में मसाज पार्लर में ही हुआ था। हाँ अरे यार अभी अभी एनिवर्सरी हो बीस भाई, क्या मतलब आपका नहीं आया, मेरा थोड़ा होगा। मेरा आके गया एम सेफ। ला 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 ला। हाँ पिंकी याद है ना, थाईलैंड में मसाज पार्लर में टीबोन पे लाइन मार रही थी वो। हाँ सैम आपको याद है उधर? टीबोन ने बोला था मसाज वाले को हाथ में लगा, पैर पे भी, एक पे एक फ्री बोली वो बोली सैम स्ट्रिट। हे टीबोन 1+1 फ्री। नहीं नहीं, कौन सा था? सैम स्ट्रिट। क्या टीबम मसाज ले रहा था? नाम था क्या? सैम बाय ओपी था क्या? क्या था वो? सैम भाई ओपी। नहीं वो तो अलग था। मैं हाँ वो, लेकिन वही नाम था ना, सैम बाय ओपी इन द चैट, वही था ना? हाँ वही था। जल्दी फोड़ रहा है, जल्दी फोड़। रेड का लाइनअप क्या है? अभी दिखा रहे थे, चला गया तेरी ये। बेलबाजी बैकग्राउंड में सच्ची, सच में? सच में कि नहीं? सच्ची कि नहीं? चेक करके है भाई, चेक करके है वो, चेक करके है मैं बिल। घंटा कोई है भाई बाहर? कोई नहीं आया। ए हेलेंजर को कॉल करो, मैं उधर ही है। हाँ ना एक्चुअली। हाँ करना करना, स्पीकर पे डाल। कर रहा है सच्ची? सच में कर रहा है? और स्पीकर पे नहीं डाल सकता। कॉन्टैक्ट्स हो तो है प्लीज भाई, कुछ भी बोलो। वैसे देखते ही उसने बोला होगा अरे इसका कॉल है क्या, ब्लॉक करता हूँ। नहीं उठाया ना? नहीं उठाएगा, देख ले। दूसरे नंबर को फोन कर रहे और फ्लेक्स कर रहे और कुछ नहीं। अरे वो वैलो का सीन हो गया है। हाँ क्या? हाँ क्या हो गया? बैटल राइट क्लाइंट का, एक बंदे का। वाह
युग भाई कैसे? युग भाई टेस्टी था बे, टेस्टी था। ग्लोरिम भाई कैसे? ग्लोरिम भाई व्हाट्स अप भाई? आप तो आपको आज तक कितने बैग रह चुके हैं? 0 0 बैग। जीरो। Correct, T1. I agree with you on T1. हो गया 5 minutes Paper X, बोला। I still think is going to be fine. It's अभी not तो going to be टाइम quite कितना that है रे same कोरिया में? look, I suspect, but it कोरिया should में be very same है much time। similar flavor. For me, I'm also gonna go with T1. I think that T1 they just looked Time so same very ही रहेगा good. ना सब I think जगह। that they have a really solid foundation, and I'm expecting that they will be able to make it over to yet another भाई international टाइम event. और बताओ चैट कैसे हो? मानस भाई कैसे हो? मानस भाई इतने दिनों बाद क्या सीन? आते नहीं आजकल सीन पे। कुछ टाइम है तो टाइम तो टाइम हो I'm gonna गए go with हैं। teams. No, it's the RX. I'm gonna go with the RX. I think that I just believe. I just have the faith. So there we have it. Fair. भाई तेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे जोक्स और खराब है रेटी बोल रहा है? भाई सबसे ज्यादा खराब। भाई मेरे को सोच आना चाहिए एक और करना। आपको तो प्लास्टर डाल दो। मैं तो मतलब चश्मा डाल के स्ट्रीम कर रही हूँ। ये पता भी नहीं चला। करेंगे तो फुल एनर्जी के साथ पूरा एंड तक अंडी बंडी। गवर्नर कौन सी टीम में है? What out here? There is 0 bro, 0. It's about damn time. The first week the guys came in, they weren't being too serious with everything. It's like seeing who's sitting next to who. The second week is when we really started practice. This year we have a lot of creative minds. People enjoy thinking about the game a lot. The team this year. Players are under a lot of stress. इतने सारे लाइक्स की बोल मैं मैच चालू होने से पहले सोच मैच चालू होने के बाद हमारा 30-40,000 लाइक्स होएगा मेरे हिसाब से। I want to build flexible players. They can adapt very easily. Because I think in sport, the people who adapt the quickest are the ones that will win. We encourage the guys to actually rest on that rest day, do what they need to do to feel recovered for their next week. जीप से लिया तूने? एक्चुअल में बहुत लॉस में जीप से हूँ। मैंने गिरते हुए लिया और फिर और गिरा। वो पता नहीं एवरेज क्या है बट बहुत 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 नीचे। Who is more laid back outside of practice? Who competes more in the gaming house? Who showers? हम तो हमेशा आते हैं, आप स्ट्रीम नहीं आते भाई। करूंगा, अब से करूंगा मैं, देख लेना। करूंगा I was playing, I had you for sure. Who has the better aim? Confirm, bro. This one. 10,000%. Bro, ease. अब बढ़ रहा है वैसे मैंने क्या बात कर रहा हूँ, अभी भी नहीं बढ़ेगा अभी। I go with this one. डिफिकल्ट है आई थिंक। Yeah, we are in the same team. Let's put it like this. I know you cannot see me, but it should be like this. कैसे खा रहा हम लोग को पूछा भी नहीं। प्लीज हैव गाइस, प्लीज हैव गाइस, प्लीज हैव लो।
क्या बोला तूने? कुछ नहीं बोला किसी ने। क्या बोला बड़े बे? कुछ नहीं बोला भाई, सच बता। कुछ नहीं बोला। तो हंसा क्यों तू? मैंने सुना यार, इसने बोला बिंग्स जैसे मूव इंसान मैंने आज ऐसा कुछ बोला, उसके बाद वो म्यूट किया। इवन मैंने अभी क्या बोला पता है? वो जो कुत्ता था ना ऐड में, वो बिंग से। मत हंसाओ बे, जो कुछ खाया भी नहीं, मत हंसाओ। बिंग्स भाई थोड़ा चालू हो जाता। 5 मिनट बोला उसने। पक्का? हाँ 100%। भाई 10 मिनट हो गए, दे मेरी शर्त दे। तेरी शर्त तूने लगाई थी? हाँ लगाई थी तूने बीच। अरे मेरे को पॉज से प्रॉब्लम नहीं है, पॉज करो 2 घंटा पॉज करो, बताओ तो सही। इतने सारे कास्टर्स एनालिस्ट सारे हैं। क्या करना था मेरे को? हाँ इधर है, ट्विटर में आया। मेरे को क्या करना था? Not a tech pause if we haven't started the game yet. So sorry fans, we are doing everything we can fix the issue as quickly as possible. कौन सा वाला ट्विटर पे? जेक भैया ने बोल दिया। तू कौन से इंडिकेटर चेक करता है लगाने से पहले? ये गया किसने? मेरा 2 टाइप के सेटअप्स है। एक में जब एक ट्रेडिंग होती है तो एक ट्रेडिंग के टाइम अलग वाला है, और एक जब मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो इन्वेस्टमेंट के टाइम का अलग है। तो 2 अलग अलग सेटअप्स है। तो इन्वेस्टमेंट इसमें आई थिंक 3 ऐसे में रहते हैं, और फाइनेंशियल से रहता है बस उतना ही। कम बाकी तो मैं स्क्रीनर वो सब यूज करता हूँ। हैंडल बोल। राइट चेकर। सिंपल करो, इतना कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर्स मत डालो, एकदम सिंपल, जितना हो सके उतना सिंपल। बाकी और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स इतना ही, और इतना नहीं। फंडामेंटल में क्या चेक करता सब भाई? ईपीएस, पी, बैलेंस शीट पूरा, फिर उसके बाद रेवेन्यू, नेट इनकम, नेट मार्जिन, सब भाई सब। डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स बहुत अच्छे रहते हैं, वो लेता हूँ। इतना तो है कि डिविडेंड से मतलब नहीं है, बट कुछ तो हुआ है, क्योंकि डिविडेंड पेइंग पे भरोसा रखने का। स्टार्ट में वो भी हाँ ना। हाँ कि इतना ड्राई रन्स के बाद, इतना सब होने के बाद कुछ सडन कुछ हो गया रहेगा, या फिर क्लाइंट रिलेटेड कुछ हो गया रहेगा, या फिर पीसी रिलेटेड तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर पीसी रिलेटेड है तो पीसी वो लोग के पास स्पेयर पीसीज रहता है, और वो सेटअप करने का वो लोग को ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट लगते हैं। अच्छा क्या बड़वे, तेरा बाप लैन जाके आया है, उधर खेल के आया है वही पीसी पे, अच्छे खुद तो गया नहीं किधर, कुछ मार के आया, सिर्फ खेल के आया। एमवीपी था 2 मैप। आगे बोल। अलग ही इनका बोलना हो। मैं तू यार अभी भी स्कूल में है क्या? बेंच बिंग्स ना, जो स्कूल में जाते थे ना रिक्शा, बच्चा रे बच्चा, बिंग्स। मुझे साइड बैठने का, विंडो देखने का। भाई फादर सन रिलेशनशिप है साल हो गए, अभी भी बच्चों वाली हरकतें बदली। दिस इज द फादर सन रिलेशनशिप। फाफा ने इसके लिए पूरा वापस T9 खड़ा किया, और बेटा वापस बैठने का सोच रहा है। भाई मेरे को बता, तू क्यों नहीं खेल रहा? स्ट्रिक्स तो फ्यूचर में हाँ बोलना। आईटी जॉब करेगा ना? मतलब बैंगलोर आएगा, इसका मतलब है इसके। हाँ आऊंगा तो बाप अभी ये हुआ ऐसा बोलेगा शायद। बैंगलोर अगर ये आया ना भाई, इंदिरा नगर बंद, 300 पब है उधर, 300 पब एक ही स्ट्रीट में। सोचो। इवन कौन से पब में गए हो? एक ही पब जाता है, वो है पब बास। क्या बोलता है टेबल भाई? हाँ बेटा पार्ट 2 कर दे। पार्ट 1 कहाँ पे? मैंने देखा ही नहीं है क्या? है क्या पार्ट 1? नहीं है, ये ऐसे ही बोला मैंने।
तो कॉन्फिडेंस में आपने बोला ना 5 मिनट में स्टार्ट होगा, कहाँ है? 5 मिनट होने तो दे। बंगवा आपकी पहचान नहीं लग रही है। टिक टिक किसने चालू नहीं किया तो बेंच टाइमर कहाँ से चालू होगा? अबे उसको मैसेज करना है एटलीस्ट व्हाट्सएप में। किसको? हेल रेंजर को। अबे अच्छा ब्राइट वाला देखना बार्डन है। अभी हेल रेंजर बाप स्टेज के ऊपर उसको थोड़ी जाके उसको मिलेगा जेटा रेस के बीच में। हाँ भाई क्या हो गया? हाँ ये वाला तो देखा मैंने। उतने देख सकते जितना अपन देख सकते कि मैच उसका नहीं है। उसका मैच बाप ऑलवेज जीतता है ब्रो, ऑलवेज बाप विंस। प्रॉब्लम है आई एम फ्रॉम जी, ऐसे थोड़ी ऑलवेज बाप विंस। ये के वजह से हो गया, ये हो सकता है ये के वजह से सर्वर क्रैश, क्योंकि वो बहुत मारेगा करके। उससे क्या बहुत मारेगा करके सर्वर हैंडल नहीं कर यार ये पा बैंकॉक है क्या? याद आ गया यार। बहुत याद आ रहा है पिंकी। याद आ रहा है पिंकी ऐसे बोला। वो कौन सा था रे इनका जो मॉल? हाँ ना, एक पूरा दिन भाई सिर्फ शॉपिंग किया अंकी और पिंकी ने। भाभी के साथ भी ट्रिप हो जाता है तो सुन रहा है? इस बार है तो साथ में जाएंगे, क्या बोलते हो? हाँ मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, मेरे पास है ही एक दोस्त अभी। बिंग्स में 55 से बड़े हो या अभी हुए? पता नहीं यार, हरामी भी हो बड़वा भी हो, पता नहीं कुछ तो एक खूबी है मेरे में, समझ रहे? कब स्टार्ट होगा? मेरे स्नैक्स खत्म हो गए। मेरे स्नैक्स खत्म हो गए। आई मीन लंच खत्म हो गया। जॉब करेगा क्या? मैंने हैव अ लॉट ऑफ मनी। भाई कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है ब्रो? कौन बोल रहा है? लीक्स आया है। कोई नहीं, म्यूट पे देख लेंगे। हेलो सिफान अली भाई कैसे हो? कैसे हो? ओए तो कपड़ा 제때라고 이제 생각할 수 있는 이유는 पिंक्स तेरा फेवरेट टीम कौन सा है इसमें? फेवरेट टीम जी। सेकंड फेवरेट? सेकंड फेवरेट? सेकंड फेवरेट हाँ। PIIIIIIIINK। और टीमोन भाई आपका फेवरेट टीम? सबसे फेवरेट टीम मेरा ब्लीड। जी नहीं है? अरे एंटी इंडियन। ये गया बेचो, ये गया। जी भी है यार लेकिन टीमोन भाई ये उम्मीद नहीं थी। क्या सेकंड में पूछो ना, मतलब अभी भी तू सेकंड पे रखेगा उनको? अरे नहीं सेकंड पूछो तो सही। हाँ सेकंड PIIIIIIINK। ये गया। बाय राइट टू स्पीच यार। यही राइट टू स्पीच यार। टिमन भाई यही रीजन के वजह थर्ड से पूछो ना। टिमन भाई मेरा बात सुनो ना, यही रीजन की वजह से वो पोस्टर पे मेरा नाम है। Doesn't matter. I just told right to speech. Sometimes you have to right, left and straight the speech, man. गाइस PIIIIIIINK में 6th कौन है? जिंग है शायद। नहीं थर्ड जी है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच्ची बोल रहा। मतलब जेटा से तो जीतेगा भाई। जेटा का और जी का मेरे को नहीं पता भाई, मैं सच्ची बोल रहा हूँ। मेरे को जेटा की थोड़ा मेरे हिसाब से आज जीत सकता है, लेकिन हार गए तो बहुत डिफिकल्ट है आगे, सच्ची बोल रहा हूँ। आई थिंक जेटा इजी है, ऐसा मेरे को भी लग रहा है। हाँ मेरे को भी लग रहा है जेटा इजी है गेम, मेरे को भी लग रहा है। अब भी तो पहला बोला श्योर नहीं है, बहुत सड़ी नहीं वही मतलब इतना क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है भाई? क्या
क्या बोल रहा है भाई? एक बंदा जो सोया नहीं वो ब्रांडेड, एक जो सो के जस्ट उठा वो भी ब्रांडेड, और एक पार्टी आके आया वो सबसे बड़ा। क्या? ये है हमारे 3 वॉच पार्टी स्ट्रीमर टॉप्स। रियल एस्टेट का बिजनेस है ना? अरे इतना चलता नहीं है भाई, छोड़ दिया ब्रो। अर्जित भाई कैसे? अर्जित भाई लव यू भाई, लव यू। फियरी-सान कैसे हो? फियरी-सान व्हाट्स अप, वेलकम टू द स्ट्रीम। व्हाट्स अप? ये बॉक्सिंग कर रहा था अभी? 新しい2人はね、本当に打ち合いが好きで、それにこう引っ張られるように、もともといた3人もかなり打ち合うようになって。पॉटेड का चैनल हैक देख, ये क्या है भाई? 前とは違ったゼータが。चैनल हैक मेरा हो जाएगा भाई, मैं नहीं देखता। 対戦したいのは T1 ですかね。伊豆さんが入ってから強いって聞いてるんで、T1 をとりあえずは戦って勝ちたいです。基本的にどのチームも強くなってるとは思ってます。ちょっと怖いですけど、ぶっ飛ばすしかないんで、ビビんないで自信持っていこうかなと思います。बस ई स्पोर्ट्स में एक एनिमे आना चाहिए, जैसे हाइक्यू है या फिर और कौन सा था वो, और कौन सा था, कुरुको है, कुरुको बास्केटबॉल, जैसा एक एनिमे आना चाहिए ई स्पोर्ट्स का। 長期的な目標はそんなに持ってないのかなとは思ってますけど、チャンピオンズとかは出たいですね。そこは間違いなく。最初の方はちょっとうまくいくかわかんないです。फिक्स सोचो वैनिटी वाला सीन आप और बिंग्स कर दे दो। लॉर्ड भाई मत बोलो, लॉर्ड भाई मैं तो होगा, मैं तो ऑक्सी बन सकता हूँ, वो वैनिटी बन नहीं सकता, अलग बात है। मैं तो बन सकता हूँ ऑक्सी। 最終的には本当に強いチームに भाई स्नैक्स खत्म हो गए तो जोकर भेजू। स्नैक्स तो सच्ची खत्म हो गए, सच्ची खत्म हो गए। अच्छा था, अच्छा था। पिंक से पूछो पॉटेड का चैनल हैक के बारे में, पता नहीं भाई। इसे स्ट्रीम पे ये सब बातें नहीं करते ब्लू लॉक फुटबॉल, ब्लू लॉक फुटबॉल। वैसे ब्लू लॉक अच्छा है क्या? मैंने स्टार्टिंग में देखा जब रिलीज हुआ था, उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया देखना कि मेरे को बोरिंग लगा स्टार्टिंग में। अबे कब होगा यार? मैं बोलता हूँ हम तीनों अभी स्क्रिबल के लिए आ जाओ मैं रेडी हूँ। बिजनेस गेम के लिए क्विक गेम आ जाओ। 3 लोग में बिजनेस? हाँ 3 जन में नहीं। स्क्रिबल खेल सकते हैं। और पिंकी थी फाइनली पालवर्ड से बाहर आया। अरे मैं तो ऑलवेज क्या कर रहे हो वैसे भाई? मैं कल जो हागा ना यार, मेरे को बोला आके चैट में, अरे बाबा आधा घंटे अंदर है, बोरिंग ही है अभी भी। हाँ क्या एंड में मैं वो बहुत स्लो पेस है वो एनीमे, उसे वो अचानक से जाके कुछ एकदम अच्छा गोल नहीं मारता है भाई, एकदम स्लो धीरे धीरे सीखता है, दूसरों से सीखता है। तब तक मैंने छोड़ ही दिया भाई, जब तक सीख रहा था तब तक दूसरों का देखता है ये वो। बत्तू क्यों म्यूट है? But it's got to be daunting for someone like Flashback, right? You didn't get to really work with a team over a whole year through this तो बोलते नहीं system to get used to playing against different. I have to wonder, as one of those academy players and one of the youngest players, how much can he prove within that first season? I'm going to go for a bit of a half by सोलो लेवलिंग मस्त है, 150 प्लस सोलो लेवलिंग। क्या मैंने सुना है, मैंने देखा भी शायद से। Speaking of young talent, we have another team who made some क्या आपने ड्रेक का देखा है क्या भाई? स्पेसिफिक बनो। जीटा का टीम ठीक है वैसे। दीपांश भाई कैसे? दीपांश भाई बहुत साफ, इतने सालों बाद आई, कैसे आना हुआ आज? जब तक गेम हो जाए, कौन सा गेम? मेरे पास ट्विच प्राइम है।
working with Furia for a long time, having pretty good success over there, a strong FPS region, now bringing his talents over to Japan. This is something that I think Zeta really hit the nail on the head with. And I think all of this, breathing a lot of fresh air, having these rookies who, at least during the offseason, showed some confidence to make their own plays, had some really good in certain rounds, I think they'll buy into this team. Something still needed to be done for them to be able to go beyond, because we saw them get over to champions, and then we saw the struggles, much like another team that has been making some overarching changes, which is T1. Yeah. No holding back. They bring in Rossi, so he brings this really positive mental attitude, but he fits in nicely. He's playing off Holy shit. really well. Yeah, and also Izu playing so well in Japan, previously in Challengers Japan, just absolutely dominating that region for a long time, and now coming up here, getting a chance, looking good already in the tier. चलो क्या? सच्ची में? Hunger to prove something, and of course his operator skills we've seen can really match anyone around the world, especially in Pacific. However, that only gets you so far. You have to have a better macro strategy, a better understanding of the entire map. I think they've proven they're very good at that. Let's talk about somebody else who is dominant in the Japanese scene. हीरो मी ये लड़की है पता है ऐड नहीं होता इसमें really overcome the odds and carry a team into victory when they need it most. I mean, Jemkin in particular, there was no fear. When I went and talked to him, I'm like, man, you're coming in, you're playing in the T1, you know, now you're coming up to the bigger stage. He's like, yeah, okay, that's fine. I'm glad to hear Jemkin feels that way. Another thing we should mention is it's not just Jemkin. A Strixx is coming in. He can call for a team, actually lead a team in communication, and he brings that structure that you need to make sure that you're on track. Also, very player. They've announced that he's going to be one of the initiators. It should make this team a lot more free on the map. I'm right there with you. It's one of those things where I wasn't expecting this, but then when I saw it, it started to kind of come together in my head. I'm gonna half buy on this team. Just don't know if it's all gonna be together. I'm a little worried. The group that they're in and with the way that things are gonna shake out, maybe they're gonna fall just short here. Start नहीं हुआ ना? Big changes, but there's been a couple of teams that basically revamped their entire roster, and one of them is going to be Talon Esports. So many other cases that I would never have been able to guess. I mean, we have Governor coming in. भाई क्या है ये रिकॉर्ड तोड़ देगा बे? हेलो? You've got Ban joining. प्रोफेशनल प्लेयर तो हूं मैं. It's just been a wild ride for Talon. But the rest of it are big question marks. I mean, yeah, Ban at times looked really good last year. He started out pretty slow, but as the year went on for T1, got much better. You know, is he going to be able to replicate that success? The new coach. स्टार्ट करो. Four new players. ए X X क्या? Strixx तेरी जो तेरी X है उधर में सिर्फ VCT सर्च करा तो वो रिलेटेड आएगा क्या? VCT Pacific. Last year in VCT. High stakes game. Right, a very high stakes game. I think it does speak to the. अब स्टार्ट हो Strixx भाई पता नहीं यार. So I'm hoping that this is that redemption story, and not only am I just a stronger player, but I can also guide others to victory. There's so many unknown quantities still with Talon coming into the season that I think for me, I have to save. I have to wait and see how this team ends up looking after kickoff. I want to pivot to another team that's made big changes. We have quite a few here. I want to go with GE. This year, I guess I'm on a half buy where I feel like there's some potential there, but can they really bring this all together in time for this year, especially for kickoff? Okay, you're bringing in these veterans who are kind of the brains of the teams that they used to be on, right? We have Blaze King as well, who, you know, wasn't the main caller, but was always able to offer a lot in terms of how the team works. And then you have Benkai, of course, Russ, we mentioned, he's IGL'd tons of times. लैंड में लड़ाई होगी दो प्लेयर्स की इसलिए डीले कर रहे. इसे ये सब बातें मैं स्ट्रीम पे बोल नहीं सकता, नहीं तो मेरा वॉच पार्टी का एक्सेस चला जाएगा. X पे क्या लिखूं? मेरे को कुछ लिखने का कुछ आइडियाज दो. X में लिखने का T1 is the only. Strixx is the real dad. Now we should also mention, of course, Lightning Fast, the lone अभी 2 साल पहले 18 का हुआ तो उठना चालू हुआ. हाँ डैड बनना है तेरे. However, despite not having too much repetition in iteration on the stage,
I liked the potential that he showed in 2023. I have a lot of faith in Big Time and Spin as the coaches to try to get these guys into place. I really like the way they talk about the game, the way they think about the game. They've got some veteran talent. They've got some players who've been there, done that. Let's go into one that made very minimal changes. Team Secret. We just needed, some fresh firepower, a little bit more fresh Yeah. perspective. And it's going to be coming with Gen.G. Let's talk about that player first. He used to be the sixth man on Now Esports, but didn't get to see him at Ascension. But I will say that the couple matches and couple maps they played at Peripherals, he looked very good, and he had some great moments to prove that he's. I think मैं इसका भी esports खेल सकता हूँ. इसका भी esports खेल सकता हूँ मैं. देख हिंदी वाला broadcast देख not being gaming पे. I don't expect that the results are going to be that different. But by putting Gen.G on that Sentinel, you're now solidifying Jeremy as that main duel. Same bro. Just Only an RF delay, no big deal. ये बंदा है भाई मैचर है. ये बंदा समझ सकता है. No big deal, only 1 hour delay. Imagine अगर इसके बाद टाइमआउट्स प्लस नॉर्मल टाइमआउट्स हर टीम ने ले लिया अपना पूरा और गेम्स ओटी गया और सारे गेम्स 2-1 गए. ठीक है और टेक्निकल बॉस इजी है भाई ये गेम. मैं सेंटिनल्स का भी करूंगा अबे. Obviously a very rough year. And now they're saying we want to rebuild into an entirely new 5 to try to get things going again. 11:30 12:30 भी नहीं 1:30. I really think that, like, for example, May in particular, a very, very strong mechanical player in Japan. But I think there's more overall potential on this team than there was last year, is the way I look at it. So I'm just, again, not exactly sure how, with everybody coming together like this off of different squads, how is that? अच्छा बना है बे मिनियन. अच्छा बना ना. I don't say that to be a jerk, but they didn't pick up a win. What is going to come together for DFM is going to be the 5-man core. Can you make them come together? We don't know for sure, but if they can do that, if they can get those pieces into place, I really like the potential. Let's talk about one of the other teams who is constantly hovering around the top of the standings in VCT. Let's talk about I think one that's everybody globally is excited to see once again in Tier 1 is Lakia. Everyone still talks about that clutch he had on Ascent, right? The Lakia zone, the Lakia moment, and then of course a very strong initiator as well to join another Korean squad, come back to home soil and try to prove himself alongside other veterans. As we saw रोहन भाई कैसे रोहन भाई what's up? रोहन भाई what's up? when he tried out for the team, really said, okay, I have the mechanical. Personally, I'm going with like a full buy on this team. I'm really excited that they can learn from what happened last year. One of the players that we haven't really talked about yet, who is also on this roster, has had experience IGLing in the past, but he's also there alongside Lakia, so you have really good side calling potential between those two to come up with good adaptive ideas round over round to figure out how they're going to pick opponents apart. And then Karon also fitting in very well. You know, he looked a little quiet for the first couple rounds, and then he started to just fire on all cylinders and say, this is why I was picked up. So last but not least is our Ascension qualifying team, Bleed. Biggest thing about Bleed right now that everyone's been talking about ever since it was announced. यार एक आइडिया है यार टिबन भाई. देख सब वैसे भी बोर ही मार रहे. चैट के साथ एक इंटरैक्टिव गेम खेलते हैं. मैं भी ए 5th राउंड क्या होता है अगर किसी का 5-0 चल रही है तो 5th राउंड क्या इको होता है ना. I'm buying into this team. Sure, it's a different team from Ascension, but the core that's remaining, scary, and then you've got crazy guys. कौन सा गेम बता? कौन सा राउंड कौन जीता उसे डिपेंड करता है ना बात सुन लिखी के. क्या इंटरैक्टिव बता? I think it's a very solid start. You know, these two players coming in, where does Bleed take off compared to their previous performance back at Ascension? But I see the potential बताएगा. behind this team. Maybe it's a bit of a punt, but I'm going to go out and I'm going to go for a run. अरे बोलूं उसको क्वेश्चन पूछा तो. अच्छा never mind फिर. Strixx आज अपन गेम खेलते हैं. नहीं खेलना भी. Imagine कर तो एक क्लब में. Alright, well now that we've established that there is a lot of different variables, let's do some predictions. Our Group A teams, our Global Esports, T1, Zeta, and Bleed. I'm going to go with T1 at least in first place. I really like T1. I really like the stability of that team. I really like what I've seen from them so far. I like the confidence that they're bringing. I definitely expect them to be the team that comes out on ठीक है.
pretty quickly, because honestly, I happen to agree with you both. I think that, but this is where the spiciness kind of comes into it, which is who is going to be that second place team going through the play-ins. I'm gonna maybe lean on the young blood coming into this one. I think I'm gonna go with Bleed. They're going to deliver on it. It needs to be right up front. My gut is telling me Zeta right now. I hope that those lessons that they learned at the end of last year are instantly put into place at the beginning of this year, and they're able to come through and get that second place spot. Yeah. Between Zeta and Bleed, but I lean more towards Bleed as well. They're more hungry to do this all, across all 5 players. Next up is Group B. DRX, Team Secret, DFM, and Talent. I mean, this is No way. a lot of changes. I think that I will still go with DRX to make it out first. But I think Team Secret definitely goes up in first here in this group. Now, whether they're able to go all the way to the finals is a whole different story, right? Not too many changes. That's what I think is going to carry them over into first place. But for whatever reason, I'm just going my gut DRX. Okay, so we're a little split on the first place, but going into second place, we just अब start होगा. the little we saw from both DFM and Talent weren't that promising just yet. I think DRX is still stable enough to go up in second place. Should we just say our second place prediction on the count of 3? Together? Do it. Just at the same time? All right. 1, 2, 3. Team Secret. DFM. Okay. For some reason, I just really like this DFM team. Maybe I'm just such a May fanboy that I believe they like carry them over the line here. I think there's just too much talent on this team. If they can just kind of, really buckle down, get it together, this team really has a ton of potential, in my opinion. My concern, again, for Team Secret is going to be how does the prep go when they have to play multiple matches back to back to back. That's the one thing that's concerning me, but if that is something that they have tackled, then I don't think I have any cause for concern. The last group, it's going to be the reigning winners of VCT Pacific, PIIIIIIIINK, and then it is Gen.G and RRQ. What we've seen from PIIIIIIIINK across 2023, they should, I think they have to be, your first place prediction going out of this group. I just have too much faith in Coach Alex. I mean, I think he's so good at getting the players to kind of believe into themselves and their own system. They're just too good, man, top to bottom. Once again, put all of the hopium I have left in RRQ. Wow. Okay. But we talked about theoretically why they should look better, a lot better than last year. And this is where I think Drawing तो है भाई. मस्त idea है मेरे को. We have the two inseparables of Anybody wants to join? remaining, and I think that we have the harder decision, so I'm Dude. going to make बता. you go first. Guess the rank. And just like चल. I think this is one where, yeah, Gen.G has a lot of potential, but all 5 players कैसे करते हैं इस तरह? वेबसाइट है ना? अरे तेरी उसमें तो 3 ही क्लिप देख सकते हैं बे. अरे मेरे इसमें भेजा हुआ है डीसी में लोगों ने. ओ ठीक है स्क्रीन शेयर कर. I really think that this is the इधर है time for लेकिन. texture. I think this is his moment where this is either it. Like he's got to get it done this year, or he's just not actually that guy. साइट है रैंक डल करके हैं. अरे आज कौन गाली नहीं क्रिश भाई स्ट्रीम करने आया ये तो अपना शिट है फीलिंग प्राउड. क्रिश भाई कैसे हो क्रिश भाई व्हाट्सअप? मैंने पढ़ा मैसेज पर वो स्क्रिबल चल रहा. 3 क्लिप है बस. अबे ये नहीं चाहिए. अबे सही है, वो अच्छी है, ट्राई कर, वो वेबसाइट वगैरह है. करना बाबा. अबे क्या मेरे को ये एड ब्लॉकर ये सब दे रहे क्या ये? करेगा तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं बाबा. भाई सच्ची में चालू नहीं हुआ बे. क्या से पूछना एक बार. आप है पूछना बिंग से एक बार. ऑलरेडी मैसेज किया, रिप्लाई नहीं आया, मैं क्या करूं? सिर्फ 5 मिनट की कॉन्फिडेंस में बोला तू. So very good. I think that they have a really solid foundation, and I'm expecting that they will be able to make it over to yet another international. भाई मेरा 3 गेम हो जाता वाला होगा. I will go against you both because I am. He can't get away from it. I'm going to go with Team No, it's DRX. I'm going to go with DRX. I think that I just believe. I just have the faith. So there we have it. Dun.
भाई ये वीडियो अच्छा है, बता बर, ये वाला जो वीडियो बना है ना बहुत अच्छा बना है भाई। The first week the guys came in, they weren't being too अरे बाबा बोर हो गया मैं। who's sitting next to who. The second week is when we really started practice. This year we have a lot of creative minds. People enjoy thinking about the game a lot in the team this year. Players are under a lot of stress. Don't have the strategies in place to recover well. There's a huge risk of burnout down the line. It's important to me that they have the support they need. गाइस कोई अच्छा वीडियो है YouTube पे देखने के लिए? Flexible players, so they can adapt very easily. वो गेस द रैंक कर सकते हैं। सर्वाइवल क्लासिक है। अरे गाइस मैं जाके कहा के आया रहना योर मैं कहा के लंच करके आता हूँ। एक Oh my. डायमंड आर्य भाई कैसे हो गाइस पता है मैं इतना वालों खेला, मैं हर एक बंदे का रैंक इजीली गेस कर सकता हूँ। इजीली पता है, इजीली हर एक बंदे का इजीली रैंक गेस कर सकता हूँ मैं। हक दिया। ये है डायमंड से नीचे। ओ 스파이크가 B 지점에 떨어졌습니다. 적군이 한 명 남았습니다. What? नो वे ये मॉडल है। ठीक है ये तो इजी है। समझ रहा है डायमंड से नीचे, एम से समझ रहा है डायमंड से नीचे। Spike planted. Ui lại. Chết rồi, bạn nó ra ngoài. क्रॉसर प्लेसमेंट एकदम नीचे। एम भी एकदम। Got three. Initiated. One enemy remaining. Oh. होल्ड ही करना चाहिए फिर। ठीक कम Drop. There. Spike planted. ये तो पक्का सिल्वर है। बहुत रहना। क्रॉसर एकदम नीचे देखो, क्रॉसर देखो जमीन पे क्रॉसर जमीन पे देखो, जमीन पे पक्का सिल्वर है, पक्का। All there, all. I'm bad, I'm sorry. One enemy remaining. हाँ? Above. Can you get my vandal, please? ठीक कम। हैवी ट्वीट्स की हैवी। हाँ जी। पैसिफिक ने ट्वीट डाला, सुनना, पैसिफिक ने ट्वीट डाला कि वो
Sorry for inconvenience. Hardware issue है ये. किससे? Commando. Don't worry. Meanwhile, क्या तो Hai, vào đi kêu vào. गोल्ड पक्का गोल्ड पक्का गोल्ड है. ID. One enemy remaining. Đây tôi chỉ rồi, đi cho tôi để tôi chỉ rồi. Cái khả năng không. Scanning ahead. Đây, chín người này. Lên đây nào, nó ra đây. हाँ वो लोग उसको पुश कर रहे हैं. Nice. ये वाला हार्ड है बे. शायद से एसेंडेंट होगा या फिर डायमंड. शुड बी डायमंड या फिर प्लैटिनम. डायमंड या प्लैटिनम. फ्लैट होगा. Stage 1 and Stage 2. Two Masters events are held in between each stage, and Champions will begin in August as the culmination of global competition for 2024. VCT Pacific kickoff will be split into 3 phases. The first phase is the playoffs. The 3 teams who finish second will play in a single round robin where the Strixx तो आ रहा है. कहाँ पे? Guess your rank. हाँ भेज. भेज ने मैं स्क्रीन कैप्चर करना. कर. Valorant Masters Madrid. Now let's look at VCT Pacific Stage 1. Each team will be split into 2 groups of 5 वो वाला तो देख. 6 Omega teams. Alpha teams will fight against the दिख रहा है. लीक हो गया बहुत कुछ. ये बंदा जीत रही है शायद. दिखा. अभी भी जीत रही है ये. अच्छा लिख रहा है, खुद का रंग लिख रहा है वो. गेस करने से पहले. इसका देख. अबे कुछ Stage 2 has the same format as Stage 1, but this time the Alpha teams will compete against each other in their own group. Same goes for the Omega teams. should be diamond. देख उसने 4 मारे वो अच्छा था, लेकिन रिलोड के टाइम पे उसने जो सिर्फ मुंडी ऐसा घुमाया ना. हाँ नीचे ना. हाँ सिर्फ नीचे उसने मुंडी सिर्फ ऐसा घुमाया. हाँ यहाँ पे जब लास्ट बंदा मारता है स्टेज तब उसका मूवमेंट देख. समझ रहा ये क्या है. ठीक है समझा. मेरे हिसाब से फ्लैट है. डायमंड है. कैसे कहाँ पे मालूम पड़ेगा आंसर. क्योंकि थोड़ा प्लेस बना उसने. डायमंड प्लेस जैसा उसने वो आगे गया चल के. थोड़ा प्लेस बना उसने. आंसर किधर है. आंसर तो वही लिखेगा वेबसाइट में ही आंसर आता है. अरे नहीं आंसर रैंक प्लैट 1 नीचे तक नीचे लिखा है. हाँ बे. अबे 10 महीने पहले प्लैट 1 था. 10 महीने पहले था. अभी तो डायमंड होगा. रैंक थोड़ी चाहिए बोल देगा वो. भाई मैं वो जज तो कर सकता हूँ. अबे मैं ठीक है बराबर था. ये क्या आंसर्स के साथ क्यों लिख रहे हो. ये अबे वही तो लिंक खोला उसका तूने. ना मतलब पूरा इसका स्ट्रीम देखो. देख भाई देखना पड़ेगा. ठीक है मोन्टाज जेल. अबे प्रेस में एक ये रीड्स ये रहा. सुन इसने पहला शॉट दिखाया नहीं. सुन इसमें ऑलरेडी मैं समझ गया. हाँ इतने में मैं रैंक समझ गया. हाँ ठीक है चल. मेरे हिसाब से ब्रॉन्ज करना. प्ले तो कर पूरा क्लिप. ठीक है. This guy is insane. Every time on attack, I just do something and then he just entry and then he just kill 4 and then kill 3. एक और चीज मिला. मैं एक्सप्लेनेशन के साथ बोलूंगा ब्रॉन्ज. हो
ब्रॉन्ज या फिर सिल्वर प्लस उसका पीसी भी उसकी गांड मार रहा टॉप राइट पे उसका वो आया स्पॉन्सरशिप नेटवर्क प्रॉब्लम He wait for his teammate and then maybe we decide what's next. I bring more firepower to the team and so I can help my teammates. So we're looking for a flash player can actually frag and can potentially help IGL. RRQ team में 0-12 है तो होगा शायद ये आयन आयन ब्रॉन्ज सिल्वर दो रीजन है एक तो ये देख यहाँ पे रिलोड करके जो इसने पीक लिया ऐसा मतलब ये बुलेट जो हाथ से अंदर तक डाल ही नहीं रहना ने समझ रहा है उसके पहले ऐसा पीक ले रहे थे इससे मैं ठीक है मेरे को ब्रॉन्ज लग रहा है आंसर दियो आयन पिंचो स्पैम हो गया है आंसर किधर है किसने दिया था ये वो देखो ऊपर ही है रिस रिज आंसर क्या है कोई आंसर बोलो अरे अंडी मंडी सब भेज रहे अभी आंसर तो बोलो ये देखो भेजा तो भी किसका स्ट्रिक्स ये देखो हाइड्रा फ्लिक इम्प्रेस्ड बाय एस देख जरा क्या है ये और बुलेट का बेचा मेरा हो गया गेमिंग भाई कसम से बोल रहा हूँ सू कर देंगे खत्म कर दे भाई मेरे से ना हो पाएगा टेक्निकल पॉज खत्म कर दे आंसू आएंगे बीच बुलेट का क्लिप डाल रहे इधर ये मेरे हिसाब से ब्रॉन्ज रहेगा अबे ब्रॉन्ज का गेम प्ले देखते कैसे चल देख गेम प्ले देखते डर उसको एक सेकेंड एक बात बता इतना टाइम से उसको डर नहीं है कि ऐसा जाके वो राइट से आएगा इतनी कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ वो देखा नहीं उसको एक वहाँ पे दिखा बंदा गया बस इधर से ही आएगा केज नाम ठीक है वहाँ पे ही है यहाँ से गया वो है किधर What the fuck? भाई वो कहाँ पे था भाई ये क्या है लेकिन इसका एम अच्छा था अबे वो साइफर देखना एम अच्छा था सर्वर और लोग अच्छे उन्नत भाई कैसे उन्नत भाई भेज उन्नत भाई डिस्कॉर्ड पे भेजना एम अच्छा यार प्लीज ब्रॉन्ज के और क्लिप्स भेजो फन का भी क्लिप्स फॉर योर गेम प्ले में भेज योर गेम प्ले गेस माय रैंक बात मेरा क्लिप कौन भेज रहा है अबे तब मैंने बोला था बस कौन सा देखना है नॉर्डियन वाला फास्ट रहेगा नॉर्डियन वाला देखना है ना मेरा क्लिप क्यों देख रहा है जतिन मैम प्लीज जतिन ये क्या है ये पता नहीं भाई क्या है बता तू बता क्या मेरे को नहीं समझा मेरे को भी नहीं समझा गलत क्लिप क्या लगता उसको फीचर समझा क्लिप का क्या है लेकिन गलत क्या ये कुछ तो है फोर के मारा मेरे हिसाब से डायमंड है दो तीन चीजें इधर देखने वाला जैसे इसका टरेट अभी भी इसके पास है निकाला हुआ है ए वाला प्लेयर है अलार्म बॉट इसने डाला नहीं था किधर भी क्या पता सीरियस हुआ होगा
किधर भी नहीं डाला था ना, जब इनके पास 2 सेंटिनल है, दोनों फुल सेटअप कर सकते हैं। बात तो बराबर है। इसने अलार्म बॉट नहीं डाला, नेड भी नहीं डाला, ठीक है। नेट डाला ए पे, हाँ, एक दूसरा के घर पे लेके जाएगा जब 2 सेंटिनल है। पर बॉटम फ्रैग भी तो कर रहा है। स्किन भी कैजुअल है, स्किन भी कैजुअल है। गन बड़ी प्लैटिनम का है, तो मेरे हिसाब से प्लैट, मेरे हिसाब से डायमंड है। पुराना गन बड़ी है। नहीं नहीं नहीं, प्लैट ही होगा, प्लैट ही होगा। प्लैट है, प्लैट है, प्लैट है, प्लैट है, पक्का प्लैट है। आंसर 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 कहाँ पे मिलेगा? वो लोग बाद में देंगे। ये क्या है? हाथी का लर्न। अबे क्या क्या है? ये मेरे को क्या भेज रहे? भेजा देख रैंक, रुक देखने दे। उन्नत नाम से भेजा है क्या? वो क्या था? ये क्या है? अबे दिखता है ना मरने के बाद। ओ उसकी बॉडी है। हाँ सबसे की यहाँ पे नोट करने के लिए, एक का नाम है योर डैड, ठीक है। तो इमॉर्टल और रेडिएंट गया। दूसरा चीज 12 बुलेट में इसने रिलोड किया। चलता है, उतना तो चलता है। ये लो रैंक है, बहुत बहुत लो है। ये बहुत मतलब हैवी शीट्स सिल्वर मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से गोल्ड नहीं हो सकता यार, ये अब भी यहाँ से पीक लिया फिर भी रहना उधर देख रहा था। सिल्वर मेरे हिसाब से, सिल्वर। भाई पर अपन गैस कैसे कर रहे हैं जब आंसर ही नहीं है? दोनों ने सेम आंसर दिया तो फिर गैस हो गया। करेक्ट बिंग्स लिखा है। अरे मनराज भाई कहीं था, मैं ही हूँ ये देख चैट पे, लव यू। सिल्वर है क्या? सिल्वर 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 1 पॉइंट। तूने क्या बोला था? गोल्ड। नेक्स्ट, दिस गेम इज इजी करके डाला है सबसे। देख जरा, टाइटल पे भी डालना पड़ेगा, समझ रहे? तेरे जैसे बजने वाले। रेना डिफ देखेगा ये, देख 3 दिखाओ दिखाओ। 1 ओ भाई ये टीबोल लेवल है ये। स्पाइक छोड़ दिया, देख स्पाइक छोड़ दिया है बेस में। एक चीज क्या मैं सोच रहा हूँ वो तो बता दे, मैं मान जाऊंगा। एक 3 डुअलिस्ट है और 9 क्या ए पे कोई नहीं है। जो मैं चीज 2 सेंटिनल होके 3 सेंटिनल होके ए पे अकेला बंदा कैसा है? इसका आंसर चाहिए। 3 एक अकेला ड्यूलिस्ट। पॉइंट है, पॉइंट है, पॉइंट है। गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। मतलब अनबिलीवेबल है ये। आई थिंक ब्रॉन्ज, आई थिंक ब्रॉन्ज। एक मिनट भाई इमेजिन वो लोग बी रश करते, उनका भोसड़ा पाव हो जाता था भाई। वॉल स्लो और केज ट्रैप, चेंबर ट्रैप, नियॉन वॉल, भोसड़ा हो जाता था उनका बी जाते तो। समझ रहे हो? बड़ी गोल्ड है, बड़ी गोल्ड है, बड़ी गोल्ड है, वही बड़ी गोल्ड है। नोटिस कर रहे हैं, हो सकता है पुराना बड़ी डालो। दरवाजा खोलने का बटन भी तोड़ा है उसने। हाँ? ये लगा, ये मेरा वाला एक दो शॉट जो लगता है वो वाला था। और देख भी नहीं रहा वो सेज। इन गेम कॉम्स नहीं है वो, इन गेम कॉम्स है, नॉर्मल नहीं है। ये क्या था, खुद एक्सप्लेन करेगा? किधर गया? दीवार पे मार गई। हाँ? ये दरवाजे से कोई आने मेरा देखा ही नहीं है, मतलब नहीं देखा। रुक 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 रुक, ये देख ट्रेस। अबे हैकर है बे।
हाँ बे, दीवार के थ्रू देख रहा है ना। हाँ हाँ हाँ, ये लोग बोले पीछे का चैट देख, क्या है चैट? बी आ जाओ ऐसा बोला है, बी आ जाओ। वो बोला है क्या? हाँ सामने वाले। भाई हैकर है, हैकर का क्लिप है भी। पूरा ट्रेसिंग है, देख यहाँ से बेस में कोई भागा है। सरप्राइज। स्ट्रिक्स सिंह, नाम देख बंदे का, नाम देख। सिल्वर स्ट्रिक्स से तो और भी मेरे को लगा सिल्वर हो सकता है, गोल्ड लास्ट टैग का उसने डाला है। सिल्वर शायद से सिल्वर, हाँ शायद से सिल्वर। सिल्वर लग रहा है, सिल्वर लग रहा है सच में तो ब्लॉक। आंसर है क्या? किधर नीचे नीचे किधर, कैसे दिखेगा? क्या है इसका आंसर? मॉड्स फाइंड आउट। यंग पवार। रेडिएंट गेम प्ले रियल। शर्म करो गेम के भाई, शर्म। ये क्या है ये? हसीन बातें विद बिन्स। ये फीएंड है, फीएंड। अबे लाइन बाय लाइन जा रहे तो कैसे आएगा भाई? किधर गया ये? सुनना, तेरे चैट में जो बोल रहे हैं ना उनका देख, फिर अपन को आंसर भी मिलेगा। कैसे पता लगा? ये थी का लौड़ा। म्यूजिक नहीं चाहिए बंदे का नाम देख भाई, बंदे का नाम छोड़, इसका पैकेट लॉस देख के मेरे को मेरी याद आ रही है। मेरी याद रहे, मेरी पूरा एकदम स्नेक्स है। एम है लेकिन एम है ये ठीक। कितना बड़ा रहेगा ना बे। वो एम है, एम है। आई थिंक इमॉर्टल, आई थिंक इमॉर्टल। पैकेट क्लास लौड़ा पॉसिबल है नहीं, ये मेरे हिसाब से डायमंड। इमॉर्टल, इमॉर्टल, डायमंड 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 मेरे एसेंडेंट, एसेंडेंट, सॉरी एसेंडेंट। ना, नॉट ऐसा पैकेट क्लास में, नॉट पॉसिबल। डायमंड मेरे हिसाब से। फीएंड, फीएंड, फीएंड कैसे मिलेगा भाई? कितना 35 न्यू मैसेजेस। आंसर राइट है कि नहीं? किसने लिखा है क्या? कोई आंसर लिख रहा है? वो देख नीचे वाला देख, पिन किया देखो। ये वाला देखते, ये वाला 4 मारा है। क्या बोला? 5 लोग लगे। क्या बोला? बराबर ना, इससे 5 लोग लगे। क्या बराबर ऐसे 5 लोग लगा। मेरे से खेल रहा है। मत भेज। ये क्या है? इतना पसंद हो गया रे मैं। रिन्यू कर, रिजॉइन कर, रिजॉइन कर, वहां पे देख रिजॉइन बटन है, कर कर कर। हाँ दबा रिजॉइन, दबा रिजॉइन, दबा रिजॉइन। हाँ अबे साले, अबे देख लिया रे बाबा, देख लिया, दबाया, देख लिया बाबा, देख लिया, दबाया मैंने, देख लिया। इधर भी आ रहा है कुछ। रिजॉइन, जॉइन, जॉइन, लेफ्ट वाला, लेफ्ट। इधर भी आ रहा है, लेफ्ट। देखना देखना, क्लिप देखना। वैलोरेंट डाला, क्लिप देख रहा हूँ। इसका रैंक क्या है लेकिन? अबे इसका देखना, ये बताएगा रैंक। देखो देख, तेरा मेंबर ही शायद। देखो रैंक बताता। एम, एम से कौन है? क्लिक करना उस पे। रेड भी बराबर था बे। हाँ थोड़ा स्प्रे में गलती हो गई। आई थिंक डायमंड या फिर प्लैटिनम। डायमंड या ब्लैक। सिल्वर। प्लैटिनम। गोल्ड 2 था उसका, वो हैकर रहने वाला। हम लोग ने क्या बोला था? याद नहीं, कोई ना, एडिटर वो कट कर लेना। ये सिल्वर, सिल्वर 3,
सिल्वर 3 या प्लैटिनम गोल्ड 1, सिल्वर 3 या गोल्ड 1, ये दोनों में से कब चालू होगा यार? भाई उससे ज्यादा एंजॉय इधर हो रहा है बेंचू, हैवी गेम प्ले नहीं होगा क्या? पता नहीं। ये वाला 145 को भेजा है 145। अबे ये क्या है भाई डेथ मैच वाला क्यों देख रहा है डेथ मैच मेरे को लगा वर्टिकल बाहर रोलर करके वापस भेज आ रही है वापस भेज। अच्छा वापस भेज नहीं सकते शायद कूलडाउन है ना। 145 को देख ये वैक्सी अपना वैक्सी है। ये क्या है? दूसरे स्ट्रीमर्स का क्यों भेज रहे हो भाई बेशरम लोग, वो भी जिसके साथ खेला हूं मैं। काय है काय, तू चैट में है काय? हाँ ये बेस्ट है, कोई चैट में है तो बताओ। एक चैट में है फाल्गुन कृष्ण नाम है, दिख रहा है तेरे को? देख उसने रैंक दिखा है, नीचे जा। हाँ यहाँ पे मत देख। ओ ये कैसे करते हैं? हाँ ये करके भेजो प्ले कर भेज रहे, ये करके भेजो। कैसे करते हैं ये वो भी बता दे किसने भेजा है, ये कैसे करते हैं? तो प्ले तो कर। हाँ लेकिन भेजो, समझ रहे हो? ऐसा करके क्लिक करेगा तो दिखाई देगा। भेजा देख रहा उन्ना देख रहा रुक। I think platinum, I think diamond, I think bronze, I think platinum, I think bronze, platinum। मेरे पास थोड़ा रीजंस है। मेरे पास भी है। क्या रीजन है? पहले तो रिकॉन उसने आने के बाद डाला, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उसके बाद थोड़ा सा वो सामने वाले हग रहे उस पर, देख ही नहीं रहे उसको। मेरा रीजन पता है क्या है? क्या? अब तेरे को मालूम पड़ेगा। फेड का रिवील आया इधर, ठीक है? फेड का रिवील आया बराबर। हाँ आया। अभी 3 जन सप्रेस है। हाँ फिर भी ऐसी पुश किए, और जो चौथा सप्रेस नहीं है, जो ये लोग का ओमेन, हाँ उसने ब्लाइंड ही नहीं दी है किधर भी, और ये लोग ऐसे घुस रहे। तो ये फ्लैट लॉबीज में नॉर्मल है। फ्लैट लॉबीज में नॉर्मल है क्या? यस। गोल्ड बोल सकते हो मेरे हिसाब से। सिल्वर या गोल्ड आई थिंक गोल्ड, पता नहीं पीछे ऐसा कोई जाता है क्या? कौन से रैंक में जाते हैं इससे? ये गन इसका ही है या फिर उठाया है इसने? तो फिर इसका पीक रैंक होगा डायमंड। गोल्ड मेरे हिसाब से, गोल्ड मेरे हिसाब से प्लैटिनम। मेरे हिसाब से गोल्ड। #OP गोल्ड। साला ब्रॉन्ज पे था, गोल्ड पे आया तू। गोल्ड था। बाकी लोग मिला ये। चल गो। नाइस। किधर गया? ऊपर। क्या हो रहा है भीचुत? क्या हो रहा है? किधर हूँ मैं? ये क्या है ऊपर? अनयूजुअल एक्टिविटी। वो पता नहीं, अनयूजुअल है। शॉट्स है। है ना, मैं तो
Ascended. भाई देख, नोटिस करने के लिए मेरे हिसाब से ये राउंड क्या हुआ है पता है? वो लोग ने पहले बी आवाज किया है और वो लोग को लगा एक खाली है। हो सकता है ए पे मरा भी एक। ऐसे भाग के आ रहा है, लेकिन स्काई ने एक यूटिल यूज नहीं किया है, एक भी। मेक सेंस। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसको मैं डायमंड दे सकता हूँ। इसको डायमंड मेरे हिसाब से डायमंड। थोड़ा सा बेबी, एक हीरे को एक हीरे का पहचान रहता है ब्रो। यो कैसे एक हीरे को हीरे का पहचान रहता है ब्रो। ये पक्का इसने रैंक भेजा। आयरन क्लिप करंट रैंक देख क्या है? आयरन नहीं रहेगा, आयरन क्लिप लिखा है यार। ये क्या हो रहा है? किधर बज रहा है? कहाँ बज रहा है बीच? तो क्या कर रहा है? अबे तेरा शायद पुशुडॉक की वजह से हो रहा है। हाँ हो सकता है भी है। ब्रॉन्ज नहीं बे, स्मोक अच्छा है बे। स्मोक जाने वाला इतना ओपन से उसको मार रहा है। ओ हाँ क्या बोला तू? क्या बोला तू? टीबैक भी कर रहा है। रुक तारीफ भी हो रहा है। स्मोक बराबर था, लेकिन वो जो इसने ओपन में खड़े रह के शॉट पे मारा ना, वो मेरे दिल पे लगी है। प्लैटिनम नहीं हो सकता। चेक कर। गोल्ड के नीचे क्या है? सिल्वर? हाँ नहीं, गोल्ड है। गोल्ड 3 158 को भेजा, ऊपर है क्या? क्लोज वी आर क्लोज। ये भेजते कैसे रे? सब करके भेज रहे। अबे होता है वो, मेरे को भी पता कैसे होता है। भाई मेरा हो गया। क्या सीन है? स्टार्ट नहीं हुआ अभी तक? नहीं बाबा। तो तेरे को क्या लगा स्टार्ट हो गया? हम ये खेल रहे भेंचो। डिस्कॉर्ड देख, गेस आ रहा है? गेस योर रैंक खेल रहे हैं। चल आजा। ये डिस्कॉर्ड वर्जन कर रहे हो क्या तुम लोग? मेरे चैट ने भेजा है। ठीक है। डॉट क्रॉसर है, कैजुअल है, थोड़ा जंप। तेरे से ओनली हेडशॉट्स। तेरे से बेटर एम है। नहीं बेटर तो नहीं है मेरे से। ये मैक्सिमम गोल्ड है, मैक्सिमम गोल्ड है। सामने देखो फिनिक्स का माउस बहुत शेक हो रहा है। हाँ तो गोल्ड लग रहा है, एसेंडेंट लग रहा है। अगर ये अल्ट मारेगा तो ये प्लैटिनम हुआ। नहीं नाइफ करने जाता तो मैं हाई रैंक देता था सुन के। एक बात समझ में नहीं आई, इसके पास फैंटम का स्किन है लेकिन नाइफ का स्किन नहीं है, क्यों? गोल्ड है ये है प्लैटिनम। अबे गोल्ड है भाई। लास्ट वाला बहुत गंदा था, उसके पहले का अच्छा था। लास्ट वाला बहुत गंदा था। अरे प्लैटिनम गोल्ड है। गोल्ड क्या? वैसे आंसर कैसे देखे? यहाँ पे दिखेगा। कहाँ पे? इस पे क्लिक करेगा तो
मेरे हिसाब से गोल्ड बाबा प्लैटिनम प्लैटिनम डायमंड प्लैटिनम प्लैटिनम गोल्ड 3 आइए इजी है भाई ये सब। रुक जा, कुछ तो नया ट्वीट है। Oh, we know we are having technical difficulties. We knew 2 hours ago. मैच कैंसल्ड बोल रहे क्या सच में? हाँ हैं? मैच बिटवीन ब्लेड एंड T1 is has been paused due to नहीं announcement है सॉरी। तो ये खत्म हुआ है ना, T1 वर्सेस ब्लीड नहीं होगा, बाकी मैचेस होंगे ऑन टाइम शायद। रुको एक मिनट, कैंसिल नहीं है announcement. The match between T1 and Bleed has been delayed due to technical issue. Given the length of the matches for the rest of the day also have been affected. We understand your disappointment and sincerely apologize for the inconvenience. We made the decision to refund today's ticket for all our side fans. Hard working individuals, so we will share update. Thank you for understanding. Cancel नहीं हुआ है, कैंसिल नहीं हुआ है, कौन बोला कैंसिल? नहीं बाबा वो अनाउंस तो मैच हैज बीन कैंसिल्ड कौन बोला? सिक्योरिटी प्लस का प्रेप कर रहे हैं। हाँ सोच रहा था, मतलब इन प्रोग्रेस सॉर्ट ऑफ। भाई एक दिन वॉच पार्टी की मैंने, उस दिन ही मेरा वॉच पार्टी का टिकट्स 1 लाख पर पर्सन था यार, प्लीज रिफंड दे दो। लव यू। प्लेटो नेक्स्ट। Hi Shri, hi Strixx, I'm your biggest fan. Just want you to know that Bigs कल के स्ट्रीम पे क्या सच में प्रूफ चाहिए मेरे को, प्रूफ चाहिए। 159 प्लीज। यार वो हाइड करके भेजो, जो भी हाइड करके भेजेगा इंस्टेंट देखेंगे क्लिप, इंस्टेंट। कोई आ रहा है हाइड वाला? ये क्या है? देख ला चल यही डिफरेंस है तेरे मेरे में भी। चल अबे नीचे जा, किसी ने भेजा होगा नहीं? ये है क्या F से? ये देखो रैंक बताता। क्लिप करना भूल गई थी। अबे प्रूफ चाहिए, प्रूफ। अबे वापस इधर ही आ गया, नीचे जा। ये अर्शु शायद भेजो, कैसे मालूम पड़े? एच से यही है सिर्फ। सो यूट्यूब का नेम दे। ब्राउजर में खुला। मेरे हिसाब से आपका रैंक मेरे हिसाब से रेडिएंट, मेरे हिसाब से रेडिएंट है। पूरी फील लेके भाई, प्रूफ चाहिए भाई। थोड़ा लेटेस्ट देखोगे आप? ये रहा। हाँ ये तो स्मोक मार देना भाई मेरे। तुम्हारे ये क्या सोडी? हाँ शायद। देख क्लिप तो लग रही है एसेंडेंट वाली या फिर प्लेटिनम वाली। तो डॉज बहुत ही कैजुअल है। हाँ बहुत ही। स्प्रे भी एकदम कैजुअल है। हाँ एसेंडेंट इमॉर्टल रेडिएंट नहीं है। अभी उसके नीचे से तो गेस कर। फिर भी इमॉर्टल। प्लस अलग के पास वाइपर है स्मोक्स में।
मेरा कैसे इमोर्टल कैसे भेजो क्लिप तो लग रही है डायमंड जैसी पर उसने स्मोक भी गलत ही डाला है यार वो वाइपर क्या हगा है इस पे ये देख तो तेरे को मैं क्या बोल रहा हूँ बहनचोद कहाँ से तू बोल रहे है इमोर्टल भाई क्या ऐसा यूटिल तेरे को दिखा कुछ तो दिखा रहेगा इमोर्टल दिखाओ मेरे को दिखाओ आई थिंक इट्स डायमंड देयर डायमंड दिखाओ ना एक बार प्लीज भाई 18 से नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट देखते क्या है वैसे रैंक क्या है ये इमोर्टल गेस किया मैं बोला डायमंड गोल्ड छोड़ दो गेमिंग सुनो मैं अभी ये डाउनलोड करके देखूं अबे इतना सब मैंने अबे मत कर लिंक विंक सब क्लिक ना करियो हाँ। नॉर्मल इसमें जो दिखता है हाँ वो पता है मैं उसको ढूंढ रहा हूँ आरएक्स का देख आरएक्स का फाल्गुन कृष्णा को ढूंढ ये है शायद पीस है फाल्गुन कृष्णा ठीक है गो ये प्ले कर दिखा ऑब्वियसली वो पार्ट थोड़ी ही ना दिखाएगा उसकी शक्ल देख के लग रहा कॉम्स हो रहे हैं अभी चल ठीक है मैं बिलीव करता हूँ चल आई ट्रस्ट यू ओह क्लीन था लास्ट वाला अच्छा था वापस एक बार वापस लास्ट वाला डायमंड ज्यादा नहीं है डायमंड मेरे हिसाब से क्या लगता है अबे लड़की टीम में रैंक नोटिस करना डायमंड आई थिंक एसेंडेंट डायमंड बाबा आई थिंक प्लैट 3 आई थिंक चलो डायमंड स्किल्स हमारा बहुत बड़ी बात नहीं है सिंपल डायमंड बाबा डायमंड मैं प्लैट बोला था मैंने प्लैट बोला भले 3 बोला था लेकिन प्लैट बोला था मेरे को पॉइंट क्या भाई हम 3 घंटे से जस्ट चैटिंग कर रहे बे कोई नहीं बोलेगा राका भाई टॉप जस्ट चैटिंग स्ट्रीम है यार अभी सब सुपर चैट करके बोल रहे देख करके कैसे देखूं मैं सबका वो नहीं है करके सुपर चैट के डॉलर्स फेंक के मार रहे मेरे मुंह पे ये मैच होगा थोड़ा यार बहुत एक्साइटेड थे यार ब्लीड का मैच था ये क्या है टिमोन भाई ये गेस 210 का भेजा है 210 वाला देख 210 वाला ये आर्य भाई का अबे लिंक क्लिक मत करियो बे इधर जो देखना है वो लिंक पे जाएगा नहीं इस पे क्लिक करें द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ विद बिंक्स क्या ये क्या हुआ था कौन सा 210 को नीचे आर्य होगा या फिर ऊपर होगा पागल मैं पहले इसको ढूंढूं या डॉलर वाले को फाल्गुन कृष्णा डॉलर्स कितने डॉलर्स है 20 ज्यादा सुपर चैट आ रहे तो यहाँ पे भी आ सकते हैं फिर मैं दिखा दूंगा इधर भी दे दो यार डिस्कॉर्ड डेट कॉमेडी दिया अबे यार अबे ये डालो ना अबे रैंक वाले डालो ना अबे डिस्कॉर्ड डेट कौन डाल रहा है भाई ये क्या है अरे बाबा रैंक वाले डालो डिस्कॉर्ड डेट ओ इधर ही देख सकते हैं क्या लिंक क्लिक नहीं होता चलो ना ठीक है ओमन लेके आए हाय हाय ओ। सिल्वर से आगे नहीं है ये देख लियो ब्रॉन्ज फिक्स ब्रॉन्ज नहीं है सिल्वर एंगल वेंगल चेक कर रहे हैं नॉट बैड स्मोक किया ओह एटलीस्ट क्राउच तो नहीं कर रहा ओपी सिल्वर है सिल्वर है हाँ ना क्योंकि सामने भी थोड़ी सी कैजुअल आई थिंक गोल्ड क्राउच तो नहीं कर रहा लड़का कुछ भी बोलो हाँ आई थिंक गोल्ड नहीं गोल्ड सिल्वर नहीं मिल रहा आर्य भाई नहीं मिल रहा
I think gold. I think gold. सिल्वर सिल्वर बाबा, गोल्ड नहीं, गोल्ड थोड़ा अच्छा रहता है भाई। सबसे पहली बात, ये लोग ने कुछ तो भूसड़ा पाव किया रेना के साथ। रेना उधर थ्रो कर रहा है बेस पे। हाँ वो सब ठीक है, तू अपना ये दिखा, ये सब नोट करना रैंक पड़ता दिखा, है। सिल्वर मेरे हिसाब से अरे दिखा तो सही। गोल्ड 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 सिल्वर बाबा, गोल्ड। ADSC समझ गया, बोला ना, कम ऑन। कैसे है? अरे बाबा माँ का सिल्वर्स, टीबन। अबे इजी है सिल्वर्स, सिल्वर्स को क्वालिटी थोड़ी कैजुअल है, कोई मसला कुछ दिख ही नहीं रहा। अच्छी शॉट है, अरे जावा बस इतना ही है, इसमें क्या गेस कर रहे हो? अबे इसमें क्या गेस करूं? भाई ये ब्लैक ब्लैक क्यों हो रहा है? मेरे को लग रहा है मैं ब्लिंक कर रहा हूँ करके ब्लैक हो रहा है। एम है। ओ ओ ओ ओ ओ भाई, डायमंड 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 भाई, डायमंड। यूट्यूब वाला क्यों भेजा? क्या क्वालिटी है ये? डायमंड। अरे नहीं वो उसका क्वालिटी, डायमंड 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 दिखता है, ऐसा रिवील रिवील डायमंड क्वालिटी अच्छा। डायमंड बे, कंफर्म डायमंड है, कंफर्म। दिखाना दिखाना, डायमंड है भाई कैसे दिखाओ? इसने लिखा है ओल्ड क्लिप दो, करंट रैंक गेस करो। ये क्या भोसड़ी वाली गिरी हरकत है? डायमंड फिर भी डायमंड नहीं उससे आगे नहीं गया वो। अरे ठीक है, डायमंड है बाबा, करंट रैंक मेरे हिसाब से एसेंडेंट। हम अब कर रहे हैं, गेस कर रहे हैं भाई। क्या? अबे इसने Good night. ट्विस्ट किया रे गांडू ने। ओल्ड क्लिप लिखा है और बोला करंट। उससे पूछो ओल्ड क्लिप का इसका रैंक है। ओल्ड, हाँ वही से चीटिंग किया है ये इसने। बोलो चीटिंग, ये काउंट रहेगा, ये काउंट नहीं। कैंसिल कैंसिल। ऊपर रुको रुको, लेफ्ट हैंड प्लेयर है, ठीक है। एवन भाई कैसे? एवन भाई व्हाट्स अप? अनिरुद्ध भाई सॉरी, माफ करो अनिरुद्ध भाई, कैसे हो? क्या? वापस एक बार, वापस एक बार। भाई हो सकता है ये मेरा है, फिर टिबोन के क्लिप डाला रहेगा। मेरे पे ऐसा लग रहा है, मैं पीछे से कभी नहीं मार सकता इसलिए ड्रोन कर रहा था वो। इसमें रैंक, ऐसे प्लेयर्स यूजुअली अच्छे रैंक वाले होते हैं। ऐसे प्लेयर्स यूजुअली प्लैटिनम प्लैटिनम प्लैटिनम। हाँ नहीं रिटायरमेंट नहीं, फ्लैट के ऊपर है। इसका रीजन है कि ये लोग दो इनिशिएटर खेल रहे हैं। हाँ बाबा, फ्लैट नहीं आता। डायमंड डायमंड क्लिक कर, प्लैटिनम गोल्ड डायमंड गोल्ड 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 डायमंड डायमंड बोला डायमंड 3। ये मेरा ही क्लिप लग रहा है। कैसे सब गैस बराबर मार रहा है बाबा? ऐसा अबे हाँ बे, तू पहले ही रिवील करके देख रहा है, सच्ची बोलो। डायमंड में बहुत हाँ होता ना, है। ये गांडू वो हो सकता है, भरोसा नहीं है। एक बंदा को निकाल दिया भाई, तुमसे नहीं निकल रहा। 4 बंदों ओ भाई ये तो टॉक्सिक लॉबी है भाई ये। ए फुल करना, दिखते रहे। कॉम सुनेगा फिर से टिबोन? हाँ फिर सुना नहीं। एक बंदा को निकाल दिया भाई, तुमसे नहीं निकल रहा। 4 बंदों टीम में वो भाई माउस पूरा हिल गया बे उसका, जमीन तक गया था बे। पीक गोल्ड में, पीक गोल्ड प्लेयर। पीक गोल्ड ब्रो। या गोल्ड गोल्ड गोल्ड। पीक गोल्ड प्लेयर, प्रॉपर गोल्ड प्लेयर है। मेरे को लग रहा है गोल्ड क्योंकि इसने पहले क्लिक किया, वो लॉजिक के हिसाब से। गोल्ड गोल्ड हार्ट स्टक गोल्ड। ये गांडू Yes, पक्का क्लिक कर रहा yes. है। ये नहीं मैंने क्लिक नहीं किया, मैं इधर देख रहा। टक्का क्लिक कर रहा है, 100%। नहीं बाबा, आपको तो हम देख रहे इधर दोनों मिलके इधर। तू रिएक्ट करना, ढूंढना पड़ेगा बे। करता हूँ, रुक करता हूँ। शोध बंदा है बेटी बस। ये कौन है? दिखा दिखा और दिखा, चल नीचे नीचे। खुद क्लिक कर रहा था तू? नहीं बाबा, मैं देख मेरा दोनों हाथ इधर है। ठीक है, दोनों हाथ ऊपर रख अभी। बाबा एक बात बता, मैं खुद क्लिक कर रहा हूँ, मैं तेरा स्ट्रीम देख रहा हूँ इधर, तो मेरी स्ट्रीम में दिखेगा ना मैं क्लिक कर रहा हूँ। 2 मॉनिटर है तेरे पास, तो भाई तो अभी के लिए 2 हाथ ऊपर रख। तो अभी के लिए दोनों हाथ। अरे बाबा पुश टू टॉक है दूसरा। ऑटोमेटिक कर, नेक्स्ट इसके लिए ऑटोमेटिक कर डिस्कॉर्ड पे। क्या? अरे बाबा नहीं कर रहा बाबा, नहीं दिखेगा तो स्ट्रीम में अगर मैंने किया तो। एक गेम के लिए वो कर, ऑटोमेटिक कर, एक गेम के लिए। हाँ ऑटोमेटिकली। हाँ ऑटोमेटिक है, दोनों हाथ ऊपर कर। हाँ क्या? नहीं किया, मैं देख रहा हूँ।
एक ही हाथ ऊपर है। सिंघम। पीछे 2 मिनट का क्लिप है ये तो। गोल्ड बड़ी है। गोल्ड बड़ी है वैसे। बड़ी गोल्ड है। स्टार्ट हो गया मैच बोल रहे पब्लिक। हो गया? नेक्स्ट देख लियो। नहीं हुआ। अबे झूठ ना बोलो पार। ये लिख रहे हैं बहुत पब्लिक स्टार्ट हो गया बोल के। नहीं हुआ। With this tremendous amount of time they've had during the off season together. But it's got to be. नहीं हुआ सर। करो प्ले करो। आप प्ले करो। हाँ तो Clear. Spike down A. I got the spike. Take 1 to TP 1. ये तो स्ट्रिक्स डैश है। 6 है तू है bitch। Where is everyone hiding? हाँ? She'll never leave me. किस खुशी में? क्या है वो? किस खुशी में डाला वो? वो क्या बोला? She will never leave me. वो क्या बोल रहा है? विफ। अरे बाबा किस खुशी में डाला वो? मेरे को वो समझ में नहीं है। Kiसी you can take the ब्रो पीक सिल्वर या ब्रॉन्ज? भाई कैमरा अभी भी इसके पास है। टी-बोन का एक क्लिप है भेज। टी-बोन ही है। टीबोन है। वो देख। टी-बोन ने ये स्किन यूज किया है कभी? 3 out of 5. Triggered. भाई है साइफर प्लेस है। ये टी-बोन है। भाई मैच स्टार्ट हुआ बोल रहे रे पब्लिक। मैं कास्टर से चालू मैच चालू। मैच 10 seconds left. भाई सिल्वर तो नहीं है ये गोल्ड लग रहा है मेरे को। Plant cage triggered. वाह व्हाट अ गेमर बेबी साइफर में लेट्स गो। सही है उसने आई थिंक गोल्ड है। गोल्ड बाबा गोल्ड है टी-बोन। वो पहले वाला ट्रिक के वजह से मैं गोल्ड बोल रहा हूं। उसने यहाँ पे नाम जानबूझ कर एडिट किया। टी-बोन है भींचत गोल्ड बोला भाई। बोला था तेरे को देखते हैं टी-बोन। बाबा वो अच्छा प्ले अच्छा था लेकिन स्टार्ट हो गया। इसका आया इसका क्या कास्टर चालू? कास्टर है। बहुत टाइम है अभी। हाँ अभी भी होगा ना। रुको मोबाइल में देखो। आजा ये मैच स्टार्ट हो गया। एस मिस किया बंक्स ने मेरा। देखो बस सर्च कराएगा। अबे सबका देखेंगे पर वो हाइड करके भेजो। सबका देखेंगे लाइन बाय लाइन। पीछे मिक्सर चल रहा है। जब तक मैच स्टार्ट नहीं होता। क्या चल रहा है? मिक्सर साउंड सुनना। कौन रे? तो प्लैटिनम का बढ़िया भाई तू कर रहा है भाई। अबे तो इसमें तो पता चलता है हमें प्लैटिनम है। कोई भी एक्ट कर अबे सकता है। कोई दूसरे का गन भी हो सकता है। स्मोक्स पूछा तो लॉ भी तो वही होगा ना। पैसा तो है ऋषु भाई। अरे यार मेरे साथ क्यों नहीं डाला है कुछ अभी तक? धोखा दिया। 2 जन पीस लेना दोनों। Fucking hell इतना जल्दी यहाँ कैसे? कॉल ने दी है यहाँ मतलब किधर है समझ रहा है? ये ट्विस्ट था। रिएक्शन टाइम तो था। अरे कैजुअल कॉम। Last player standing. क्लच करेगा। ए मचा था। फ्लैट पीक फ्लैट प्ले। क्लोज है। प्लीज फ्लैट। प्लैटिनम है गेस प्लैटिनम। डायमंड बाबा फ्लैट डायमंड तो नहीं। प्लैटिनम ही होगा भाई। डायमंड कैसे दिखाऊं? फ्लैट बाबा उधर देखना फ्लैट है। मेरा स्ट्रीम क्यों दिख रहा है? कैसे दिखाओ? उसने सुपर चैट किया है। अरे बाबा उधर रैंक दिखा रहा है वो क्लिक कर। कितना दम है भाई। अबे गोल्ड 218 डेफिनेट प्लीज 218 डेफिनेट। नीचे जा नीचे नहीं। अरे इतना नीचे देख ले युवराज भाई देख ले। हक दिया इसने। युवराज भाई वापस भेज दो प्लीज। युवराज भाई वापस भेजो। थैंक यू फॉर द 40। हक दिया इसने युवराज भाई। वेट करो वेट टप प्लेयर है ब्रॉन्ज सिल्वर मैक्स।
ओ भाई ये बड़ी अच्छी है बे, कौन सी बड़ी? ब्रो ब्रॉन्ज आयन नहीं ब्रॉन्ज आयन 3 नहीं ब्रॉन्ज है, कम ऑन दिल से रे ओपी। अरे यार अच्छा सही वाला डालो ना। शाल हो गया चलो गया लेट्स गो साला He's the guy who's going to be the one giving them energy. He's the one encouraging them in between rounds on stage. He's the one popping off, getting hyped when the team does crazy stuff. So, you know, please tell T1 that I started to play Cypher getting inspiration from him. For him. अबे वो बंदा है T-Bone वाला Cypher का गेम प्ले वाला, वो बोल रहा है please tell T-Bone that I started to play Cypher getting inspiration from him. You यार love you Cypher. वही मैच है ना, ब्लीड का मैच है ना? Bleed or T1? Let's. We move in the breeze, and there's gonna be a lot of Yoru. Yeah, that of course has been something that people. Let's go. Pro players out Start there again. have been just, you know, kind of sending out some bait posts on Twitter and whatnot, just pictures of Yoru, kind of alluding to this being the new meta-defining duelist. Whether or not that's going to come to fruition in game 1, we'll have to just wait and see. Now, I'll just go ahead and let you guys know on our big monitor. We're not going to. भाई T1 को Mercedes का sponsor है? The agent select is happening. So, we're moving in the right direction. We're plugging along here. We'll have to just wait and see what they have for you guys. Is well, वो trip was a bait? If you've got, you know, really good vision there. भाई वो trip इतना funny था. Things that are coming through, it's going to be interesting, no doubt about it. I mean, I would expect. रेफरी तो काफी अच्छी. अबे उसने एडमिन को बुलाया. We'll see if there's Sky, you know, still usage even despite the. पिंग्स में थोड़ा रेफरी को देखो ना पीछे. Don't do it. Don't do it. What are you doing? No. What are you doing? अरे क्या है? सेट उतार दिया लौड़े, तू पूछना क्या है? All right, well, if we get an update on anything. उनको वो लोग भी तक गए बे. मैं वो लोग का पूरा वार्म अप ठंडा हो गया बे. हाँ ना एक्चुअली वार्मर तो बहुत रहते हैं. वार्म अप ब्रो, वार्म अप. मेरे को लगा वो हिलाने वाला वार्मर. हिलाते रे साल. मैं वो कर रहा था करके तू है याद रखना. बिना उसके नहीं हुए तू. लैंग्वेज. भाई ट्रिगर हो गए बे. ये देख. अबे बाजू में इतनी लाइट डाली है, दुखता नहीं है क्या? हाँ. वो वही बोल रहा है, लाइट ऑफ करो बोल रहा है. हाँ इसलिए झगड़ा चले तब से. मेरे हिसाब से देखो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए. मेरे क्या? पास इसका परफेक्ट फकिंग सॉल्यूशन है. परफेक्ट. 5 पीस से राइट में बराबर, 5 पीस से लेफ्ट में बराबर, बीच का स्टेज खाली है. भाई एक बार स्टिकर्स देखा यार. 1v1 रेसलिंग, जो जीता बेस्ट ऑफ 3 करेंगे. पिंग्स क्या लिखा है पढ़ो. ये बाद में नहीं भी है. आगे ये के आगे. Overall, like a decent season for them, but it didn't really feel that way. इतना हरामी है तू लौड़े. क्या? रस्सी के बाद में देख क्या लिखा है. रॉसी फाइटिंग. रॉसी का स्पेलिंग जरा गलत नहीं है. कौन है रस्सी के बाद में देख क्या लिखा But this roster coming into this year feels like this has so much potential to be so much better, to be that team. अबे ओमेन देख कितना सेक्सी दिख रहा है. I mean क्यूट दिख रहा है. ज़्यादा पिसल नहीं रहे बेंच पहले वॉच पार्टी में तो. माफ करो. वापस एक्सेस नहीं मिलेगा. मुझे तो सिर्फ रॉसी दिख रहा है पीछे वाला.
pieces that fit on the team. We're not necessarily going for the बे वो लोग मैप में आ गए ब्रीज के रुक जा आया मैं एक मिनट for the players that are going to fit into our system, that are going to adjust to the किसे दिख रहा है bottom as the coach wants to run. And this is a big reason why they decided to stick with Rossi instead of King, is because he was fitting in better with the system. He kind of understood the game plan and was reacting to the rest of the team. निकुंज भाई कैसे निकुंज भाई आपको ग्लोबिंग से मिल गया निकुंज भाई लैंग्वेज प्लीज निकुंज भाई प्लीज लैंग्वेज Rossi just seems to be a better fit. I mean, I think we talked about it ad nauseum, both on broadcast on our own channels as well as on the likes of Plaid Chat and whatnot, about how important that team environment is. And if you have somebody who, even if they're not putting up necessarily the same guys numbers, 3 घंटे हो गए 3.5 घंटे it's a pretty easy decision to just go with that person who is creating a better environment or being more communicative, whatever the situation may be. And it seems like that's exactly what the case was for Rossi. And I mean, we got to see plenty of that just back at the AVL when he was hyping them up, when he was having impact in the game. And if you see the team backstage as well, you know that everybody has been getting along incredibly well with this team. So it's good to see, and it's very encouraging for the T1 fans who were, waiting for बैकग्राउंड में जेट है देखा तुमने कोई तो जेट का कॉस्प्ले कर गया है and then they came back over here and it was just also very good to see them be already starting to punch up into that top 3, and now it seems like they should be able to go up and beyond. Of course, as you can see, yes, there has been a little bit of an issue here, another snafu with Rossi, मेरा नेट but it's a fairly minor one, and we should have things fixed and underway relatively बात आ रहे थे टाइम से अरे बाबा टाइम ही नहीं मिलता जी टाइम ही नहीं मिलता So hopefully it's something fast and we can just go ahead and finally kick off the action. Yeah, absolutely. We're doing our best here. Our staff is very पुणे का रणबीर कपूर बाय बुलेट बाय मत येड़ी लो गरीब की मत thank you all for your patience, and the fans here especially who came in इतना येड़ी लोग है बस यार तूने क्या बिगाड़ा आपका Had to release more tickets and everything like that, and they still got snatched up. And it's a cool stadium, man. It's almost like a UFC. Like I feel like it's kind of that. स्टार्ट करो रे बाबा स्टार्ट Fans of each team get to sit behind their favorite team, and you get to support them. आई थिंक मेरे को जाना पड़ेगा वहाँ पे ठीक करने सिर्फ रॉसी का इशू है ना नो आइडिया एक बात बता, अगर इसका इशू है तो अगला बंदा जो आएगा उसका भी तो इशू होगा है कि नहीं? यार बैकग्राउंड में जेट है पता है क्या ऑडियंस में जेट बैठी है तुझे कैसे दिखी कोई तो कॉस्प्ले किया जेट का मैंने देखा जेट दूर से दिख जाती है स्ट्रिक्स को यस एल मैनेजमेंट भाई मैनेजमेंट का कुछ गलती नहीं है कुछ होगा टेक्निकल गलती जिस भाई वापस एड्स नहीं होगा भाई मुझे लगता है 분위기가 없었는데 이번에 새로 들어온 선수들이 실력도 좋고 성격도 잘 어우러져가지고 저희 팀 분위기에 되게 크게 भाई दिल से लव यू गुलाब फ्रॉम गुजरात कार्तिक भाई लव यू टू ब्रो कैसे हो 시즌이라고 생각합니다. 블리즈라는 팀 자체가 어센션에서 게임 할 때도 되게 잘하는 팀인 걸 알고 있고 되게 잘하는 오퍼레이터 और मेरा गला ये हो गया बे 멤버랑 저희 오퍼레이터 खराब हो गया 상대로 해본 건 아니기 때문에 저희가 연습하고 준비하는 대로 한다면 블리드를 이길 수 있다고 생각합니다. 저희 이번에 첫 जैसे 2 टाइम आउट खत्म हो गया वैसे 2 टेक पॉजेस भी खत्म हो गए ठीक है मंग भाई एनी गेसेस कितना टाइम लगेगा कितना टाइम लगेगा मैच स्टार्ट होने में लगेगा कितना आपने 5 मिनट बोला था भाई देख मेरे अंदर की आत्मा है ना मर रही है इसका एक रीजन है ये अभी खत्म होते होते सेंटिनल्स का मैच चालू होगा भेज चुप मैं सो नहीं पाऊंगा आप 3 घंटे सोते थे अब क्यों स्ट्रीमिंग कर रहे हो अभी स्टार्ट करते थे आप स्ट्रीम यार लेकिन कितना अनफॉर्चुनेट है यार मतलब इतना ड्राई रन्स करने के बाद हाय रिया व्हाट्स अप स्ट्रीम आफ्टर सो लॉन्ग हुआ नहीं है शायद सिर्फ आपके लिए स्ट्रीम किया मैंने पता है हो गया स्टार्ट हो गया हो स्टार्ट हो गया चलो गया लेट्स गो
Let's go. भाई माँ कसम बोल रहा हूँ, अगर कोई भी टीम 13-0 मारा तो मेरे को 100 गिफ्टेड दे रहा है। मेरा करो मेरे तरफ से भाई, मेरा हो गया भाई, इतना देर हम रुके, मेरे को अच्छा मैच चाहिए प्लीज प्लीज। जल्दी खत्म होने दो। I think पहला राउंड T1 जीतेगा। ना lead god स्पैम मत करो स्वागत भाई, प्लीज भाई। स्वागत भाई टाइम आउट दे देंगे, मेरे मॉड्स बहुत स्ट्रिक्ट है भाई। थैंक यू Strixx, नो प्रॉब्लम। एल डियाब्लो ऑडियंस भी ट्वीट पे अपडेट्स ले रहे लगता है वहां से बैठ के। ऑडियंस मेरा स्ट्रीम देख रहे हैं। कब चालूगा मैं बताता हूँ। ये रॉसी का ठीक हो गया। उसने हेडफोन पहन लिया। पहना? हाँ पहन लिया। बाकी लोग तो इन गेम है सब। हाँ बाबा, रॉसी का इशू था वो तानजीरो भाई कैसे हो तानजीरो भाई? ये क्या बोला? रॉसी का इश्यू था बोला ना, आज जी के मैच है तो। अरे बाबा दूसरा रॉसी T1 का देखो पहन लिया। ये नहीं टीबम भाई ऐसा मत करो। भाई आधा तो उनको लाइट से दिक्कत होती। हाँ ना, मेरे को भी लग रहा है। भाई इतना पास। It feels like Lotus is maybe the staging ground for that one, just because you have significantly better and more reliable rendezvous setups. But Neon? Harbor Viper? Yoru? रिवाइंड करो। क्या हो रहा भाई इधर? I think सही है Harbor और इसका सही है। सामने पे वही है। I think this is gonna be interesting. भाई T1 का तो अलग ही है। भाई T1 हारा भाई, सेंटिनल नहीं है, ऑल्स कैसे कंट्रोल करेंगे? यूरू है ऊपर से। देखेंगे वाइपर सो देखेगा। तो ए According to my experience of Valo, easy win for Bleed. Easy win for Bleed. अगर नियॉन घुस नहीं पाया ना तो भी टीम ऐसे घुस सकता है, रोकने वाला कुछ नहीं है, सिर्फ वाइपर है रोकने वाला बस। हटा रहा फेस के मटा रहा। सामने वो है बे प्रोडिजी। प्रोडिजी है सामने, प्रोडिजी। कौन है वो? एक्सक्यूरेट। पहला गेम तो नहीं है, 4 सेकंड का भाई है। rather coming out here with Neon, solo duelist, whereas T1, I mean, there's so much करेगा। quick aggression here between that Yoru and the Jet. Yeah, this is going to be really क्वालिटी बड़ा, क्वालिटी फुल है भाई। ये लोग हैवी पुश करके वो लेंगे बे कंट्रोल, वरना नहीं हो पाएगा। अनविश भाई कैसे हो? So, you know, it's a team that I feel like can lean into a comp like this and get the most value out of the Yoru. I don't think it's going to look anything like, you know, for example, Forsaken's Yoru. I don't think any अरे बिंग्स बोलना पापा स्टार्ट करने। He plays all of his agents very in his own unique style, but एक गांड ने बोला था स्टार्ट मत करो यार, 2 मिनट रुक भी सकते हैं अपन। making sure that you can get the opportunity to really cause that chaos and confusion that Yoru अभी तो 4 मिनट रुक सकता है। जाना पड़ेगा बेस योर। Bleed comes out the gates with this one because they're going to be starting on the defending side. So I don't know how much aggression we're going to see from them on the defense, but I can see a hell of a lot of it coming out on the attack. Not just because you have that Neon in general, but just the layers of utility. अबे स्काई और हार्बर ग्लो क्यों हो रहे हैं? Similar to PIIIIIIIIINK's Harbor Rane composition on Ascent, where you have those walls coming up from the Viper from the Harbor, send that Sky Flash through, send out that relay bolt to try to get the. इस बार अल्ट्रॉन का इन्वेस्टर बन जाओ, इतना पैसे लेके कहाँ जाओगे? अल्ट्रॉन क्या है? लोग बस बीटी दे रहे रुका के, हाँ ना? अबे भाई एक सेकंड
लड़का लोग अलाउड है इवेंट पे? भाई मैं जा रहा हूँ सियोल में, टिकट कर रहा हूँ भाई। कहाँ पे अलाउड है? सियोल जा रहा हूँ मैं। इवेंट पे अलाउड है लड़का लोग? हाँ? यार कोई है अगर लड़का मुझे वहां से देख रहा है, हाथ ऊपर करो। देख कोई ऊपर नहीं कर रहा है बे। सिर्फ गर्ल्स है क्या? अब लड़की बोल हाथ ऊपर कर। जो भी लड़के लोग हैं बैठो। Especially Bleed since the end of Ascension to come in here and workshop stuff, and certainly this is not what anybody expected for. इसका ही इशू है बे। क्या हो गया? अबे यार बोल रहा मक्खी आ रही है। इसने कुछ ना कुछ नया वो लाया गैजेट, वो इसमें सूट नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है। Big surprises coming through here from the side of and I mean another question is on defending side playing the Xeon. बैकग्राउंड में जेट है। ऋतिक भाई कैसे? ऋतिक भाई व्हाट्स अप? 2 घंटे से ऐसे ही बैठे। Looking for up close and personal battles a lot of the time. You know, sometimes you'll grab a judge and try to just zoom in there and take people down. Really powerful sometimes on eco rounds when you're grabbing a stinger or a specter or something like that. You could get a lot of value out of that neon. But is this going to be something tips मांग रहा है? Really workshopping that we're going to see kind of a new flair to neon. यार मैं थक गया भाई। We haven't really seen in VCT up to this point. Bye. Start. Here we go, ladies and Let's go. इस हिसाब से म्यूजिक आ रही है, लग रहा है स्टार्ट है। Yes! Get into game. T1 versus Bleed. Excali! Finally, चलो भाई फाइनल। We were so focused on Heyy. Talk about some of the other things going on. You know, easier. अटैक में कौन है? T1. He has played it a few times before. He is generally more of an initiator, but he's a really flexible player. He can play a lot of different roles. So I think Yoru suits him well. ये में क्यों अटका है? Before in the past, so this is something that isn't super. बे कौन पॉज लिया? गो करो रे बाबा। पॉज था, अभी टेक पॉज है क्या? उसके बाद प्लेयर अरे We got 6 seconds away. We almost made it. They had us in the first half. क्या भी? जोजो भाई कैसे हो जोजो भाई? My arch nemesis back again. मेरे को 6 सेकंड आते लग गया कुछ तो। यश भाई कैसे हो? यश भाई लव यू बड़ी। सिर्फ आप ही 500 रेडियन लेके जा सकते हो। मैं बहुत एसेंडेंट हूँ, मैं कहाँ से लेके जाऊँ? भाई काली की वजह से हुआ है। 100% काली की वजह से हुआ है। ए बिंग्स वो थाईलैंड में कितने जल्दी होता ना सब कुछ। बट भाई उनका टाइमिंग में बहुत स्ट्रिक्ट थे भाई वो लोग। वो मैंने अबे ये लोग भी स्ट्रिक्ट ही है, ये अचानक से हो रहा है इसलिए। इसमें मतलब इसका फॉल्ट नहीं है, बस अनफॉर्चुनेट। कुछ तो उसने नया गैजेट लाया जो फिट नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है। साउंड कार्ड लाया होगा जिसका ड्राइवर से इंस्टॉल नहीं हो रहा होगा, ऐसा कुछ हो सकता है। अपना कोई यूज कर इतना दिमाग टेबल भाई। बट तो लंच भी करके आ गया, बैठ सो के भी वो लंच क्या, लंच डेजर्ट भी करके आ गया। क्या खाया डेजर्ट में? हाँ ट्रिपल चॉकलेट केक। होली वेरी नाइस वर्कआउट, वेरी नाइस। इट डजंट, अरे वर्कआउट बॉडी लूज करने के लिए नहीं कर रहा हूँ भाई, आई एम वर्किंग आउट टू बिकम हेल्दी। तो हेल्दी और बॉडी लूज सेम ही तो हुआ। Nope, you can still be fat and healthy. नहीं इसका ही है, रॉसी का ही है बस। अरे अभी इधर है बाबा, इधर देखो ना, इधर उसका बार उधर ही है पब्लिक। पैसे VCT पैसिफिक एलपीवी में हो रहा है। नाइस वन। वो क्या करेगा बेचारा, अगर टेक काम नहीं कर रहे तो वो सॉल्व करना पड़ेगा ना। लेकिन मेरे को क्या, मैं तो एक्सक्लेमेशन माल टाइप करने जा रहा हूँ एक्सक्यूरेट को खेलते हुए। वायर लेने गया, वो वायर लेने गया। सुप्रीमो सेज हाय सुप्रीमो, कैसे हो भाई? कितने दिन से कहा था स्ट्रिक्स, घर पे ही था भाई, वो टाइम ही नहीं मिलता स्ट्रीम करने का। ये किधर हो रहा है, कोरिया में? नहीं, सियोल। कुछ भाई कभी कभी बहुत गाली देने का मन करता है, पता है?
curious, is that something Xcurate's going to be leaning into a little bit more of an aggressive harbor style? Is it going to be a little bit more stock standard? It's kind of something that's rolling through my mind when I see him on that agent. We'll see. Of course, referencing his brother for anybody who's not in the know, Xcurate, famously, brother of Forsaken from PIIIIIIIIINK. Yes. Oh, shout out. So much that I'm kind of just like. We talked about a lot in the AVL. Yeah. So तेको कब बोलेंगे Binks? This is Binks, son of Strixx. Hovering around that इसने कुछ ना कुछ तो इसका कुछ ना कुछ इशू है. Adi bhai, thank you for the responsor yaar. Sorry, thank you for the membership Adi bhai. Welcome to the membership Adi bhai. कैसे हो? Busy हो गए हो समझा? अरे बाबा थोड़ा होता हूँ बाबा, थोड़ा काम रहते हैं. इस स्ट्रीम वापस एक ही स्ट्रीम करेगा तो फोन करके वापस पैसे लूंगा. करूंगा मैं एटलीस्ट वीक में एक बार तो करूंगा एटलीस्ट. My brother plays over there, and I was like, your brother? Who's your brother? And he said, Zeta, and I was like Cloud9 Zeta, and he was like, yeah. And then I realized अभी way एक later फाइनल that वार्निंग चलो क्या फाइनल भाई 6 सेकंड लौड़े लग गए अभी 6 पे वापस हुआ तो basically he was just trying to say, नहीं होगा अभी नहीं होगा. Here's the literal translation of that word in Korean goes to brother. I was like, man, that's T1 जीतेगा उधर जीजू है. I think बीरश हुआ तो ब्लीड जीतेगी. अबे ब्लीड ही जीतेगा कुछ भी करेगा तो वो लोग इन्फो में खेलेंगे देख. As it continues to tick down 10 seconds. All that's separating us now from these barriers. Let's go! Woo! And it seems like things are finally going to be कार्तिक भाई कैसे हो कार्तिक भाई? What's up? Your eyes out on the pistol round. The barriers will drop. And T1 start inching their way forward. A triple push up through elbow for the moment. Just on the opposite side of the Viper wall. Seems like they're going to be leaning in towards a mid to B push. कांटेक्ट खेलेंगे ना ये लोग. Leaving Rossi 3v3 होने वाला है. on the other side to watch for rotates. ये कौन सा है बे? What's going on the jumps there? Pulls back behind the boxes. Trailblazer going out. Looking on the Hunt side player does get stunned up. Relay bolt going to be thrown in as well. Now Xcurate going to Nice stun गया. Finding first blood ये here on मारा. the stage. Looking for a little bit more as he swings out. भाई कुछ ज़्यादा ही OP टीम है बे प्लीज. खत्म. Now it's all on Rossi. He's looking on the opposite side of the map. His way through Hall. Bye. It is being watched. कुछ Scary. क्या काउंटर किया? Manages to shut him down. A team ये लोग को मिनिमम 7 राउंड चाहिए T1 को जीतने के लिए. This attempt reading it very nicely. No real ability for the side of T1 to get onto that site even. Completely smothered out of it. भाई सुनो ये म्यूजिक मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है. Same here यार. Of the site and guys मैं आया 2 मिनट में. Fell apart before it even started really. So good angles and everybody getting involved in the action. नहीं बच गया. भाई साला कैमरामैन ने वेट किया हम लोग को बे. हाँ बे. Yeah, first sight of that one. Crazy guy able to find a kill. Off screen there, taking down Saya. फायर प्लेयर को मरा. आउटलॉ आ गया ऑल्स में. Of course, that is चालू हो गया भाई क्रेजी गाय का आउटलॉ. Some of the issues. The legendary pack extra player has returned. The last time it was 0-0-2 when it was Jing. Ooh. Oh, क्या रिवील हुआ इन टाइम पे वो. Instantly finding the shot. This is the concern when you go into Xcurate मारा. rounds. Somebody's got that outlaw. That one shot will kill. Xcurate now. इग्नोर किया कि ये लो हो गया भाई कितनी जल्दी पीछे जा. They bolt to help try to slow him up. Is Darian just holding off here at A main? Dark goes out, quick clear coming through. The walls go up. Xcurate tucked away, just lingering there on top of the box. Darian eventually able to find that kill before he can take any damage. Swings back out, catches Izu. Now is just looking for Carpe, who Shot. no hope in भाई hell एम there. है. Aim. लीड जीत गया बे. जीत गया इजीली जीत गया. 2-0. टीम पीछे है भाई. पिच पे पीछे आगे नहीं होती. भाई ऐसा क्यों है? म्यूजिक क्यों आ रहा है बार-बार? हाँ बे. कर रहे क्या? For their bonus, what's that going to look like? You can see crazy guy doing a great piece of work with that outlaw, expecting to see that in play, expecting to kind of keep those half armor metas in check potentially. भाई ये लोग डरा रहे बे. सुमित भाई कैसे? सुमित भाई व्हाट्स अप? अरे ये म्यूजिक ऐसी है. Because if you
do some damage with those shock darts, or if you get a reveal, there's high penetration on the Outlaw, just like the Sheriff and some of the other guns, so you can really hit hard. Walls, potentially. There aren't as many opportunities on threes, obviously, but something to just keep in mind. All right, well, now with the full buy coming through here. Scary already going to be tagged up as Egoist just lurking here in the back half wall. Swings onto the corner, managing to take one down before he falls. Gets rid of Carpe, but Saya Player and Izu both get one apiece. Scary now gone. Heyy with the Guardian in hand could certainly deal some damage here. As the Yoru clone goes walking past. Excurate going to hold a close angle, but one shot from the Guardian would do it, but Excurate a little bit faster, managing to stay alive, gets the headshot. Heyy gets taken down, plays up against the wall. Push out though, the point blank. Crazy guy gonna need to use this one. Like a shotgun, pushes on the timing, managing to catch him with a bow in hand. Timing हो गया. Takes him down. अबे Excurate ने important frag निकाले. T1 will get themselves on the board in the third round. भाई ये बे jeans है बे उसमें jeans. Important frags. Refresh कर ले. हैं? ऐसे ही मारा बे उसने? Get into the site and then really isolate some good fights, swarm around their opponents. And then Excurate again, I talked about some things that he might have learned from his brother, using that cascade to set himself up for a nice opportunity. As soon as he hears that U-tilt being used, he just अब आएगा actual game. अबे ये क्या देख रहा हूँ मैं? Hope that the player doesn't really check that angle fast enough. Give yourself a really good opportunity. Well, I posed the question. The answer has already arrived. Heyy has an operator in hand. Going in around 4. While he was cutting funds. And the timer stopped again. ये तो और पीछे. Yeah, but the operator is what matters. आजा टेबल स्टोन पेपर सीजर खेलते हैं. स्टोन पेपर सीजर करो. 3 2 1 स्टोन. अबे नॉर्मल टाइम आउट है, टेक नहीं है. नॉर्मल है हाँ, नॉर्मल है. भाई ये लोग बेट कर रहे बे. भाई ये लोग फीलिंग्स के साथ खेल रहे हैं. बेट कर रहे बे. It just comes like an enjoy from stopping when they saw that. Dope Joseph bhai, thanks for the membership yeah. Thank you. How's you Strixx bhai? I'm good. How are you bro? You noticed it. I was like, oh no. I'm very good. No. Playing with our pulling out our heartstrings there. But I पीछे देख हाँ भाई. potentially like this a lot from Okay. T1. Go ahead. I think that oh wait, oh no, never mind. Seems like maybe it's bleed. Oh, it's Bleed's timeout. Okay, might have been a misfire. Why Maybe, would, okay, well, maybe why would you like have liked it from okay, T1? so if it's a T1 timeout, I like this a lot because this means that they're likely, that Autumn is anticipating that operator is going to be coming through into Hey's hands, even though he's going to be playing the Neon. Yeah. And maybe he has an idea of specifically how he wants to play that on the defense as a Neon, but now I'm not sure what to think. Either way, early shock dart out and a snake bite over there at A main. Well, I guess you've got some good escapes, right? You've got the relay bolt, you've got some walls. Oh, you've got a jumping Carpe. The shot, the flick, not going to connect. TP forward here in the mid from Izu. He's hoping to clear out that drone. And I really like the scaling so far here from T1, but it's not exactly... Up 30 है ना, up 30 है. See the double hang back here from Rossi and Carpe, anticipating maybe some forward presence coming out of halls rather than taking space over in A main. And this is going to be tough for T1 because how quickly Neon can rotate around the map. It's going to be tough to keep track of that op. Crazy guy already taken down. I think T1 जीत के रहा. दो मारा बे रिवील होने के बावजूद. Oh! Bye. The 2K for him. Crazy guy. Never mind. It's the spot on them. It's the spike now. Starts to get planted. But a 2v4. The odds very much stacked against them here. Saya Player needs to open things up, but he misses his window of opportunity to find the headshot. Crazy guy stays alive and doesn't suffer any additional damage. They know that Saya is in a forward position. Can they catch him off guard? Dart out. One. Spots the other. Oh, आ गया. Before dashing away. अरे. Challenges the blade. Runs out of bullets. भाई क्लच करेगा लग रहा Now है. it is all on Carpe. The new IGL dodges away from the relay bolt. Heyy swinging the corner. Carpe wants to take the fight, but now the snake bite is forcing him back. बोला था ये जिंदा है. Nice one. उसका POV नहीं Gets the दिखा. op shot, and Bleed will maintain the lead. I mean, what तो दोनों का इन्फो था तो उसमें खेल सकता था ना आराम से. खेल सकता था. भाई साया के पास बुलेट्स रहता तो ना वो रहता. एक और मारता मेरे को लग रहा है. भाई ये क्रूशल था भाई, इसने दो मारा रिवील होने के बावजूद. हमें जो डेरियन का डबल पिक वजह से ही वो राउंड इनके फेवर में आया. तू किधर ट्विच पे देख रहा है ना टिबोन? हाँ बाबा. They're not putting any other pressure on डेरियन का डबल पिक इंसेंट था. He's able to handle it really nicely now. Look, Saya answered, and you expect to. वो रिवील भी हुआ था बट तो. Now he's हाँ वही.
Where is RRQ? कौन भाई? So now Darion is going to have to be really kind of kept track of here by T1 to make sure. ये crucial है भाई. ये round आ रहा तो really have that be Even गई. Dimensional drifting. On the hunt, but I mean, wisely, everybody from Bleed just very much pulling back away, and they know that there's going to be at least one on bridge, but otherwise he's seeing nothing at all. So it's just going to be maybe an attempt at a flood retake here from the side of Bleed, and maybe even quite literally because that reckoning is available. भाई Darion का ult भी है बे. The drone, Saya, देख लिया. clear that out, but knows that he's likely been spotted. मार दिया. Oh! Down that cloud burst. ये क्या shot था? What the fuck? Comes away with one. What a shot there from Zeta player, but the kill still being found here for Bleed. Moves away from the relay bolt, the rest of his team still falling down, takes that shot. Oh! And ends up falling. Now it's all on Rossi. Comes up with two. Wolf thrown in, but Heyy getting himself over. Close. He's holding him on that spike. Nice try, nice try. Bleed. He's not able to adjust for it in time. Scary gets the kill and Bleed now moves up. Defense में तो T1 पता नहीं क्या करेगा. हाँ बे, अटैक में कुछ करना चाहिए. अटैक में स्पेसिफिक इन्होंने यूरो लिया ना, तो कुछ यूरो का प्लेस भी नहीं है अल्ट के सिवाय. नहीं, वो सिर्फ ड्रोन जैसा काम कर रहे हैं. हाँ. साइड क्लियर किया, मैं इधर आया, प्लान करो बस. Which earphones you use? Exclamation earphones. Yes, इन्होंने यूरो जो लिया है ना, यूरो के साथ बहुत प्लेस बना सकते हैं, बट वो प्लेस आ नहीं रहे. सारी टीम यूरो के साथ ही आ रही है, बट यूरो अकेला नहीं जा रहा किधर. ऐसा है. भाई इसका भी ओपिंग क्रेजी है. मुझे लगता है क्रेजी का मारेगा. ओह, लगे क्या उसको? नहीं ना, नहीं लगे. इसने मास्टर किया बे आउटलॉ को. डॉर बाय कैसे? डॉर बाय व्हाट्स अप, लॉन्ग टाइम नो सी. जोडी बाय कैसे हो? एक्सक्यूरेट एल्विन का भाई है. एल्विन नहीं, 4 सेकंड. ओह, बेट हो गया. बेट हो गया. ये लोग आगे कैसे मेरे? What? From the side of Bleed. Scary, maybe an opportunity here for Xcurate to get the jump on him. No reinforcements. कबड्डी में. I'd have sussed this out. भाई लोग में बहुत खतरनाक प्लेयर्स है बे. Scary's reads. वो तो उसी दिन पता चला फाइनल्स में. तब तो ये भी नहीं था. As usual. Anticipating this presence here in the sights. Carpe again with that sheriff. Can he get himself on the board? Needs that first kill, but Scary swing the corn takes advantage. साउंड नहीं आया क्या चलने? इको तो आया. Rossi will be able to find that. It's the setup here. That spike plant can come through, but a 1v4. An ace clutch needed to try to close out this round and stem the bleeding here. कहाँ से ऑर्डर किए थे? हेडफोन जोन. I don't think you'll get a chance to use it. No. Anyway, should have it. उसने सोवा वहाँ से हम लोग भाई क्या डिसिप्लिन है बे. See if he's going to be flooded from that backside, swinging out. There's no way निकलेगा. दोनों गेम इजी लग रहा है बे. क्या डिसिप्लिन है बे, लेकिन डिसिप्लिन तो है बे. It's just going to be Scary getting taken down. Cash aplenty here for the side of Bleed overall, as they will now move up 5-1. Yeah, it's looking really clean here from Bleed to start. Everything you would want and hope for as a Bleed fan. I mean, Heyy, even though he's on an agent that you don't really get to see him on very much, he's having no problems. He's doing exactly what you would expect from him. A great angle. खेल रहा है बे, ये खेल रहा है. Noted earlier down that hall, kind of expecting the push and setting up for the bait and switch. And Scary gets one. कैसे चल रहा है कॉलेज? सही चल रहा है. कर रहा हूँ कॉलेज आजकल रेगुलरली कर रहा हूँ. But now you've got a lot of big ults coming into this, and I like this timeout for T1 for real this time because they have 3 ults online, right? They've got the Reckoning, they've got the Viper's Pit, and they've got the Hunter's Fury. So इतना टाइम हो. You really want to make sure that you win. This is like where your ult rotations are really coming into play, and so you cannot afford with the way that this match has gone so far to fumble this round. No, certainly not. I mean, this could be a bit of a breaking point here for them. So obviously, you know, with some of the updates of Breeze, it's going to take some time. We need to get some more eyes on this map to see which way it's overall going to stray, whether it's going to be that defender side or the attacker side.
but historically we have क्या मेरा नाइट बोर्ड चल नहीं रहा है क्या आज? a lot more dominance on that side of the map. Curious because starting things off, only having that around your name at the moment. If you can't close this one out with 3 ults to try and utilize, attack में ले ले अबे आप. Disaster here for T1 for the rest of this map. And with double duelist in play as well. Sure. You know, that's Izu's 1-6-2 at the moment. Yep. That impact has not been found, and you know. बस एक बार नाइट बोर्ड के कमेंट्स ट्राई करो. Down there at the bottom of the standings. चलने चाहिए अभी. Look to try to turn the tides here. The operator does come through. तो ये फंसे मूनड्रॉप आरिया स्नो एडिशन. If I'm not wrong, you used to play Fortnite, yeah. I used to play Fortnite. उसने स्पिट कहाँ से फेंका बे? Using that high tide to cut off the front side of pyramid there. Saya making sure as best as he can. या फोर्टे वो येलो बॉक्स से भी फेंका दो उसने. भाई सही है बे योरो इसमें उधर तक साइट ही मिलता है फ्री में. अबे नहीं बे इससे भी अच्छे प्लेज है. रीटेक खेल रहे हैं. ब्रीड वाले रीटेक खेल रहे बैक साइड से स्टार्टिंग से. सारे गेम वहां पे मैंने भी नोटिस किया. ये तो मिलनी चाहिए राउंड T1. फ्लैंक फ्लैंक बीटी देगा ना. फ्लैंक बीटी देगा. स्काई को देख. वे मरे फ्लैंक. भाई अल्ट में दो लिया उसने. ओ भाई उनको समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है. भाई क्या रीटेक किया है. काश मेरा सोवा ऐसे रहता. काश मुझे भी ऐसा सोवा मिलता. अल्ट कहां से मारा उसने सोवा ने देखा ही नहीं. मतलब ब्लेड बिल्ट डिफरेंट. बोलने पर टंग ट्विस्टर. हाँ बोलना सीख ले लोड़े. क्या लैंग्वेज है ये ब्रो? It's these post plant scenarios that are very, very challenging. The timing there for Izu is the wall going down. Scary ready for it, able to best him, and that is unreal from Crazy Guy. नहीं इसने ऊपर वाले को भी मारा. दरवाजा खोला था उसने. Absolutely gorgeous. I mean, the beast from the east, a title given to him long ago, and continues to have relevance to this day. हो गया अभी नहीं जा सकते. Scary. To cut off his A site, and I mean, what a read. They still could very well overwhelm this Viper, but you see Scary really looking to back off of this one. Here's that drone coming through. Record speed, but play back. Assessing that is going to be a fake out. Another bite before you try to get Zeta. 36 HP. He still manages to sling away, but the pit will fall. Yeah, good read here from T1 on the positioning of Scary. The utility kind of giving it away, and Scary pays the price a bit, and he has to lose that pit as well. So yes, he bought some time, and you gave a really good read here for Bleed on where this execute is going to happen. So they're able to shift Crazy Guy over to help out. Record retake. And now the call's coming through for the other two players to start working their way across. Scary just going for the spam. Easy going to be revealed there. Oh, sexy blind. Be punished. Sends out the pop flash, pushes up, managing to finish the job there on a Scary. Crazy Guy still standing his ground. Mara dom. Gets the kill on Izu. Now Ye gonna कहाँ से fall. मार रहा है? Finding one, finding two. कुल्ले से मार रहा है वो. Him, Crazy Guy will be able to shut down that. Bit of a run back there. Ego is now in a 1v2 scenario versus Rossi and Saya player. भाई Saya player sexy player लगता है मेरे को. Between the pyramids, I should say, manages to finish him off, and T1 will be able to. सुमजी भाई कैसे सुमजी भाई? T1 here finally able to find some of their firepower as Extra coming alive, finding 2 big kills in that round. But in general, I really like, I mean, it's great pop flash, but I really like the way that Bleed is working and reading the map. They're using this double initiator to really get the information that they need onto where T1 isn't. Like a lot of times, like you think about, okay, the hawk catches. ये लोग flank क्यों नहीं कर रहे रे? Mid control लेके. मेरे को ये वाला यूरो प्ले सच्ची में मजा आ रहा है, पता नहीं क्यों. But sometimes when you're not getting information, right, like you're not getting any pings in mid and stuff like that. And now look at this, they're getting a little bit aggressive. अब ये ड्रोन जैसा काम करता है देख. पूरा क्लियर करेगा. Shifted over towards A side, gonna make yet वो लोगों को पता है वापस retake चल रहा है. उसकी कॉल में इसने अल्ट मारा. वाह crazy यार. बाप रे. ओ भाई. Not allowing Fedarian to get the jukes out. Oh! Top of bridge. Oops, spots him from. Oh! Gets a shot, drops down off the top. Side player not in a position that he can chase. Snort be. Knowing that this is some forward presence. Decides to back off. क्या मारा ना यूरो को लेकिन? क्या मारा बे हाँ बे. भाई रीड कर लिया बे उन लोगों ने भी. Close था. Actually swung out. Oh, the shot. That snap was nearly there from Ye, but Saya managing to strike. Jump peek. The shot connecting. Scary.
likely going to be forced back here as the save call could come through. Should come through, you would expect. Oh, egoist. He's waiting. कैसे check किया? करेगा ये बाबा. Normal. Kind of scoot back away from that one. Now the reinforcement swing coming in from Scary. Position running in the spawners. They double face in. Scary. बाहर की टीम कैसे अडॉप्ट होते हैं ना बे? हाँ बे. पट. ऐसे नहीं कि भाई 6-0 हो रही है, भाई हार गए. From bleed, but T1 starting to rally back. बात तो सही है. Yeah, next Gary getting really vocal here, trying to get his team into the thing. To be honest, बाहर का टीम का IGL का काम बहुत इजी होता है, पता है? सिर्फ बोल देता है ये करना है, बाकी खुद का दिमाग से वो लोग खुद कर लेंगे. और एक मेरा टीम. विंग्स भाई टारगेट कर रहा है आपको. विंग्स भाई टारगेट कर रहा है आपको. स्ट्रिक्स टारगेट किया आपको. मैं तो कोच हूँ. क्या बोले? खेलना नहीं आता तो कोच. Wings is just a coach. Essentially, you can spot somebody out, ping it out for your teammates. So a lot of times, it's like somebody getting into a Viper's pit to find the Viper. Oh, Shot bhai. nice shot crazy out of this round, but just a ping to set up the Hunter's Fury. Okay, well here's that. ये तो full W दबा रहे बे. Now through elbow, manages to collapse on top of Xcurate, so takes him down. That's going to send everybody here from T1 over towards this A site. Scary still. पहला राउंड में B ऐसा लेफ्ट राइट हो गया और लोग उसके बाद B देखा ही नहीं. Hear that rotation moving forward is okay. That's going to be the flash taken care of. Oh! Scary. I don't think he was ready for that wall to go pushing that far forward. Nice one, dude. 6-6 it's hit Gary on the jump. ये एकदम chillings कर रहा है. Struck down by Carpe and that leaves Ego. 6 राउंड लगा इन लोग को रीड करने. अबे ये ईजू योरू कुछ अलग खेल रहा है बट खेल रहा है अच्छे से. जैसे भी खेल रहा है बहुत अच्छे से खेल रहा है. Still manages to readjust, taking down Rossi. As he pushes outside, player boosted up on top. ये कौन सा एंगल लेने हैं? We'll be able to take him down again. T1 जीतेगा क्या बे? लग रहा है. But they're clawing it back. 3 rounds consecutive. ओ इसने माउस फाइनली चेंज कर दिया. Away from tying things up at the half. ऐसे कर नहीं सकते चेंज. अरे बाबा वो यूज करता था वो वायर्ड वाला माउस Logitech का कुछ बेसिक. No, you can submit it before itself. Strixx. Yeah. How many ever mouses you want to use, you can submit it to them before itself. तो मिड गेम भी चेंज कर सकता हूँ मैं. हाँ. You can submit. अरे तेरे को जो भी तू यूज कर रहा है ना कीबोर्ड ईयरफोन सब तेरा टीबोन सबमिट करना होती है. उनको सबमिट करना होता है. वो लोग इंस्पेक्ट करते हैं उसके बाद फाइल्स नहीं रखा ऐसा वगैरह. फाइल्स का नहीं सब कुछ कि तूने इलीगल टेप वगैरह नहीं लगाया वैसा बहुत होता है. सिर्फ नहीं लगा सकते इसका मतलब. No, there are only a few illegal tapes and stuff like that also, which are not allowed. माउस में हैक्स ना इंस्टॉल हो. माउस में कैसे एक्शन शो घुस रहा है बे योरू. वो जेट से भी जल्दी तो योरू घुस रहा है अंदर साइड में. Manages to get taken down. Side player finding one, dropping down. Himself safe for the time being. Yay though. Oh bye. डिफ्यूज हो रहा है. भाई बढ़िया खेले यार. भाई ये योरू भाई वन ऑफ द बेस्ट योरू है भाई. नो जोक. Not a bad attempt here from Bleed on their eco. Getting Carpe completely isolated. Bleed ने टाइम आउट लिया क्या? नहीं लिया. कौन बोला है भेज इसको भागा डिस्कॉर्ड. ऑलरेडी टाइम आउट कम है जिंदगी में. नहीं अच्छा वो नहीं मतलब पता नहीं यार अगर वो लोग इतना कमबैक कर रहे तो नहीं लिया तो भी याद मत दिला उनको. पागल है. अच्छा लेना तो चाहिए मच. आफ्टर 6-4 they should have taken. खेल रहा है इनको यूरो पता है दिमाग से खेल रहा है. बहुत अच्छा से खेल रहा है भाई. ओयो हो गया मिल गया. हाँ इसने कितना अल्टी मारा है एक गेम में? 20. भाई बहुत मारा. भाई इसका अल्ट वापस कैसे आया? क्या खेल रहे हैं भाई खत्म. भाई क्या मारा उसने. भाई ये योरू भाई मेरे को लगता था ये अपनी योरू बहुत खराब है. आई एम रॉन्ग. खत्म. In Pacific, especially in Japan, this guy has been an absolute monster in the VCJ. He has been tearing it up for years. Now given the opportunity on tier 1, पता है you can see उसने why.
वाइपर के साथ गलत किया पता है वाइपर को लगा ये सिर्फ इन्फो लेने आ रहा है अबे उसने 100 का वन टैप मारा उसके बाद 5-6 बुलेट था फिर भी ब्लाइंड करके पिक किया उसने टीम मेरे से मारा अच्छा swap sides and see who's going to be able to come out on top. I mean, just given how everything had begun, that 5-1 lead here from Bleed shrunk down to absolute 0. 6-6 between the two squads. We'll see if Izu can challenge the record for most aces in a series in 2024 so far. What is the record? भाई देखो टेक्निकली ब्लीड जीतना चाहिए अभी टेक्निकली भाई अटैकिंग कैसी है मेरे को देखने है कि T1 क्या इससे काउंटर करता है इनको ये T1 को भी सेम अभी सब रिटेक करना पड़ेगा प्लस डबल फ्लैंक का चेक करना पड़ेगा मुझे लगता है यूरो पुश करेगा भाई हर जगह मेरे हिसाब से ब्लीड जीतना चाहिए 1-5 to 6-6. Unreal. I saw a sheriff maybe, but I don't believe it. भाई वो लोग ना एक रिकॉन वॉलअप के साथ यूरो फेक टिपी मारा ना तो भी वो लोगों को 3 साइड खेलना पड़ेगा बता ऐसा फेक होंगे वो लोग But now it has reawoken. Yes. मतलब घुसने का भी जरूरत नहीं है I was hoping it would be El Diablo that was the thing that was laying dormant. And would reawake. I mean, man, we've been seeing the glimpses of that here for sure. But it seems like it's gonna be something else here. I'll let the audience take a guess as to who might be affected. What? But yeah, hopefully nothing too severe. सिक्स बाय टीचिंग में वापस बाबाज आ रहा है क्या? Because it was a fun half, honestly. आ रहा है. I would not back and forth nature, back and forth in the streaks, I suppose. But just given what we were seeing here from both the teams, I like some of the snap calls that are coming through, the reads that we were seeing there, especially when Bleed was, continuing to streak up towards those initial 5. It was looking really good, not game kind of trusting in the call to say like, okay, this is going to be the site. This isn't a fake out or anything like that. They are hitting the A site. They are hitting the B site, being fast to try and respond. And again, so much of that is the extended amount of information they're able to have with the Sky, right? Like you've got a Sova and a Sky, so they're really able to stretch the map with their information gathering. And of course, on point of contact on those rounds when they were 6-1 were really, really good. They were getting a lot of those first bloods, getting a lot of those first kills. Game issue में क्या क्या रहेगा रे? Easier on themselves, but as Game issue में packet loss, lagging, ping. network issues. Xcurate had a good round in there. Asaya had some great moments, so kind of those players you're looking to for T1 to be the ones to really pop off when you need them did. It started to swing the momentum back into their favor. But overall, भाई लेकिन मेरे को we've seen अभी both तक teams still maintaining नियॉन वाला वो नहीं आया spirits. Yeah, throughout this one. भाई All the issues that have अरे happened. तो अटैकिंग में दिखेगा ना डिफेंड में क्या Just है the back and forth natures. We got a shot of obviously some El Diablo fans, but also our डिफेंस में लेकिन वो वाला वाइब नहीं है अटैक में देखते हैं I bet I could throw something and hit him from here. Probably, but that would be assault. Yeah, I don't. I'm not saying I would do it. I'm just saying I could. I'm having a Napoleon Dynamite moment. तेरा पुराना जेट मिस कर रहा हूँ ब्रो. Yeah, it's like a paper ball. मैं अभी भी जेट ही खेलता हूँ. भाई ये लोग ने सिंपल भाई नींद आ रही है पता है? क्या ना ये लोग जीत गए. 101%. चुपचाप 3-1-1 या फिर 2-2 हॉल स्प्लिट करके एक बंदा लर्क जीत गए. सिर्फ कांटेक्ट पे खेलने के बाद जीत गए लोग. सर टीपी बी पे डाला. 6-6 the score line is T1 now going on the defense and look at the stack. Flash खेल रहे हैं. Well, this is gonna get. हो गया माउस गया क्या? Get intense pretty quick, it looks like. I mean, this is such a fast-paced map so far. Yeah, just backpedaling, getting himself here up alongside. क्या हुआ बे? क्या? भाई मेरे को समझ में नहीं आया उसने क्या किया. First blood, but Ego is quick to trade one back, but Carpe now claims him. As things will get evened up a bit. Carpe coming away with the second kill. The push coming through. Heyy catching him with util in hand. Not going to take any damage from the shock dart either. As Bleed will be able to make their way now onto the site. Two ghosts versus Saya with a sheriff. I think Bleed जीतेगी ये round. Snake bite to play with. As he taps the door. T1 का flank है. Sends the bite out, but Heyy and Darian both taking timing वाला scene है. backside positions here.
As oh, Bro, it's what just a the ring around fuck? the rosy. Yay, expecting him to still be up towards door. Rossi swinging back now under bridge. Either way, neither of them going to catch the other. भाई इसकी एम क्या है वीडियो की? Two shots in. He swings back out. Darian Rane has the line. बस There's the jump back. क्या क्या है? क्या है ये? The HP so अबे यार! He's got the ghost if he can get the headshots. Perhaps he can get done as he's going to come swinging down around. The hold to half. भाई क्या खेला है यार? What the fuck कैसे? भाई एक कटा ये बोलते भाई ये होती है कॉन्फिडेंस भाई. क्या कैच मारा ये? The shake of the head. I mean, another valiant attempt here from उसने जब पहली बार पिक किया वो बस 1 सेकंड स्लो बिंग से बाकी डिले पहली बार पिक करके स्लाइड किया वो. हाँ वो लेकिन स्टिक तो कर रहा था ना वो. हाफ हाफ खत्म करने के लिए देख रहा हूँ. मैं 19 HP का हूँ. उसको आगे जाके मार रहा. So good, bro. The amount of difference we see in all these games. Definitely able to come through, and now they're gonna maybe turn up the tempo or just play for orb. खेला देख 3-1-1. मैं बोला ना अभी. 3-1-1 कहाँ पे 3-1-2 है. तेरे गांड में आती कलन बी में कौन था तो फिर अभी देख रहा था. Just on top of hatch. Drop, whatever you want to call it. Couple sheriffs invested for T1. No ghost this time. It's a stinger in hand for Heyy on the follow-up, so maybe not going to be going for that early op. Got a spot, couldn't find the shot. Had the stinger in hand, so even if he had some damage, it wasn't going to be anything too significant there. As he really wants to try to flush him out of this position, and he will be able to do. Oh bye. ये बोलते. Scary with the Guardian able to find. भाई ये power. Ghost comes up with 3, and that now leaves easy. भाई ये बोलते बे. Not for very long. ये बड़ा क्या? Scary to finish the job, and once again, it's going to be Bleed closing out a pistol, closing out that anti-eco, but this time. El Diablo. Yeah, good news if you're a Bleed fan. Looking really good on these pistols so far. Follow-ups very strong as well. मार रहा है बे ये. मार रहा है. Still had the ghost in the back pocket there for Heyy, putting it to good work. He's able to carry that. Strixx लाउडे तूने 3-1-2 बोला क्या स्टार्ट? नहीं नहीं मैं 2-1-2 बोला भाई. हाँ. हम भी ऐसे मारे तो इको कोबरा. ये मारे तो जॉट. ठीक है. तुम वहाँ पे जाके इको मारो मैं जॉर्ड लिखता हूँ टिबन भाई. It seemed like Heyy was going to be the hell out of there, but no. Just a pixel. योरू को क्या दिखा भगवान जाने. Avoiding that headshot, Izu able to take him down. अबे योरू ने क्या टीपी मारा देख. It's a fantastic setup here for them. And that's a nice. ये क्या स्पैम है? What? भाई उसने मॉली रश किया क्या नहीं ना? Ready for Darian to be that far forward. Izu now tucked away. He sees the orb. He knows that Harper is going to be behind him. But once they try to catch the push out here, playing it patiently. Oh my goodness. Finds one, swings out, can't quite get the jump. Darian avoiding that dart. जीत गए. Actually, might have been crazy guys. जीत गए. Guys actually. And Darian now going to be taken down from that backside position. उधर डिफ्यूज हो रहा है इधर साया ने अटका के रखा था. Just an Ares in hand. He'll be able to find one. Saya dead, but the defuse is being held. खेले बे खेले टीम. खेले. Picks that one up. भाई मुझे लगा डोमिनेशन होगा इधर तो अलग होगा. लेकिन बोनस था. I just love these little tech plays that you're seeing from Izu. इसमें चैट तो साइलेंट गया है. चैट फुल स्क्रीन में या फिर चैट सो गई है. Who knows? One over the top, and his whole play here is just. Look, this either hits someone or it doesn't. Doesn't matter. If it hits them, they're going to be backing up. I'm going to hold the angle. वो एंगल किसी क्लियर ही नहीं किया क्या? Down and hope I get a kill, and he does. It's a really cute little play. जो लेफ्ट में बैठा है. Sure, Darian got heard back there by Izu. Izu भाई तो मार रहे भाई पर. For the bailout, but nice patience there from Izu. Really having a nice map for himself right now after a rough start. भाई क्या सीन अभी हार्बर मेटा क्या अभी? On their heels a bit is T1. साहिल से. भाई कट होता है ना पूरा. सहाबा घुमा दो. बी जाना है तो बी जाओ. ये देखो एल बना के पूरा साइड ही मिला. ये देखो एक और डब्ल्यू. क्या है भाई? भाई क्या भाई मैप देखना कैसा से डिजाइन बना हुआ है बे. कितना बॉल भाई क्या बॉल से रे. कितना बॉल है. नियॉन हार्बर वाइपर
भाई सही है भाई, इसका गोटा डाल के आधा डिफेंस तो हो ही जाएगा। भाई ब्लाइंड तो था, ब्लाइंड तो था। हाँ लाइनअप है क्या? नहीं अब इसको मारना ही पड़ेगा, मारना ही पड़ेगा। लेट्स गो। ये सिर्फ क्लच ही करता है और कुछ। नो वे ब्रो। भाई मेरे को तो प्लेयर्स बुलेट्स उसके सादा सिर्फ हार्बर का पानी दिखा मैप पे पूरा। सेम। वाह कसम। वो हार्बर का पानी का कम लगा, ये भाई भी बीच में उनका वॉल अप कर दिया। बहुत यूटिल है। And then just finish the job, and there is few players in Pacific who are going to be as clutch as Scary. The guy eats, sleeps, and breathes clutches. I mean, yeah. The conversation around best control Let's push. Pacific just becomes so much more. आम के हिसाब से बराबर Rane भी है। As Scary, speak of the devil. Well, not that devil, the other devil. You really, yeah. Fine, Saya. He really made you look good there, man. It's just he has such a great sense of understanding what his opponents want to do, and understanding their tendencies. Yep. Saya loves to go for these excursions down hall to try to get some backstab opportunity, and he just continues to read it like a book. I think it's the second time he's killed him in this position. And he understands timing so well. Civil engineering हो रही है गेम में। स्केरी वापस मारेगा। Right here. Oh, Xcurate actually wins that. Never mind. Comes away with one. Oh! Flash. दो लिया उसने। Carpe comes up with two, and suddenly there's a man advantage for T1. ये भी दो मार Still with सकता the है। classic in hand. They can recover one of these weapons, which they will need to do quickly as the time is dwindling. Nice, With a bit of baby. fade away and Xcurate on no HP. Nice one ये। मारता है बे, मारता है। With just that sheriff in hand. See if he can deal some additional damage here, but the round मिल गया। Oh, close था? Close था, दूसरा लगता था? क्या शॉट मारा बे? That was so crisp, so nasty from Izu. Fuck, दूसरा लगता ना? उसने डैश में मारा ना वो? हाँ। That is filthy. Holy. What a topper to lose around on. That was just gorgeous from him. मेरा इतना पीछे क्यों है? Stretching away from T1 even more. Play from Carpe here, doing some. फिर इसको आगे कैसे करते हैं? With a couple big kills. Great job by Heyy there though. GG ना, bleed GG ना? With the gun down. GG बे, जिस हिसाब से पूरा वो ग्रैब बना रहे ना साइड में। वाइपर वॉल डाउन हो गया, हार्बर वॉल आ गया। भाई वो बीटी है बे। फर्स्ट ऑर्डर मेरा फर्स्ट ऑर्डर नहीं हो रहा। एक हार्बर का मेन वॉल, दो छोटा वॉल, सामने वाले हार्बर का मेन वॉल, दो छोटा वॉल, फिर नियॉन का वॉल, वाइपर का वॉल, दो अलग। अरे बाबा क्या कर रहा है पता है? वाइपर का वॉल डाउन होते ही हार्बर का वॉल आता है। हार्बर का वॉल खत्म होते ही वाइपर का वॉल बीच में से भी काट रहे हैं। सेम नहीं कर रहे बीच में, इसलिए तो बसड़ हो रहा है। नियॉन का भी वॉल आ रहा है। Gonna look afterwards. I mean, it seems like there's some good trades here and there, but some of these early positions getting red again. The first kills, it seems like when Bleed gets that first kill, things really seem to swing in their favor. Both teams with a bunch of big ults. Scary with the pit. Ye's got the lightning fingers. Darion with the reckoning. Easy with the dimensional drift. वो दीवार के थ्रू मार रहा है बंदों को। Let's see if we see that combo again with the dimensional drift. Fury with Carpe. ये तो पुश रखने के लिए। और एग्रेसिव खेल ही नहीं सकते क्या बिंग्स इसमें? लो भाई ये भी राउंड मिल गया। ये कॉम के साथ नहीं खेलते। आज क्लब नहीं जाना, नहीं आज छुट्टी है। ये देख किधर जाके बैठा है। क्या है इसमें क्रेजी? साया प्लेयर। Catching the rotation. सबको मारेगा बे, सबको। Fury crashing across. Yay, up the box, and Saya not being communicated to ends up getting taken down. मार सकता है। Down Darion with that Hunter's Fury. इसका लाइनअप रेडी रहता है बे। Headshot to finish him off. Xcurate trying to hold down that spike. इसका लाइनअप बहुत। Finding a kill with the snake bite.
Flash in, spray across. Yuzu strays right into it. Nice, He falls down as Carpe is trying to get them over. Nice, the Ray. wall. And with the 4K, as he managed to make it happen, the time it's going to be so very close here. Fuck, क्या था? Just about, yeah, they have it with a couple seconds to spare. भाई इसका राउंड था लेकिन ये का राउंड था. 1.7. I can do math. उसको लगा मर गया करके ये का राउंड था. Either way, T1. अरे उसको सुबह तो मार रहा था जब अल्ट मार रहा था. Get themselves back into this one just a bit, but it took such heroics from Carpe. It did, and oh, he gets 2 on that tag. Absolute insane stuff. I mean, again, I talked about it earlier. We've seen a couple different ways that dimensional drift is utilized. Sexy मारता ना Carpe. And this time around is to clear the pit, and it was something I mentioned very briefly earlier on that it's a really good. ये सोवा थोड़ा casually मारा उधर mid में crazy guy. No real recourse that you have as the opponent to giving away the information, the positioning of that Viper to either force them out or find a kill, and in this case, they're able to at least gain the space. They don't deal with scary. I see that W. कुछ नहीं दिख रहा है. What? What? Absolutely. वो heal के लिए आया वो वापस. This crazy guy as well, just layering in that Hunter's Fury. सीधा सेव बे. ये कैसा W है? Side player, no money. Yes, he does have. ऑलरेडी वो लोग बैक साइड से कर लेते, उधर भी जाके मार के आएगा तो फिर क्या ही करेंगे. भाई पर इतना दम देखना भाई. अबे ये तो अल्ट था ना, स्लाइड था इसलिए गया वो. भाई ऑफ करना तो नामुमकिन ही है भाई इसमें. Take over a round, get a big multi kill. स्पेस लेकिन बहुत गलत है बे ये का. लास्ट राउंड भी जो जिधर जाके बैठा था ना वो साइड पे पहले उसका खेल रहा बे ये पता है. विंग सीजन में ऑफ नहीं कर सकते. इवेंट का जर्सी में कितने स्पॉन्सर्स हैं? हाँ बे T1 एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट टीम्स है ऑल ऑफ द गेम्स मेरे. बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है भाई. मर्सिडीज स्पॉन्सर है. I mean, it's just crazy. And again, headshots do matter, right? With the overdrive, that is something that they changed a while ago. And Ye just hits. विंग्स का वो किल से पहले आ रहा है भाई. कैसे मेरे डीले में? The follow up. That's it. That's all you need. Yeah, I mean, the round was over within seconds, and as you mentioned, Saya player not going to be having top fragger be. A rifle coming into this round. Does have the blades. That and then Reckoning, both available to them. See if both of those ults are going to come to play, but for now it looks like Saya off the rip, just going to go pushing forward. Well, this round has to work. Just way into mid, Flash coming out, but this leaves Rossi बंदा backstab देख to try to hold down B, and as the flood comes in, he has to pull back, so Bleed will be able to take the site. See what kind of post-plan situation they can set तो up. मतलब ये वॉल ही नहीं डाल रहे क्या वाइपर इनका? नहीं, पूरा रिटेक पे. पे डाला है इसने. नहीं, उनका वाइपर का वॉल पे डाला है. ये अभी जाएगा सीधा लाइनअप के लिए. Find them leaning towards A. They're able to exploit it. Yeah, Ye's going to take a little bit of damage. Bhai sahab. Through Ye, avoiding that pop flash, managing to find the kill. Swing out of the corner. Though his Carpe will get one, but Darian strikes back with 2 of his own. Saya and Rossi, the last 2 standing. Rossi managing to out-duel, takes out. Meanwhile, and Darian just continues to swing. लाइनअप नहीं गया ना? हाँ डाल दिया. Somehow keeps them alive in this. जीतेगा भाई, जीतेगा. Tap onto the spike, the shots coming through the snake bite thrown down. Oh! Find one. He knows that time नहीं होगा ना? क्या? Saya player. नहीं बाबा. But I just don't think ओ यार थोड़ा वेट करता यार वो. थोड़ा वेट करता. अबे और हाफ भी नहीं था ना? Oh, scary. Absolutely unbelievable. भाई नहीं करना अभी उसको. I mean, he's been so good. भाई क्या खेला है साया? So many times and scary. Just peaks literally 0.05 seconds too soon. And Saya punishes him instantly with the Blade Storm. I mean, what tremendous poise from Saya player. Unbelievable. Oh my goodness. I mean, I turned up my game sound because I thought that one was. Oh. Surely there is no way. As Rossi now just sending the pit here to try to make B unassailable, and it seems like it might have worked. His quick check over towards elbow, and a fairly swift drift away here from Bleed as they start working their way maybe towards other sides of the map. Maybe it's just a fake back here. Yeah, and crazy guy with an Odin. A lot of spammable walls on the B side, hoping to maybe exploit that a little bit in this situation. नेटवर्क मैंने कब आस्क किया भाई तुम भी स्ट्रिक्स से क्लबिंग तो नहीं? You do have a lot of presence here in mid for T1. Cut off these rotations, especially with this high tide here. Or excuse me, the cascade. You got to start wondering. कल रिपोर्ट कर सबमिट करना है, मैंने स्टार्ट भी नहीं किया और टाइम पास कर दी भाई. पढ़ाई करो भाई. Which the drone
will be able to check. हाइट नहीं है. Oh no, he turns it back down and they don't shoot at it. They're just waiting patiently here. Can they I get the think big play. down, but see the fade away there. This crazy guy starts making his way. Jumps the direction. Time player now trying to hold down tunnel. Finds Heyy. ये थोड़ा ज्यादा कैजुअल नहीं खेल रहे. Casual. Alongside the box. Everything just pushing past him. क्या कर रहा था वो? Scared. There's a strike from behind. Izu and Xcurate make their presence known. As Egoist and Crazy Guy caught off guard. Now falls to Scary and Darian to try to get lead. भाई वो लोग का सेट प्लान है रे, कैजुअल नहीं, उसका सेट प्लान है कि उसको वहां पे जाके ऐसा वॉल करने का, समझ रहा है? He's broken through positions like this before. Scoped in the ADS. He sets up for some damage, but he can't confirm the kill, so Rossi still lives. TP going across. Izu on one side of the pillar. Hey, hello. Noted. Force back. But Darian comes through too. Side player and Carpe both falling. Xcurate managing to find the kill. Man, ये होती है man. Not ready for Izu to be on the left hand. उसको समझा नहीं. अपना वो क्या बोलते हैं, टाइम आउट वसूल हो गया, क्लोज गया. Also reach double digits. Really like the setup here from T1. उन्होंने दिया सीडी प्लांट. फिर भी उनका हार्बर एमएन से क्यों ओपन है जब सीडी प्लांट है तो? ये क्या हो गया, थोड़ा कैजुअल हो गया. वो लोग के पास सेंटी नहीं है ना रे. एक बार प्लांट देने पर वो लोग को मालूम नहीं कि कहां से दूसरा बंदा रुका रहेगा प्लांट के लिए. Expecting the B hit वो लोग सिर्फ potentially एम again, टूल्स लेके and अल्ट पे Rossi खेलते हैं. able उसमें to जैसे thwart दो it, बार अल्ट यूज and he's करने का ट्राई also किया, got his दूसरे poison टीममेट का हेल्प cloud करने set लेकिन up वो on the अल्ट ही box to मार नहीं keep पाया. Saya safe to cover that angle as well, so it's really प्लांट well करने thought का out. काम एक लेकिन 2 महीने बाद 3500 VP और एक स्कूटी गिफ्ट ले ली. व्हाट द फक स्कूटी? Throw the round into chaos for Bleed. Throw their plan A. रिच भाई रिच. There's the reckoning, there's the pass lane, the push up getting ready to come through, and Saya भाई अभी ये कैजुअल हो रहा है बहुत. थोड़ा कैजुअल हो रही है बहुत. हाँ भाई ये कोई क्लोज खेलेगा उसके प्लान से तो मरेगा, वैसा वाला सीन है. एडअप कर लिया भाई. स्मोक से इधर उधर फायदा उठा रहा है शायद. Makes things significantly more difficult here for Bleed. See now they're pumping the brakes, just looking to see. ओल्ड लाल प्रेडिक्शन का. नेक्स्ट मैप. What happened in the previous? ये मैप खत्म होना है. Where they started pushing space and it cost Bleed dearly. And they're really trying to wait for this opportunity, see if they can spot someone over peaking. Drone going forward, Rossi the drop. Rossi बोलते हैं. That vulnerability, the snake bite takes out Darian, and now the spike is stranded here within the site. Crazy guy. हारेगा लग रहा है बे. Darius needs to put it to serious work if they want to even do damage here. अब इस भाई. हारेगा क्या Bleed? Going to be finding too much of anything. Tries to go for the orb. Will be able to take it for himself, but here comes Xcurate once again with the backstab. Casual. And yep, the swing out. Okay, it's a little bit whippy. Didn't go for the calm play. ये लोग एक क्यों नहीं कर रहे? Before fire. Crucial round. ऑलरेडी Gets अबे one. ए. Casualty there for है T1. ना. अरे साइड ए. Pushing forward. अच्छा ए साइड बोलना. Xcurate so vocal. फट से जाने का. Really. अभी स्प्लिट करेंगे Really मोस्टली. has been all day here today. बेटर है वो, इजी है मेरे साथ. Keep T1 in इधर this, and he's साला been able to bounce वाइपर it. बीट Seems ही like with दे that fire, that passion, and his timing and his presence, able to turn some big rounds around for T1. This time around, I mean, Bleed was more or less dead to rights, but still, it's going to be in Bleed's mind. Crucial round है. To be watching the backside of this. Crucial round है. Something that now T1 has been creating, and T1 did a great job there anticipating the push from Heyy, playing anti-flash again, so there was really nothing Heyy could do. तो बैकअप रेडी है भाई यूरो को. वो लोग फास्ट रोटेट करेंगे लेकिन क्योंकि वो लोग एग्जीक्यूट नहीं किया. अबे यूरो को वो है. I think Bleed जीतेगी राउंड. For now, the drone moving forward will be noted there by Saya player. खत्म. ब्लेड जीतेगी राउंड. खत्म है. देख लो, आग बंद कर लो गाइस. आग बंद कर लो. ब्लेड जीती है राउंड. देख लेना. अभी तो क्या. Peek out. Could still be very deadly form. ये लोग को हॉल चाहिए भी, लेकिन साया का वो बहुत क्रेजी एंगल. इतना मस्त बैठा है बे पोजीशन पे. हाँ. इसको साउंड आया होगा ना. नहीं. वो लोग बोल रहे हैं कि एक बंदा देखो इधर. You gotta expect that they've tried it before. Scary's been good to cut it off, and he's going to continue to be on that. Potentially watching that hall. Execute comes through. The Trailblazer and that shot. The recon coming out. ये सिर्फ वो कर रहा है. अबे ये सिर्फ वेट कर रहा है क्या? वो टीम के साथ जब तो ऐसा हिलेगा तभी वो नहीं होता ना, एम नहीं लगता.
Lines up the shock dart, takes out Egoist. The man advantage now going to be there for the side of T1. Answering dart comes through. A smattering of damage going to be found. A Saya player. Saya भाई दिख रहे बैकशॉट दिख रहे Spike plant. Now they all start working their way out onto the site. Darian साइड कैसे खाली करेगा लेकिन dwindling. Saya player ready to strike. भाई जीत गया बेटी वन. बाप रे what the भाई fuck. क्या टाइमिंग में आया भाई वो. Are in the lead. Tremendous patience here from Saya. Great communication. T1 ने क्या कमबैक किया है? The whole time during the post plant, my eyes. T1 भाई क्या सीन? Some of his great utility from Carpe, but also I was watching Scary to see where he was looking to keep track of the angles. T1 में IGL कौन है? I'm so keen to see if he is going to be able to catch Saya just a little bit too soon. T1 The opportunity. It has to be a full-on reinforce onto the site. T1 calling that out gives the perfect opportunity for Sai to come in and finish the I think Rossi या फिर Carpe. स्टेज में कौन खड़ा था ये के साथ? Xskill Rossi again, the two players hovering around A with Carpe quick on the rotation over here. Bleed. They start taking the site. Up is Fury going out, looking for the tags. Crazy guy. Found him down, but I think it's the one there onto Xskill. He survives, and that means that he is still going to have that ultimate in his back pocket. So Reckoning can be invested here for the retake. भाई योरू तो बहुत दूर है. Scary. Still trying to lock this haul down, making things difficult. योरू का heavy flank है. Pulling back, it would seem, as Darian able to find Rossi. Shot coming through, avoids that damage. Shrunk down to 45. भाई योरू का flank. Out of 5. Oh, easy on the backstab. Saya player crept up into the corner. You can see Darian a bit wary of this. गए. Oh, ये कैसे जिंदा है? Can't quite pick his target. Put some damage down, but doesn't get the kill. Saya will be able to find Darian, but the time again ticking, dwindling away. And it seems like Bleed are not done yet. Let's go. Let's go, T. Let's go. अब होगी reset. What an incredible map! What a way! वोडाफोन में आया है सबका. Right into an पकड़ मत तू, overtime. पकड़ मत, ठीक है? Finally. उनको लगा कि इजी होगा लेकिन थोड़ी सी दिख रहा है अभी. नहीं बे, ए बहुत strong है. Like T1 and maybe finally found their footing. ऐसा लाइनअप से तो ए बहुत strong है. Take some good positioning here, and Izu there. तो सब लोग गार्डियन क्यों चला रहे हैं? पैसा नहीं था ना, वो लोग हारे थे लास्ट So राउंड. many targets, and you think, oh, I've got the multi-kill of the Sentry lined up in front of me. You're a puppy in a pet store. क्या देख रहा है Strixx? Toys everywhere. वो भाई डिफॉल्ट वाइपर उधर वॉल डालता ही है बे, जाए या ना जाए. लो आए, डाल के रखूंगा. We're going to the moon today. But Double it's a tough controller. spot there. I mean, I like what T1 does, but again, Bleed eventually there in that last round. माँ करो यार. यार. I don't wanna. You can't make me. I think at this point, G का मैच स्टार्ट हो गया. let's just break the overtime record. Yeah, sure. At this point, just Why not? I'm here for it. I mean, I fully embrace the madness. I'm all about it. Let's go as far as we possibly can. Yeah. I'm not on the cast tomorrow, so have fun. I am. I know. Yeah, I think I'm just gonna end up living at the venue tonight. I'm just gonna find a nice place to curl up. Got my nice puffy jacket. That'll be good enough to keep me comfortable. Yeah, it's true. It's true. भाई फाइबर खाने से टट्टी आती है क्या? Tuckered out. फाइबर खाना? Some Z's, wake up 3 hours later. क्या फाइबर खाने से? हाँ? But hopefully once again we'll be क्या खाया तूने? get this sorted. Broccoli, and get things underway once again as we get ready to go into that overtime. This is just, I mean, look, cabbage. Yeah. हाँ शायद से आती है. It's all just part of the fun. तो देखो आइए अभी. Sometimes these things happen. इसका gear issue है भाई. We can only hope. ये देखो टट्टी है अभी. Currently tied up going into OT game has been worth the issues, which I think it has. Yeah. Because it has been very good, very back and forth, very streaky between these. Vamos. I mean, how much this means to both teams, because Bleed, T1 and Bleed both coming up with different rosters from what we saw from them last year, the hype behind Heyy, etc. Both teams desperately want this win, and that's not even considering just the ramifications of the setup for kickoff and how brutal this system is. Right. I mean,
You lose one match and things start to get extremely difficult for your chances of just even getting into playoffs or getting beyond. Finding yourself in Masters Madrid. It's a really rocky road that you have to go through. So. किसका भाई उसका ये क्या वापस रॉसी का ये क्या वो नहीं पता some good reads on both sides, like some good kind of understanding of the map and good ideas of like where the teams are going to go, but sometimes it is a lot of times coming down to firepower. I mean these players are really having some big moments. Whether you think about Saya, Xkure, Yay, Darion has been really good. So it's been Izu has had some just phenomenal rounds, of course, with Yay. So it's really kind of felt like a brawl. I mean, the rounds have been a lot faster paced than maybe as I was expecting. T1 is a little bit on the slower side. Either हो रहा है Seoul. Get it? Yay talked about it in the video. Gata Shakes 25. Okay, Arma, bye. Okay, see you. See you. Adjust to, or at least he felt when he came to Pacific was the intensity and the pace of play is way different here. And that is absolutely true, as you're seeing here today. But, I mean, he's handling it quite nicely. And, the Neon, he's had a couple awkward moments. But you have to understand, like, if you're watching Yay and you're seeing him run into a site backwards, it's not like he's making bad plays. He's doing that. He's doing selfless things to try to make entries for his team. And, yeah, sometimes it doesn't work. But that's his job. As the Neon in this case, that's the game plan that Bleed has. So he's doing his best here coming in and really putting up some, of course, good moments with the operator and stuff, but doing some dirty work as well that you're going to be called upon as a duelist. Yeah, and that's actually something I really like that you bring up, because I feel like, kind of since his departure from the Americas League last year, a lot of the conversation is, okay, well, Yay needs a team like Optic was that can enable him to play this. Maybe Yay needs a team where he can enable the other players to play a certain way. If this combination of players is playing off, it seems like that might be the direction that it's been taken in, rather than them bringing back the El Diablo of old. It's Yay being a damn good player, but also बोले थे 200 का कीबोर्ड मत यूज करो. Selflessly and enabling the rest of his team to मैं जेड खेल रहा हूँ आज से every day every night. रेस छोड़ रहा बोला तू क्या बातें कर रहे बड़े वे? क्यों? बस छोड़ रहा हूँ, नर्फ हो गया करके. अच्छा ठीक है, मैं जेड खेल रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है देखो? आज से नियॉन नहीं योरू. Him having that selflessness to come in here. इजू भाई के फैंस तो है भाई. Encouraging, and I think as a Bleed fan. इसका फर्स्ट है क्या टूर्नामेंट? शायद से, मैंने तो नहीं देखा कभी. बेंचो फॉक्सी 9 कौन ऑक्सी और 9 वो भी मार रहा था. ऑक्सी भी, इजू भी. ऑक्सी क्लाउड 9 से उसका भी पहला टूर्नामेंट वो भी मार रहा है. मैं भी एक बार खेल के आ जाओ फर्स्ट टूर्नामेंट बोल के. नहीं, तुम नहीं मारोगे, इतना तो भरोसा. As expected here today, I mean, we'll see how deep we go in this one, but this is right what you wanted. It should be 3 really good matches. One can only help, but first we got to get through this one. So, ideally, वो जेड का कॉस्प्ले मस्त है पर. And see who's going to be able to take that first round, because that's something that as we've been coming out of the halves, the pistols have been really rough for the side of T1. They need to have a strong start with a full buy coming into this one. So and that's why they're footing early. Maybe they can just run away with it. अरे बेंचो टट्टी आ रहा है, फिर भी मैं फाइबर कर रहा हूँ. करना बाबा, करना, निकालना टट्टी. सॉरी, गरम करके ठंडा कर दिया, क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं मेरे को पता है. Well, let's play a mini game while we wait for this to be taken care of, because we saw Crazy Guy. He's kind of living up to the name. He's bringing out a weapon in a couple of those rounds that we haven't seen too much of. He's bringing out the Ares. Yep. So let's play a game called Are You Smarter Than Brennan Hook? How much does the Ares cost? क्या जोक मारा समझा नहीं. The Ares. Oh, the Ares. Sorry, 1550. You are exactly as smart as Brennan Hook. Congratulations. Masters का जोक है. The answer is 1600. He said 1550, yes. Right? That's what he said. Okay. It's 1600. You're right. I thought you said the Outlaw, and I'm like, that's 2600, right? So no, I am not as smart as Brennan. इसका ही हो रहा है बे. Well, you ended up on 1550, so that's good. It ends up being you ran at the same level. I do my best.
एक्सटेंड बोल रहा है भाई क्या रॉसी भाई बस करो भाई अगर भगवान ना करे अगर ऐसा कुछ हुआ जिसमें ये लोग ने बोला दोनों टीम मिलकर डिसाइड करो और दोनों टीम बोलते वैसे भी ओटी है फक इट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 0 150 correct yeah and then it's going to 100 that's correct ये आधा घंटा लगेगा लग रहा है well yeah you do you are a chamber specialist I should give you some माउस पैड के लिए कवर लाया उस अगर कुछ ऐसा हुआ ना मेरा दिल trick question तो आज हो क्या बे यार सीधा सेंटिनल्स का भी करके सोऊंगा सीधा we're right there with you guys 24 hours live stream watch party challenge game's been going on for a while little buffer moments where we had to wait to get things resumed much like this one right now मला तर बारगरी चाहिए अर्नब भाई मत करो यार मत करो प्लीज 6:30 बजे कुछ भी इतना झूठ बोलोगे this isn't even the worst I've ever had oh yeah no we've had yay but yeah I'm people should take bets in the chat and guess how many coffees will I have by the end of today. कॉफी तो मेरे को भी चाहिए. Right now. What should I set the over under at? Well, I'll tell you how many I've had now. Okay. And then extrapolate from here how many more I'm going to have. मेरे मोबाइल में फुल नेट. I have had. मेरे मोबाइल में फुल रेंज फुल नेट पैक सब है. नेट पैक. सॉरी सब कुछ है. चैटिंग के लिए भी और अनलिमिटेड कॉल्स. I was sucking down the coffee like इंटरनेशनल भी है. भर दूंगा. भर दूंगा. ना पैसा चाहिए. Yeah. Totally worked. I have had half a Red Bull today though. That's where we're heading. Have you not had your coffees yet? I had like 1.5. You bought those well, it's sitting downstairs. Like 7 hours ago. I know. There is no longer any ice in my ice latte. ये आप लोग नेक्स्ट राउंड के कॉल दे रहे हैं. It is now a lukewarm latte. बिंग्स भाई का बोलो कार्बन फाइबर खाने टट्टी बाहर नहीं है. So far, flying in the dark. It's probably a bit more, of the same that we've kind of been seeing here. Yeah. So. Seems like it. Players seems like it from that camera perspective. Yeah. Let's give them a brief little moment. बिंग्स भाई इनसाइडर कुछ बताओ क्या हो रहा है. इनसाइडर. पहली बात तो आजकल भाई मुझे पहले लगा इसमें करेला पकड़ा है. That's true. Ours just sit right on top. Yeah. And when you have glass. केवल अगर तू इतने बड़े स्टेज पे जाएगा तो मेरे अलावा तू क्या पकड़ेगा. Ideal when that happens. Why don't you wear contact lenses? मतलब ये तो मानता है कि मेरा पकड़ेगा ही. I just think I don't know. I think I look weird without the glasses on. I think I've seen myself in glasses for so long because I think I started wearing them when I was 12. तेरे को मेरा चाहिए टीम बैग कोई सी नहीं. At this point, if I see myself without glasses, I think I look bizarre. ये टीम भाई. हिंदी नहीं पता था मतलब. भाई तेरा क्या प्रॉब्लम है रॉसी भाई? ऐसा क्या लाया तूने जो तेरा नहीं रिजेक्ट हो रहा है? You will wear contacts because she likes me better. देख रहा जी का मैच है तो शायद आज वो स्ट्रीम करेगा. Interesting. I mean, she'll come up to me and she'll take my glasses off and then go like. Meanwhile, we have some soundboard funds entertainment. बजाओ. Does wonders to my self-esteem, given that I wear my glasses. हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल. अरे तू जा रही. ये बेस्ट है ना. अरे तू जा रही. कोई हेटर आ गया ना सीधा ये बता देंगे. ओ भाई गलत टाइम पे गया तू. गांड फटी किसी की. भाई चैट में किसी की तो फटी होगी. जब भी स्ट्रिक्स इज्जत से खेलता है. और जब इज्जत से नहीं तब. और जब इज्जत से नहीं खेलता तब. चुप जादू. जब $multi-billion स्ट्रिक्स से कोई पैसा मांगता है. अरे भाई पर तू है कौन? तब मैं ये बोलता हूँ. अरे भाई बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है. अरे भाई ये कितने बज रहे हैं? ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है.
अरे मेरा वाला कैसे बज रहा? अरे क्या भाई जो कब से ये वाला। इसको टेक पे प्रॉब्लम आ रही है? अरे भाई पर तू है कौन? टिपन भाई एक और है। जब मैं मैंगलोर जाता हूँ आऊंगा। Excuse me, पूरा अरे पूरा क्या लास्ट का वो तो कर सेंसर पॉजी माफ करो टीवी माफ करो गाइस तुम्हारा बेस्ट साउंड बोर्ड क्या है बताओ निखिल भाई कैसा निखिल भाई व्हाट्सअप पोस्टर होता तो बहुत मजा आता वो कुछ फनी कर देता बात तो बराबर है स्ट्रिक्स भाई मैं तो मैंगलोर से ही हूँ हाँ हाय रिरी आज नहीं शुरू होने वाले इनका हाँ ना भाई कब स्टार्ट होगा कब आज अभी तक जी का मैच स्टार्ट हो जाता 4 घंटा सिर्फ वही था जी का पता अभी तक फर्स्ट मैप खत्म हो जाता इनका एक मैप खत्म नहीं हुआ चालू होने के बाद सो मैं ये गया बे वो बोलूंगा रॉसी मिरेकल लो सुना क्या ये भी मेरी गलती है ये क्या है बस है साउंड बोर्ड वाला सिस्टम मस्त है लेकिन चेंज करते रहना पड़ेगा और डालना सादा वाला है ये टाइम पास ये करेंगे अपन गेम में हाँ करेंगे करेंगे किसके साथ तो करेंगे इसके साथ तो करेंगे मैं तो बोला esports खेलते हो ये कर इतना ज्यादा पॉज हाँ यार क्या कर सकते हैं लाइफ इज डिफिकल्ट लाइफ इज डिफिकल्ट कौन सा गेयर खराब है इसका तो टट्टी करके आने का प्रॉब्लम ये है मैं ऑन स्ट्रीम ऑन स्ट्रीम ऑन स्ट्रीम ऑन स्ट्रीम तो ये चालू हो जाएगा देख वो डाल रहा है हेडफोन ऑन स्ट्रीम करना जाना मैं हूँ और ठीक से हाल है कोई कोई हाल नहीं मेरा मेरा हालत ही खराब है क्या भाई पहला दिन है मेरा स्ट्रीमिंग का पहला दिन सोचा अच्छे से स्ट्रीमिंग करूंगा 11:30 बजे उठा मैं सॉरी 8 बजे उठा पता है मैं 8 बजे उठा एक इवेंट खेला उसके बाद फिर मैंने स्ट्रीम चालू की सोचा आज का दिन एकदम स्मूथली जाएगा एकदम अच्छे से स्ट्रीम करूंगा मैं भाई क्या बीटी है भैया टेक्निकल टाइम आउट 3 घंटे तो टाइम आउट था इनका बीटी यार I wish I ये सच्ची चला गया क्या क्या कर रहा है फाइबर दिन भर खाते रहता है बहुत सड़ी का कल रात के 2 बजे के बाद अब भी खाया हो मैं पिक्स भाई लेजेंड कल 3 बजे स्ट्रीम कर रहे थे posing sideshow space over something like I've never really done that before, so it's a bit out of my ballpark. Hey guys, एक और chat interaction idea. I really have a ton of respect for people who do that because it's so hard. अक्षु भाई कैसे हो? Because you have to be so perfect and precise, and if you make ये क्या हो गया mistakes, you अचानक gotta go मेरे back. को ड्रैग कर दिया जनरल में बैठे थे. Are you not the generals?
खाओ। हाँ जनरली हूँ मैं तो। कैसे ये किसकी आवाज है बे? अक्षय हाँ अक्षय मैं दीदी वही हूँ। बैंगलोर वाला अक्षय। हाँ मैं भैया। हेलो कैसे क्या काम कर रहे थे डिस्कॉर्ड पे अकेले बैठ के? शुभ भाई वो कर रहे थे शायद जनरल में बैठ के क्या वेट कर क्या? रहे थे। नहीं वेट नहीं कर रहे हाँ हाँ वेट कर रहे थे कि कोई ज्वाइन करेगा फिर बात करेंगे। क्या कर रहे थे बताए पीड़ा आपका अरे दुख नहीं मैं दर्द पीड़ा बताए। गलती से ज्वाइन करके आई पीछे थिंक प्रेजेंटेशन बना लड़कियां रहा ज्वाइन करने वाली थी जनरल। क्या हम बनाते हैं हम हेल्प करते हैं टॉपिक बताए प्रेजेंटेशन का। था। अरे एक डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट है उसका प्रेजेंटेशन है। ठीक है ठीक है। मेरा एक्सपर्टीज है उसमें। 7 एक रिले रोबोट चलाने हैं एक बोर्ड से जिसके साथ साउंड भी प्ले होना चाहिए। बराबर। ठीक है साउंड मोबाइल से प्ले कर सकते हैं। हो गया विक्स भाई हो गया आज का। देखा इतना और easy कुछ है प्रोजेक्ट प्रॉब्लम्स बनाने का भाई 2 भाई? मिनट में हो गया इसका। इजी लव यू। लव यू टू विक्स भाई। ठीक है मिलते बाय बाय बाय। क्या आजकल के लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम। तू चूज कर आज हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पैंच ये होते ही कंटेंट प्लानिंग स्पॉन्टेनियस। उठा एक को। हेलो हेलो विंग्स बाय। हाउस यूज यार तेरा नाम क्या है? एम डॉट डॉट लिख रहा है गाली हाँ है? एम डॉट डॉट क्या है भाई? मिस्टर है विंग्स। मिस्टर ओ मिस्टर भाई कैसे हो? सब बढ़िया विंग्स आप बताओ। सब बढ़िया। कुछ है तुम्हारे दुख दर्द? आज हम दुख दर्द पीड़ा सॉल्विंग सेशंस कर रहे हैं एपिसोड 1। रिजल्ट आया विंग्स भाई आज। कौन सा कोई रिजल्ट? टेंशन नहीं कोई टेंशन नहीं है कोई टेंशन लिंक नहीं। की ओपन नहीं हो रही। ठीक है कौन सा एग्जाम कौन सा दिया था? सेकंड ईयर इंजीनियरिंग। ये ओ स्ट्रिक्स का भाई एक्सपर्टीज। स्ट्रिक्स तेरा एक्सपर्टीज है। बताओ रिजल्ट क्या है बताओ। अरे बहुत से लिखे लिंक ओपन नहीं हो रहा रिजल्ट क्या है बताओ। ये कैसे एक्सपर्टीज है तेरा? अच्छा सब्जेक्ट्स बताओ सब्जेक्ट्स बताओ। अबे रिजल्ट आ गया है उसका सब लिंक ओपन नहीं हो रहा तो है। सब्जेक्ट्स तो बताओ जिसका एग्जाम दिया। सी प्लस प्लस ऊप्स C++ बैकलॉग होगा शायद। एफडीएस डेटा स्ट्रक्चर। थिंग्स में आपके दिमाग से ऊपर से आ रहा है? नहीं मेरे को डेटा स्ट्रक्चर पता है। क्या रहता है बताओ। बता समझो तेरे को कोई पसंद आई। हाँ ठीक है बराबर। उसका डेटा लेने का उसको खाने में क्या पसंद है। अच्छा समझो घूमने का क्या पसंद है। हाँ फिर डेटिंग का एक माइंड में एक स्ट्रक्चर बनाने का डेटा स्ट्रक्चर। अच्छा करेक्ट करेक्ट। दूसरा स्ट्रक्चर बोलता तो तुम लोग मेरे एंड करते मेरे को पता है इसलिए मैं डेट का बोला। हैशटैग ओपी। और कंप्यूटर ग्राफिक्स। ये तो इजी है भाई। कौन सा चाहिए 30 90 40 90 पेज? कौन सा चाहिए? ये तो इजी है भाई। इसमें पास होने का क्या है भाई? पैसा देने का। अच्छा आपने कौन सा ग्राफिक कर लिया फिर? मैंने ये क्वेश्चन है ये दिस इज अ क्वेश्चन यार। 3050 है लैपटॉप में। ओ भाई मेरे हिसाब से 70% मिलेगा इसका एग्जाम्स में। हाँ मेरे को भी लग रहा है। आपका एक्सपेक्टेशंस क्या है? मेरा बैक ना लगे। बैक मतलब टपकने का? यस वैसे तो पास हो जाऊंगा। हाँ बट वापस देना पड़ेगा। 80 सीजीपी है 8 सीजीपी है कुछ तो आ रहा हूँ भाई। मेरे को सिंपल मालूम है टपकने का नॉन टपकने का। तो टपकेगा किसमें नहीं टपकेगा? 8 CGPA इतना होशियार हो आप? हाँ महाराष्ट्र से ही। ए तू सेकंड ईयर इंजीनियरिंग कर रहा है? अबे स्ट्रिक्स एक्सपर्टीज है। स्ट्रिक्स तो कौन सा इंजीनियर है? थर्ड ईयर ब्रो कंप्यूटर साइंस। थर्ड ईयर तो सेकंड ईयर का तो आंसर तो दे ही सकता है। दे सकता हूँ भाई दे सकता हूँ बताओ। पूछे इनहेरिटेंस क्या होता है स्ट्रिक्स में? वो जो इसके बाप से मिले इसके अकाउंट में है अभी। इजी है। मैं थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। ये वाला क्वेश्चन इजी है। ये वाला मैं आंसर दे सकता हूँ प्लीज। प्लस ये वाला मेरे को दे दे स्ट्रिक्स प्लीज। और पूछो
और पूछो क्या नेक्स्ट चलो दो व्यूअर्स को बोर होगा। तुमने खाया क्या कुछ? हाँ बाय हम खा रहे एक दूसरे टीबोन को भी आता होगा ये सब। यार आपको टीबोन से कुछ बात करने का बिजी था। मेरे को भी लव यू टीबन बाय। हेलो टीबन बाय। नहीं टीबन भाई इग्नोर करते हैं, नेवर माइंड। घर लेने से पहले ऐसा नहीं था, घर लेने के बाद कोई हाँ हाँ मिलते मिस्टर बाय 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 लव यू बाय बाय बाय। टीबोन भेंचो शर्म बेच दिए क्या रे लौड़े। टीबोन भाई फैन को इग्नोर कर दिया। हाँ ओ शर्म बेच दिए क्या? कौन सा कॉलेज पता नहीं उसका। वो फैन कब से बात कर रहे हैं तेरे से? हाँ भाई इग्नोर कर दिया, वो बोल रहा है लव यू। वो कम किया था, उसका आवाज पूरा ज्यादा आ रहा था इसलिए। लव यू भी बोल रहा था वो। हाँ लव यू टू। चल रहा क्या आप भी, क्या फायदा। नाम बताओ उसका जो आके गया। पता नहीं। चलो टिबन तेरी बारी। मैंने और स्ट्रिक्स ने उठाया एक को। मैंने तो अच्छे वाले मेरे को। को मेरी दिमाग काम नहीं कर रहा, मेरे को भूख लग रही है, बस खाना दे दो मुझे। हम लोग काम कर देंगे, तो नीचे से एक को ड्रैग कर लकी विनर। अरे बहुत काम करना पड़ता है। देख रहा है फैंस को ड्रैग भी नहीं कर रहा है घर लेने के बाद। मैं सीधा सब गेम्स करता हूँ फैंस के साथ। क्या पढ़ना है मेरे को, कुछ चैट पढ़नी है क्या? जी का मैच कितने बजे चालू होगा पता नहीं यार, जब ये खत्म होगा तब स्टार्ट होगा। चैट छोड़ के गए वो लोग। ठीक है भाई हो गया भाई, हो गया आई थिंक कल होगा। भाई ऑडियंस लेजिट सो गई है ब्रो। यार कोई क्यूट सा कोई दिख रहा है? देख रहा हूँ मैं, वही कब से ढूंढ रहा हूँ। मेरे को तो बहुत दिख रहे हैं। कहाँ पे देखना बैकग्राउंड में। अरे मैं डिस्कॉर्ड का बात कर रहा हूँ। अबे वो खाना खाने के लिए गया डिस्कॉर्ड में। अब उसके बाद ये लोग खाना खाने के लिए जाएंगे। डिस्कॉर्ड में नहीं है बे। फ्रस्ट्रेट है बे वो बंदा। हाँ क्या ही करेगा ऐसे वीटी में खेल के। Can't help it, part and parcel of esports। पहले बंदे को लेते हैं। ये ने बोला होगा चल रहे चलते बाहर जाके। हेलो वन पीस। हेलो कैसे हो यार वन पीस भाई, आप कहाँ से हो? मैं इंदौर से हूँ। नॉर्थ मतलब पूरा अक्का नॉर्थ में आप ही हो? अरे नॉर्थ नहीं एमपी मध्य प्रदेश इंदौर स्टेट। ओ इंदौर से हो। हाँ हाँ ठीक है क्या करते हो यार, कुछ दुख दर्द पीड़ा है आपके लाइफ पे? 12th में वो एग्जाम आने वाली है, 22 को एग्जाम है। पढ़ाई वढ़ाई किस में, कौन सा सब्जेक्ट सबसे हार्ड लगता है? मैं सिखा सकता हूँ। अकाउंट्स। क्या? अकाउंट्स ये तो आता होगा बिग्स, झूठ मत बोलना, ये तो आता होगा। आता है। हाँ चल बता। इसमें क्या प्रॉब्लम कहाँ पे आता है तेरे को? कैश फ्लो के सब में। किसमें? कैश फ्लो कैश फ्लो क्या है? जिधर से आता है वो इन, किधर जाएगा वो आउट, इजी। और पेटी कैश वो है जो एकदम छोटा छोटा अमाउंट रहता है तो पेटी कैश में डाल देने का। ठीक है। इसी है क्या आपको लगता है मैच स्टार्ट होगा? भाई सारा मूड ऑफ हुआ बे। वो उसका आंसर नहीं है मेरे पास। अच्छा खासा 12 था, अच्छा खासा। टिबन भैया टिबन बंदा 12th में आंसर कर दे प्लीज। क्या सवाल है, पूछो मेरी जान पूछो। आपको एक रील में टैग किया था कल मैंने। कौन सा रील भाई? बंदर की कुंड जहाँ पे दिख रही थी। नहीं उसमें तो स्कैम हो गए। दिखा नहीं सकता ऐसे। ऐसा कौन सा रील? अच्छी रील थी। मेरे को एक अरे अच्छी रील थी। हाँ 12th में एग्जाम नहीं है। ये 22 को इंग्लिश का। भाई मेरे को एक चीज जानने का, मेरे अंदर से उतावल हो रहा है। अभी तू Gen.G है बराबर। आजकल के 12th के बच्चे लोग क्या क्या सीखा है? तुमने गाली वाली सीख ली है पूरी? पुणे में कहाँ रहता है? मैं रहता हूँ पुणे में कोथरूड में। अरे कॉलेज नहीं आपको मिल गया राइट्स? यस मिल गया। वो 12th स्कूल है, मैं भूल ही गया। अबे 12th कैसे स्कूल है भाई? हमारा तो कॉलेज होता था। हाई स्कूल है बाबा। हाई स्कूल हमारे लिए होता था 10th तक। 12th कॉलेज है भाई। कॉलेज हाँ नहीं यहाँ पे नहीं है। एमपी में नहीं है। हल्का सा डेफिन हो जा वन पीस भाई। भाई 12th में इसलिए तू भोसड़ी के तू ऐसा है वो वैसा नहीं है। उसका 12th स्कूल है, अच्छी बात है। तू जल्दी कॉलेज बोल के जो आगे गया ना, इसलिए तू ऐसा हुआ है आज। अरे बाबा हमारे लिए 10th तक हाई स्कूल है। अनडेफिन हो गया। सच्ची बोल रहा हूँ। अनडेफिन हो गया। अरे कोई दिक्कत नहीं, बोलो। तो मैं जानना चाहता टीम पे सुन लिया। स्कूल में क्या क्या गाली तुम सीखे हो?
देता नहीं है, आती है मगर देते नहीं है, वैलो में निकल जाती है। नहीं मतलब आती है, मतलब सब कहाँ से आती हो है। मेरी जान, कहाँ से हो? हाँ हाँ, इंदौर MP। भाई सब 12th में सब गाली आती है, मेरे को कभी आती है 8th में। मार्च 22 को एग्जाम है आपकी? यस, मार्च नॉट फेब। मार्च नॉट फेब। और इंग्लिश का पेपर है तुम्हारा? लव यू। फर्स्ट। एक हफ्ते में एग्जाम है फाइनल? एक हफ्ते में एग्जाम? बोर्ड बेस्ट ऑफ लक। 12th CBSE। हो गई मेरी भाई। हाँ थोड़ी हो गई, तभी तो 4 घंटे से स्ट्रीम देख आज रहा हूँ। हम एजुकेशन क्लासेस, आज लेट्स टॉक इन चलो आज हो जाए, इंग्लिश के एग्जाम है ना? लेट्स टेक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन या नाउन एंड वर्ब? बता। या ये सब नहीं आता। यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर इन बोल दिया कि स्ट्रीम देख रहा था मैं, कैसे आएगा? सुनो एक मिनट, ठीक है, मैं सिंपल से सवाल पूछता हूँ, ठीक है? व्हाट डू यू मीन बाय पास्ट टेंस एंड प्रेजेंट टेंस डिफरेंस? लड़की छोड़ के गई पास्ट में पास्ट की बात होती है, हाँ बस सही, छोड़ के तो गई। रोना आ जाएगा। ये सेकंड एग्जाम कौन सी है? ये क्या है? वेब एप्लीकेशन। जी ये क्या होता है? हमारे जमाने में नहीं था। Which is the Next most day ही है। frequent website you visited yesterday night? What? What? ठीक है Which is the most पढ़ाई करो तुम, पढ़ाई करो। website you मैं visited स्ट्रीम yesterday देखूंगा, night? स्ट्रीम देखनी है मेरे को, स्ट्रीम देखनी बाबा है। इसका जवाब तो दो। frequent मैं website you visited? अभी भी पूछ रहा है, ये चला गया वो। इसलिए मैं ड्रैग किया। अरे वेब एप्लीकेशन का सवाल पूछ रहा था। इसको ड्रैग कर रहा हूँ, इसका नाम थोड़ा अच्छा है। तो इसको मैच ड्रैग की मैच कंप्लीट करना बाबा। ड्रैग करते ही ज्यादा आवाज क्यों आता है? इसका नाम देख। इसका नाम अच्छा है। नाम में कोई ना कोई गाली खाने वाला है। इसका नाम अच्छा है। Strixx हेलो हेलो बॉस ठीक है। अबे क्या भाई साहब आपका इतना यूनिक नाम क्यों है भोसडी के करके? मालूम नहीं, फनी लगा इसलिए। कहाँ से हो मेरी जान आप? हूँ तो महाराष्ट्र से, पर रहता हूँ झारखंड में। ओह, एंड व्हाट आर यू दर्द एंड दुक्स? मेरा भी बोर्ड्स है। हैं? सबकी बोर्ड्स का ही सीन है क्या अभी? भाई तुम लोग स्ट्रीम क्यों देख रहे हो? ऐसे देख पढ़ाई हो गया भाई। एक हफ्ता आया भाई। हेलो एक हफ्ता है भाई, एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ेंगे। तुम्हारा कौन सा एग्जाम है नेक्स्ट? हम हेल्प करते हैं। 20 सेकंड किसको भाई? 20 सेकंड ही है। इंग्लिश 20 सेकंड का सबका इंग्लिश। अबे सब लोग क्या सेम स्कूल में है क्या? ओ भाई ये सेंट्रल होती है क्या? एक सेकंड, इसके पहले कि ये वापस कुछ साइट वाइट पूछे, मैं आपको ड्रैग करता हूं। बेस्ट ऑफ सेकंड वेब एप्लीकेशन है क्या आपका? बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। वापस ले ऊपर। यार मुझे एक बात बता भाई, किसी को अगर ड्रैग उनकी आवाज बाय डिफॉल्ट ऐसी इतनी ज्यादा क्यों है? कोई बता सकता है? हेलो आवाज आ रही है? एक सेकंड कम करनी पड़ती है आवाज। चेरी को मूव कर। करियो कैसे होगा? क्लिक करके बिग स्लैब। सेम बोर्ड है सबकी CBSE। ओ भाई इसका भी बोर्ड है क्या? पूछते कैसे हो मेरे भाई? नाम क्या है भाई की? M। हेलो भैया, हेलो हेलो हेलो। भाई आपका भी बोर्ड एग्जाम है कुछ? नहीं मैं तो स्ट्रिक्स भैया के कॉलेज में हूँ। क्या बात कर रहा है? स्ट्रिक्स भाई वो आप स्ट्रिक्स भाई, अरे मैं बताऊँ आपको स्ट्रिक्स भाई मेरा अच्छा। स्ट्रिक्स भाई याद है आपको, आपका फाइनल का एक कास्टर था बहुत घटिया सा? वो मैं था। सबसे पहले मैं रुक जा, MIT के अंदर स्ट्रिक्स को मैंने सर्वर म्यूट दिया है। मेरे को जानने का है इसकी दोस्ती। इसकी आज गांड मार। स्ट्रिक्स के कितने गर्लफ्रेंड है? अरे मैं फर्स्ट ईयर में, वो थर्ड ईयर में, मैं क्या अरे कोई भी ईयर में ये किसके साथ घूमता है? मैं एक बात जानता हूँ भैया, क्या आता है? एक बात जानता हूँ, फाइनल्स में स्ट्रिक्स भाई ने जरा हगास कर दी थी। ठीक है, किसमें फाइनल्स लैन। लेकिन कितने लोग ने बोला ओ स्ट्रिक्स नाइस ट्राई, लेट्स गो आउट फॉर क्लब। बोले लोग बोले। कितने लोग थे? थे
अनम्यूट कर, अनम्यूट। नंबर नहीं पता वो। प्लीज प्लीज कितने लोग, साइड ऑफ कितने स्टोरी लड़की मुझे लोग सुनना है दिखे? प्लीज। इसका साइड कुछ नहीं, आराम ही बच्चा है मेरा। अरे प्लीज बाबा मुझे सुनना है प्लीज प्लीज। इसकी साइड ऑफ स्टोरी। भाई सच्ची बता, कोई नहीं था, सच्ची बता। नहीं थे आपके फैंस थे। कौन भाई, कहाँ पे थे भाई? आपको दिखे नहीं, आप वैसे मैच में फोकस थे। ये फंसा मैप साला। फाइनल्स क्यों आ रहा मालूम है? मैप देखने की जगह पे ना मतलब और मोह पे टेढ़ा हो रहा था उसका आँख, जो इसलिए मोह आ पे रहा डैश मारी थी उन्होंने। भाई कुछ ये झूठ बोल रहे भाई। नहीं वो सब ठीक है, लड़का कैसे कॉलेज में ओवरऑल? अरे आदमी तो बढ़िया है स्ट्रिक्स भैया। वैसे सुबह बर्सिडीज वगैरह किस में आता है? अरे कॉलेज वो में? नहीं देखा मैंने, बस उनको ऐसे ही 1-2 बार देखा है। उस दिन कैंटीन में बैठे थे कुछ। दिखता ही नहीं है कभी ना, कभी पैसा आपके वाला है। आपके कॉलेज में जेट लैंड हुआ है? जेट नहीं। ठीक है, जेट नसीब आप आ वाला जाओ जेट। बिंग्स भैया, आप आ जाओ। मेरे पास नहीं है। इसको तो रिक्शा में वैसे मैं बिंग्स भाई और तीबन भाई आपको भी मिल चुका हूँ पुणे मीटअप। क्या लव यू। कौन सा पुणे मीटअप? हम लोग अरे को वो तो एक बानेर पुणे में हुआ मीटअप था, में वो ही नहीं। बानेर मीटअप बानेर में। मैं तो अलग गया था लेकिन सोलो पुणे नहीं मीटअप। थे आप थे आप वो उधर वो नहीं क्या डेविल ये रेस कौन है वगैरह भी बताइए, थे। मुझे भी नहीं पता कौन है। हाँ तो वो जो उधर मैं, लैंड हुआ पता था। नहीं कौन है। हाँ तो मैं अकेला था। टिबोन कहाँ से मिला नहीं तेरे को? तीबन भाई अलग हुए थे। मैं तीबन कहाँ भाई से राका मिला? जोन वो बॉलर में हुआ था। राका अच्छा, भाई कौन सा फन राका? में। दोनों का नाम लेके पुणे बोला मिला है। अरे अब हाँ दोनों मिले थे। हमारा वो पार्टी का। हाँ हाँ भाई वो पुणे में था ना वो। उसी यार टाइम पे यार, तो हम लोनावले गए थे। that's मैं cool। था क्या तभी? बाबा नहीं तो आप नहीं थे। लोनावला आया था, उसमें नहीं आया। वो पापा था। पे- ठीक, कुछ कुछ एक सीक्रेट बता के जा यार प्लीज। कुछ तो लीक्स दे यार। प्लीज। कुछ है ही नहीं भाई, कुछ करते ही नहीं हूँ मैं। अभी तक तो मिले नहीं यार। टपरी में चाय के साथ कुछ करता है के? क्यूटीज लेके बैठते हैं। हाँ अन्नी क्यूटीज टपरी में चाय कहाँ पे भाई? दिखे थे मेरे को, आप बताओ। दूर से दिखा। मैं थोड़ा दूर तक गर्दी थी। ये एनके फंस गया श्री। ये शिक्स गया। झूठ बोलते हैं भाई सब लोग। आए एक चलो मिनट थैंक एक मिनट यू एक आपका। एक मिनट देना बस मेरे को कोई किसी थैंक यू तरह। नहीं हम ड्रैग ही कर रहे हैं। आपका नाम तो बता के जाओ। अरे मेरा नाम अमेय। याद रखना अगर कर परसों इसको ऐसे कुछ याद हो रखूंगा गया ना, अमय। अमय को कुछ हो गया ना, पुलिस भाई स्ट्रिक्स को धरे। थैंक यू फॉर द चलो बेस्ट प्रोटेक्शन। ऑफ लक वैसे स्ट्रिक्स एग्जाम भाई के लिए। अगर आप जीत जाते तो मजा आता भाई। ये बहुत कौन सपोर्ट है? किया था भाई फेक, आपको। इतना फेक आईडी। व्हाट द फक। इतना मैंने बोस्ट किया था ये पता है, मेरे इतना कॉलेज में फेक आईडी स्ट्रिक्स है, कौन मेरे है? कॉलेज में स्ट्रिक्स है। +1 मैं ट्वीट पे ट्वीट कर रहा था T610 बैक ये वो। तू मेरे को रुला मत रे। चलो मिलते हैं। सॉरी भाई। अब थैंक यू सुनने भाई, का थैंक यू एग्जाम लेने बेस्ट के ऑफ लिए, लक। मजा चलो आया। बाय 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 थैंक बाय। यू बहुत मजा आया आप लोगों से मिलके। सपना पूरा हुआ भाई। I love लेट्स you. गो। इमोशनल कर दिया। थैंक यू बाय बाय। बाय बाय। वे वो सच में इमोशनल हो गया क्या? सारा इन्फो आ गया आपका आज। आफ्टरनून नैप का टाइम हो गया टिबुन तेरा? बाबा नहीं रे बाबा, मेरे को खाने का टाइम हो गया, वो प्रॉब्लम है। ये कौन से कॉलेज में? MIT में ही है। सर कब स्टार्ट होगा? भाई ये चीज प्रूव करता कि मैं या मैं ये मेरा नाम देख MITHUL MIT स्ट्रिक्स का सारा इन्फो आ गया इधर बिग्स भाई। मैं इसके टीम और कॉलेज में ही हूँ। लैंड छोड़ के पिमलिको कैफे वगैरह में बैठा है उस दिन। ये फंस गया भाई कितने झूठ बोलते हैं भाई, कितना झूठ। गेमिंग कैफे है क्या ये? भाई मैं क्या बोल रहा हूँ? बैच ओटी है, कॉइन टॉस करे। लाइन में तो ये होता था। चालू ही नहीं। भाई हमारे CS के लाइन पे तो ये होता था, ओटी जाता था, कॉइन टॉस, स्टोन पेपर से। जेड भाई कैसे हो जेड भाई? ये क्या कर स्ट्राइक? कभी कभी लगता है फर्स्ट डे वॉच पार्टी करने का ही नहीं, सारी टेक्निकल डिफिकल्टीज देखने के बाद सेकंड डे करो। ए रुको मैं टट्टी कर गया। हाल बाल मत बोलना। चलो गया बिग्स। चलो गया। भाई तू और पिंकी दोनों सेम।
मैं बोला मैं टट्टी करने चलो, मैं बोलती मैं बुला लूंगी। मैं बोला हैं लाल। आर्यम भाई कैसे? आर्यम भाई सरनेम डाल दिया क्या सीन? अरे भाई नाम चेंज किया आपने? 69 वॉचिंग आया 69। तब तक जिंग क्या कर रहा है? जिंग को देखेंगे अपन। जिंग भी वही कर रहा है। करी क्या कर रहा है? करी भी वही कर रहा है। कम लोग हैं वॉच पार्टी में। कर रहे वैसे तो। फ्लैश भाई कैसे हो? मैं कोथरूड में रहता हूँ, मिलो कभी। मिलेंगे ब्रो, मिलेंगे मिलेंगे। चला गया क्या ये अग्ने? अगने गया। Shit. टीबोन तेरा आफ्टरनून नैप का टाइम हो गया यार। मैं नहीं कर रहा है आजकल आफ्टरनून नैप। रात भर स्ट्रीम करता हूँ, सुबह फुल चिल। ओह मैं मुझे लगा तो सब छोड़ के माउंटेन्स में गया भाई। जाने का तो प्लान है। फिर पता है मैं आज तक माउंटेन्स में नहीं गया। मतलब जो यहाँ पे माउंटेन्स है वो वाले माउंटेन्स में गया हूँ, बट वो बर्फ वाले माउंटेन्स में कभी नहीं गया हूँ यार। जाना है बे एक दिन नॉर्थ साइड, वो कभी नहीं गया पता है। इतना खर्चा फिर भी टेक्निकल इशू, क्या करेंगे ब्रो, इट हैपेंस। एमएटी में तो बहुत पार्टीज होती है मैंने सुना है भाई। मैं तो नहीं हूँ एमएटी में। सिक्स भाई प्लेसमेंट का क्या सीन है भाई? प्लेसमेंट ही नहीं मिल रहा है पापा। कुछ मटन नहीं होने वाला है आज, सिर्फ मटन मिलेगा रात को शायद। इवो भाई बैडमिंटन प्रो आप? नहीं रे, बिगिनर। बहुत ही सब गंदा भाभी को हरा के बचता ये इंस्टाग्राम। भाई मुझे तो अगर कोई अच्छा प्लेयर आए तो मेरे को बहुत मारेगा, ऐसा लग रहा है। जैसे कि मैं भाई सच्ची में यार 5 घंटे में 4 घंटा जस्ट चैटिंग था वे आज। हाँ ना, 1 घंटा मैच देखा बस। ऊपर से एक मैप खत्म भी नहीं हुआ भाई सबसे लंबी वाली वो है वे टेक पॉज। भाई। फर्स्ट वॉच पार्टी उसमें भी ये सब। इससे बड़े आज सिर्फ टेक पॉज डे रख लेते, तो कल से चालू कर देते। मेरे को तो लग रहा है अभी नेक्स्ट मैच तो नहीं होगा। ये सिर्फ इसका प्रॉब्लम है रॉसी का, नहीं रे। बेस्ट ऑफ 3 है, सब बेस्ट ऑफ 3 है। मेरे को तो लग रहा है। मैच तो मतलब 8 बजे तक चालू होगा। मेरे को लग रहा है कल ही होगा, क्योंकि नहीं, होगा तो आज नहीं, क्योंकि कोरिया में रात हो गई। हाँ इसलिए कल ही होगा मोस्टली। अभी 7:46 हो गया। अबे 8 बज गए रे वो। हाँ फिर नींद आएगी वो लोग को खेलते खेलते। मैन तो फिर नहीं होगा, मेरे को लग रहा है नहीं होगा। मैं चेक करूं। चेक करो। Strixx back, can you help about how to join the esports matches of Valorant? Look, esports में आना है, अच्छा खेलो, अच्छा खेल रहे हो, तुमको लग रहा है आ सकता मैं esports में, टीम ढूंढो या फिर टीम बनाओ। टीम अच्छी मिलने के बाद ओपन टू प्ले टूर्नामेंट्स रहते हैं, बहुत सारे टूर्नामेंट्स रहते हैं, उनमें रजिस्टर करो बराबर। रजिस्टर करने के बाद देखो जीत रहे हो कि नहीं, हो रहा है कि नहीं। अगर कुछ हो ही नहीं रहा तो वर्क ऑन योर सेल्फ, वापस रैंक ग्राइंड करो।
रेडियंट जाओ, इमोर्टल जाओ, रेडियंट जाओगे लोग नोटिस करेंगे, लोग नोटिस करेंगे तो फिर लोग ऑर्ग्स अप्रोच करेंगे, भाई ये तो रेडियंट है भाई, इसको मैसेज करेंगे, भाई और में खेलेगा, हमारे साथ खेलेगा, फिर तुमको मैसेज करेंगे और फिर और ज्वाइन करोगे तुम, अच्छे अच्छे प्लेयर्स आएंगे तुम्हारे साथ खेलने में। टीम ही तो नहीं मिल रही, टीम नहीं मिल रही, रैंक ग्राइंड करो, रैंक ग्राइंड करोगे, रैंक पुश होगा, ऑटोमेटिकली ऑर्ग्स विल नोटिस यू। ओ टिमन भाई, संडास में सबसे बेस्ट आइडियाज क्यों आते हैं? क्या आइडिया है? ब्रेन में वेस्टेज निकलता है ना। मेरे को एकदम सेक्सी ट्वीट आइडिया आया है जी की तरफ से, सेक्सी। बोलो। नहीं होगा ना, आज मेरे को लग रहा है नहीं होगा। फ्रॉम जी फाइटिंग टू जी विनिंग टू जी वेटिंग, वी हैव कम अ लॉन्ग वे। अच्छा है, अच्छा है। सच्ची बोल रहा हूँ, बार कुछ अच्छा मारा भाई मैं बोल रहा हूँ, संडास इसके पीछे का साइंस है कुछ। बोलता है क्योंकि तुम अरे एक बात बताओ, 8 बजे हो गया उधर, अब कैसे होगा बे? क्या 2 बजे खेलेंगे? सिर्फ एक ही मैच होगा। हाँ बे, कल शायद 3 मैच हो सकते हैं। वैलो खेलने भाई, भाई क्या करूं, वैलो मैच स्टार्ट हो गया, वैलो खेलते खेलते। अगर ऐसा है तो आपको टीम क्यों नहीं आया? आया था शेष भाई, आया था। तेरा सीनियर चढ़ना है, कौन भाई? कौन है भाई? रणदीप सिंह, वेलकम टू द स्ट्रीम। इससे कुछ आइडिया लगाओ यार एंटरटेनमेंट का। क्या खेलना है? वही मैं बोला, वो खेलो क्या रहता है? हाँ मछली पानी में गई खेलते हैं। आ जाओ, आ जाओ। हाँ टिबन मछली पानी में गई। पहले बिंक्स, फिर मैं, फिर टीबोन। क्या करनी है मेरे को नहीं पता, क्या करनी है? देख, एक मछली पानी में गई, ठीक है, ये गेम है। ठीक है, ठीक है, मैं अगर बोलूंगा एक मछली, तो स्ट्रिक्स बोलेगा पानी में गई, तू बोलेगा चपक, फिर मैं बोलूंगा एक मछली, चपा। सुन पूरा सुन भड़वे। मैं बोलूंगा एक मछली, स्ट्रिक्स बोलेगा पानी में गई, ठीक है, तू बोलेगा छपक, ठीक है। खाना खाया? हाँ खाया मैंने। तो ये गेम है। तो सुन ना, ये एक मछली वाला राउंड हो गया। जब मैं बोलूंगा 2 मछली, तो स्ट्रिक्स बोलेगा 2 मछली, नहीं तू बोलेगा हाँ हाँ हाँ। टीबोन से नहीं होगा। अरे बोलो ना। अरे मतलब रिपीट करते जाएंगे, जितने बार 2 बार होगा तो 2 बार रिपीट करेंगे। बोलने का ना। नहीं गांडू, फिर क्या? अगर समझ 3 मछली बोला मैंने, तो 3 मछली 3 बार सुनाई देना चाहिए, ठीक है। मैं 3 मछली बोला, 1 बार सुनाई दिया, फिर स्ट्रिक्स बोलेगा 3 मछली, 2 बार सुनाई दिया, तो मेरे को भी 3 मछली बोला। 3 मछली, फिर मैं बोलूंगा पानी में गई, वो बोलेगा मैं समझ गया। चलो जितना मछली उतना बार उतना वर्ड्स, ठीक है। पहला मैं, फिर स्ट्रिक्स, फिर बवासीर। हाँ मैं समझ गया। एक मछली पानी में गई, चपक। 2 मछली, 2 मछली पानी में गई, चपक। अबे लौड़े, तेरे को चपक बोलने का। तेरी गांड बराबर जा रहा है। मछली बस वो मैं समझ गया, 2 बार चपक बोलेगा। हाँ जी चलो। हाँ, एक मछली पानी में गई, चपक। 2 मछली, 2 मछली पानी में गई, चपक। 3 मछली, तेरी मछली कान में डाल दे तूने मछली, और डीप फ्राई करके खा ले। 3 अबे 2 मछली का 2 चपक थोड़ी हुआ है, सिर्फ स्ट्रिक्स ने बोला 1 बार चपक, दूसरा प्लीज ब्रेन लैग हो गया। आज समुद्र के सारे मछली जाने वाले। सीधा 2 से स्टार्ट कर। पागल हो गया क्या? एक मछली, फास्ट एक पानी में गई, चपक। 2 मछली, 2 मछली पानी में गई, चपक। 3 मछली, 3 मछली पानी में गई, चपक। 4 मछली, 4 मछली पानी में गई, पानी में गई,
पानी में गई। चपाक चपाक चपाक। चपाक। 5 मछली। 5 मछली। 5 मछली। 5 मछली। 5 मछली। 5 मछली। हक दिया। हक दिया। हक दिया। हक दिया। हक दिया। अरे 5 तो हुआ। नहीं 6 हुआ तेरा। भाई मेरा ओबीएस गया मछली के चक्कर में। क्या बात कर। वाइटल भाई कैसे वाइटल भाई व्हाट्स अप। लव यू फॉर द रेड विंग्स भाई। वापस भेजो चालू हो गया। 5 ही हुआ बराबर किया यार। नहीं बराबर। भाई पब्लिक बोल रहे 5 ही हुआ। वो तेरा पब्लिक है करके बोल। उधर भी ट्विस्ट है। भाई सही है। ओ यही चल रहा था चैट में उस दिन, 1 मछली 2 मछली बकचोदी। हाँ अब ये क्या, अब एक नया मीम है क्या ये? गेम है। अभी तू आउट हो गया, मैं और स्ट्रिक्स खेलेंगे वैसा। हाँ ठीक है। ठीक है स्ट्रिक्स, मैं और तू। एक मछली। मैं आ गया वापस। नहीं मैं विनर तो डिसाइड होने दे। हाँ ठीक है ऐसा सीन है। स्ट्रिक्स। हाँ। एक मछली। पानी में गई। चपाक। 2 मछली। 2 मछली। पानी में गई। पानी में गई। चपाक। चपाक। 3 मछली। 3 मछली। 3 मछली। पानी में गई। अरे ये क्यों बोल रहे। तू कंफ्यूज मत हो। मैं बोला पानी में गई। भाई बीच पानी में में गई। आता है भाई, यही तो है। तू बोला हाँ पानी में गई। पानी में गई। चपाक। 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 पानी में गई। 4 मछली। 4 मछली। 4 मछली। 4 मछली। पानी में गई। पानी में गई। पानी में गई। पानी में गई। चपाक। 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 5 मछली। 5 मछली। 5 मछली। 5 मछली। 5 मछली। पानी में गई। पानी में गई। पानी में गई। पानी में गई। चपाक। हक दिया। अबे ये टीमर कंफ्यूज कर रहा है। ऑब्वियसली यही तो गेम है। हक दिया। कैसे रे स्ट्रिक्स? अरे टीमर कैसे बनेगा रे बाबा तू? भाई मैं तो कंफ्यूजर हूँ भाई, बीच में कंफ्यूज करूंगा ऑब्वियसली। अच्छी गेम है यार, ये किसने इन्वेंट किया है ये? मैंने अबे और लोग चाहिए। मैंने एनोनिमस से वो करके भाई मजा आया भाई ये गेम। इसका लाइव स्ट्रीम क्यों नहीं कर रहे? हाँ इसका लाइव स्ट्रीम करने का तेरे को वर्टिकल कर ले बीच वर्टिकल। बंच भाई साहिल राणे मेरा नाम है। एक बंदा बोल रहे है आज की स्ट्रीम भी पानी में गई। मोड़ दे दो यार इसको। भाई आज के बाद अगर किसने जस्ट चैटिंग का उसको दे दिया ना राखो को, इस साल तो जस्ट चैटिंग हमारा ही है भाई। मान जाऊंगा भाई पूरा। कोई बेट नहीं कर। भाई मैं बोल रहा हूँ ये लोग खाना खाने के लिए गए बे ब्लीड वाले। तो स्टाफ भी जाएगा। अबे यार मेरे हिसाब से बीच में ऐसे आएगा, जाओ जाओ तुम भी जाओ टेक्स्ट करके। परमिशन कैसे मिला? परमिशन वो कुछ तो गूगल फॉर्म आया था वो फिल किया बस, उसमें परमिशन मिल गया। ये बोहिन भाई के वजह से उसने बोला वो वेन्यू में नहीं पहुंचा इसलिए हुआ ये। पहले पहुंच जाता तो होता नहीं था। वो पहुंचता तो टेक्निकल इशू आते ही नहीं ना। हाँ टेक्निकल बोहिन भाई है ना अपना। भाई यहाँ से सियोल का फ्लाइट का वो कितना है डिस्टेंस? वही चेक कर। 8 घंटा 8 घंटे 17 घंटा आई गेस 8 या 17 करना है बिंग्स। अभी फ्लाइट लेते हैं अपन, अभी जाते हैं वहां पे, वहां से स्ट्रीम करेंगे। एक पीसी मैं बोला देख के आते ना उनको पीसी स्ट्रीम के करना बेंच चालू तो हो जाए मैच। स्ट्रीम उधर जाके भी यही करेगा ना बहुत से के उनका तो टिक कर। डिपार्ट 17 आज के आज ही, रिटर्न 20। मेरा 12 घंटा हो गया टिबोन भाई।
यार नहीं, रियाज नहीं होगा रेबिंग्स पक्का। जी end का होगा। रीशेड्यूल भी आवाज नहीं कट कर सकते ना? नहीं होगा बाबा, 8 बज गए उधर। अबे लेकिन रीशेड्यूल नहीं कर सकते, बाकी 60,000 का फ्लाइट है जाना है। पोस्टपोन होगा तू 26 कर, तू तक स्पॉन्सर होगा। कर। नहीं नहीं तू कर, मैं देता हूँ बाद में। कि आज भाई उधर भी तो रिस्ट्रिक्शंस होगी ना, इतने बजे तक तुम लोग खेल सकते हो। मेरे हिसाब से सारे मैचेस होगा। 50 आवर्स का बुक किए, तेरे को लगता है वो लोग बोले हाँ इतना बजे तो खेलो, बाद में चले जाओ? व्हाट? मुंबई टू कोची, कोची टू चेन्नई, चेन्नई टू कोलालमपुर। डेडलाइन नहीं है, 1-2 दिन का इवेंट है ना वो। ये पूरा फक, ये क्या फ्लाइट है? 50 आवर्स। 17 का निकलूंगा, 20 को पहुंचूंगा। नहीं, एक मिनट। अराइव्स 20 फेब। 17 को निकलूंगा, 20 को पहुंचूंगा। नाइस। 17 को निकलूंगा, 20 को पहुंचूंगा। वेरी नाइस। फिक्स परमिशन कैसे मिला वॉच पार्टी? अरे बोल दे। लास्ट ईयर 1 AM तक खेला था। स्ट्रिक्स भाई मस्ती में कुछ लीक मत करवा लेना भाई। मेरे इसमें क्या लीक होगा? लीक होगा तो भी क्या फायदा? अभी मैं रेगुलर स्ट्रीमर थोड़ी हूँ भाई। लीक होगा तो भी क्या ही होगा। यश भाई कैसे हो? वेलकम टू द स्ट्रीम। Oh my fucking god, when this stream started, I have just ate lunch, went out to buy groceries, ate my dinner, showered and brushed my freaking teeth, and this game is still on a take pause. क्या 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 वापस बोल। एक और गेम। कोई दूसरा गेम खेलते ना? ना, नया गेम ये है। अच्छा था यार, ये वाला गेम अच्छा। नया गेम है ये। और लोग चाहिए, और लोग चाहिए। ये 1v1 वाला गेम है, ठीक है जो मैं बोल रहा हूँ। हाँ बता। X and 0, लेकिन इमेजिनेशंस लाइन में। ठीक है, ठीक है। टॉप लेफ्ट एक्स। हाँ तो टॉप लेफ्ट, टॉप मिडल, टॉप राइट, मिडल लेफ्ट, मिडल मिडल, मिडल राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम मिडल, ओके ओके ठीक है। हाँ चालू कर। मिडल में एक्स। मिडल में एक्स सीधा? तेरी एक्स सीधा मिडल में? इजी ब्रो, इजी। टॉप राइट ओ, टॉप लेफ्ट एक्स, बॉटम राइट ओ, मिडल लेफ्ट एक्स, मिडल राइट ओ। मेरा हो गया भड़वे। तो चल ठीक है, वापस वापस वापस। अरे वो खेलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, मूवी का नाम गेस करो। तू डांस थोड़ा सा गाइस, थोड़ा सा ब्रेन डेड हो गया था। गेस करते। अरे बाबा वो नहीं रे बाबा। तो yes, I'm gonna fuck you bitch। हाँ? रुको रुको। बुल्ली। क्या क्या हो रहा है भाई? क्या हो रहा है? अरे बाबा मैं ये सांप वाला गेम खेल रहा हूँ इसमें। बुल्ली। हाँ अपन कंटिन्यू करते हैं स्ट्रिक्स। हाँ बोल। मैं चालू कर रहा हूँ। हाँ मिडिल टॉप एक्स, बॉटम लेफ्ट एक्स। ओ ओ मिडल मिडल एक्स, बॉटम मिडल ओ, मिडल नहीं, बॉटम राइट एक्स, टॉप लेफ्ट एक्स। ओ ओ मिडल लेफ्ट एक्स, मिडल राइट ओ, टॉप राइट एक्स। ड्रॉ हो गया। ड्रॉ हो गया। दिमाग तो है ना, लेकिन हाँ। हैवी दिमाग का गेम है ना। तू लेकिन टॉप राइट ओ करता तो शायद तेरा वो बनता था ट्रियो। नहीं वासु भाई कैसे? वासु भाई
₹10 यूपीआई करो मुझे स्ट्रिक्स। फेस भाई आपका नंबर भेजो। इमेजिनेशन पिनबॉल खेलते हैं। कैसे? तेरे को मैं लुल्ली पे बिठाऊंगा, तू उछल। टॉक्सिक ना बनो प्लीज। इमेजिन हो गया स्टिक सब जगह ऐसे टम 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 मार रहा है। क्या करूं भाई, अभी ये नहीं होगा आज स्टार्ट। अभी थोड़ी देर में लिख के आएगा सॉरी वी हैव शेड्यूल्ड द मैचेस टुमारो। चलेगा, मैं सो तो जाऊं, रात का तो करूं मैं। स्लीपिंग स्ट्रीम हो जाए ना, फिर मैं उठ नहीं पाऊंगा। डोनेशन आएंगे, देख ले भाई। सुपर चैट्स आएंगे। हाँ क्या? अच्छा खासा लंबा मैं करूंगा। विंग्स भाई उठो उठो, स्पैम करूंगा। स्पैम करेगा? 10-10 हजार वाला स्पैम करेगा तो बता। ₹20 पक पे। एक फेमस इंसान ने कहा है स्टिक्स भाई, अली मरने के बाद पैसा साथ में नहीं लेके जा सकते। तेरे लिए लिखा है वो, सिर्फ तेरे लिए लिखा है वो। एनी कमेंट? मैं तो गरीब हूँ। पड़ पड़ पाओ। टीबोन कुछ आइडिया, 3-4 गेम खेल लिए हम। बाबा बेस्ट आइडिया पता है क्या है? हाँ। slither.io बेस्ट। लुल्ली बड़ा कर रहा है तू। लुल्ली बड़ा कर रहा हूँ। एक लड़की के पीछे भाग गया वो। आ जाओ स्लीदर खेलते थोड़ा। हाँ चला जा। बेस्ट है यार, टाइम पास गेम में। ओ तेरी ये खाया तो पूरा दिन की बिरयानी बन गया। क्या बिरयानी? अपना टॉप स्कोर बताना। टॉप स्कोर 1800 मेरा। मेरा लवड़ू ही नहीं हो रहा। मेरा भी नहीं हो रहा। ब्रेव में इससे नहीं होता। ब्रेव नहीं है मेरे पास। मतलब मैंने रेड खाया तो मेरा लंबा होगा। अबे नहीं हो रहा मेरा स्टार्ट, तेरा हो रहा है? अरे बाबा क्रोम में नहीं होता। अबे एक और आयो था बे, आयो वाले गेम्स कोई भी नहीं खुलेगा क्या इसमें? अरे वो खेलते हैं ना फ्लेम्स। सॉरी फ्लेम्स खेलना है तेरे को? शादी हो गया है तेरा? पेंचो तेरे को फ्लेम्स खेलना है? फ्लेम्स क्या है? वो मैरी लव अयोग्य में मूवी का। ओह शिट भाई, मेरा तो पावर भी। ओ इंडिया है, ये कैसे बनाया इसने? अबे क्या खाने से ज्यादा लंबा होता है? मेरा क्या मतलब रेड कलर खाने से लंबा होता है क्या? ऐसा कुछ है क्या? नहीं। अबे ब्रेव इंस्टॉल करूँ क्या अभी? मैंने हाँ बाबा 2 सेकंड में हो जाएगा। अरे मजा आ रहा है, टाइम पास है। नहीं बाबा, टाइम पास तो आया भाई। और स्लो हो जाएगा मेरा पीसी। वही मैं भी नहीं कर रहा। क्या ब्रेव से पीसी कैसे स्लो होगा भाई? रुक जा, मैं आयो गेम सर्च कर रहा हूँ। अरे एक वेबसाइट है वो, उसमें खेल। बिंग्स पोकी गेम्स बोल के एक वेबसाइट है। हाँ पोकी अबे पोकी। तेरे को वो पता है पॉकेट टैंक्स? ऐसा हाँ खेलना है, पॉकेट टैंक्स खेलना है। कर तो वहां से लिंक भेज। किधर है वो? ऐसा कुछ है क्या? रेड खाने से लंबा होता है मेरा। रुक मिल गया शायद। नहीं है भाई। अवेलेबल ऑन योर डिवाइस करके आ रहा है। अबे वो डाउनलोड करना पड़ता है शायद। वो तो कर सकते हैं, टाइम पास हो। वायरस है। वो लोग खाना खाने के लिए गया पक्का, मैं लिख के दे रहा हूँ।
कर रहा है तू डाउनलोड? मैं सोच रहा हूँ नेट बंद कर दूं और सीधा वो वाला खेलूं, डायनासोर वेब ब्राउजर वाला। कौन सा वेब ब्राउजर नेट वाला जाता है तो डायनासोर? ऑटोमेटिक डायनासोर वाला आता है ना, स्पेस बार वो दबाते तो गूगल पे भी मिलता है। कैसे कैसे वो खेलते हैं? अच्छा लिंक भेज दो। मैं क्या बोल रहा हूँ, पिंकी को पीछे जाने के लिए बोला ना, बिजनेस ही खेलते हैं इससे बढ़िया। देख तेरे को लिंक भेजा। ना बे, दिमाग ही नहीं लगा। ए मेरे को एक मिला। अबे इसमें क्राउच नहीं हो रहा। तो होता ही नहीं था शायद। नहीं इसमें क्राउच होता है, नहीं हो रहा। ए, 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 एक मिला स्ट्रिक्स। भेज। गूगल पे डायनासोर गेम लिख। हाँ फिर पहले एक आएगा देख, poki.com ऐसा कुछ। हाँ वो तो है। पोकी वही सही है, वो मैं कह रहा था। टेंपल रन वगैरह है, मजेदार है। आजा स्कोर बनाते। अरे लेकिन उसमें ना वो वॉइस कुछ ज्यादा आता है। वॉइस मेरे को तो आ ही नहीं रहा है। चल टॉप स्कोर देखते हैं। हाँ वो म्यूट सेट किया तो कुछ नहीं होगा। ठीक है आजा। क्राउच किया है गाइस, क्राउच डाउन है, नहीं हो रहा डाउन। मेरा डाउन बटन खराब हो गया है। हो रहा है, क्राउच नहीं होता इसमें। आंखें दर्द कर रही है बाबा। रेडी यार, रेडी। रुक करूँ गो। साथ में करता है, एक सेकंड साथ में करता है। गो कर किया गो किया कि नहीं बोल तो सही। ये वापस कर मर गया मैं। वापस ठीक है। 1 2 3 गो। किया कि नहीं गो? या भाई कब से खेल रहा हूँ। क्या अबे पागल, स्टार्ट में करना। क्या वापस कर। क्यों? मैं रेडी नहीं था। चल लोड़े तू मर गया। चल गो कर गो। हाँ रुक जा। रेडी 1 2 3। ऐसे रिफ्लेक्स देखो ठीक है अभी। Hey boys. मर गया मैं। They're coming straight in. Trust me, I've got. मैं रेडी। कितना स्कोर? जरा तो पालवर्ड खेल रही है। हाँ मैं एडिटिंग का करने आई थी बट कोई गेम खेलते ना, 4 लोग हैं अपन। ये बिजनेस खेल सकते करे क्या कुछ उससे? 613 513 मैं जीता। क्या अरे बिजनेस से बहुत लंबा गेम मेरे पागल। अरे बाबा आते ही क्विट करेंगे, गेम चालू होते ही। हाँ इसमें ही है कितने सारे गेम्स बे। हाँ वो है। फिर इसमें मल्टीप्लेयर नहीं है। हाँ लेकिन अपन वो वाला स्कोर कर लेंगे ना। एक मिनट 2 प्लेयर्स गेम। हाँ चलेगा। मेरा बेट करियो स्कोर 20,000। क्या करने का? सिर्फ मी ना। कब करूँगा? अरे माँ की आग। क्या हुआ? म्यूजिक बंद कर। सेटिंग्स या फिर ऊपर जाके म्यूट साइड सेटिंग साउंड ऑफ। म्यूट साइड कर देना, राइट क्लिक मार के ऊपर जहाँ पे टाइप सब सर्वर है वहाँ पे। These boomers, I tell you. हाँ मैं रेडी हूँ। हाँ मैं भी रेडी हूँ, बता कब? 3 2 1 कर दिया। अबे इसके ग्राफिक्स बहुत अच्छे बे। हाँ अच्छी है, मोबाइल जैसा ही फील है। टेंपल रन भी अच्छा है।
बी ऑप बनी ऑप। तो इसमें पैसे कलेक्ट करने या फिर लेटर्स? एरो की से करना पड़ता है ये? ऑब्वियसली। ये मैं ना जब कॉलेज जाती थी ना तो लोकल ट्रेन से जाती थी, तभी खेलती थी ये लोकल ट्रेन में। भाई लोकल ट्रेन में ट्रैवल करना नामुमकिन है भाई। भाई मैंने इतना किया है। 7 years of my life I traveled from local. भाई एक दिन वो वीसा के लिए मैं आया था मुंबई। हाँ भाई लोकल ट्रेन में सोचा कि एक बार ट्राई करूं, जो रश देखे उधर से ओला बुक पट से। वो मैं अबे मेरे रन से कुछ नहीं हुआ। क्या कुछ नहीं हुआ? मैंने रन वो कुछ बनाया। नहीं होता। साला चूतिया बनाया। तू मर गया? मर गया। मेरा चालू अभी तो। मेरे को मालूम ही था Strixx जस्ट जीतेगा। मारा यार। I was joking. चल मैं भी मर गया। I was also joking. I was also joking. मैंने की। मैंने भी। इसके बाद नहीं यूज कर सकता, ठीक है? वाह हरामियों वाह। देखो चीटर्स कहीं के। भाई एक की तो कोई भी देता है भाई। अब तो बीच में ऐड भी देखेगा, देख लियो। हाँ हो रहा है बंक्स भाई? हाँ बचपन में खेलते थे सब। मतलब 50 साल पहले तभी गेम थी। पीछे मेरे पीछे क्या कर रहा है? तुमने है ना? सवाल मेरे को नहीं मार सकते बे गेम में कोई। अशो यार मारा। ये सब डिप्रेस हो गए वापस टट्टी लोग। ओ मैं उछल रहा हूँ। बस एक ही बार उछलता है। कीज खत्म कर फिर काउंट होएगा। नहीं कीज खत्म कर। ऐड देख सकते हैं क्या? स्पेस बार कैसे यूज करूं? तू ओवरबोर्ड ये सब यूज कर रहा है क्या? हाँ कैसे? स्पेस बार। अरे तो ये बता ना मेरे को। वापस चालू कर। अबे मैं ऊपर वाली दीवार से टकरा। व्हाट द फक? अब वापस चालू कर। आजा। ये मेरे को पता ही नहीं था बे। मेरे तो सारे स्पेस बोर्ड खत्म हो गए, खरीदने पड़ेंगे। रुक अभी। इसमें भी पैसा डाल रहा है। अबे ये चाहिए सारे। आजा। रुक। मेरा 4189 है। अबे ये लोग बोले पोकी स्ट्राइक देगा। हेलो आजा। अबे ये लोग बोले पोकी स्ट्राइक देगा। नहीं देगा। तेरा बात हुआ है? हाँ वो है। फक मी। नहीं मैंने फक नहीं। अरे निकाल रहा हूँ। बता कब? आजा स्टार्ट। आ रहा है टिबोन? अबे रुको यार, इधर कल स्केटबोर्ड से क्या होता है? अरे तू टकरा तो वापस चालू होता है वहां से। बता कब स्टार्ट करूं? स्टार्ट मैं अंदर ही हूँ। कर दिया मैंने। They're coming straight in. Trust me. I've got. स्केटबोर्ड रहते पूरा टाइम रहेगा। हाँ नहीं उसका लेफ्ट में आता, बॉटम लेफ्ट में।
टाइमर आता है उसका। साइट भगो poke.com। फक बच गया। ओ फक, क्या स्कोर? मारा नहीं हो भाई, तेरे को वो कर रहा था मैं। फक। एक की यूज किया गलती से, गलती से एक की यूज किया। ठीक है ठीक है। आई लाइक योर ऑनेस्टी। अबे ये क्या है? अबे क्या ये चूतिया गेम क्या? भाई? मेरे पे वो जूता आया था, क्या करते हो जूता? क्या स्कोर है? मैं पता नहीं, बंद ऑल्ट F4। What the fuck? भाई जूता आया था भाई, मेरे को समझा ही नहीं क्या है। मैच मर गया। तू दूसरा खेलता था वो ये गेम? लोगों को नहीं हाँ बे, समझता, तू वही खेलता ना, तो भी था ये गेम। वही तो पता ही नहीं है कुछ कुछ कैसे दूसरा देखते, खेलते हैं। कुछ दूसरा देखते। तेरा वाटरमेलन वाला गेम भी है इधर बाय द वे। वो गेम अभी दिखता ही नहीं है। ओह फक, तेरे को याद है हम ये भी खेलते थे? मोटो, वाटरमेलन खेल, वाटरमेलन खेल। मोटो X3M खेला है? नहीं, ये क्या है? ओ नहीं भाई ये नहीं खेला तूने? नहीं। इट्स इंटेंस। हाँ नहीं, नको राहू दे। फोकस मोड, ठीक है। ट्रायड मोड, ट्रायड मोड, ट्रायड मोड, फुल ट्रायड मोड। फक, हिटपैक था।
What the fuck, इतना फास्ट कैसे आ रही है ट्रेन? कोई सीन नहीं, होता है। क्या खेल रहा है? स्टिक डिफेंडर्स। मेरा स्कोर पता है? 15,000। स्टिक डिफेंडर्स खेल। मल्टीप्लेयर देखना। बाय नहीं, स्टिक डिफेंडर्स खेल बोल रहा हूँ। भाई मेरे आंखें दुख रही, पता है, चक्कर आ रहे। एक डिफेंडर कहाँ पे? हाँ राइट में ही है। टिकमैन हु के? अबे यार ये वॉच पार्टी होगी आज के दिन में। एक डिफेंडर। कुछ भी खेलता है भाई, कुछ भी। किधर है? कुछ भी खेलता है। तूने खेला कैसे नहीं है? एक डिफेंडर। हाँ। अरे बेकार गेम है भाई। कैसे? क्या शूट करते ना वो? हाँ। बेकार तो है भाई। बिंग्स। हाँ। 6,000 और मैं मर गया। दिस वॉज इट फॉर टुडे। ओ ये भी है, ये तो मैं भूल गया था। चॉड काफ मार फुल डैमेज भाई। आजा टैग खेलते, मल्टीप्लेयर है। 3 किधर? ओके पे। हाँ क्या? टैग सर्विस टैग। टैग। अरे पर ये सेम पीसी रहने दे। ऑब्वियसली। और क्या है? ओ फक, ये भी खेलता था मैं बचपन में, टेनिस मास्टर्स। ये भी खेलता था, बबल शूटर, सेम कलर का। इसमें करना है स्कोर, बबल शूटर। नीचे ये देख, नीचे दिख रहा है? अबे ये सब गेम क्या है? कैंडी क्रश नहीं खेलना मेरे को भाई। बचपन में कैसे नहीं खेला तूने ये सब? खेले मैंने ये सब बेकार गेम, एक बार खेल के छोड़ भी दिया। क्लैश ऑफ स्कल्स, ये अच्छा लग रहा है। बेकार गेम है भाई। ओनली अप का वर्जन भी है इसमें, ओनली अप। ओनली अप क्या है? ए स्नेक वर्सेस वेनम्स। ओ भाई, ये तो आयो से भी बेटर है ग्राफिक्स। हेलो। हाँ ये क्या ग्राफिक्स है? स्नेक वर्सेस वेनम्स देख। है जी।
मैं टॉप फ्रैगर। टॉप सीडी खेलनी है, वही खेल रहा हूँ मैं, बड़ा वाला। लेकिन एक कॉइन मिला मेरे को। स्नेक वर्सेस वर्म्स। भाई इसमें एक का 10 मिलियन स्कोर है। बीच यही गेम खेला है क्या वो लाइफ में? कि बॉट है वो कोई एआई? शायद से बॉट है। क्या है तेरे इसमें फर्स्ट कौन है? फ्रीकिंग वर्म्स। हाँ मेरे इसमें भी वही है। बस हो जाए, आजा। गेस्ट नंबर क्या है तेरा? एक सेकंड। वो स्पाइडर वेब क्या करता है? स्पाइडर वेब क्या करता है? क्या खेला? इन्फिनिटी की अरीना। मैं तो नॉर्मल जैसे गेम में घुस गया, मैं घुस गया। अबे मेरे इसमें बर्गर पिज्जा क्यों आ रहा है? हाँ वही है। दूरबीन भी है। मेरे इसमें फर्स्ट व्लादिमीर है। भाई इसमें पावर्स है। What the fuck? अबे मैग्नेट पावर्स है बे इसमें। बे सारे बॉट्स है बे। भाई कोई बोलो मैच चालू हो, पता चला उधर मैप 2 चालू हो गया बीच। हाँ ना, कौन क्या कर रहा है? मैं टैंक गेम खेल रहा हूँ। टिबोन इसका ग्राफिक्स सेक्सी है बे, स्लीदर से बेटर है। अरे पर ये मल्टीप्लेयर नहीं है। देखा नहीं, मैंने वो। लेकिन स्लीदर से बेटर है बे। हाँ वो देखा मैंने। मैच स्टार्ट लिख रहे। नहीं ओए, नहीं 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 झूठ बोल रहे, झूठ बोल। हाँ। चलो भाई मैं जाता हूँ सोने। ठीक से। वॉच पार्टी तो नहीं होगी आज। सियोल में हो गए 8:30। वॉच पार्टी कल ही होगी। क्या लगता है बिंग 8:30 बजे सियोल में नेक्स्ट मैच होगा कि नहीं? हाँ चलो गया चलो गया चलो गया चलो गया क्या? नहीं रे बाबा, चलो गया, मैं देख रहा हूँ। नहीं हुआ। कान फट गया। क्या बोल रहे हैं तू? अच्छा खासा रैंक पुश। आईक्यू टेस्ट हो जाए। आईक्यू टेस्ट करते ना। आ जाओ आ जाओ। कैसे करते हैं? स्क्रीन शेयर कर फिर साथ में करेंगे। हाँ रुक जा। ट्रिप लेनी है? ट्रिप लेनी है किसी को? आजा आजा, आईक्यू टेस्ट इधर आ। तो मैं ट्रिप ले रहा हूँ। देख रहा है देख रहा है देख रहा है। एक सेकंड एक सेकंड। हाँ चल 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 चल। कौन सा लेने का? कल्चर वाला है क्लासिकल इंटेलिजेंस? क्लासिकल क्या बोलता है? हाँ आजा। कल्चरल लेते ना, चल ठीक है क्लासिकल। What expresses the meaning of the specific word best? Explanatory. ठीक है। ये क्या है? Reassuring. Oh, reassuring. किधर है reassuring? ऊपर तक लिखा है वन reassuring, उसका ये ओ उसका हाँ एक्सप्रेस करना है। हाँ ओके, reassuring बोले तो कंफर्टिंग नहीं, एक्सप्लेनेटरी एक्सप्लेनेटरी एक्सप्लेनेटरी। कंफर्टिंग। हाँ, which one follows 2 4 6 ओके रुक। 16 14, ये दिमाग वाला है। ये हाँ ये 2 वो नहीं है। 2 ये क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 नहीं है, समझ रहा है?
4 6 9 2 3 फिर क्या किया भेंचो 21 21 6 21 रुक जा 4 6 9 6 14 6 तो 4 19 19 19 19 19 9 और 14 में 19 19 4 प्लस 5 9 प्लस 5 हाँ बहुत सीधी 19 19 19 आपसे वो दिमाग थोड़ा कैलकुलेशन चल जाना रोड which figures the bottom row should logically be in spot of the question mark in the top row एक हाथ दो हाथ तीन हाथ दो हाथ एक हाथ 1 2 3 4 5 इजी अब दिया तुमने चल number of stamp collectors is an architect all drones are stamp collectors तो क्या है is absolutely certain मतलब एकदम true all drones are stamp collectors none of the stamp collectors are architect ठीक है पहला है all stamp collectors are architects नो नहीं architects are not drones बराबर ये बराबर है ना हाँ आर्किटेक्ट्स आर नॉट ड्रोन्स बराबर all drones are stamp collectors none of stamp collectors are architect तो architects are not drones ये बराबर है बराबर है no stamp collectors are drones no stamp collectors are drones ये गलत है तो एक की तो राइट है दूसरा की ढूंढ रहे अपन some drones are architects नहीं नहीं सम तो आएगा नहीं आर्किटेक्ट्स आर नॉट ड्रोन्स बराबर है बहुत बेसिक वाला ये हाँ तो पर ये आईक्यू रहता है बेसिक ही आईक्यू रहता है हाँ क्या हाँ 7 4 1 what does resultant cube like fold together बोले तो ये नहीं समझा मैं resulting cube look like if you fold this cube together हाँ एक सेकेंड फोल्ड करेगा तो वो आना चाहिए लास्ट वाला 7 आएगा क्या ये शायद से लास्ट ही आएगा यहाँ पे लेकिन 3 नंबर यहाँ पे तो 3 नंबर मिसिंग वाला नहीं हो सकता यार मेरी आइस परी इतनी पावरफुल है ना हाँ सिक्स क्या 3 नंबर यहाँ पे है 3 नंबर मिसिंग है 3 नंबर वाला ये है ऐसे नहीं हो सकता नहीं फोल्ड करना तो उसको क्यूब को तो फोल्ड तो होएगा हाँ तो फोल्ड किया तो देखो जो दिख रहा है वो आया वो तो आएगा ये ऊपर क्या है नहीं पर फोल्ड करने के बाद 1 वहां पे नहीं आएगा ना 7 के ऊपर 7 के नीचे समझा क्या मैं कैसे फोल्ड करता हूँ नहीं कैसे भी फोल्ड कर तो 7 के नीचे 1 नहीं ला सकता पहली बात तो ये क्यूब नहीं रहता है 7 कहाँ से आया क्यूब में क्यूब इतना रहता है 3x3 4x4 ये कौन सा क्यूब है भेंचो कैसे भी फोल्ड कर पर अगर फोल्ड किया तो ना कैसे भी हाँ फोल्ड किया तो यहाँ पे ये 7 आएगा यहाँ पे ये 1 आएगा और ये 4 इधर जाएगा 7 बराबर 7 इधर जाएगा 1 इधर जाएगा 4 इधर जाएगा एक डीएम्स ओके वंश बाय कर दो 4 1 7 के नीचे 1 ये रे पिंच अभी तो लंडे रे कैसे गलत है देख लेना बराबर है चल ठीक है देखते हैं अपन Tom has new set of golf club using golf club 8 the ball travels the average distance of 100 meters भाई ये क्वेश्चन आते थे स्कूल में the ball travels average of 108 meters using 6 ball travels an average distance of 114 meters कितना डिफरेंस इसके लिए पेन पेपर लगेगा क्या चल 7 देख 8 से 100 हाँ 7 से 108 है तो 8 हाँ बड़ा हाँ बराबर 6 से 114 है तो कितना बड़ा 2 और 4 6 8 का 6 हो गया तो 8 का 6 हो गया तो 6 का 4 होएगा बराबर नहीं 6 ऐड हुआ ना 8 के बाद 6 ऐड हुआ 8 के बाद 6 ऐड हुआ हाँ फिर 6 के बाद 4 ऐड होगा 4 ऐड होगा हाँ कुछ नहीं आता which answer expresses the meaning opposite of that of specified word best tough cowardly चल क्या कैसे
ऑपोजिट टफ टफ बोले तो स्ट्रांग मैस्कुलाइन ठीक है बराबर है कवर्डली टेंडर बराबर भी बोल रहे, टेंडर भी हो सकता टफ नहीं टेंडर नहीं होगा टफ मतलब स्ट्रॉन्ग है। टेंडर क्या होता है? टेंडर मतलब सॉफ्ट तो सॉफ्ट हुआ चुतिया। सॉफ्ट स्ट्रॉन्ग का ऑपोजिट ढूंढे स्ट्रॉन्ग को टफ का ऑपोजिट ढूंढने का है। हाँ Strong- पर टफ का मतलब स्ट्रॉन्ग ही रहता है ना नहीं, स्ट्रॉन्ग का वीक होएगा बे चुतिया। टफ का कवर्डली रहेगा शायद कवर्डली का ऑपोजिट ब्रेव है। वो भी है टेंडर है टेंडर ही है स्टार्स पता नहीं क्या है, बाकी तो टार्च टेंडर ही है मैस्कुलाइन का क्या है? वाटर इज टू अ पाइप एज डैश। आज होगा क्या मैच पता नहीं भाई हाउ मच परसेंटेज यू गॉट इन 10 80%। पाइप में तो पानी डाला हाँ तो पाइप से पानी निकला हाँ बराबर। वायर में तो क्या डालेगा तो वायर से निकलेगा इलेक्ट्रिसिटी पक्का बात है भाई। which of the meanings is the best fitting of the special word? Displeasure, complaint नहीं है, sin नहीं है, futile, injustice भी नहीं है। डिस्प्लेजर injustice वैसे displeasure तो है। डिस्कॉर्ड sin नहीं है, futile भी नहीं है, discord या फिर injustice। discord हो सकता है। डिस्कॉर्ड डिस्प्लेजर है क्या discord तो हम लोग है जिसपे हम लोग बात कर रहे हैं। पर उसका भी मीनिंग रहेगा डिस्कॉर्ड का कुछ ये दो में से एक तू चूज कर, बाकी नहीं है। इनजस्टिस तो नहीं है तो फिर यही है कि कंप्लेंट फ्यूटाइल सिन नहीं है। ये दो जन का मिला के आई का तो डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा अपने। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स कैन बी कंपोज्ड फ्रॉम द लूज पार्ट्स? ठीक है और ये वाला थर्ड एल है, ये है, ये है, ये नहीं है भेज। एक सेकंड एल है एल है, ये है, ये नहीं है। भाई ये कोइंसाइड क्यों कर रहा है एक दूसरे के अंदर ये सब मिला के तेरे को एक करने का है। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, समझ रहा है? पहले ये डाल। सेकंड वाला सेकंड वाला नहीं है, सेकंड वाला है शेप है नहीं, ये शेप है रे लवड़ी। सेकंड वाले में है, सेकंड वाला भी है वैसे देख नहीं पर वो शेप आ रहा है ना दूसरा वाला ये, लेकिन कट हो रहा है, समझ रहा है? ये नहीं है, ये अरे नहीं है। हाँ ये लास्ट वाला है ये है, ये है, ये है। हाँ बराबर है एज तेरा डालना तेरा डाल एज तेरा डाला नहीं तेरा डाल एज क्यों अभी 21 का हुआ है ना। तेरा डाल एज भाई आई एम फ्रॉम नासिक। किधर है नासिक भी है एजुकेशनल लेवल कौन सा इंजीनियरिंग है तू? यूनिवर्सिटी 7/10 क्या 105 IQ 105 लेट्स गो इसका मेरा गलत कौन सा हुआ लेकिन? गलत कौन सा हुआ? पहले वाला गलत हुआ देख कैसे मालूम पड़ता? किधर लिखा है पीछे? द करेक्ट आंसर इज कंफर्टिंग नीचे लिखा है करेक्ट। हाँ ऊपर वाले में गलत है देख। ये इनकरेक्ट है तो बोला तेरे को इनकरेक्ट है तू सीधा क्लिक कर दिया। 5 4 3 2 1 0 0 होना चाहिए ये। हाँ मैंने ये क्यों किया? तो तू सॉरी ये गलती से हुआ था। इसकी गलती है। और ये क्या है? करेक्ट दिख रहा है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है,
ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ये करेक्ट नहीं करेक्ट। डिस्कॉर्ड ये बैंड की कंप्लेन, भाई कंप्लेन कैसे है डिस्प्ले? तो आंसर क्या है? दिस कंप्लेन, कंप्लेंट कैसे बे? वही ना। अबे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स कंप्लीट करते हैं, मेरे को डिस्प्लेजर नहीं होता, मैं सीधा फक ऑफ बोलता हूँ। मेरे पास एग्जांपल्स भी है। कैन वी चेंज दिस आंसर? मतलब अपन को 10/10 थे बे ऑलमोस्ट। हाँ, ये वाला ग्लिच था और वो वाला बग था। 10/10 है हैशटैग कॉपी। यस 1000 IQ। पेंचोद बंद हो गया स्ट्रीम। नहीं चल रहा। इसका स्ट्रीम बोलो का ये वाला यार ये How much percent you got in 10? 80% bro. 80. यार मेरा, मैं कब से उठो, मेरा चेहरा देखो। नहीं हो रहा है, थक गए हो भाई। कर रहा है। I think I need sleep. पूछ ले एक बार। I think I need sleep. पेंचो आज सारे वैरायटी गेम्स खेल दिए बे। भाई वालो भी खेल लेता। एक्टिनेटर में स्ट्रिक्स को गेस करते। मैं तो नहीं आऊंगा एक्टिनेटर में। आ सकता। मैं 2 मिनट में। कैसे प्ले करते बे? प्ले कैसे करते हैं? यहाँ पे नहीं है क्या? मैं 2 मिनट में, ठीक है 2 मिनट में वॉशरूम जाके 2 मिनट में। तो क्यों आ रहा है? 2 मिनट्स। What the fuck? लाइट गई थी अभी। यार मैं तक किया होगा। ये मुंबई जिंदा हो। Back to my game. भाई क्या ट्रिप है भाई ये गेम। मेरे को नींद में ऐसे ही सब कुछ आता है। 2 मिनट में अपडेट आने वाला। मैंने सीधा हेडक्वार्टर से बात की, सीधा अब भी स्पीकर पे रख के। अच्छा क्या इशू था? हेडक्वार्टर से बात किया है कि इशू बता हम लोग को क्या है करके। हाँ फिर तो अभी वो लोग का कॉल के लिए रुकूंगा। वो बोला कि आई विल कॉल यू बैक। क्यों बताया क्यों नहीं फिर? क्योंकि वो पूछने जा रहा है ना हेडक्वार्टर्स पे थोड़ी मैच चल रहा है। कभी कभी मेरे इसलिए मेरे बोल रहा हूँ ये आईक्यू वाला स्कोर है ना मेरा स्ट्रिक्स से, तेरा नहीं हो सकता।
भाई तूने हेडक्वार्टर फोन किया हाँ तो हेडक्वार्टर इशू नहीं बता सकते क्या हुआ? कैसे बता सकता जब इवेंट हेडक्वार्टर में नहीं हो रहा है? माफ करो। हाँ व्हाट यार। भाई तो कॉपी वॉपी किया है क्या कभी एग्जाम्स में? बहुत। लग रहा तूने किया कभी? नेवर। ले मेरे साथ तो उल्टा स्कैम हुआ है। क्या हुआ? मतलब एकदम बवासीर नसीब एग्जाम्स में मेरा था। तेरे को तो पता है मैं पढ़ के उड़ के तो गया नहीं कभी जिंदगी में। हाँ। लेकिन मैं एकदम SIS कॉलेज मतलब एकदम रेप्यूटेड कॉलेज था। हाँ गई थी मैं तेरे कॉलेज। अरे कंसिडरिंग जिधर सेंटर था रे बाबा पूरे से न्याय बीच में आती है। हाँ तो हमारा जो था वो एकदम रेप्यूटेड कॉलेज था कंसिडरिंग कि सेंटर किधर था। तो सेंटर में मैं गया एग्जाम देने। मैं बोला कोई ना कोई फ्रेंड इन नीड्स करेगा मेरे साथ। ठीक है। सामने एक लड़की बैठी है, पीछे एक लड़की बैठी है हाँ और मेरे राइट में एक लड़की बैठी है हाँ और लेफ्ट में एक लड़का बैठा है। हाँ। ठीक है। जो लेफ्ट वाला है उसने पूरा दीवार छान दिया। उसने दीवार पे लिखा पूरा मार्कर वार्कर के साथ हाँ ऐसा नेचुरल हाँ लगने को। ठीक है। मतलब पेपर आने से पहले वो बंदा आंसर्स लिख के जा रहा है जो जो बराबर उसको याद है। बराबर। तारे जमीन पर वाला टाइप। ठीक है। क्वेश्चन पेपर अभी आया। ठीक है। पीछे वाली मेरे को पूछ रही है आंसर क्या है और मैं उसको ऐसा पलट के देखा। बेंच तुम लोग क्यों समझ रहे हो कि मेरे को पता है? बराबर। मेरे को नहीं पता है। मैंने उसको बोला नहीं पता। आगे वाली पलटी मेरे को और बोला तेरे को आंसर पता है क्या? मैं बोला मेरे को नहीं पता है। मेरा माइंड फक हो गया क्योंकि मैं अभी फ्रेंड्स है कौन मेरे को समझ भी नहीं आ रहा। राइट वाली जो लड़की वो भी मेरे को देखे और बोला आंसर पता है क्या? मैं बोला भाई सेंटर तुम्हारा, टीचर्स तुम्हारे, बेंच तुम्हारा, समझ रहे हो? मेरे को लगा बेंच के नीचे से चिंगम विंगम डाल के एक दो पावती तो डाल रहेगा। सब इनका आंसर मेरे से पूछ रहा है जो पढ़ के नहीं आया है कुछ। तो मैं बोला मेरे तो लौड़े लग गए। ठीक है। तो वो पेपर खत्म हो गया। मैं तो मटका मार दिया सब। ठीक है। मटके के बाद 10 जो क्वेश्चंस था फॉर एग्जांपल 10 में से 9 जो मटका मारा मेरा राइट हुआ। क्या बात है? 10 में से 9। और वही मैं ये लोग से डिस्कस कर रहा था कि ये लोग सब फ्रेंड्स है ना सेम सेंटर के। ये लोग डिस्कशन में मेरे को बोल रहे कि इसका आंसर ये नहीं है वो है, उसका आंसर वो नहीं है ये है। जब एग्जाम खत्म होता है तो सब वो देख डिसाइड करते कि तेरे को बताएगा इसका आंसर क्या है। वो चल रहा था। मैं ये सवाल पूछे पर एक्यूनेटर पे ढूंढ लिया। लेट्स गो। चूत गया। इनके हिसाब से तो मेरा 1 बार का आएगा अभी। हाँ समझ रहा है? ये लोग हाँ। ये लोग के हिसाब से मैंने सब गलत दिया और एक राइट दिया है। तो मैं बाहर आया सेंटर के। मेरा दोस्त खड़ा था एकदम स्कॉलर। दोस्त के पास गया। दोस्त को पूछा कैसा गया एग्जाम? दोस्त बोलता है यार बहुत बाप गया। मेरे हिसाब से 97 98 मिलेगा। मेरे को पूछा तेरा कैसे गया? पता नहीं 34 35 मिल गया तो भी नसीब। बोला क्या एक काम कर क्रॉस चेक करते ना अभी गिन लेते तेरे को कितना मिलेगा। बाद में टेंशन लेने से अच्छा अब भी लौड़े लगेंगे यार तो एकदम तेल लगा के रेडी होके घर पे जाएगा। तो बोला चलो लेट्स डू इट। वो आंसर बता रहा है। बोला भाई मेरा आंसर तो सारे राइट है। ठीक है। तो बोला बाद में वो लोग क्या टीम अप कर रहे थे वो 3 बंदे। तो मैं फिर नेक्स्ट दिन गया दूसरे एग्जाम के लिए। हाँ मैंने उनको पूछा पढ़ के आए हो क्या सीन है इस बार का? बोला ये आप नहीं पढ़ होने के वाला है आओगे क्या रहेगा अभी? ना आप तो SIS से थे। आप पढ़ के आओ रहेगा। मेरा भैंचो दिमाग खनक गया यार। मैं बोला सारा एग्जाम किसको कुछ नहीं आता था वो नहीं सेंटर। पर वो वाली एग्जाम छोड़ के बाकी एग्जाम्स में तो कॉपी किया होगा तूने। कैसे नहीं आता? स्कूल से एग्जाम में वो लोग मेरे भरोसे है कि मैं SIS से करके तीनों। ये कौन सी एग्जाम है? बीकॉम वाली? क्या कोई तो बोर्ड वो एग्जाम कभी होता है 12th वाला। अच्छा बोर्ड वाला 12th। तो कभी ना कभी तो कॉपी किया होगा स्कूल में बीकॉम में किधर ना मैं वो था ही नहीं। मैं एक मूवी के लिए मैं एक एग्जाम छोड़ के चला गया था कि भाई KT लगता था ना। हाँ मैं सब में पास हो गया था। मतलब एक KT चलेगा अगर मैं मूवी देखने गया था। बोला एक चलेगा। कौन सी मूवी?
शाहरुख खान का ही था कोई तो। अकेला की कोई साथ में था? नहीं साथ में थे, पूरा ग्रुप था। तो वो लोग का एग्जाम जल्दी हो गया, ठीक है, और मैं कुछ नहीं लिख रहा था, मेरे को बोर मार रहा था उस दिन, तो मैं सप्लीमेंट पे सप्लीमेंट मांग रहा था, मतलब एक्स्ट्रा। एडम भाई कैसे हो? तो मैं ऐसा टाइम पास के लिए 5-6 सप्लीमेंट मांग रहा था, क्योंकि फिर टीचर गाली देते, लिख तो नहीं रहा है सप्लीमेंट, किसको लिए चाहिए करके। तो मैं बोला थोड़ा बकचोदी कर लेता हूँ। भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है नहीं होने वाला है बाबा? पता नहीं, इसलिए हम स्टोरी टेलिंग। जी का मैच तो कैंसिल है। हाँ क्या? ऐसा एक बंदा बोल रहा है, ट्विटर पे डाला है। व्योन भाई कैसे? व्योन भाई लॉन्ग टाइम नो सी ब्रो, लॉन्ग टाइम नो सी। श्रेष्ठ भाई एक पढ़ा मैंने, श्रेष्ठ भाई। वेडे लिविंग पुणे कुतरू। हाँ बे, 6 घंटे में सिर्फ 1 घंटा मैच हुआ है, 1 घंटा भी नहीं पूरा। पूरा मैच भी नहीं हुआ है, पूरा मैप भी नहीं हुआ। ए हाँ, SAES का सेंटर था बे, 12th नहीं हुआ। 12th हुआ होता है क्या कॉलेज? होता है ना, याद नहीं। 12th कॉलेज नहीं होता क्या? लॉन्ग टाइम नियर यू, लॉन्ग टाइम यू। मैं तो रेगुलर हूँ भाई। वैसे देखो सेक्सी है ना, सेक्सी है ना। सेक्सी है भाई। अबे यार ब्रो 9 बज गया कोरिया में। आई थिंक भाई मेरे को तो उन लोग के लिए बुरा लग रहा है जो जी ने उधर सेटअप किया ना वॉच पार्टी। हाँ रे, IRL वॉच पार्टी। IRL वॉच पार्टी भी था। हाँ ना, उनके लिए बुरा लग... हेलो गाइस, स्वागत है आपका। है थोड़े बीन बैग्स है, बूट कैंप। गाइस दिस इज आवर लिविंग एरिया। सोफा है, थोड़े बीन बैग्स है, वी हैव लाइक अ कॉफी टेबल। अगर प्लेयर्स को कॉफी टेबल दे कैन गेट इट देमसेल्व्स। वी प्रमोट हेल्दी हैबिट्स। अरे हेल्दी भाई ट्वीट करेगा क्या सीन? यू नो ब्रेकफास्ट बनाना है, एग्स बनाना है, जो भी बनाना है दे कैन कुक देमसेल्व्स। यहां पे आपको रामेन की बहुत सारी क्वांटिटीज दिखेंगी। बेन का क्लीनलीनेस को ज्यादा मत देखो गाइस, सब रह रहा है, ऊपर नीचे होता रहता है। दिस इज वॉशिंग मशीन एंड ड्रायर रूम। नहीं यही लिखो ना, आज के बाद जस्ट चैटिंग किंग्स आर पुट योर लैपटॉप डाउन या रीड या जो भी अगर कुछ करना है। I don't think Gary does a lot of reading, but there's always an option there with this life. भाई पूरे घर में एक ऐसा कॉर्नर क्यों बनाया है? अनसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल। Put your laptop down या read या जो भी अगर कुछ करना है, you know, light coming in. यहाँ पे common washroom है for Gary and Ben. And next आते हैं guys into master bedroom, which is Russ's room. This is the biggest of the lot. We did lucky draws देखने के लिए कि किसको कौन सा रूम मिलेगा। ऐसे और 3 अपार्टमेंट है, but hope you guys like the apartment. मिलते हैं at the office. उसने तो काफी बढ़िया रूम लिया भाई। 5:30 बज गए। क्या हाल है दोस्तों? बहुत कड़ी मेहनत करके हम पहुंच गए ऑफिस। 6:30 बजे दूसरा मैच। तीसरा मैच गया तो लौड़े लग गए। 7:30। We have 5 pieces set up, whiteboard है, we have a heater here, another one there, बहुत अच्छी लाइट आती है and you're playing in the morning। बंद कमरे की तरह नहीं है। At the entrance 9:30 इधर का बोले तो उधर का 2 बजे। water purifier। भाई सेटअप बहुत अच्छा है, सेटअप बहुत अच्छा है। पे डेली एसेंशियल Legit। एक्स्ट्रा लगते हैं। This is अंधेरी रात में पीसी तेरे यहाँ पे गेम खेलने में ब्रो मैं रेडियंट पहुंचाऊंगा एक दिन में, अगर मैं यहाँ पे खेलूंगा तो। बूट कैंप। यहाँ पे हम लोग चालू देखते क्या? चलो आ चलो आ चलो आ चलो आ। नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, हो गया हो गया हुआ। अरे प्लेयर से नहीं है उधर, देख रहा है मेरे ट्वीट से डर गए।
हो गया फाइनली भाई कार पे तो लेफ्ट पे बैठे है। Hello. We have not abandoned you. We are still here. We are still here. We have been awaiting idly by for this very moment. But when we can resume the game, and it seems like that time. मैं स्ट्रीम ही देखूंगी या डिस्कॉर्ड में। Yeah, I've lost all concept of space and time, but I'm ready to get back into it. I think we're in an overtime, if I'm not mistaken. Yeah, so let's just go ahead and do a quick recap, and of course, we apologize for, you know, everything else that's been going on here. So here's where we're at. It's tied up 12-12. It's been a bit of a back and forth, streaky first game on Breeze between Bleed and T1. As looks like we're gonna क्या टाइम आउट लिया बीएलडी ने, ब्लीड ने। अभी ओटी होगा। As we get ready to go into this one, I'm not sure if that's correct or not. टॉस पेपर सीजर कर लिया रहेगा। We're getting ready to go into overtime. The players, they've been back and forth. They've been on the stage. They've been off the stage. But one thing has remained constant, and that is the energy from both teams. Let's go. They've been yelling. They've been keeping each other riled up and energized because they knew that they have to still get through this moment. Another potential, another, and then maybe a second potential. मैंने हाथी को ऐसे बिना मारे ले लिया। I mean, this is. game, I think what's what's really impressive here is that both teams really kept their spirits high. You know, we're really hot on stage just a few minutes ago once they were getting in, being Valorant, able to run around a little bit again. So definitely looking forward to seeing some more great action. It's been a phenomenal map. Just absolutely incredible so far. I mean, a great map in terms of gameplay to start the season. Now we look and see exactly how this will run through. Maybe they just need to buy a little bit more time. चोर के लिए विंडोज से आने के लिए। This corner for spiders, हाँ ना? Legit. Call times out, but Starting phone नहीं यार, starting phone अभी तो नहीं। Be ready for the barriers to start going down and for the actual in-game timer to start ticking. So I think this is kind of a placeholder. Yeah, exactly. Never mind. This is in fact a timeout. It's requested for the delay. It was requested before the delay happened. So this is real. All right, well. Thank you, production, for updating us on that one. I mean, this is really where you. मैं पूरा गेम का मोमेंटम जाता होगा ना? Get your team focused. Can you get them back into place? Can you get them on the? मैं पूरा गेम का मोमेंटम जाता होगा ना इतना टाइम आउट के बाद? You know, as quickly as possible. Reset है ना बाबा? Reset? You know, you got to think back to what were they doing, what was going on, like. And as quickly as possible with the victory. Well, yeah. Let me. Come back, boys. Look, we're just gonna turbo at this one, go to Lotus, win it round from there. Boys, if you don't hold that W key down, you're walking home. All right. Well, the timer is ticking as we long last get ready to go into this overtime. Bleed versus T1. Let's see who can get that first win. Get one step closer to closing out this map. It's T1 once again back here on the attack. चलो ए स्प्लिट बोला था वो तो हो रहा है। Phantoms floating around, nobody trying to blast cannon. Kind of seeing if maybe Heyy. लेकिन आएंगे कब मिड से? Slip that in here on the defender side, but instead it's going to be him and Darion who have been tremendous on this A side. Wall डालेगा. Trying to lock it down. ये FK क्यों कार पे? Waiting for the utility. Looks like kind of a full sound है उसको बोला दाड़ दूर door switch for T1. अबे उसके सिर पे था रिकॉन देखा? Stays alive, but dangerously low on HP, and they do not have blind that नहीं Sky हुआ लेट हो गए now लोग taking down कुछ चार बंदे Relay Bolt not finding much of anything here, but Saya player needing to find some value to try to keep them in this round because this has completely disrupted the push. Heyy suspecting it, swings the corner, take a shot. Nice. Another one there. So you see Carpe pushing his way up here towards Pyramid. As great shot from Rossi will be able to find. Ego is taking him down, crazy guy dying at the same time as the bridge arrives, and now Carpe knows that he needs this. What the fuck? निकल लिया. Rossi getting the other spike already planted. Back Pyramid, scary. Holding on to this one. Can he clutch it out again? The bite not connecting. Oh no! Do they realize this? They go swooping through. Scary finding one. Needs the headshot. Can he? What? Does it again. What the fuck? What the fuck? Just unbelievable. Clutch is in his jeans. Lights किधर है? Hello? It is his opponent. What the fuck? No doubt about it.
अबे नहीं बाजू में phenomenal प्लेयर्स नहीं work दिख रहे and just a चले गए सारे little ऑडियंस bit right off it. Had that landed, it's probably a different round at क्या the end. क्लच किया तो ये क्या क्लच था That fight at the end of it all. 15 HP पे What ends up कार पे ने थ्रो किया after all this time for being able to take this map away. पहली बात तो Bleed's बैक एंड map pick फोर्थ as a होना ही नहीं reminder. चाहिए था क्लीन जीत जाना चाहिए Now था Bleed. Map point in their hands to see the closest one out. Saya Player does go for the glass cannon. He's not positioned anywhere towards this B site, B however. पे देखना But पूरा he X लिखा manages हुआ to है find Scary. Punishing him for the clutch of the last round. Comes up with one as the rest of Bleed make their way in towards this B site with Heyy approaching through the tunnel. Yeah, they're going to have to play for retake now as T1, but a man up. Let's see if they can identify Heyy. He's only going to get a smidge of damage. Relay bolt. Very wise to the position there. The possibility that somebody could be lurking in nest. Heyy. ये मरेगा भाई Pushing forward. Yes, he does. He goes on the corner, but does not see Rossi. Oh, bhai. Manages to take him down. Spots another one, putting those shots through. But एक और मार Crazy Guy सकता will be था able to वो strike him down. Decent bit of damage going to be dealt with. Crazy Guy comes up with another one. Now Egoist swinging out around the wall. जीत गए Takes out अभी Izu. और क्या ही करे But now it's the last one Oh. standing. And it is भाई not इनका going to एम be भाई अभी एक टेक पास the है यार easy, the प्लीज clean Are 2-0 you OT to kidding take me? the map. T1 will keep it neck and neck. Yeah, it's good stuff here from T1 in that एक not only do बनता you है get a pick early with the operator, खत्म हो गया it's on pause Scary, and you expect that Viper to be the player अभी that's नहीं ले pushing सकता कोई around, pause so that opens up टैग things पास to नहीं टेक give you पास a लवड़ी little more time वो to भी make the करना ही decision नहीं था to go भाई। for the full commit to the retake, to not play necessarily on site to defend against this ये big को समझा नहीं util लेफ्ट पे dump that's बंदा going हो to be सकता coming from the side. ठीक है मैच कैंसिल आई गेस किया था मिड में उसको Just so good. Very nice 2 kills to round things out. And now we get off the off. सिर्फ ए Yes. बे सिर्फ ए ओटी में सिर्फ Okay. ए See where the challenge is going to be poisoned. It looks like it's going to be right here into A main. Saya Player posted up here as well. Waiting to see if anybody's going to show a single pixel out of line. उसने रीड किया Does he क्या just try peek this, or is it going to be नहीं scored एंगल with some लगा के form of बैठा है util? स्काई वहां Izu से right वो there दे रहा है ना has the इन्फो flashes कोई नहीं available, करके but it's going to be the drone first and foremost as Heyy. लेकिन पता नहीं ना ऑफ है क्या नहीं अब पता है पता है अभी पता है Keeps the उसका गन operator दिखेगा ना secured. हाँ Seems like T1 likely have a decent idea that it's going to be in his hands. And you've at least bought yourself a little bit of more space to get this एम angle. लगा के Carpe बैठे थे making- बे Hey! ओह It's just Crazy Guy over on stairs. Now they know Darian his position. He is going to be Off से revealed. घुस रहा है Managing बे। to find one. Takes out the off. The flash going through. Fake outs there and क्या फ्लैश है बे to find the kill. A 4v2. Scary. Izu. His way out. Spot does come in, but Izu takes the TB out to safety. Pop flash in. Not going to find anything. The Cove up to skating there. Escape. Scary will be able to find one. Carpe going to be taken down. Still so much more work to be done. निकाल तो सकता है He's still in the round. I mean, Rossi's got 2 bites. नहीं रेडी भी कर This spike is right out in the open. Playing this one out patiently, waiting for the poison to come back up the swing on the corner. Ego is able to find one, but it takes him, costs him निकाल तो so सकता much है HP, down to 8 as the bite comes in. That is the double dump there. No more remaining for Rossi as he jumps back around the other side. If they can clear X-Gear, he's the lowest Oh, player. उसने 43 HP remaining as they get 8 themselves HP on में the मारा। spike, holding it up that ओह and the round, it just slips right out. व्हाट द फक ये क्या रिटेक था he should play here. Egoist able to find a ये क्या really रिटेक nice opener to है keep himself alive, to give Scary the opportunity to do a little bit of body blocking plus angle holding for him. And Scary, once again, just unbelievable. ये कैसे निकला Fitting right into this tier 1 scene again. अबे स्केरी बहुत अच्छा खेलता है जी भाई अबे क्रेजी इसने मारा बे 8 में Stand from हेडशॉट Rossi. मार रहा है एक को Wary about them being able to push up. You don't have any flank pressure remaining anymore, so you want to stop them, dissuade them from pushing into A main. Yep. Trying to take that fight. the fuck Then those plant utils. अबे स्ट्रीम क्यों बंद की क्योंकि मैं तूने हेडशॉट स्ट्रीम मारा बंद बे किया है क्या हाँ तेरा मैं देख रहा था तेरा स्ट्रीम तूने स्ट्रीम बंद किया है कि क्या किया है तूने बंद की तेरी डिस्कॉर्ड वाली नहीं तो स्ट्रीम देख रहा है कि बंद किया चलो चलो Carpe gets a headshot, but he's only going to be able to find the one. Oh my Sure God. taking बोलते down Scary, taking down Crazy Guy once again, putting T1 up into a position where they have the advantage. The flash. ओ भाई ना ये Extra gets 3. भाई And 4-5 T1 get घंटा 14 टाइम आउट rounds. लिया अभी 4-5 we've घंटा seen a ओटी couple होएगा beautiful मेरा हो flashes गया from Izu here in overtime. मेरा हो One गया paired with the चलो fake out earlier. हो And गया भाई this time again, great timing, accurate, great senses. Very I'm curious if please. this was his cove,
that was set up. भाई कैसे यार मुझे क्या हुआ ये ने? It was the other side. I believe it was Bleed's Cove. And that kind of actually gave them a little bit of time to prepare for this hit. The door was open and they were ready for it. Yeah, Xskill still had his. Yeah, Bleed took the challenge. Right here. And tried to use that cove to give themselves an entry, and Carpe just parked himself right outside. ये गया. To potentially try to fake attack it onto A, but he's posted up on B with an operator. It's just going to be the full send, rotate over here, but then करेगा pick करेगा. He's already run it once in this overtime, so they should have a very strong idea that he could be piloting it again on this defensive side. भाई weak side पे घुस तो रहे. To show a different look. Toxic screen already set up over on Ada. मेरे को लग रहा है ये whiff करेगा भाई. So far it's working decently, but now with that drone coming through, the dash in as well, that's going to be the full tell. Yang for an angle, bite, forcing him out of position. He is last cannon. Darian, however, covering fire, managing to find Izu, but Player gets on top. One. Is he going to no-scope him? Yes, he is! Yay finds the kill. Nice Rossi quick to reply. Shuts him down, brings it back into his range. Here's the reveal ping, goes across. They're trying to flush Crazy Guy out. They take him down to 70%. They clear out onto the drone. Rossi going to be taken down. Scary can find the kill. Xskill lurking forward, hoping, praying that they fall within his reach. But now Carpe's down, that's a spike on the floor. The dog, it does not check behind. The swing still so much work to be done. Nice try, baby. Make it happen. Bleeding once again, going blow for blow, regain a lead. And the fact that they're able to get those early trades with Darion and with the no-scope from Yay makes it so much more difficult. Carpe opts to go for the operator, and then the drone comes out, and it's kind of unfortunate timing. Reveals his position. Eventually, a shock dart. वो होने वाला भी. Scary is going to clean him out. Carpe trying to go up and over. Scary just. मेरे को लगता है अभी एंड है. खत्म है. And it's just back and forth we go. Can Bleed. नहीं भाई 5 man even नहीं भाई. देखा ना. मैं बोल रहा हूँ 4-5 घंटा है. Bringing this one through. Here with the Vandal in the full armor. There's a tap on the orb for now. Now taken. Close करेगा. I mean, Darian try to get that Reckoning online, and it could be a monstrous piece of util if they can get that ult ready to go for a post plan. They're really delayed and rotating here as T1. Oh, that relay pull, he might have called into multiple, and that's going to be easier taken out. हो जाएगा खत्म है भाई खत्म. जीत गए. A little bit of damage there. Yay down to 76, but नहीं खत्म. will be able to finish him off. Now setting up his own wall. Volume. High Tide's come pushing forward. इधर से बॉल, उधर से बॉल. Across the board here. Skirit moving forward, gets a tap onto the spike. Saya Player wanting to take a forward position, but has to wait for the timeout. Now sends out a shot, narrowly missing. Just spraying and praying, hoping he can find something. Push it, Darian going to be able to find one, but ये क्या है? I mean, this is a great recovery here for T1. I thought they were going to be a little bit. It's okay, it's held a half. Yeah, we're good. I thought he ये was क्या है? a little bit late to the punch because you had so much. भाई ये रॉसी बहुत अच्छा खेलता है भाई. एक और ओटी ट्राई करके देखते. And that should be a pretty dead giveaway, but that's like 99% going to be the site that's executed on. But they have positions looking for the lurks. Xskill again. So good on this A site, shutting things down. Rossi with a well-timed flank. ये मेरे हिसाब से रात को 2 बजे तक ओटी करके फिर डायरेक्ट अमेरिका खेलने जाएंगे मेरे हिसाब से. 15-15. I mean, I said it before we had the last break. आज करने वाला अमेरिका. I was gonna. I was gonna. करने वाला अमेरिका आज. ये सोएगा कि मजाक करेगा. You cursed us. You did it. मजाक में I mean, in a good way, because I mean, this is a great match. That may be. Time will tell. I don't even remember what the record is. So I don't know either. It's 20-something to 20-something. Saya inching. Darian on the opposite side here. Vandal in hand. Needs to get around the other side. Scary as well. Watching. They're really leaving B site completely open here. Just really sensing that this A site is going to be. This hit's gonna come through. This is a fairly hefty gamble. क्या वो देख रहा था? Looks like he's more than happy just to take that and dip. Drone in the meantime from Carpe trying to scout out the remaining players, but he won't be able to catch them back. Pyramid. He sends out the recon dart, and that can reveal all. They start working their way forward. The fake out there. Scary has been pinged. The side player now gets himself tucked just below the stairs. Here's one up above, jumps up, finds the भाई मेरा हो गया. for the reposition. Xskill as well pushing up. कुछ भी मार रहा है.
तीन मारा उसने ऑफ से अटैक Turns to the side. Darian able to find one with Zaya player. Finds himself 3. Second kill now coming through. Spike still dropped quite far away. They need to grab this and bring it forward. But there's still an opportunity for Egoist and Darian. Maybe turn this, but no. Now Saya player on for a second ace in this series. Not his second, I should say. मार दिया एस, खत्म बे, हो गया. But they need to get the plant. It's going to happen to be उसको नहीं पता था कि किधर ही है. Izu will finally find them. भाई ये लोग क्या खेल रहे थे? With time remaining. अबे वो लोग घुसने के बाद भी नॉइज कट डाउन करते ना. I mean, Saya just so methodical here at the beginning of the round to find the opening pick. We're able to clear so much space again using this lower utility really nicely. No extra time for Saya. This is just a great shot right here. Great recognition. Crazy guy giving away his position with the firing of the gun, and then Saya just pops up and over, and then they're able to create these high-low angles. I mean, if Saya dies there, that's where everything could fall apart. But T1, they finally won the attacker side round. ये मैं अभी तक खत्म नहीं हुआ नहीं. Struggling in that regard, so if the trend सोवर रोटेट किया, अभी ये लोग एग्जीक्यूट करेंगे, लग गए इनके. ये क्लोज है. Sure if he got around the corner, the pings are coming down late. Did identify him. Drone couldn't get the tag. The rush forward, spray coming in, Yay, trying to flush them out of this spot. It's done. It's a reveal on the one. It's the headshot. Izu going to be taken down. अबे यार नहीं जाना था उसको position. As he tries pushing forward, Xskill takes down Yay. Found crazy guy moments before. Spike is planted, but it's a 4v3 for the retake. Nice. Flash into his face. I think it's over for Bleed. The score line here now. 3v3 as far as players are concerned. Drone pushing forward. It doesn't see him. Trying to spray him out a little bit. Then थ्रो किया? ये तो थ्रो किया पूरा. डेरियन को मारना तो. हाँ. Trying to dissuade the push out on the corner. Tapping onto the spike. In the meantime, though, Scary lurking in from mid. GG guys. Everything to do in a 1v3. तू लगा है कि नहीं लगा है? लगा है. Not on their side. Looking for the It just didn't happen. और उसको लगा वो इधर से वो करने के लिए गया. अबे उसने लाइन चेंज किया. No way. No way. How to make sure 3v1. 3v1. I mean, he's just so thorough. 3v1. Job here by Xskill at the beginning of the round. Immediately this time, in response to the drone and the leading utility from Bleed, he throws out a high tide and gives T1 a really good shot in this round. But it doesn't matter because Scary's just too damn good. It's just another very narrow loss here. 4-2-1 is Darren trying to get aggressive. Gets tagged up a little bit, but could be worse for wear. Shorty in hand. That we've seen. Big. Find one kill, put some damage down onto the other player, but Xskill Trident Z player answering back. And what's 3v3? निकाल सकते हैं. In the lobby right now at full HP. Up in Ye's hands, the TP. Big है भाई, big है. ये round crucial है भाई. See if Ye's going to be able to reply in time. He's inching forward. The gun barrel. Thought it was showing. I thought maybe they had identified it, but Izu is able to find him now, and TP's out. Taking his spot. Saya swinging out from back sight. Takes out Crazy Guy. Scary going for the Clutch guard. That tail went out. ये राउंड तो गया. Checking behind him. ये अगर स्कैरी ने क्लच किया ना मैं नंगा नाचूंगा अब भी स्ट्रीम पे. नंगा. Please no. Oh my god. Please. नंगा. The fake out, the flash, not connecting the jiggle peek. नहीं होगा. It's run out. He's running across this Izu. इज़ो भाई मस्ती नहीं. बच गए भाई. Up to map point. So many times. He is tremendous, but exactly. I mean, he's doing it. अबे यार क्लच निकालना चाहिए था बे. हम सब बच गए chat. TP. I mean, yes, Ye does find one off the spot, but now Scary has no idea where Izu went. तेरी भाई क्लच निकालता बस इतना मजा आता. And that was plenty. T1 to get over the line in that round. सीधा नंगा नाच. ऊपर से T1 भी बोला, मैं भी. कॉन्फिडेंस में बोला. ये चाहिए था. ओह टाटा बाय. ये तो हो ही नहीं सकता. ये अगर तो नंगा नाचते लोल तक जाके भाई एक बार 1v5 किया था. नहीं मिलेगी. स्केरी भाई निकाल दो. स्केरी भाई
not यहाँ से snapping enough to नंगा get the shots. नाचता Sahil player नाचता trying to सियोल line तक him up. जाऊंगा वहाँ से लैंड इवेंट Line of sight just fast enough. Let's go. यही डर के वजह से एंड हुआ है ओटी याद रखना After so very long, come back in, fight tooth and अबे क्या खेली बल्टी वन साया प्लेयर क्या खेला 2-0 And despite all the hardships on the day, it is going to be T1 नहीं रे second bleed finding जीतेगा भाई themselves with a very crucial win on Bleed's map pick. It was so well fought by both sides. T1 कोरियन टीम है ना And they are able to get themselves crazy, through. yeah. I mean, what an impressive first map though from Bleed as well. You really got to like what you're seeing. Yeah, I mean, let's. Nice, sir. You cut out all the nonsense that's occurred. This was a damn good map. Yes. 18-16 between these two teams. Again, just how streaky it was. Bleed starting things off 5-1. The T1 rally back for the भाई sixth. पर जो ओटी के raunds निकाले ना Into yet again, you know, the T1 taking the lead. Bleed coming back. वो भाई Taking all the way next over level है overtime. This was a damn good map of Valorant. Broken up by some unfortunate circumstances. But all we can hope now is that it'll be smooth sailing from here on out, and that Lotus delivers in a very similar way. No doubt. I mean, that's what I'm certainly hoping for. बेचारा practice कर रहा If है this map was any indication, should have an absolute banger on our hands. And I just love the adjustments round to round in overtime here from T1. Some really cool stuff, but I'm going to let other people talk about that. That's right. We, of course, have the analyst desk standing by, so we're going to go ahead and throw it back over to those guys who you haven't seen in a damn long while. What a banger way to start kickoff with this very first game. You know, the first game, first match, and we already have our first ace by Izu. Now look at the scoreline. I know, you know, we went through breaks and everything, but it was still an insane back and forth game. Yeah, I mean, as the casters mentioned, obviously quite streaky in the beginning, but then starting to really adjust to each other and maybe adapt a little bit too much to each other's style as well. But one thing that really stands out to me is Bleed actually getting more first kills, because it felt like with Scary going on the clutch so many times, they would have been the one who's always playing from behind, but no, it's actually T1 who overcomes that. That guy though, Scary, he's one sneaky player. 3 clutches in this entire match, and those were all earned by him. He kept Bleed in over. सच में भाई But apart from that, of course, Saya Player was the guy who almost. What the fuck 36 भाई साया प्लेयर सच में बहुत अच्छा है भाई हेवी डिफ हुआ बे वो डिफ दिया उसने ये को पूरा बस वो ऑफ का किल निकला ना लास्ट में बहुत क्रूशियल था बे भाई कंसीडरिंग कि 6 घंटे में साया प्लेयर ने 36 किल मारा थोड़ा कैजुअल है मेरे हिसाब से ये दर्द रहा कि नहीं चाह रहा क्या सीन थर्ड मैच कंफर्म खत्म है क्या थर्ड मैच होने नहीं वाला थर्ड की सेकंड मैच थर्ड जी वाला मैच नहीं हुआ भाई अभी क्या वापस मोस्टली क्या हुआ नहीं है क्या जी का आज जी वाला नहीं है क्या रात को 4 बजे थोड़ी खेलेंगे नहीं होगा बे पॉसिबल ही नहीं लेकिन दूसरा वाला होएगा कि वो भी नहीं होएगा वो भी डाउटफुल लग रहा है मेरे हां मैं 9 बज गए उधर तो अबे 3 मैच है अभी भी रोस्ट भाई ने स्ट्रीम में चालू कर दे वेरी रियलिस्टिक हां क्या इसने बोला क्या नहीं होगा उसी तरह मिला ब्लीड में हां BO3 है हां BO3 है वेरी रियलिस्टिक 6th मैन है ये क्या है इसका वो ऐसा लग रहा है किसने तो बोला जा लाइव स्ट्रीम कर बस हो गया अबे वो स्ट्रीम कर रहा है लेकिन प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे पर मेरे को तो लगता है ये का नियॉन इतना नियॉन का वर्थ नहीं था अबे स्ट्रीम से अच्छा प्रैक्टिस है हेलो क्या चीज प्रैक्टिस तो मैच कैंसिल है ना पक्की हाँ पता तो नहीं अभी मैच तो के नहीं पहले उसने स्ट्रीम एंड कर दिया तो नहीं उधर जाते कैसे रे बाबा ऐसा नहीं होगा कैंसिल है मैच भाई जब उनका
गेम के दिन वो स्ट्रीम कर रहा है तो भाई भरोसा नहीं है। स्ट्रीम एंड करके सीधा चलो लेट्स गो ऐसा। मेरे को बता रात को 1 बजे कैसे खेलेंगे मैच? अरे काफी लेट हो गया अबे लाइट ही अबे खाना भी ना कुछ रहता है कि नहीं? बिल्डिंग के मालिक बोला होगा जाओ 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 हो गया गेमिंग आज। भैया मॉनिटर आम मस्त है बे। हाँ सेक्सी है। देना मेरे को। युग भाई कैसे हो? एक अरे सेकंड। नहीं नीचे। आर्म के साथ एक मॉनिटर लेग्स एंड बिटवीन द लेग्स भी लेना पड़ेगा मॉनिटर। क्या होता है? ले लूंगा मैं खुद। भाई मैप 2 तो अब भी चालू होगा 2 मिनट में। अभी ये लोग डिले नहीं करने वाले, पट से चालू करेंगे। नौ बजे है जी का मैच, आज नहीं होगा रे बाबा, नहीं होगा। सीधा चालू हो रहा है बे, अभी डिले नहीं है इनका मेरा लग रहा है। Forcing 3 rounds in a row to buy up, and then it just doesn't come to fruition, because then at the very end of it, like Crazy Guy's left with an Ares on attack, on Breeze, like things like that, where it's like, oh, you have lost. ये कौन है लास्ट प्लेयर? Right? Like you're only T1 का, T-Bleed का? trying to force these fights, and T1 started backing off. वो है जो वाइपर खेल रहा था भाई, पट चालू कर रहे बे। नहीं क्या डेरियन है ना वो? ही इगोइस्ट है वो। इसका ब्लेड का? हाँ वो लास्ट प्लेयर अभी दिखा था। Like on stage when you're playing up Nef egoist है क्या? अच्छा egoist है। Towards the second half, and then especially in overtime, we start to see each of their colors come alive. Which T1 is set up trades, go for these contact plays, and then for Bleed, more so than contact, it is. अबे Nef तो खेल ही नहीं रहा, egoist डेरियन। First hand, and then react to it by getting the first kill. Yeah, and that's something that they were really, really good at. But, I mean, apart from just seeing these highlights and how strong they were on Breeze, it kind of gives you an idea of how they might play on Lotus as well. Because one of the things that I'm thinking about is how Bleed plays on Lotus. Last year, I mean, this is a whole new roster. They're going to have to play all different agents, right? They had a Sage, they had an Omen last year. I mean, ये वाला round 60 था। But with Heyy being in the roster, is he still going to be like a Neon or you know, something? Or, I don't know, it's Lotus, so different. But meanwhile, for T1, I think we can kind of expect them to go for the same. ये वाला round crucial था। Now he's going to be the one going up against Heyy. How's that going to play out? Yeah, the big question for me is while like Chamber's use itself kind of remains consistent despite the map changes, but once you give up C-Site, right, the plants are a little bit more flexible now. There's a lot more space where they can fill the site as the attackers. So Chamber, once you rendezvous out, you're really letting that site go for free on the defensive side. So that's my question of, okay, do they still feel that Xcurit's first shot is good enough that it's not going to matter, or have they tinkered with some other sentinels? I mean, when you go up against a team like Bleed, who can really full force of the entire team, and I think that's why they also have Izu as that, you know, Astra. That's why you have the Outlaw. It's got 2 shots. Okay. I mean, we'll have to wait and see. One other thing is obviously Crazy Guy. We've seen what he can do with weapons like the Odin and the Ares. A lot of these high pen weapons that can just force people out of certain areas. Now on Breeze, not too many ways to make it crafty and useful. But Lotus, a very different story. Lots of walls that you can just spam through and start to eliminate the process of elimination to go through step by step. I am really excited to see what kind of team comp Bleed is going to have. We were just talking about Neon with Heyy. That was totally unexpected. Are they going to carry forward with this, with Heyy being that flex agent player and letting the team really thrive in their comfort picks? Yeah, I mean, I guess also the question of, I mean, is Heyy still the primary duelist even, right? I mean, Darium, maybe we got hints that Darium might be. Now he's flexing to Harbor, and Egoist is flexing to Sky. Yes. It's like,
they've really just thrown everything into the pot and mixed it up. A lot of it being mixed up. But I mean, it is a little bit underrated for me, though. I think I want to mention that Egoist, who is usually the Sentinel player, he loves to kind of set himself up for trap plays. When he swung over to this guy, he's still able to frag out a little bit better than like Carpe, for example, I might add. So I do think that that's something that Bleed has an edge up over T1. I'm just backing up my predictions here, Will. I mean, listen, I am not giving Carpe अभी कौन सा मैप है? on that map by any means. He had some highlights, but a lot of those were like, you were already winning the round, right? The impact was not quite there. So I'm with you on that, but we'll have to wait and see. And Heyy continues to flex over onto the sky. Wow. Oh, and Crazy Guy's playing Breach. Even by predictions. Heyy actually going for the info. Crazy Guy's the one setting up the prediction. Bleed. Egoist will be Lead. going back. But then T1 sticking with that chamber, now mixing in that fade to go alongside Raze. This is already a big एक बार difference. डिस्कॉर्ड देख Some of the मतलब डिस्कॉर्ड stats, खोल कैसा लग रहा है वो बता today on and Jet अबे being one मैं of the फुल highest स्क्रीन paid में हूँ agents. अच्छा चलेगा रे मैं वीडियो में कैमरा ऑन कर रहा हूँ दिखा दिखा Yeah, I mean, for T1, obviously the operator's on the chamber, right? So, yeah, then Oh, you can really अच्छा focus on the Raze. Now that they're देखा honed in on the Raze, the fade coming back also बहरन makes लग रहा है। sense. You can clear out the others as well. But on the side of क्यों Bleed, करना I mean, था? they are looking for fights. दाढ़ी में लड़की नहीं मिल रही है, फुल में मिलेगा। यार देख पे जा रहा था इसीलिए I mean, just having that mobility to dive in, paint shell so ये useful क्या in देख रहा हूँ मैं? just to दर्द में है कि टेक पॉज है execute off of छोटा बच्चा दिख रहा है It's always हम पे तो क्या हम पे तो राइस ही नहीं मिला we can't wait to see what happens. Now I am really सच excited में going to this सिक्स में अच्छा ना लग रहा है We छोटा बच्चा started दिख with रहा a है breezy ओ भाई Burgundy चालू हो गया Royal, असम we're gonna go बम to India's let's go अभी बोलो अभी रिंग लाइट ऑन किया है T1 भाई paper thing. अभी और छोटा ना गेम चालू हो गया अभी और छोटा एक्सक्यूज मी Thank you very much, guys, at the desk for breaking सही down लिया all यार of the ये में action. क्या हो रहा है Very भाई कल elongated चीट map डे है one. संडे भाई Here we are. बिंग्स प्रेडिक्शन दो जल्दी बिंग्स प्रेडिक्शन They have looked good on in the अभी मैं past. चाहता हूँ बिंग्स भाई मैं बोल रहा T1 जीतेगी Quite that big matchup that we were hoping for. बिंग्स भाई T1 सिर्फ आप T1 सच बता या फिर आज बताओ कैसे बस करेंगे We do. We बिंग्स get the सिर्फ answer आप सच here, बता which सकते was हैं एक बार डिस्कॉर्ड देखो बताओ कैसे हो at the सच सच ABL, बताओ so very excited क्या to see that again. अच्छा Some, हूँ some changes here though. Carpe क्या on the fade. T1 With the जीतेगा sky changes, maybe. टीयर feels like 1 that's a little मतलब bit मैं टीयर 1 हूँ of बोल रहा हूँ बिंग्स भाई quick TP मैं out of there Discord नहीं देखा, for इसलिए बोल रहा Xcure. Has to dodge the paint shells. Getting away from that one, but I mean, worth noting it. We were बिंग्स T1 या bleed seen the agent select. अरे बहुत सड़ी And के as you discovered, Heyy, सुना नहीं मैंने बता career first T1. for him here today. T1 मैं भी T1 First time on Neon, the first time on Sky as well in an official match for Heyy. So really, again, something we were talking about earlier, Achilles, is how we're really impressed with the way that Heyy is like working with this team, playing selflessly, fitting in where he needs to. Ego is back on his natural role of controller on that kill रेडी है streak. भाई उसका Of स्टन course, Izu as well switching off the Astra to the Omen for this match for T1. So अबे ये थ्रो किया अबे bleed ने Flash out to try to catch somebody pushing पहला forward वाला here into the B site. A moment away from actually being able to snatch them up. अबे एक्सक्यूरेट ने चेंबर ले लिया है कैसा ऑफ करेगा ना Apply some pressure जी का मैच कल के लिए पोस्टपोन हुआ 12 बजे बस यही देखना रह गया मैं होने वाला था भाई इतना लेट कैसे खेलेंगे भाई towards the A site. and not a lot of utility in the hands of Bleed left. It feels like they're gonna wait this out. Let Carpe. Yeah, he clears out that turret, 30 forces seconds left. smoke rather out of यार एक Scary. क्वेश्चन आया यार Really doesn't have any available. Needs to wait for the रुक रुक reach. बाद में कोई भी रोशी Shot को goes his way. The डिस्क orb क्यों नहीं comes down. मिलता That should tell Bleed all that they need to know. So they start their rotations over towards the A site. But she's still got a little bit of extra utility in the back pocket here. Not quite caught as he was sliding down to Aaron, able to find that kill. White not going to be deep enough to actually catch him. भाई ये मेटा में है यार लेकिन फ्रेंजी अभी भी मैं देखा It's just टीम्स gonna को be 3-3 chilling out a drop. Now there goes all that util. Corner peeking, not wide enough to spot Carpe here. ओह By crazy guy who's going to take the first fight. Ooh, First Carpe bullet bye. Taking it down, Paranoid now crashing across, managing to get that blind out on the two as Saya Player plays up into the poison orb, and Carpe is just going टीवन absolutely जीत रहा है क्या crazy. ये The man comes भाई up with Carpe 4K, still standing at the end of it all. T1 That's going to be the first pistol round win here. T1 easy win है भाई ये मैप मेरे को लग रहा है इसके ना डिजर्विंग Carpe does so well with pistols is click on heads. And I know that sounds kind of basic to say, but he's really good at it. I mean, think of all the times we've seen him with a Guardian or a Sheriff, in this case a Ghost. सेम मेरा भी ऐसे ही है Stopping people. I mean, he's so steady-handed. And he's just such a pleasure to watch in some of those rounds where he can just absolutely take second round Vandal hello Speaking of Guardians, there he goes. He swaps into one. Yeah. Xcure going for the Vandal. Shock fault line, everything
chucked out here. Xskill pushing up, finding one. Managing to get the second. Darian able to get off that orb and get out of sight. Carpe now pushing forward. Does he anticipate? Here from और भी वही farm करेगा शायद Xskill. Oh, the answer's gonna be yes. Sends out the C's, looks for the spray, trying to take him down. Has the decay there, but runs out of bullets, has to back away. Taking him out with a classic. That's इसको मार कैसे नहीं पाया वो गार्डियन वाला. get tagged down to 39 with the wrap around here. Ego is coming in from behind. Maybe they can get the jump, but okay, yeah, it does get spotted. Paranoia hit. Nice flash. Tuck in behind rubble. Door now. Tap. Scary. Taking a bit of damage. Answering some back. Still managing to stay alive. They're going to try and flush him out. They will be able to do so right as Egoist also dies off screen. T1 losing out on a couple players, taking a bit of damage, but they close out the anti-eco. I think वो लोग थक गए इतना टेक टाइम आउट के बाद. He's really just dead to rights हो सकता है. behind that box, excuse me, but the backs. The bastard. We've been here for a little while. That's the most succinct thing you could say to explain anything that happens for the rest of the evening. That's true. I'm gonna dip in. I'm gonna be dipping into that well. No, like really, it's. It was a sad guess, snap पे. Really cagey with it. क्या करेगा भाई यार करके. Three operator here from Xskill. Jump peek onto the corner. I mean, they want to keep this hidden as long as they can. So just going to be using those rifles to clear out KJ turret. Quick dip back, avoiding that fault line as the smoke is going to be coming down. And you can see they were making sure that if anybody pushed through mid, that they had reinforcements there. Make sure it was covered. Now a shift back over towards the C site. All that. bleed हो रहा है. भाई bleed ने अगर कुछ किया नहीं तो भाई हो गया भाई. कुछ और फॉर्म कर रहा है क्या फिर? क्योंकि भाई एक तो T1 का लाइन बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है भाई. Xskill on chamber बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है भाई. Catching a connection there. Bob trying to see if there's going to be an alarm bottle around the corner. Another smoke going to be coming through. ए जाएंगे क्या अभी? Doing a very good job of just cycling these out of Scary. These paint shells will clear all of the utility. Still going to see that Nano tucked into the back site there. Actually, both Nanos तो बहुत वेस्ट किया है. used for that water side of the C site. Bye. Way over and all the timing. हो गया भाई ये मैप तो इजी विन है. Still going to be found. Carpe is like, okay, I don't need the vandal. Gives up on the opportunity to pick it up. After missing it the first time. Yeah, now trying to take that first fight. Spots it, but Izu somehow. भाई ये मैप तो इजी है. Izu claims another. 10 seconds remaining. Spike being planted. 5 members strong and Bleed have to scare to the hills. So well handled. I mean, T1. Clinical. Yeah, they read the positioning of Darian so well, clean him out, and then Izu just rolls into the site with the Guardian and just runs him over. And you have to. It Bleed's already leaning back towards this site to help Darian. After that toxic screen and the poison cloud come up with the amount of time that was left on the clock, it wasn't a lot. They knew that this was pretty likely to be an A, potentially go through baby door towards B, but shift over in that direction. Carpe's on the hunt. Swing off the corner. Oh, puts the gun away right as he rounds the corner. Seems like he didn't expect him to be over here at all in the connector. And they know where one's at, so yeah, they go jumping forward. Oh, down very low on HP. Weapon picked up. Scary wants this kill, and he will be able to find it. So a 3K built up for him in the round, but ऐसे तो बहुत होते हैं. 4-1 by 4-0 side of T1 as they continue to rack up the wins. Yeah, I mean, again, economy I'm pretty sure I said this earlier. That T1. Who knows? That T1 won 75% of their Lotuses in all of VCT, including internationals, including क्या ये स्पैम भी लगता है? official VCT matches online. आज पता चला मुझे. Really, the scary part is, and I'm not talking about that the guy on the game. I'm talking about the feeling is that they're better on the defender side. Oh boy. Okay, the jump across. Side player going to be stunned up as that full line comes out, but now Nightfall unleashed and Scary taken down. Two swung out here over at the stairs. हो गया खत्म. With that sheriff, will be able to put one down. Rotates around up towards drop. Gets himself situated on the site. 4-0. Open. Carpe wary about a push out here. Given the weaponry, I mean, it would just be suicide from Crazy Guy to move out. Stinger at that range. Yeah, it's not going to go इसने well pick किया ना ये dead है. Especially versus this.
Busy guy नहीं ना? I think here is Odin T1, full spam पड़ती you'd है. like to keep them at arm's length, right? Like, you know on this eco, they're going to be going for some of those close range weapons. You'd rather, I'd be totally fine with a pivot towards C here. Just get out, try a different कल 12 area, बजे. and they'd be right to do so. They seem to have a pretty good read on this, at least looking for lurks as well. You know, you have to expect that someone is maybe going to be going for that backstab to maybe at least claim a gun or something out of the hands of T1. 30 But seconds the left. economy's so good for them already, Achilleos. Like, they've already got an Odin, they've already got an Op. I mean, this is really clean. Yeah, kill found. Egoist now starting to मतलब think that this कितना is going to end up टाइम being वो वेट किया था the उधर C site, but as the turret gets वो cleared, भी इको में. Coordination तो है बे. वो भी इको में वेट कर रहे हैं. Coordination down, fight to prevent the push out. T1 will be able to get away with that plant scot-free. As Rossi, Enzo's not here. He can't hurt you with the Odin. You don't need to be running this. I mean, this is just so tricky. I mean, you're just hoping to snag a couple big guns, maybe if you're किस really देना lucky. नहीं चाहिए वाइपर को वरना अल्टा आ जाएगा One of the उसका. biggest issues is that with the Odin around the corner, this is one of the last guys you want to be funneling ult charge to. Is that pit? I mean, we know how powerful it can be in a post-plant setup. Ready first? So it will just stay put. Get ready to go down to the spike, especially after that warning fire coming through. T1 will make their exit as they pick up yet another round win. And what I'm really liking about the way that T1 has been approaching this, especially Rossi, I mean, I'm really impressed with the way he's using his util. We saw it earlier to clear Darion. This time around, he's using the snake bites to buy time for Carpe to clear that turret. So Carpe should probably only have to worry about one other angle, and that's towards Baby Door. And so it's really good, like, methodical stuff here, making sure that all their bases are covered. And even better, coming into this round, now you're one away from a showstopper for Saya player, so you can put that op into the hands of Xcurate. इसके बाद किसका मैच है? What's so cool about this comp that T1 runs with their players, they're really playing into the strength of the individuals on this team. इसके बाद G का ही था ना? Funnel things around. You can switch who's opping based on where your ult cycles are and things like that. So I love the way that they maneuver this map. But now you've got the big boy guns in the hands of Bleed as well. Yeah, crazy guy there with the bye. Just gonna get sprayed down. इतना Good चलाते news, भी. Carpe trying to creep forward. Spray continuing. It's Yay. भड़क गया. Oh भाई. Just trying to push up into the smoke. Ends up getting taken down. TP into the corner. Crazy guy deciding to back away from that angle. भाई ये तो नहीं हारेंगे लोग. He down low on HP, but now it's just Xcurate and Izu, last one standing. Xcurate honed in on this position. So smoke comes in, trying to creep up. Trying to play this quietly. Gen.G और मेरे टाइटल में डाला था ना? देखो ना कोई. It will interrupt that. He actually could have stayed for it. Doesn't. Decides to pull off. Now goes for the plant once more. Xcurate puts some good damage down, but cannot get the kill. Just a quick little pivot there from EA around. भाई ये वाला spam आज Taking out पता चला भाई. Izu. So first round victory coming through here from the side of Bleed. And honestly, a little bit surprised that we hadn't seen a timeout called prior to this round. But they managed to get it on their own terms. A lot of trust in Crazy Guy, in his ability. Gen.G versus RRQ. लेकिन अभी ये लोग का अल्टी जाना चालू हो गया. They put that Odin to great BTech use. वाले Crazy Guy, the IGL, gonna be the one in He hand won with by. it. He gets some big kills. Yay, right there to play off of him. Let's see if Bleed can stabilize a little bit here. Still plenty of money in the bank for T1 to go deep into this buy once again. Still the showstopper, even though Saya died early. Rolling Thunder, though, Seekers in the back pocket. And you never know with Scary and his ult what can happen, but it's going to be tricky now as Darion, an operator, going to be watching towards Mound. No contest. So everybody, including the Killjoy util, going to be over towards the A site. T1 use this toxic screen. Try to clear a little bit of extra space. Might have cleared one of the nano swarms. On the opposite side of the wall. Saya, showstopper at the ready. क्या लगता है सीधा घुसेगा? घुसेंगे ही नहीं. दो smoke का क्या सीन है? On the side of Bleed. Slow खेलने को. It's going to be quite worrisome here for T1. जितना तो विजन उनका काटेगा और कंट्रोल लेगा उतना अच्छा है ना. Trailblazer will go through. And that could be somewhat problematic and will get cleared out.
हाँ ना वे छोटा करने का मैप को. Still going to remain a secret. Going to be leaning in towards the B site. Showstopper on the other side, opening the door to try to buy a little bit of time and a little bit of a fake here towards A. इफे हो रहा है. It's going to be sending in. Has everybody crowd back, but this kind of forces them in towards the middle of the map. So as the strike gets ready to come through, they're actually not in the best position at all here. Are bleeding. जा सकता है आराम से. Shot not connecting. Xcrit ends up getting taken down. Egoist with a nice spray control. Managing to find the kill. Spike लेके आ गया. Pivot back over towards his A site with barely any time remaining. 10 seconds left. It's over towards the right. Yay, trying to spray out the box. Carpe setting the haunt up over the top. Catches one. Yay, going to be taken down. Tap onto the door. Manages to escape. Oh, bhai. Read to hai be. Rossi certainly does. भाई T1 का रीड तो है. Takes him down now. A 3v3. Op still in the hands here. ये next level है. His own showstopper. If he can find the opening kill. भाई दिल से बुरा लगा भाई. रीड तो है भाई. रीड तो है. T1 के पास रीड तो है. Heavy read है. अबे कैसे क्लियर नहीं किया उसने? अबे थोड़ा लक भी है T1 के पास बट खेल तो रही है. कैसे क्या? क्योंकि भाई ना कोई इन्फो है दूसरा बंदा भी घुसा 2 फ्री में मर गए उधर. वो बूम बॉट डाला था लेकिन वो क्लियर नहीं करता. The Rolling Thunder out, immediately pivot back towards A. Izu there quick with the TP to get over, get the plant down with little time remaining. 7 घंटे से Really good positions to just shut down Bleed in any hope they have of that retake. So they're टाइमआउट मत लो रे बाबा मत. टाइमआउट तेरे बाबा 7 घंटे हो गए मेरे को. इधर भी नॉर्मल से चालू हुआ था. Scarier and scarier because T1 generally on this map so good on the defender side. Sure. I mean we've तो ऑडियंस सारी उठ के चली गई भाई. all the time here in Pacific. Lotus is a better sided map. When you play it here in Asia, at least it has been, obviously, with the recent changes. Bhai, upset that hai could very well change during this season. Time will tell in that regard, but this is a very strong start for the side of T1. And I mean, we're seeing a complete inversion of what happened on map 1. That was Bleed 5-1 in the lead. The timeout gets called going into round 7. T1 start to rally back. ये लाइट मेरे आँख पे क्यों मार रहा है? उसको पता है कि मैंने सोया करके? Can Bleed do the same? They still have 2 ultimates. मत मार रे जोक मत. Egoist though not being able to pick up nearly as many kills off the rip here, still lagging behind. कौन सा ये मैं मुंड्रा पारिया. Absolutely right. And only one away from a हर्षद भाई कैसे हर्षद भाई? Potentially, you have the rocket from Darion, but already. Still able to keep the big guns in hand. X-Curate on that op once again. This time going to be watching over the mound. And it is just Egoist over here. You do have a little bit of backup from Crazy Guy with the breach util. They're a little bit more focused towards B with this heavy push out towards the front of A. Should be decent information for Bleed. See how they want to play off of it. All right, well, turret. Nano going to be cleared. Alarm bot still set up inside B. Yeah, currently positioned there in the dip. Let's see if anybody's actually working their way through that door. Seems like it might be a drift back over towards A. इधर रहता दिनों से रपीता बे टाइम नहीं मिलता स्ट्रीमिंग का. I mean, paranoia from Scary into a showstopper from Darion could end up being catastrophic here for T1. They're just waiting. I think you're exactly right, Achilles. They're just waiting for kind of a trade here. Take contact from Scary in whatever form that is, and then he's on top of the box. He's got a खुद इन सबको तो मेरे ओपोनेंट में था बिंक्स भाई भी ऑपोजिट. हाँ क्या? Showstopper sent. Managed to pull back. सीधा सी. They widely managed to get away scot साया free. प्लेयर सैचल मार के पीछे आया. They went a full second here onto the C site. Beautiful bite. Rossi. भाई अचानक से T1 का गेम प्ले कितना अच्छा हो गया ना. स्पाइक नहीं है. What the fuck? पागल हो गया क्या? वो चेंबर का टीपी स्पाइक लगा. वे सब लोग शॉट यूज करते हैं. Down any of these low decayed members on the side of Bleed. For now, they're skirting around the side of it though. Xcurate not ready for the double swing to come through off the backside. Darion going down. They can
themselves a chance. Carpe, however, bouncing out, comes up with two. The swap to the short. भाई T1 का गेम प्ले अचानक से Shorty of my own takes ये it तो down. clear Smiles cut abound on the experience side है T1 भाई. as they make it 6-1. दाग खेला बे Yeah, I कार mean, पे T1 क्या so brain quick to help cells each other उसके? out. Carpe, some great decision making there to drop down and catch Bleed just a little bit off guard. Izu snappy with the headshot on the ये crazy knockout guy नहीं है to ना? push that corner. Great maneuvering too. Yeah. Eventually just gets sprayed down, but I like it. I mean, he was really making it harder though, and giving extra information on the positioning of the multiple guns. The 2 or 3 are spraying through there. संजित भाई कैसे हो भाई कैसे हो लॉन्ग टाइम नो सी And there it is, the tour de force from Xcurate going to be popped. But no double ops. Weren't able to keep it from the previous round. Just the Odin and Vandals. And they had to get invested, but actually Ego is holding on to the Nano Swarms this time around. Alarm bot will get cleared out. And they're doing a really good job as T1 of burning out a lot of the utility early for Bleed. Like every time I look on these retakes, there just isn't a lot left. Yeah, I mean, it's once again scary. No smokes. Has to wait for that one to come back up. Full utility is still there for Crazy Guy. Scary, I would say that does get another. Trailblazer goes in, does get the stun. Scary trying to throw the paranoia. Crazy Guy, sheriff in hand, takes out Izu. Smoke's now gone as Haunt up over the top. No reveal going to be found here on Egress, but he has to backpedal. He can find a kill. वो कहाँ के लिए स्पैम है बे वो जो One ऐसा charge away उससे from having it available. It looks like Rossi is going to take the opening fight, pushing forward alongside Saya Player. 3 players around the corner. Things could get dicey. This could be a weapon given up unless they can connect. Watching Waterfall takes out Crazy Guy. इसका भी hopping अच्छा है. And that's just going to be scary now. हाँ. That Vandal held on to as he creeps his way back. Just T1 का गेम प्ले knowing it is an eco, of course, but still the backup is there from Rossi immediately to help Saya Player out. I know they've got a couple players over there. तेरी भाई क्लच निकल रहा है They just want to smother him with gunfire. No problem. And again, it's everybody's really kind of on the same page with T1. I mean, especially on this map, but throughout most of the day, they've done a pretty good job of really playing off of each other. Good util. Scary maybe got one? He did. He did. He took down Carpe. So, a little consolation prize in the back end. I mean, look, really nice turn on the flash, but ultimately it's an Odin, so, the spray down doesn't mean it's not that impressive. No, it's not hard. He held him one. I mean, what it has been impressive is just the strength right now of T1. And the quick pivots and somehow just managing to pull gold out of just absolutely nothing. Yeah. Compound bleeds problems where you're able to करती है Sky ने. these power heavy weapons damage available for T1 right back into the op as Xcurate after his ult against the Eco. Really good time to have that ult in cycle. Save a little bit of extra cash. उसका सब कुछ टूट रहा है ना utils. Good opportunity to go pretty deep into this one without having to worry about an Eco round even potentially. I mean, obviously they're playing really well, but नहीं लेकिन वो दिख रहा है ना सामने वाला. String a couple rounds together. Carpe though, Nightfall, Egoist, sitting on a lockdown, waiting to maybe play back and use it for a retake potentially, but they're playing so close. That flash tells him there's quite a few people in here, and Egoist needs to get the hell out of there. He's actually going to be able to take Saya Player down with him. Now can play back. Lockdown set up. Over that alley side's not the greatest, but still can disrupt T1's defenses. Especially stop this guy from playing forward into the site. As Izu on the lurking, waiting. Form में भाई. Gets invested. The comms just can't come through fast enough, and now they need to make this one work. Kills coming in. क्या? In, Xcurate turning away. क्या? क्या? हेडफोन में समझ नहीं आ रहा है क्या? भाई हो गया खत्म मेरा हो गया Just gets the backstab onto बाजू में टिप गया उसने. मेरी बात सुन मत प्लीज टिबोन का रिक्वेस्ट in the night, Achilleo. साउंड नहीं आ रहा है क्या ये मत क्यों? टेक्निकल It's just unbelievable the way that they're working this map. I mean, Izu, brilliant patience once again. पीछे वाला टीममेट saw it a little bit on Breeze on the Yoru. उसको क्लियर साउंड आया था.
really kind of take his time, those dimensional drifts, and here just his positioning. वो लोग का गेम फर्स्ट क्लास है with the unexpected गेम TP there. साउंड नॉर्मल maybe going to another मेरा हो गया टेक आता तो ना अभी मैं टीपू की कांड मारता हूं भाई चैट में कुछ अलग ही चालू है इसमें नेटफ्लिक्स कम देखा कर बहन के लोड़े इसे चालू है Desperate but necessary gamble being rolled right now here by the coaching staff. पेड़ की अल्टी बोल रहे हैं but after this, फेड अल्टा कैसे साउंड आएगा to the best. भाई आधे नींद में देख रहे हो क्या हां नहीं मुझे सेट पॉज आ जाता definitely a team, a lot of experience here. Yes, they had to qualify through Ascension, but these guys have been around the block quite a few times. I mean, of course. इसके बाद तो वो कर रहा है क्या? That's like I'm not even just talking about EA, like literally winning international events. Scary, right? I mean, Darion, these guys have been around for a little. कर भाई कर डरता है क्या? अरे मेरे को वापस 3:30 बजे से पूरा करना है मेरे को। बिंग्स हालत खराब होगा सो जाए। कुछ नहीं होगा बिंग्स गांड में दम चाहिए। क्या ये देखने वाला है स्ट्रिक्स ठीक है 24 आवर चैलेंज कर रहा है स्ट्रिक्स में अरे बाबा 24 आवर्स होगा भी देख रहा है स्ट्रिक्स क्या उसके बाद वाला मैच देख रहा है तू देख रहा तो मैं देख रहा हूँ डन सिन डन 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 अबे पागल है क्या एनर्जी आ गया यंगस्टर्स आ रहे हैं मेरे साथ तो जी का कल ही होगा ना फिर हां Blind spray good enough to come up with a kill. Izu down to a sliver, 3 HP remaining here for the और जी का आज हुआ भाई चांस सीधा मैं बाजू में जियो वाले हैं कॉल करके बोलूंगा मेरा नेक्स्ट पार्ट हेडक्वार्टर kills. Carpe side player both going to be taken out. बाजू में Izu, however, even with 3 HP, Bike क्या 2 kills of his own. भाई ये इजू क्या खेलता है यार छीन लिया कॉन्फिडेंस को Every single time bleeding themselves into an advantageous position. You know, 1 step forward and then 5 steps back. Somebody on one just digs him out. I mean, Excurate. गाली मत दे भाई माफ करो भाई चलो जल्दी जल्दी Gen.G किसका मैच है Gen.G और RRQ I mean, obviously when you're up by this much, you're इसलिए मेरे को मन है kind of allowed to take those extra Play loose. Exactly. का X टीम चलो जल्दी जल्दी Does do it. Gen.G RRQ When you have that advantage, when you can try to EJ का भी ना push stuff that maybe your opponent isn't necessarily expecting. EJ RRQ में You know you've done damage to him. You know you've put him on the back foot. And you expect them to maybe try to rotate back off of this. They've taken so much contact. They just lost 2 players on A side. T1 says nope. We're just gonna keep. मेरे को जानने का ऐसा हुआ क्या पड़ती है बे सच भी तो जाता है भाई हाँ कैसे कर सकते हैं वो ऐसे Yeah, you're gonna be able to find one, but he and Darian both now taken out. Pressure on Crazy Guy, rolling thunder, crashing across, and I think it maybe hit. Yeah, just 2 players here, or rather only Carpe, I believe. But a beautiful response from Carpe with his utility to make sure they don't really have any. ये अभी तक सी पे क्यों है that rolling thunder. I think Crazy Guy probably wishes he could have one. नहीं जब तक प्लांट नहीं करते तब तक नहीं मूव कर सकना अभी अच्छा वो लोग रीटेक पे खेलते हैं ना Quite just yet. Seems like they haven't fully खेलने identified पड़ता है the लर्न players करता on है this ना side of the map, but now that the spike gets planted, that time starts ticking. He's got to join in, but this is going to be late, and you can see Crazy Guy already starting to inch forward, puts himself down onto the site. Right there. Could be costly as Egoist, the first to fall. Now they know. एक और के बारे में नहीं पता अच्छा पोजीशन है भाई ये मैं बोला ना एक और के बारे में नहीं पता हाँ अच्छा टैक्टिक है वो एक छुप जाने का एक बैठने का Finally able to lock in. This is a rival once again. अरे नाइस ट्राई यार Push up. नाइस भाई क्या बंदे कितना क्लच करता है तेरी भाई तो क्लच तो निकलता है भाई क्लचर भैया है क्लचर भैया तेरी का क्लच निकलता ही है भाई Things that Bleed tries at the beginning of this round, like Darion steps ahead of where the snakebite falls by the ruins over there and by the rubble, excuse me, and he just gets shut down immediately. Like he thinks about the boom bot, pulls it back and says, I'm going to try to trick him a little bit as they're trying to cut back behind their toxic screen. See if I can, catch him sleeping a little bit. तेरी 1v9 है भाई really nicely, and I mean somehow, some way, Scary finds a way to get this done. But I mean, you can tell his lateness threw them for a loop. Yeah, they expected, he's going to be in the side already. 1v नहीं डाला बे And that's fine. He gets the round win, but the biggest issue is just how much damage. उससे 1v के लिए नहीं है शायद
Now we go into the final तो डाल ही round. रहा है वैसे भी, Finally, they देख do डाला। still have that full purchase coming in. A couple half armors chucked in there though. Darion with an op. Seekers. Bring them down. But the showstopper for Saya. So really powerful execute utility available for T1. Excuse me? To get the job done. ऐसे क्यों डाला उसने जैसे दिखते हुए? Now, क्या बिना देखते हुए? space taken here towards Mount. नहीं बाबा दिख रहा था। पागल हो गया क्या? रैंडम मारा। क्या बुमबोट अलमबोट को? अरे हर राउंड तोड़ते वो लोग हर राउंड। तो इससे बढ़िया तो उस तरफ ही डालो, बेस्ट है। हाँ। बोल क्या जाए एक बार? So wonderful, this operator, so crisp. Been so vocal today on stage. मैं जाऊंगा उधर बोलने के लिए एक टेक पॉज लेंगे, उसके बाद उसका कीबोर्ड खराब होगा, चाहिए क्या? Seeker's going to be let loose. We'll soon see them starting to drift over here towards the seaside showstopper. वाह भाई, चलते चलते मारा। आ रही है 9-3 है, 9-3, let's go, Come back here, come back here, come back here, come back here. अगर कर हुआ, please यार, वो bleed जीतने। That's for the half bleed. Looks like they are very well poised to get themselves up to 3, especially as Izu will fall. Off shot from Xcurate, finding nothing, flash not connecting, but nor all the off shots. He is being surrounded. Flawless rounds, and that was a very rocky half here. 3-9 bleed. 9-3 होना। Still keeping themselves alive. अभी मेरे को बहुत भूख लगी है भाई। तो अचानक से बहुत भूख लगी है। ये तो कमबैक है। तो कुछ खाना है बे? You never know. Things can turn around. And I don't care. Curses be damned. They looked pretty good in those last couple rounds. It looked like they finally kind of got their heads on straight at least enough. No, we're on Lotus 10-2. That's the real. 1 मिनट है, जल्दी prediction बोलो, 1 मिनट है। I mean, भाई पिस्टल जीत गया तो कमबैक है, वरना नहीं। Same. Considering a 1 minute. T1 भैया का जो ऑपरेटर है, पिस्टल अगर जीता तो the coaching staff on bleed to talk to these players to get them ready. नहीं बे, T1 पता है इतना attacker side of the map. ओटी के बाद कुछ अलग खेल रही है। and it's tough because हाँ ना बे? if this goes deep enough, if T1 doesn't just come out and kind of run the table a little bit, eventually you're going to start seeing a lot of those power इस बार चीप में कोई माउस वर्ड बताओ। Amazon Basics. double op setup or an op at a 2 or to 4s, the Odin as well. Amazon Basics का plain black. As we saw at the AVL, were really difficult for teams to deal with. Yeah. Because of how clean both Saya and Xcurate are with that operator. Rossi's so smart with his positioning with the Odin. It's going to be very difficult if it comes to that for Bleed to reckon with. And that's really what kind of my big thing is Bleed. You just want to keep the pressure on enough that you don't इनके देखिए story give देखो। enough of an economy over to T1 that they can do that, because that's part of why this slid out of control in the beginning. Is you lost the bonus and the money just started flowing into T1's head. And they cut funds enough that they could get a round 3 op over to Xcurate. And certainly they'll take advantage of that again if they win this pistol. Xcurate in the forward position out here. Stun goes across, tries to get a sight out of the sky, but हार गए। that was well. हार गए। 100% हार गए। Overall from T1, Trailblazer spotting nothing as they have the 4-man stack set up. Crazy guy. Put the K onto him. Just आजा ऐसा बुला रहा है। damage now. Knockout निकल नहीं पा रहा था रे। comes in to try to dissuade any counter push out. The heals have to be utilized here from EA to keep everybody up. We'll be able to push it back to full. Right there. But overall, it seems like T1 with a very good idea of how Bleed was ये क्या story डाली है? Yeah. Still have to paranoia for Scary. देखा तूने? The ability to get onto the site. पिंकी का story. Yeah, rather the एक गेम के लिए take out that trademark, try to add to the confusion here, the ambiguity. Look at this, Yay. Completely unfettered, coming over Very towards the nice. site. There's no one else here. Right now, Gamers. they are completely shifted over to the western side of the map. So Gamers do. free area, इतना full line use to दिमाग। clear, and He's taking a very forward position. Looks like he will just pull back away from stairs. Just wanted to check forward and 30 towards that seconds smoke, left. see if there was anybody there immediately. Saya player will be the first to respond. And depending on how this timing goes, he might end up getting caught, because right now, Egoist pushing his way out. Smoke comes down. Saya's still just hovering. Still waiting for his teammates to go for this rotation, but look at the look now from Scary. Outside C. Should have heard them cutting through across connector. Can he find the timing to get that impact once more?
क्या लगता है T1 या Bleed? पीछे ओमेन दिख रहा है तेरे को? अब तो जीतेगा नहीं ये राउंड ओमेन दिख रहा है ओमेन। Oh, the headshot coming in. Ego is क्या हो रहा भाई? able to find one, but the push up. The right clicks come in, and Yay finds himself a kill. Paranoia crashing across. Xskill down to 24 HP. Swings in, sees Yay's shoulder for just a brief little moment. Tries to get it, manages to get it done. Scary. Oh, nice try, bhai. Nice try. Taken down by हो गया भाई, Carpe. चलो GG. It already held the half, gets the finish on the defuse. That's going to be Omen T1 अच्छा, tying flank up तो the अच्छा है scoreline in regards to pistols. 2-2 in the series. And now they move up to 10-round wins. Tremendous patience here from T1. Everybody on the same page, able to stymie this initial hit, set themselves one player ahead. And Xcurate, only a couple bullets left in this headhunter, and he puts them to darn good use. Runs out, catches Yay, peeking a little bit, able to find that kill. Yeah, Scary's quick to trade, but Carpe, as we saw earlier, very, very good with those ghosts. And we see the full stinger send. Monstrous investment here from the side of Bleed. They absolutely need a win here. Rane goes jumping forward. Trademark still goes out, but they check over towards Baby Dorn. Nobody going to be spotted there. Play now coming in. Utility starting to be dumped. The one gets a reveal, and Carpe mows down two. Gets himself a third. Yay, taken out. Swings out. Daring with the final bullet. Will be able to take him down. Goes for reload, but Sahil plays GG on top of him. पूरा GG आ गया Fuse is being stuck. Crazy guy won't even be in. ये राउंड तो बाय भी नहीं आएगा अभी Of the picture here. फिर से बोल रहा है बे, ये घर पे बोल रहा है, ऐसा कुछ सुनो। Strike him down. But cannot be recovered, and the gamble by. ये जो चीज बोला टिबन ने बोला जस्ट सही। Incredible reactions from Carpe. He's been pivotal in these early rounds. Long day. He's been really pivotal. Carpe भाई Set the pace for T1 to give them these early leads in the और half. रिवील कहाँ से दिया उसने? Outlaw there Heaven floating से? around, and Xcurate's hands didn't even need it. Everybody else just getting the job done. क्या रिवील See what they're gonna do. Just hang on to the outlaw. A couple bulldogs. बस ही सीलिंग का दिया सीटी से उसको ऊपर की तरफ तो फेंका मार कर। For Bleed as they went into the stinger well. It's the dog check. I don't think it saw him. Oh, to push it up into the smoke still. A nasty shot. Once again, I mean, a really heavy stack here from T1, just expecting this aggression over towards C. थोड़ा A से मार हो जाता तो Yeah, they're really leaning on that side of the map and letting Xcurate kind of play these one and done positions. Smoke coming down very, very early. Let's see if she's got. मेरा माइक का सेटिंग A से मार के नहीं है With the smoke, just perfectly cutting them off. So nothing spotted, and if they decide to enter in through door, go through tree, not gonna come up with much of anything there, but yeah. It's not wrap placed around to coming look through back. the turret. Yeah, it's not watching in behind. Turn over to the side, and oh, Ego is ठीक है He gave up the game, but still a chance for Scary. Finds one. Carpe now waiting. Paranoia sent. I don't think it found. No, he did find it. Oh, he's gonna be taken down. Scary finding that elimination. 25 seconds remaining. Plant now pivoted in towards the B side. भाई ये निकाला ना मैं मान जाऊंगा। अगर ये निकाला ना टिबन ने। Secret forced back, forced even lower. 5 HP remaining here on this chamber. It's gonna be Yay, staying within the site to try to hold this line. No paint shells. It's an aftershock for Crazy Guy. Here. Right on the corner, the ping coming down. Did they read that it's going to be a double approach though? Paranoia managing to avoid it. Yay, takes one down with him. Nice. Rossi now it's just easy and Xcurate. In between the two of them, it's only 53 HP. The push forward. Oh. Comeback time, yo! Comeback time, yo! Find the kill. And in the end, it's going to be Not Xcurate. possible बे आज से निकाल लेंगे। Possible ही नहीं हाँ Hold on to that outlaw, but he does not. Thanks for the effort, no worries. Okay. Comeback time or what? Comeback time. Bleed picking up another round win. Yeah, able to really get a nice post plant set up. Yeah, able to find a tough kill there. That is not easy to do. Yay, still able to sneak one away, and that makes things just a little bit easier here. And Scary, you know, Carpe tries to challenge here, knowing that he's hidden with his utility. They're both nearsighted, and he's going to try to gamble on it, but Scary able to just barely get the better of him, and that really helps them get set up for that. That could have been really bad for Bleed. Again, you know, Egoist
watching that angle a little bit, but without that turret there to give the early notification, made things a little bit harder for Bleed as they really had to react well quickly to that. Unfortunately, you got a guy like Scary there. Yeah. बेंच अभी भी भूख लगी है माफ करो गाल में माफ करो Surviving. That could very well change the entire outcome of that round, which would have T1 moving up to match point. So for now, Bleed are hanging in there by a thread. 7 rounds consecutively just to tie things up. Try and extend this all the way to split for that decider map. See though, enough damage dealt. Outlaw is held on to. Or actually, it's going to be purchased back up, I should say. Only a Nightfall to speak of for ultimates. A few away from the Seekers is Heyy, but for now, T1, no Sheriffs. Keep your eyes on Carpe and Izu. They can do damage with it. And a Guardian and a Bulldog still have to be floated or Bleed. Fast take towards Rubble. It's T1 not going to contest. Oh. Shots going out. Okay, I mean, Rossi able to find one Carpe. Picking up another there with that Sheriff, but come back or boy. Looking for the ult of his own. By 11 में जो स्टक होता है ना, वो हर बार हारता है, मैंने नोटिस किया। एक्सीडेंट निकाल सकता है पता है 11 में जो स्टक होता है वो हारता है, मैंने सुना है क्या देखा भी हाँ देखा है रे बाबा अरे किसी ने तो बोला था ना वो कॉन्वर्जेंस केस में ओह नाइस ट्राई बे I thought it was going to happen. वो फटका पड़ता लास्ट वाला तो 1 HP था लास्ट वाला 1 HP था वो पहले वाला पड़ता ना सच में भाई Still economic damage being done to Bleed. And that can make things all the more difficult to get themselves back into a spot where the rounds are rather close. And now finally T1 is able to get into their full buy with the operator, with the Odin. Now you have the Rolling Thunder though, for Crazy Guy, Seekers as well. So a lot of ability to clear space here for Bleed. Trying to push towards C immediately. Rossi shifting over from Waterfall. Izu waiting there, looking for a response off the orb. None coming from T1. See how they want to navigate this. This looks like Rolling Thunder onto the site. Rolling Thunder into a quick entry, but it's far enough. Gets the push back there briefly onto Izu. Clear not going to be found. See Rossi just waiting to try to go for this spray and pray. Oops, spots one. Shots start flying. Rane gets himself out to safety as the plant now getting ready to come through. Yeah, but comes up with the kill, answering. Kill comes back in. Reveal. T1 start inching their way forward here on अगर 11-7 हुआ ना स्कोर तो जीत गए Flashes at the ready. First one going to be sent. Scary trying to play back here at water. Swinging back around, but then gets caught as Carpet continues to advance. 11-7 हुआ तो Solid Rossi managing to come up with 2. Juggling back the weapons. The 5 HP. It would have to be a headshot. Tap in. Nano. Lobbed both of them just on the outskirts of them. Stays alive. Ooh, okay. Nice try. Radius. Nice try, but nice क्या वो try. एक्सपेंड होता है क्या नहीं ना I think he tried to नहीं दूसरा नेट का रेडियस ने देखा ना try to toe tap his way closer and kind of expected the nano to not last as long as it did. Well, it's all good. Little oopsie. I mean, answered back very good damage. ईबोर ने ब्लीड को फर्स्ट पे रखा था बोला मैं जी ऑन टॉप 3 rounds consecutively now. भाई टीबोन Second timeout is still in the back. ब्लीड को फर्स्ट पे रखता है फिर बाद में टीवन को भी सपोर्ट करता है बीच में से ही Autumn willing to push this. भी चाहिए मोटा बारिया I think it may come after this round. We'll see if Autumn wants to wait a little bit longer or not. Just really good. मेरे को नहीं लगता भाई बाबा 7 हुआ तो ब्लीड जीत गए And Carpe kind of overstepped his bounds. Yeah, he got one. Oh, they remember. Yeah. They remember. Getting the read on this one now. Jump forward, but actually covering fire there. I think this is the round. I think this is the round. Sheriff picks up Scary. Lockdown still committed into this one. Gun Comes मिल back गया on these क्या kills. And it's a weapon recovered. Izu picks up the Phantom. The pivot now here into the B site. Down below. Plan coming through. Lockdown now going to expire.
Rossi taken out. Crazy guy able to find the one kill. Trying to go for the stun. Siler, however, pushes forward, managing to find one, but अबे अभी तक पुश करना चाहिए था इसको। हो गया भाई, चलो चलो ये क्या है? चलो चलो अब मतलब जीते। 3K लास्ट राउंड है, as a Thrifty comes in. It's चलो। hard to imagine, but T1. चलो भाई। You know, it's Bleed recognizing early that इधर जा रहे हो, रुको और एक मैच है। Previously, they have to use some util to बोल clear रहे हैं it. ना, वाव And they lose a क्या couple बात है। players on the entry to just great reactions from T1. Yeah, I need to see this again here. They commit the lockdown. They're just क्या मारा? What the play fuck? and the TP right back up. Yeah, just moving ahead of that smoke, just getting ready for the push out because he knows. भाई इनका aim तो है भाई सच में। Stun. I have to get covering fire, and then Izu, the stun expires. He manages to get that headshot in. I mean, he's been clean with the sheriff. Remember that kill he got onto Yay while he was sliding an A-main on Breeze. Yep. T1 now find themselves here at क्योंकि भाई 7 घंटे हो गए, क्या करूँ यार? करना पड़ रहा है। over at C. Coming across the swing outside, player takes the challenge. Takes down Yay. Rocket going in, doesn't find the kill. Looks like he's got the misread. Thought the carpet pulled back over towards Baby Door, but instead he slid over to the left. Izu, however, will be felled. The pit will drop. अब समझा दोस्त become a solid option here for Bleed. साथ में petition डालते हैं। Okay, Bleed recognizes Scarface's position. They're Actually, gonna clear left up the आया nano. पूरा। A toxic screen gives Scarface just enough room to peek in. थोड़ा हो गया रेस का। As Xgrit realized this position change though, TP, it looks like he's expecting that maybe it could have been at rubble or he यार wants to हम try to सब बोले थे intercept. ब्लीड जीतेगा ना बाबा। Peek spotting nothing, the gun barrel, no, doesn't matter. मैंने तो बोला था ना 2-0 bleed। Trading it back. मैं भी Getting it 2v2. शर्म करो बिंग्स भाई, शर्म Gets करो। the killjoy. मैं हारेगा बोला तो पुश टॉक Forward बटन in नहीं towards the दबाया। site, but Carpe could quickly swing in, waiting on the cross. The shot not going to connect. Misses the opportunity. Now it's two players set up on the site here for Bleed. Carpe still has a few Alarm bot options आ गया। here in his back pocket. In terms of util, Alarm bot? maybe clear नहीं up the डालना है, space, बननी some है। info. On the Prowler, both there. One snake bite for Rossi. Not really in a position to try to utilize that. Again, Scary, however, he just pushes up, managing to find one. Now Scary, TPing up here. ऐसा लग रहा है फैंटम वैंडल पे खेल रहा है। क्या हो रहा भाई? They're holding for it though. Just sticking to it, covering fire, coming down the double swing. Nice try बे, nice try। अबे उधर से आना ही पड़ेगा उसको और कोई ऑप्शन ही नहीं। T1 crazy खेला बे। T1 will close out their opening series over. मेरे को तो पता था T1 जीतेगी। May have been a long time coming, but finally we have our first T1 की नंबर 1 फेवरेट टीम आ रही है। Pacific 2024. भाई sexy खेला बे। T1 coming through with the opener. Expect भी नहीं किया। Looking great on their map pick of Lotus. What a tremendous Breeze effort that we saw from both teams. 7 घंटा। This is the best map that we've had of the year so far. How about we watch the next game also, yo? Yeah, I know. मैं ready हूँ, तू ready? I am down, I'm down। You can see मैं it on ready their हूँ। faces अगर overall. टेक It's पास been है तो चलते हैं, hard वरना fought. But again, props to both teams for keeping up the speeds, keeping up the fight. अभी 7 बजे चालू होएगा। ठीक है? 7 बजे तो नहीं होगा, 7:15 को होगा। फटाफट हो रहा है। मेरे हिसाब से कोई 7:15 को। नहीं नहीं भाई, सब उनका वॉक-इन्स रहता है, एजेंट मैप पिक वो तो नॉर्मल ही है, स्किप थोड़ी कर सकते। हो जाएगा रे। 10 बजे तक हो जाएगा। आराम से सो जा। हाँ 10 बजे तक हो जाएगा। 10 बजे होएगा, मेरे को सोने को लगता है 1-1.5 घंटा। 11:30 बजे सोऊंगा। अरे बाबा। 1:30 3 बजे आराम से हो जाएगा। 24 घंटे 3 घंटा सो, वो भी वो टाइम चल रहे। अमेरिका से लेट करना। आजा। देखो एक नहीं। अगर टेक पास है तो चलते हैं। लेकिन दोनों टीम समझ रहा वैसा है। अच्छा वाला है। अच्छा। एकदम बाप वाला नहीं है। ठीक है, मजा आएगा एटलीस्ट RRQ का नया लाइनअप है। भाई Gen.G भी तो अच्छा है। बात तो है। यार मेरे को कंफ्यूज कर रहे हो। Sen versus Loud. We तो want करने full वाला है। energies. ओ यार वो भी तो है। तू कर रहा है सेन वाला? नहीं बाबा, करे तो कुछ नहीं है, जिंदगी नहीं है मेरा। पोस्ट में आएगा डिवोर्स पेपर्स। काइंडली साइन इन द बॉटम ऑफ द पेपर्स। मुझे कैसा बोला भाई? मेरे वाले तो बाजू में ये सुन भी लेगी लोग। अब तक तो मैंने बोला ही नहीं, कल एक वॉच पार्टी स्ट्रीम है। उसमें अलग चकपल पड़ेगी।
भाई एक गेम देख सकते हैं। नहीं क्या बोलते हो गया क्या? मेरा हो गया भाई 14 घंटा स्ट्रीम बस। 14 घंटे कैसे किया तूने? ओ तू कल रात से स्ट्रीम ऑन ही है तेरा? बाबा अमेरिका भी किए इसने। अबे तू सोया था ना बीच में? 10 मिनट। अरे रेस्ट ले ले बेस्ट। थैंक्स बाय। चलो 14 आवर्स हो गए। चलो सिर्फ 10 घंटे और। बाय पब्लिक। इसका ना कल पार्टी हो चुका है साला। आज घर में मुट्ठी मार रहे हैं और कुछ शिट क्या लैंग्वेज। चलो विंग्स भाई कल मिलते हैं। चलो सी यू टीबॉन। बाय 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 विंकी। बाय बाय। बढ़िया सेन वर्सेस लॉर्ड पे मिलता है। अरे नहीं रे पापा। वंस भाई दम दिखाओ थोड़ा। 그래서 2주가 미래다 이렇게 얘기를 하셨는데 좀 동의하시나요? तो मैं क्या अकेले करूँ वॉच पार्टी? Because he kept saying Izu is the future man. Would you agree? 그럼요. Oh, yes, of course. All right, Izu, you definitely proved yourself today and surprised all of us with what you can do. What are your expectations for this year and also many more years to come? 그러면 이제 스스로에 대한 기대도 많이 높아졌을 것 같은데 올해 목표 그리고 이제 계속해서 어떤 선수가 되고 싶은지도. हाँ भाई अकेला करूँ मैं वॉच पार्टी? What the fuck यार? 일단 अकेला में बेटी होगा मेरे को। 처음에 퍼시픽 우승을 가져가고 싶고요. 그러고서 제가 어떤 플레이어가 되고 싶냐 하면 हाँ मैं साथ में तुम हो तो करूँगा। तुम 모든 사람들한테 हो तो मैं करूँगा वॉच पार्टी। बताओ। 게임의 페이커는 누구냐 했을 때 제 이름이 나오게끔 열심히 노력해 보겠습니다. Well, for this year, I want to win the Pacific Trophy, and I just want to be remembered as a player that when someone asks, who is the faker of Valorant, and everybody says, Izu. Now, give it up for Izu, everybody! Hey, Izu, no joke. One of the best players I've seen, bro. Legit. मैं पहली बार देखा इजू को। क्या खेला है भाई, क्या खेला है। Penguin with a marker. 하시고요. 배에다가 해주세요. Right in the stomach. Special because this is his first win. All right. And he's gonna throw it to wherever. So make sure you make some noise, everybody. Who wants the penguin? 던져주시면 됩니다. 힘껏 던져주세요. What the fuck? इसमें फेंका? Congratulations. No. भाई बेचारे कोई लड़के को मिलता था। हाँ? Go get some well done tonight. Well, the night is still young, everybody, but I'm not getting any younger, so I'm gonna toss it over. रेस ले लो 6 बाय 7 आर हो गए। 7 घंटे भाई वॉच पार्टी पूरी करूंगा पूरी। ठीक है 7 घंटे हो या 24 घंटा वॉच पार्टी तो पूरी करके ही सोनेगा। 제일 큰 세계 대회에서 Bungs भाई are you? 컵을 들어보고 싶어요. Bungs भाई are you there? 더 중요한 대회니까 모든 선수들이 वॉच पार्टी पूरी करके ही सोनेगा। इसे आधी करके सोते नहीं। अरे लेकिन मेरे को 2 वॉच पार्टी करना है ना। क्या ही होगा एक दिन नहीं सोया तो। अबे मेरा 7-8 दिन का शेड्यूल हुआ है वरना मैं कर लेता। ठीक है। 2 घंटा क्या है बे, इतना कर लिया 2 घंटा क्या है बेंच। ऐसा भी नहीं कि मेरे को नींद भी ना रहा है, एनर्जी तो है लेकिन ये एनर्जी में कंटिन्यू किया तो फिर रात को मैं डेड हूँ। ठीक है चलो बाय मिलता है। बाय। मेरा रेट जो भी आएगा तेरे को लव यू बोलना उनको। थैंक यू। वंस बाय लव यू। यार पर जो प्रोडक्शन है ना ये VCT का वो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा प्रोडक्शन हर बार इम्प्रूव होता है हर बार। रात को तो मैं नहीं करूंगा। लेट्स सी एनर्जी रही तो करूंगा। एनर्जी रही तो। After hosting champions in Europe and the Americas, in 2024 we'll take Valorant's biggest moment of the year to a new part of the world. A place where esports resonates. इसमें कौन सी टीम है अमेरिकाज में? Welcome to Seoul, VCT Pacific America.
Korea is synonymous with esports. It's home to some of the greatest competitors of all time, the VCT Pacific ये कौन सी team है? one of Valorant's most passionate Detonation focus me. We wanted to come here for a while, and we're very excited to bring champions to Asia for the very first time. Let's get away with murder! Unreal! Oh, it's gorgeous! Even one! What a monster! The villains have had their day! This August, the 16 best Valorant teams in the world will converge हाँ पे here for a chance to write their names in the history books. From August 1st to the 25th, champions will take over the city and crown the 2024 Valorant World Champion. Development नहीं मिलेगा. पुराना है ये. पुराना है ना? बता था मेरे को. We are counting down to champions, which is going to be here in Seoul, South Korea. How hyped are you guys for that? ये कौन सा team है? So excited. Only 166 days away as we obviously have the kickoff here in Seoul, and then it's going to lead all the way back to Seoul for champions. I mean, Seoul has been home to so many very hype kind of international events, and to bring all the Valorant crowd and the energy here, I think that's going to be very exciting towards the end of the year. Valorant's already on the rise in Korea. I mean, it's What? being Aspas played a इसमें? lot more in the PC bags, I think. We had some statistics being tweeted out earlier as well, but I mean, that was really cool shot because that's the exact same set that we have on stage. Like, we were just there. Evil Geniuses का पूरा team टूट गया बे. पूरा team. That's really cool. I'm pretty sure पूरा there team will टूट be गया. little hints along the way as we go through Pacific to see what might एक stream कर happen लिया in बहुत है. champions in Korea. I'm so excited though. It's the first time we're really having this international event here in Asia in APAC. So I'm Guys, really देखो, excited for इसमें- that. Yes, like you said, it's like the home. इसमें और वो Sentinels का भी एक बार देख लेते हैं. Sentinels हो गया. पता नहीं यार, एनए का नहीं बोल सकता कौन सी अच्छी टीम है भाई, क्योंकि एनए में कोई भी अचानक से आके कुछ भी मार के भाई ऊपर आ जाता है भाई. लेविटन मैच खेलती है. एक स्ट्रिक्स पानी में चपैक. स्ट्रिक्स भाई सो जाओ. सेन वर्सेस लाउड करना. हाँ क्या सेन वर्सेस लाउड करो क्या? Tomorrow. I know some of you may be disappointed. We will be refunding tickets to any of the fans who came down here live. Refund कर रहे हैं? Crew is definitely working their darndest to make sure this doesn't happen again tomorrow. Refund कर रहे हैं जो भी आया था. Their best. So tune in for tomorrow. Find out more at Oh, bye. ValorantEsports.com on the new schedule. Guys, got it? Cool. Now let's talk about. Guys, refund कर रहे हैं जो भी आया था मैच देखने. To kick off with that first. सही है बे. W Valorant W. Kickoff squared. Yeah, that's what we should call that match. I thought it really lived up to a lot of the hype, right? I mean, was it always every जब तक जाने करता रहे. Yes. taking off the rust, teams trying different things, lots of different combinations of agents that we weren't expecting from this pool of players. But at the end of the day, we're starting to see, okay, what's the goal and vision of these two teams? And today, T1 got their act together just a bit faster. And I honestly think that Izu swing out on Breeze towards the end against Scary, where he just completely dodges all the bullets, that's when he got in their head, and he just ran with it on Lotus. You really think so? I mean, we did see a lot less clutches कब start होगा? in this map, so it might be actually just that. But at the same time, I mean, you just got to give credit to T1 and how they really played this map, starting things out. I mean, they really knew how to push Bleed past their limits. Yes, and the other तो उधर रात को आना नहीं बे. ठीक था रात तक करूँगा, कोई सीन नहीं भाई. कोई सीन नहीं, रात तक करूँगा. बस मेरे को बता, अगर रात को 3:30 बजे स्ट्रीम स्टार्ट हुई, अगर 3:30 को स्ट्रीम स्टार्ट हुई रात को, तो सुबह कब तक चलेगी? एक मैच को अराउंड 2 घंटा लगा, 5:30. फिर नेक्स्ट मैच 4v1 things like that. T1 just knows how to work this map of Lotus. फिर सुबह तक 11 तक होगी मैच. Nerve-wracking because the plant came down to like 5 seconds remaining, and then the spike gets planted. It gets a little bit scary, but you're absolutely right. A lot of mind games, and Bleed had a tough time trying to read where these rotations would go, or if they would even rotate. And sometimes, I think that's one of those last few rounds where we saw Izu had that setup, hiding around C side, and then using the shrouded step. A lot of mental. 9 बजे तक हुई तो मैं कर सकता हूँ. 9 बजे तक हुई तो. We talked a lot about Izu, and he wants to be the next Faker, and he was brilliant. सभी साल में एक बार स्ट्रीम करता हूँ. It's like he heard you, Will. It's like they all heard you. उसमें भी अगर स्ट्रीम नहीं की तो क्या फायदा?
Carpe absolutely stuck up. And here's the thing, is that Carpe individually 1t1 both of the pistol rounds. Yes. And we all know how important pistol rounds can be. Whether it's just aim or not, whatever it is, if he's the one putting on the pistol rounds that allows him to get, in theory, minimum 4 rounds to start, that's a huge impact for the team. And obviously overall, कल जी भी है, कल करूँगा, कल भी करूँगा. All right, Carpe, we're going to still wait to see how much more you can grow in that leader role for T1. Without a doubt. I mean, I'm a little bit sad on my predictions, but hey. इसमें अभी सोचा कोई सीन नहीं, मैं पूरा टाइम करूँगा, कोई सीन नहीं. I mean, you've compared टेंशन ना लो रे बाबा, टेंशन ना लो. and we saw the result of that. Now, feeling the result of the pistol rounds on Lotus, you can really see how much streaky it can get from T1. And Bleed just having a tough time trying to figure out ways to counter against that. I mean, both timeouts from Bleed. हिंदी कमेंट्री लगा. अबे हिंदी में क्वालिटी नहीं है बे. हिंदी वाले में क्वालिटी नहीं पता है. Looking forward to a lot of his IGLing and his performance today as well. Yeah, I mean, I think there were a couple rounds where we started to see how crazy guys keeping tabs of things, and there were some good calls that we made. It's just इस साल हारने का फोर्स करोगे और वो भी नहीं जीतोगे तो और बड़ी परेशानी हो जाएगी. फिर 18वां राउंड आएगा जहाँ पर सामने बाई नहीं है और तब आप हार जाओगे. तब आप हारोगे. मतलब attempts were made. See, Yeah. there was a chance when the scoreline was 11-6, 11-7 और आपके पास एक eco round आया था जहाँ पर आप convert कर सकते थे. But then you lose to eco. और वहाँ पर भी मतलब see, I could have digested a eco loss for T1. क्योंकि भाई 11 राउंड निकाल रही है, एक राउंड चला गया कॉन्फिडेंस में. क्या मैं फिर जाऊंगा 2 मारूंगा, नहीं मार पाया इस बार. ब्लीड में क्या कॉन्फिडेंस भाई. Important factor is up. And once again a round in the bag. But it's not him. And apart from that, you know, of course, we still have the next few matches coming up. Gen.G versus RRQ, and maybe after that, Zeta versus Global Esports. Yeah, I mean, Gen.G RRQ is still going to be happening tonight. मेरे को तो लग रहा है RRQ जीतेगा. रुको. You get one step closer towards phase 3, which is that semi-final playoffs, and then obviously you're kind of getting closer to Masters Madrid, championship points, etc. T1, I mean, sure they get one step closer, but a lot of people have agreed Group A is the one where you pit any of these 4 teams against each other, it's really hard to call. And I mean, we already mentioned the match 3 of today, which would have been Zeta and Global Esports. That would have been a bit more of Group A. We're gonna have to wait till tomorrow. I think Gen.G लेगा ये मैच. What is gonna happen? I think Gen.G लेगा. Precisely. Now, later today, tonight, we have Gen.G and RRQ. This is going to be a really interesting group. We're going to find out who Gen.G लेगा भाई. PIIIIIIIINK on Monday. Mean, I would honestly say the toughest group here in kickoff for Pacific. Yeah, any of them could really beat each other. Yeah. With that, guys, we're going to go on a really quick break. Don't worry, it's just a commercial break, so don't go away. When we come back, we are going to jump बताओ जल्दी बताओ. ओजस भाई कैसे हो? Gen.G जीतेगा भाई. Gen.G. To be real, G is the worst event. Bet. मैं बोलता हूँ. As a professional player मैं बोलूँगा. Lighting fast, sexy. इनका है sexy. रस भाई IGL है क्या? प्लेस किंग पॉलवी भाई. पॉलवी का गेम प्ले, क्या गेम प्ले भाई. जी का लाइनअप बहुत अच्छा है भाई. क्यों खराब है भाई? तो अच्छा तो लाइनअप है भाई. एक्चुअली अच्छा है भाई. एक्चुअली अच्छा. देन लाउड देखोगे? देखूंगा, देखते हैं आप. जब टाइम आएगा तभी देखेंगे. Pen I haven't played from 1 year. What's your monitor size? 24.5. Gen.G किससे आ रही थी? पुट से आ रही थी और TS से भी आ रही थी. तब लाइनअप अलग था शायद से.
पॉलवी का लास्ट 2 टीम्स बताइयो। पता नहीं भाई, पर मैंने देखा पॉलवी का गेम प्ले। पास्ता गेमिंग विसुगिमी, नहीं वैलिएंट और ओनली फिंस। स्टार्ट करो बाबा, स्टार्ट करो, बस करो, कितना टाइम आउट। आप खेलोगे VCT, खेलनी तो है भाई। ये पता है हम लोग 2 राउंड से हार गए थे बे, तो क्वालिफायर्स तक जाते तो भी था एटलीस्ट। 2 राउंड से हार गए। Red Bull gives you wings. It gives you wings. ये चेयर कितने का है बे? स्टील सीरीज चेयर। काफी सस्ता है, काफी सस्ता है। Red Bull gives you wings. टू बी ऑनेस्ट मेरा अच्छा है दिखने में तो एटलीस्ट। I think 2023, it's not too bad, but very, really sad for us. It was not good because we didn't qualify to single master. Not good enough. My performance wasn't great. Quite tough here at first, but with more time we can bounce back and become like dark horse to everyone. I think from the outside perspective we were quite underrated, so in that sense we maybe performed better than some people expected, but from our like in-house expectation we definitely didn't reach what we wanted to. We felt like we needed to make improvement. We built a new roster now. We have the confidence with this roster, so I think we just need to practice now. जी का मैच तो पोस्टपोन, हाँ जी का मैच कल होगा शायद। On my list was we need a consistent Which size monitor should I buy? 24 for professional esports or like competitive gaming. 27 अगर तुम बस चिल में खेलते हो या फिर तुमको बस टाइम पास के लिए गेम खेलना है और बाकी टाइम तुम काम करते हो पीसी पे, तो तुम 27 ले सकते हो। Every time on attack, I just do something and then he just entry and then he just kill 4. हाय सानिध्य भाई कैसे हो? What's up? खरीद लो, खरीद रहा हूँ पर वो डिलीवर नहीं होता। वो बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, वी डू नॉट डिलीवर टू योर एरिया। तो मैं ले लेता भाई, कुछ सीन नहीं है। I bring more firepower to the team and I'm very talkative. I speak a lot during the game, so I can help my teammates. So yeah. The other thing is that we're looking for a flash initiator player that can actually Only fence can potentially help IGL. RRQ 팀에 कल 11:30 है। ओके ओके करेंगे भाई, 11:30 को भी करेंगे स्ट्रीम। अभी वॉच पार्टी मैं करूंगा भाई, सारे वॉच पार्टी करूंगा मोस्टली। सब वर्किंग डे रहेगा, कॉलेज रहेगा तो बीटी होगा, तभी बीटी होगी पता है। तब मैं शायद फिर रात को करूंगा, अमेरिकाज वाली करूंगा, पर मेरे को अमेरिकाज वाले राइट्स नहीं है। क्या है पूछना पड़ेगा। Chemistry for the first time playing together, so that made me really excited. I feel like I can work on top of that and then make it like a champions qualifying team. RRQ에 때라고 이제 생각할 수 있는 이유는 저를 사인했기 때문 아닐까요? 두고 보면 알겠죠. I'm always excited. I want to play against something because he's also a Russian guy and I already played against him in Japan. I think it will be a good match to play against him. We found what we wanted, what we needed. I hope we qualify for everything. Yeah. We are still like the underdog in Pacific, but
2024 is for us to make it to all of the masters and champions. Now we're becoming young adults. We're not perfect, we're not complete at all. We're trying to prove that we belong and amongst the adults of the league, and I think we could surprise some punching above our age class. This year gonna be our year. स्टार्ट करो भाई, इन्होंने टाइमर बनाया पता है व्हाट 5-6 मिनट यहाँ पे 40 सेकंड यहाँ पे सीन क्या है भाई, सीन क्या है भाई। लाइव कैसे भी भाई याद है स्ट्रिक्स भाई आज वॉच पार्टी थी इसीलिए लाइव किया मैंने, स्पेशल स्ट्रीम है भाई। भाई ये सारे वीडियोस बहुत अच्छे बने हैं भाई। Peripherals. Rupesh bhai, love from Ahmedabad. Rupesh bhai, कैसे हो? Making waves with us here in Seoul, South Korea. You're watching the Valorant Champions Tour Pacific kick off. I'm your host, Chubby Ninja, and with me at the analyst desk, I got Will, Cho, and Quack. Guys, how hot was that opening game? It was exciting. I mean, we went to overtime on the first map, and I would say even in the second map, we've got some good highlights of the individual plays as well. I do think it definitely delivered. I mean, we got those. Prediction for G versus Zeta. Should be G's even. Who would have thought that we would actually? क्योंकि Zeta का मेरे को कॉम ठीक लग रहा है भाई, ठीक लग रहा है, पर G का बहुत अच्छा लग रहा है। We were talking about, we've seen upgrades all across the board. Gen.G and RRQ, no exception to this. Now we gotta. भाई Gen.G जीतेगा, देख लेना, Gen.G जीतेगा। Last year, who wants to recap the heartbreak? Best of 3 है, best of 5, Gen.G जीतेगा। I mean, remember this was our. अक्षय भाई कैसे अक्षय भाई? They didn't have the best time. They were. भाई का YouTube का पासवर्ड याद आ गया। And then they were really trying to come back. They started to do a little bit better towards the end, but then even in LCQ, Gen.G started to wake up. Gen.G started to show up a lot more. G का मैच कैंसिल, G का मैच कल होगा, कैंसिल हो गया। So RRQ still just kind of lagging behind a little bit, but you do see those individual signs of greatness. Remember, we Revenant का क्या हुआ बताओ? their share of rounds and Revenant का क्या पता नहीं। managed to come in a lot of thrifties. Yeah, the thing is again, with the roster change, I think what they're looking for more now is not the aim factor, but how they operate the map. So that's the big question. But Gen.G, I mean, they overhauled the entire team, and I would say strictly in firepower department, they have made massive upgrades across the board. So this is no easy feat. And hey, we just talked about Izu being the future. Here's another potential candidate. It's Karon, that unknown mystery on Gen.G. Straight up unknown. He was saying in the Emerge video that he was still sharp in aim even in military service. Yes, which by the way, just to add a little bit, Yeah? it's a funny pride factor in Korea because when you're in training or you're doing your ये बंदा मिलिट्री सर्विस में भी शार्पन करता था। like high scores during your aim training at the firing range, you get like extra vacation days, or if you go in for like extra standby training, you get to go home early, things like that. So it's actually a pretty big pride point in Korea. I just thought it was very funny that he mentions that preparing here for Valorant. I mean, he's a marksman to say the least. I mean, not just the overall. नाशिकला कुठे राहतो? सिटी सेंटर. Staff, I think, is another interesting fact. Yeah, Ewok has stayed on the
board for RRQ, and I'm really glad to see that he has some fantastic ideas last year. That's why we saw the rise of RRQ. Gen.G, on the other hand, why it was such an upset to see RRQ lose their chance at LCQ is because Gen.G was on a downward trajectory, except for those critical moments. But like you said, with the coaching staff with Gen.G, they had a complete overhaul. Yeah, भाई कोरिया में क्या टाइम हो रहा है अभी? Back to the Gen.G coaching staff a little bit because there's a lot of story there as well. But I agree, these are the players to look at. Texture. भाई 11 बजे इनका मैच. Fly around on that jet. He's free to take the operator every chance he gets, and now he has to go up against Jemkin, who has been putting up numbers like भाई टेक्सचर खेलता था भाई. Japan in the past couple years. Yeah, Jemkin is definitely someone we saw at Ascension on Scar. What's the actual name? Sahil. How he was performing, a lot of people often compare him to something from Paper X. This is a lot of pressure for both of these players, especially Jemkin. This will be his first time really playing in the Pacific League. Not just that too. I mean, Jemkin, you look at those numbers and it's really because he knows how to cut through teams like butter sometimes. And apart from that, he's very disciplined. You know, a lot of times these Russian players What? play the सबने RRQ pick किया है. strong, really crazy, but Jemkin is a little bit more reserved. Yes, yeah, he's not just always hunting for kills. He's really hunting for that win, and you feel that in the way that he plays that duelist. So I'm curious, how much does that help? Also, in their Emerge video, they talk about how Jemkin's a very vocal. There is Banks गया सोने. In today's VCT meta, in terms of building. फिर मैं अकेला हो भाई. That's why I have high. T-Bone भी गया, Banks भी गया. Comms is really critical, and we have seen whole teams transform just by fixing the language barrier. Now, you can see RRQ, all three of us have voted for RRQ. Paper Thin stands as the lone Gen.G predictor. Honestly, I'm going to give a little bit of my input here. Gen.G, I think it's a little bit too much of an unknown right now. I'm so excited for their new roster, their new coaching, everything, and I think Gen.G मारेगा रे. हाँ भाई, easily bro. Gen.G का roster इतना अच्छा दिख रहा है भाई. On paper तो इतना अच्छा है. Well, that's the thing, is that RRQ kept their core, right? So the philosophy should be similar, and then they've really shored up the weaknesses. Palworld खेलेगा, सोएगा तो नहीं. They rehauled the entire thing, and while we did, सोएगा भाई. Palworld नहीं खेलेगा. RRQ didn't play any official tournaments in the offseason. It was a very short showing. अंकिता है. सोलो ही करता हूँ बे. क्या अभी? सोलो का भी आदत लगाना पड़ेगा. Okay, where is this Gen.G headed? What's the direction they're taking Valorant? और मेरा एनर्जी भी नहीं अभी इतना कि मैं बहुत कुछ बातें करूं. मस्त ऐसा रिक्लाइन करके चिल ब्रो. ये सोलो किड और सिबलिंग को बड़ी बहन है. पिक्सी मैं V3 Pro ले लिया भाई. मेरे को 1 साल हो गया. मेरे को माउस कब से चाहिए पता है? जो बिंग्स यूज करते वाला माउस बहुत अच्छा माउस है. एक्चुअली बहुत अच्छा है. बहुत लाइट है. इससे भी बहुत लाइट है पता है. Wow, in what world did Heyy tell you to use the Phantom? That's crazy. Well, maybe Heyy saw my aim and he was like, well, you should probably use the Phantom. Like, you should use the Vandal, but so humble. It is good to see that the audience like knows their players, right? All right, the Vandal being favored here. Whether that's because they think Heyy likes it or they like it, who knows? फिक्स भाई क्या हुआ? मैं सोने चला गया था. क्या हुआ? फर्स्ट मैप 4 घंटों के बाद पहला मैप खत्म हुआ. वो मैप जीती T1 15 13. सेकंड मैप हुआ. सेकंड मैप हुआ लोटस पे. T1 ने फुल डोमिनेशन किया. फिर अचानक से ब्लीड ने कमबैक किया अचानक से. पर ब्लीड कर नहीं पाई पूरा कमबैक. थोड़ा सा किया, आधा किया. बट T1 ने जो खेला है भाई, दम तो है भाई T1 में. But obviously the team all together, they've been able to kind of prep and manage this, so it's a battle of who just came better prepared. 18-6 माफ करो. 18-6. As soon as they got the call, you can see them starting to go for huddles. They're starting to cheer each other up. 18-16 sorry 18-16. स्टार्ट हो गया. Let's go. Just out of curiosity, how did you guys kill time? You know, what have you guys been up to for the past 7 hours? 그러면 이제 조금 경기가 늦게 시작하게 됐는데 궁금해서 여쭤봅니다. 뭐 하면서 시간을 보내셨을까요? T1 경기 계속 보다가 그리고 약간 중단됐을 때는
북미 경기가 저희가 아침에 시작했었잖아요. 그래서 그거 보면 Translation चाहिए भाई captions. Well, yeah, we were watching a little bit of T1's match, and then we moved on to watching America's. Make sure that we are informed about what's going on around the world, and just kept ourselves awake. What about RRQ? Yeah, for us, 18-6, we had to 18-16. stay awake. We had our bananas. For sure, the Breeze overtime helped to keep the boys. We enjoyed watching it. It was a good watch. You definitely get the energy levels up. What do you think? Who will win between G and Zeta? G. 깨어있기 위해서 바나나를 많이 먹었고 G. On paper G. 그래서 나왔기 때문에 좀 충분히 여유를 갖고 마음을 다스릴 시간들이 있었던 것 같다고 얘기를 합니다. Now, Solo, coming in this year as Gen.G's head coach, what are some things that you prioritized on? 솔로 감독님 이제 젠지의 감독으로 부임하면서 올해 특별히 신경 썼던 점이 있을까요? 워낙 저희 팀에는 훌륭한 HSK 코치가 있기 때문에 뭐 딱히 저도 열심히 했지만 저희가 하던 대로 준비한 대로만 하면 저희가 이기지 않을까 생각하고 있습니다. Well, we had HSK, a great coach who is leading the team, and I'm not worried too much. I feel like if we play our game and play the way we prepared it, we're going to have no problem or trouble today. Now, Ewok, you've been with the team since 2022, and last year Gen.G got the best of you, but this year it's going to be different, right? 이옥 감독님, 사실 젠지가 작년에 중요할 때마다 RRQ의 발목을 잡았는데요. 그리고 올해는 달라지겠죠? Yeah, we played Gen.G twice last year, and we came out on the wrong side twice. But that was a different Gen.G, and as you can see on the stage, that's a different RRQ as well, right? So that's what we're here. Attack on Titan. We're trying to change. Attack on Titan. And we started with some changes with the Anime power. And now let's change the result as well. Weber भाई कैसे हो? Weber भाई what's up? 자, 먼저 작년에 젠지를 2번 만났는데 2번 모두 मैंने तेरे स्ट्रिक्स ऐसे मत 이제 देख. 올해는 젠지도 Time 새로운 out 팀이고 मिलेगा RRQ 또한 19 से 새로운 팀이기 19. 때문에 오늘을 1점으로 오늘을 시작으로 이제부터는 상대 전적을 조금 뒤집어 볼까라는 얘기를 합니다. Now, I want to ask you about HSK because you mentioned him in the previous question. इतना Him as a player ब्रेन ट्विस्टर होगा ना ट्रांसलेट करना, इंग्लिश में बोलना, फिर कोरियन में बोलना, फिर उसका कोरियन में सुनना, फिर वापस इंग्लिश में बोलना. 코치로 이제 전향을 한다는 발표문이 났었습니다. 그냥 뭐 아무 때나 들어가도 기량이 괜찮으신가요? Texture was. 뭐 워낙 선수 생활도 오래 했던. He is not fighting today. G is resting today. G will fight tomorrow. GE will fight tomorrow. 실력을 가지고 있다고는 생각하고 있습니다. 네. 오늘 혹시 लिंक सुना क्या? 오늘 안 पूछ चुके वीडियो कॉल करके. सो रहा है कि नहीं? today, but he's been playing pro for such पूछ a गया? long time, and I feel like he's ready to jump in when. रहने दो, सोने दो बे, सोने दो. Today. सोने दो. Well, now, Ewok, final message over to Solo before today's matchup. 그럼 이웍 감독님, 솔로 감독님께 한마디 부탁드립니다. I think the fans have waited for quite a while to see this match, and I hope we can give them a good match and we can give them something to watch and something to enjoy. 팬분들께서 이 경기를 보기 위해서 정말 오랫동안 기다리셨는데 젠지와 RRQ 모두 좋은 경기를 펼치면서 팬분들이 즐기면서 응원할 수 있는 경기를 펼치고 싶다고 얘기를 했습니다. Well, thank you coaches for coming in. I see the players are pumped up, so I'm going to toss it over to the desk. 안녕하세요. 저는 젠지 발로란트 팀 소속 메테오 김태호입니다. मैसेज करता है रिप्लाई आया तो कॉल. 확실히 전 시즌보다는 नहीं भेजा जाने दो, सोने दो बेचारे को. भाई कल से 3:30 से कर रहा है बे स्ट्रीम. 새로 들어간 에스트렐라 님이랑 잼킨 님이 좀 총은 기깔나게 쏘는데 그래도 저희 팀보다 나르지 않나. 저는 솔직히 절대 진다고 생각 안 하고 그렇게 크게 걱정 안 하고 있습니다. 이번 시즌에는 अमेरिकन्स का भी वॉच पार्टी होगा पता नहीं. लेट्स सी अगर एनर्जी और मन रहा तो करेंगे. Hi guys, my name is Xfero and I'm from Team RRQ. The difference between last year and now, I think we have this new player that have stronger aim and stronger mentality in the game.
I think at first we don't have the experience on LAN yet because last year we have new players like they have no experience at LAN. Now we have new members that have the experience for the LAN. That's why I think it's gonna be great. That's why I expect us to win the kickoff tournament this year. Gen.G is a really great team. तो अब तक मैं ये मैच देख के जाऊंगा, ये मैच एटलीस्ट देखूंगा पूरा. We are really confident to beat them now. Gen.G beat us last year, but this year we're gonna get the revenge. Now, you guys just heard from the coaches Solo and Ewok, and you know, it's been proven at this point how critical coaches are when it comes to high-level VCT play. Let's talk about that. We mentioned it earlier. How impactful will this be for Gen.G in particular with the change of coaches? Well, it does seem like during the interview, like Solo was trying to give a lot of credit to HSK as well, because he was originally the head coach for Gen.G in the offseason. Solo was onboarded late into January, so not as much time. But my big question is people remember Solo as the IGL back on the old new turn. He's had a long career before that, but his coaching career is not spectacular. It has not been successful in Korea. And to me, this year on Gen.G and this opening match, especially for both him and HSK, if they don't look good, regardless of win or lose, people are going to start asking questions, right? You have all this experience as a player. Why can't you lead them outside of the server? So I think there's a lot of pressure on the Gen.G side. Last year के player experience नहीं थे. Ewok side, I'm sure he's probably trying to think भाई of सो जाओ से वैसे लाउड करो वॉच पार्टी करेंगे हर्षवर्धन भाई करेंगे दोनों करेंगे. अगर मेरे को बताओ कल रात बिग्स अकेला पूरा शिफ्ट कर रहा था 3:30 से अकेला या फिर कोई था उसी तरह. I mean, it is a lot colder. I think that's one of the reasons. But I mean, apart from that, it's just the way that he coaches, the way that he kind of figures out maps. I think that's one of the things. So map picks what's up? But at least for the time being, RRQ not having that many matches, or actually none at all in the off season, means that it's going to be a big question mark for the other teams. Like, how is RRQ going to play? How do we counterplay against them? We never know. Now, we were talking about Karen being basically a mechanics monster. We don't know much about him, but we do know that much. Let's break down some of the other players. What the fuck? Another new player. अकेला रात को 3:30 बजे. No, not at all. And I think that's something that Gen.G brings, is that all these players outside of Karen Fix Razer Logic कौन सा माउस बेटर है? comes to Valorant. Razer का V3 Pro, Logitech का Superlight. और दोनों से कंपेयर किया तो मेरे को as a मेरे को वो वाले माउस पसंद है, उसको क्या बोलते हैं? And now potentially the addition of Karon. I think that's why on paper, when you look at the numbers, Gen.G is a really well-rounded team. We just haven't seen the chemistry come together just yet. Opposite क्या इसका? And let's talk about Estrella from RRQ, another player from the region here. Can you tell us more a bit more about Estrella? Right-handed mouse. देखो ये वाला पसंद है. Mostly. Teams, coaches, or even like teams trying to come up with challengers were like, well, who can really IGL in Korea? और V3 Pro वैसे ही है. Right-handed mouse है. He's also देखो ऐसा शीट पहले बहुत पसंद है और ये वाला बहुत लाइट है. Putting up steady numbers. So now that you have someone who's also ergonomic calling to assist Flipstrider on the side of RRQ, I think this is going to really help their whatever they've prepped come out into execution in the server. The question is is this strong enough to keep up against the likes of Lakia, Karen, and Munchkin in terms of firepower? Because I think Estrella is good, but man, Gen.G individually is a very strong team. क्योंकि लाइनअप में Ray4C नहीं है. Ray4C तो CC है भाई. CC है ना? कि अभी बना है CC, पता नहीं. Yeah, so who are you looking out for on the team of RRQ? We're really familiar with these guys at this point. 2GE or Toge. I think ये कितना मस्त है ये emotes. Last year, and he was like, I'm gonna go back to pronouncing it how it was meant to be pronounced. Toge, yeah. कितना सही है ना? Toge, and because last year he went back to 2GE. Of course, like Xpero and Flips. How are you feeling about them? I mean, we definitely have seen them before. We are very familiar, but you know, you still want to see them continue to grow as players, and that's the main thing. I think they're sticking to the same roles, and that's something that I love to see because you get to be a lot more familiar with it. You get to really flesh out your ideas and play along with the entire team. It's just that you have the addition of newer, stronger firepower now,
and that's going to be something that they could really use to beat Gen.G in this matchup. Yeah, and Xfero mentioned, right? Last year they had players that had no Canada ban हो जाऊंगा मैं. That was something additional to the language barrier that they had to get used to. This year, everyone's been on stage at some point, whether it's a big international ace or not. But I mean, even Jemkin and Astria, both of them went to Ascension. They had to go through travels. They had to play against teams from other regions. So now that आप भी एनिमे देखते हो? देखता हूँ थोड़ा देखता हूँ अभी, पर मेरे को बहुत टाइम हुआ मैंने देखे नहीं एनिमे. Just playing controllers, so he can really work on that craftiness and really bring out those clutch genes that he used to be known for back on their old teams. Now with the addition भाई of कब these से भाई two रुको, players, कब Astria स्टार्ट and करेंगे Jemkin, भाई? आधा घंटा हो गया. are predicting RRQ for this particular आधा घंटा हो matchup. गया. Now pop quiz, you स्टार्ट guys know करो. what RRQ stands for? Rex Region. करो बाबा. Okay. What does it mean? I believe Long Live the King? No, it's actually King of Kings. King okay, of Arthur, Kings. you gotta keep quiet now. I mean, King you're so of good. Kings. All right, pop quiz number 2. What does Gen.G stand for? Generation Gaming? I don't think it officially does anymore, though, right? No. I think Not that's what it officially. started as, yeah, but... But it's like RRQ. No one says they're the Full. full Oh, name, yeah, right? yeah. It's like literally nobody says it. All right, so this pop quiz just doesn't matter. It's just like I was in college. They just throw these quizzes at me, and it अच्छा doesn't बिंग even सुने क्या? matter. क्यों I'm रे? just getting graded for things that aren't going to matter 10 years down the road. But again, IQ देखा RRQ मैंने. and Gen.G, like, again, these IQ brands भी have अच्छा been around लगता for a है long मुझे. time. I think that's one thing we can IQ look का at. मूवी आने वाला था. Different areas. कल आ गया. But I mean, you look at their home crowds, very, very passionate. For Gen.G, IQ का मूवी कल आने वाला था. once again, not a great look last year for Korean esports overall in terms of Valorant. So now they want to rise up to that standard. कब आ रहा है? Let's see if they do. We are gonna go into our map bans and picks now. I'm so excited to see this. I'm so excited to see the new generation of Generation Gaming and IQ तो बास्केटबॉल, IQ वॉलीबॉल वाला है. Yeah, I actually, it's funny because I asked people, I was like, okay, so how would you want it pronounced? And they're like, just don't. Just go with RRQ. Like, it's not. आ गया? आ गया? Obviously, the name is there, and I love what it stands for, King of Kings. But hey, they are RRQ, and I'm fine with that here on the broadcast. But you know who else just doesn't use their names anymore? DRX and T1, both of them. Pop quiz, what does it stand for? Well, no, I'm not gonna repeat it because like they ditched that name so ये long कौन भी ago. खेल लो? Just DRX. But it is year Uh, It's the year. I think 5 मिनट में ये लोग स्टार्ट करेंगे अभी. Street Dragon X Gaming, a long, far gone past. But yes, it's just DRX now. And T1, do you know what T1 is for? I honestly don't know. Tasteless talked about this so Start much last करो. year. I mean, Not a they have like whole towers here in Korea. like SKT. Yes. Yes. That, obviously, a lot has changed since then. But T1 also a very household brand name, and Gen.G also. I mean, they've been representing a lot of different Korean teams across different titles. And again, both of those brands didn't quite live up to the expectations that the स्टार्ट brands have in करो. Valorant. भाई अभी ये बीटी हो रहा है मेरे को. मेरे को थोड़ा बीटी हो रहा है अभी. Mechanics can only take you so far. I think 2023 it's Yeah, not see- too bad, but Peripherals See, बोलना भाई. for us. It was not good. जीतेगा तो RRQ ही. To single. Gen.G जीतेगा देख लेना. Gen.G. My performance was नया Gen.G बहुत अच्छा है. Quite tough year at first, but with more Do you want to make any comment on what you think? Listen, I would love to see DRX become the champions of Pacific again. Okay, why are we laughing? Like, stylistically, Okay. tell us. Let's break this down. Oh. Because now we're actually starting to see a huge difference between all three of Kurt's these teams. gonna expose all our backstage conversations. No, well, the but thing it's is so we're going to need a long interesting. time for this, and I hope we don't have to fill for too long here because this is a very long discussion I could have. But I think the reason a lot of people are excited for this new DRX roster is because on paper, they couldn't possibly play the way they used to. The way they used to is very textbook. We have a flow chart, we have these set Execute plays, heavy. and we have set plays A through Z. They had a lot, but it was like... भाई ये लोग इतना बात कर मेरा सिर दुख रहा है भाई. कब से बात कर रहे? कब से? Experienced the entire book. It
it was like, okay, well now we know all the options they have, and that's why Browser games खेलो Poki खेलना है Poki round of 4, things like that. Now you've got these players like Foxy9 and Flashback who are like, no, I want to go take these fights. I want to create this curveball. Even Buzz on the Duelist, he often does that. He creates space. He's trying to say, Minecraft खेलना है a curveball, I'll break open the site, you guys come in and get kills. Hopefully the execution is there. And regardless again of actual placing, I think all DRX fans want to see is we want to see them revitalize themselves and kind of create their own brand again, because honestly, it's been a while since we've said like, ooh, DRX, those set plays, like they've really come up with everything. Everyone else has already started to tack on and then make their own variations for a couple of years now. Valorant has evolved so much. That's why Foxy9, that's why ये क्या है make it a meme addition to them. I mean, you talk about DRX, think about the way that they played against PaperX. PaperX even said so themselves. You just don't let these guys set up. Don't let them play their game. You go in and wreak havoc, and that's all it is. That's right. I mean, DRX was almost militaristic. I mean, in terms of their precision, in terms of their set plays, I mean that as a compliment, but, you know, that's only going to go so far in such a crazy game like Valorant where the meta is constantly evolving and changing. It is funny that you said that because another coach / ex-player that was a little bit too much like that was Solo. Okay? Back when he was on Neutron, even as an IGL against DRX, the problem was he would play even slower and even more textbook than DRX, where DRX could get the read onto Neutron. And then as a coach, it was the same thing back when he was on The fuck? Challengers Korea. So बंद हो गया concern, so to speak, about Gen.G is you have these players who are great aimers. They can really go in and take fights, take contact. I hope that Solo and HSK are willing to let them run free for a couple rounds here and there, because otherwise people are going to say, they're just going to wait. They're going to wait to go for these set plays. They're going to wait for these trades and angles that they already know and love. So let's just break it open. I mean, that's going to be tough, though, against a really dynamic team like RRQ. And this is why RRQ ended up surprising us throughout the season last year. They were so adaptable. They're very explosive in some of their plays. And their Sheriff rounds. ये अच्छा है Yes, well, the Sheriff rounds for sure. Yeah. But on top of that, like a lot of people have asked, whether it's me or other people, like, okay, why do you rate RRQ higher than the actual results that they had, which weren't that high last year? But they should have won, or they very well could have won. And I'm not saying we should always give the benefit of the doubt, but if you look at how they lose those maps and matches, it's very clear that their mental started to break apart. The comms started to break apart. They started to all kind of scatter around individually. So hopefully now with these additions, we don't see that RQ anymore today. That's right. Now we are finally ready to see the map ban. What the fuck? ये क्या game है? What Gen.G and RRQ's got to show us. We're here. Well, we're not seeing Ascent anymore. I think everyone's going to be happy about that because comps don't change too often. Then what are they going to pick, though? Find out as well, which is interesting because Solo, you know, Lakia, all these old school Korean Valorant players love Bind. Oh, wow. Icebox. Do you guys remember at the very beginning of this show? It was a long time ago, but both of these teams have not a great track record on Icebox. To see it appear here, pretty cool. Literally cool. I mean, RRQ picking this, we haven't seen all that much before. Now they're coming up. It's बेकार game. a wild card for both sides is another thing. Now Split coming in as well too. अच्छा सिर्फ दुआ करते हैं Split one's interesting too. I mean, just knowing Ascent bind, what the fuck? Bind, what the fuck? Icebox pick, what the fuck? Split pick, what the fuck? सारे बेकार मैप सारे बेकार मैप they're saying it's the same core, they're probably playing similarly. So I think Gen.G's trying to pick out a weakness, and if it goes to map 3, Sunset, how do they interpret this new map as well? As a Valoranter, I'm really glad we have a completely different map pool than the previous Okay, first day matchup. collection I think देखो this is gonna set up to be really exciting. We're gonna find out if it's gonna be a little bit of a nice box. Higher or lower, it is a good game. Okay, okay. Definitely a question mark for all 3 maps to say the least. Maybe not Split. I remember Gen.G having quite a good performance on Split during LCQ especially. So ये क्या है I feel भाई? like RRQ actually has to step up. Is their Icebox really that good? Why did they pick this? They have to show it. Lebanon has 450. Arab Hitler has higher. Like that, where you can try to open up the map a bit more than it lets Lower. you, then you're gonna need to win these long-range duels on Icebox. And while Higher. RQ has some good players, okay, Oh my God, Mirror. Gecko on Mirrors, yeah. Well, KO on the side of Sova, Gen.G as okay. well. Huh. So Estrella going for the Sova and then Munchkin on the KO. That's
it's very interesting to me because Estrella was mentioned to be that flash initiator for RRQ. Flips was always a little bit more comfortable on going for the info plays for RRQ as the IGL, but they've switched it up. Honestly, Gen.G ने ये क्या pick किया है? but then KO on the other side. KO is always so good to shut down your opponents on Icebox, and Munchkin being there trying to take the lead as that IGL, I think that's a good composition for Gen.G. This is going to be really exciting. This is the first time we're really going to see the new Icebox being played during kickoff. We're going to go over to our casters for Nightmare Box, Paper Thin, and Achilles. Alrighty, here we go, ladies and gentlemen. Let's jump into our second series. Actually, Gen.G को सिर्फ अटैक में राउंड निकल ले. Actually बस सिर्फ अटैक में राउंड निकल ले. Gen.G easy win है. A rivalry brewing and developing since last season. We faced off against each other twice. We got to hear from Ewok, coach of RRQ, earlier saying different team here, so we're looking for a different result. Yeah, it seems like their destinies are intertwined, and really interesting to see our first lineup से unbreakable knife. Teams running the Gecko. Unbreakable. Using that to control some No flash in RRQ. on the attacker side. It's a lot more Flash चाहिए भी कि नहीं? Gecko का flash है. A lot more opportunities for defenders to hold some tough angles against you. But so far so good for Gen.G. See how they fare here in the long haul. Looks like taking a quick little peek around over that B site. Going to be drifting back. Caron just going to be going on a bit of a linger there, back yellow. Yeah, but look where Jemkin is. He's pushed way ahead in the nest. And let's see if Gen.G is going to be able to identify this. This is scary. आज जी के matches postponed है कल है कल. The push now coming through. Dash not going to be proc. There's a knife and now he won't be able to use it. Okay. Drops back. बचा. Jump up. बचा. Oh, getting slowed. Fogging himself down just a little bit, but does manage to make it out with 70 HP. Texture by aim दिखा दो बस अभी. Texture is Jemkin. Makes his way up into it. Heaven has to see the dash back there from Texture. In the meantime, though, Oh, crucial frag निकाला. Piper ने crucial frag. B पे. Widely are getting the read that this is going to be a full rotate over. They haven't taken any more crucial frag position in this B site yet, so there's a decent chance for RRQ to try to reply. हमारे सपना तो Strixx को VCT खेलते हुए देखना था. हाँ, मेरा भी था. 45 attempt here for the retake. Caron down to 48 health. RRQ still just waiting for that rejoin to come in here from Blue Clips, and he's got a decent amount of util to use. Jemkin now can find himself on the board. Nice. Still trying to hold things down and back. RRQ ने क्या retake किया है? One more kill, and now Texture has been noted. The spike is not planted for him, and he needs to go huge, but nice shot. Jemkin picks up 3 here in his debut in VCT Pacific and gets RRQ the pistol round win. Yeah, what an escape from G का Gen.G. match कल होगा. By Gen.G. Munchkin, by the way, this is his 4th ever game on KO. Pin कर दो. I had to go look because I'm like, you know, निकल दो भाई लोगों को. He's played more games on चार active तो भी रहेगा at least. official matches than he has a KO. So kind of an interesting little tidbit there. Rex, Regum, this is kind of the guy you're expecting yeah, here for RRQ. This is why you went and picked him up off of Scars when he had that impressive Rex, performance Regum, all throughout last year, in particular at Ascension. And he is a Sage मेटा गया. Sage मेटा बहुत खराब है भाई. ठीक है मतलब खराब नहीं है but ठीक है. Plenty of noise there, and so that's going to be the Dizzy going out. Once again, just going to be making his exit. Gets a smattering of damage. Easy out है भाई. नया roster है. Going their separate ways here. As Estrella pulling back over towards screens. Texture wary about this push. Yep, Jim catching a glimpse there for a brief little moment. There's the dash across. Oh, bye. Down that recon dart, spotting absolutely everybody here on the side of Gen.G. And so they are very halted up, and the spike is stranded. It's going to take some miracles here to get Gen.G into this round and try to equalize the scoreline. Yaar. Another one there. Texture going to be taken out. Dart getting the tag, just forcing Meteor all the way back. It seems like they're going to have to push in eventually. Munchkin able to find one. Flipshot are going to be taken down. Meteor just waiting, trying to see if he can spot, if he can hear. लोग यहाँ पे 500. Player just has no way of knowing. Eventual damage certainly can be dealt though. As now he dashes across, rushes up. Still barely manages to get the shot there. Only more will get. Okay, good for one. Able to push forward with that Spectre in hand and just mow down the remaining players. Yep. Solid hold here from RRQ. A couple nice Sheriff shots come through.
you know, क्योंकि भाई स्ट्रीमिंग आज से चालू की सिर्फ एक दिन है ये not going to be on duelists. आज से करूंगा मैं मतलब एटलीस्ट वंस अ वीक तो भी ट्राई करूंगा मैं भाई डिपेंड्स मेरे को कैसा टाइम मिलता है वैसे करूंगा मैं The Gecko is going to be your primary plant specialist. Not able to get the spike. Not able to get that. भाई ये तो एक राउंड था अभी मेन राउंड है भाई मेन Gen.G का मेन राउंड ये राउंड नहीं निकाला तो भाई डिफिकल्ट है Big rush coming through and distracted by the alarm bot. Elmore just domes texture. तो मेरे जैसे हो गया सेम Didn't want to take the risk with the vulnerable, but the vulnerable didn't matter. I can feel you. Absolutely coup de grace there. It's an instant upgrade to the Vandal as well for Elmore, but that guy, I mean, last year with the Sheriffs. There's no covering fire here for Flipshider. Oh boy. Oh, it's a good timing, and now it's going to swing Nice. around there for block. Yep. Equal. Just even up the numbers a bit. This is, again, good for Gen.G. They can get to this point. RRQ losing one of the kind of power positions potentially over the site. I believe Xfero's actually trying to challenge into that one, given the weapon disadvantage. Still is going for it, Dizzy. The pop flash going out, but Elmore managing to find three, takes out Logitech. Yeah. Falling. Now it's just Meteor left standing. मीटियर भाई निकाल दो दिखा दो मीटर भाई Sends it down back yellow. Swing out, Meteor going to be good for one, but with 17 HP, भाई Jemkin having the range advantage with the Gen.G के लिए डिफिकल्ट है भाई done, and it's RRQ. डिफिकल्ट है 3 rounds consecutively, they convert the bonus. Yeah, looking really stalwart. Next song from India to have international slot. Shine. No idea, bro. 2023, picking up right Difficult question. Difficult. 7-0 now for Jemkin as well in 3 rounds. Absolutely monstrous start. One away from a डालो खेलते हुए स्ट्रीम कर लिया कर करूंगा भाई करूंगा from a lockdown. Now Gen.G going to go for stingers and sheriffs. Try to see if they can make this A hit work. Some changes here to Ice. RRQ क्या duelist याद है क्या तुझे easy पता है easy पता है भाई मैं EJ के अगेंस्ट बहुत बार खेला होगा ये कॉम्प पे में बहुत बार भाई वो लेजिट पता है वो सिंगल हैंडेड कैरी करता था पूरी टीम को सिंगल हैंडेड Yep, that's why I got picked up. 8-0. Jemkin just ये तो अराउंड हाफ बाय भाई on the hunt for more. Pops the dash before it burns out. Start up over the top, looking to try to clear that. Dizzy still does get flashed, but now Flipshider picking up one. Locky got to be taken down. Jemkin Nice. will find another kill as Texture will fall. Heard the drop down, and Munchkin will be able to convert that into a kill, putting Jemkin in the grave for the first time here in the map. Things start getting come on 1v1 है ये भी वो राउंड है the one that was picked up by Gen.G. come back here Gets the third and final come back kill. here Gen.G on the board in a thrifty round. And we saw this at Convergence that Plasma by KCO, what's up? He was basically online for the rest of the event. Karan, man, he is an absolute potential prodigy in the making. He is really clean with his shooting, and you could see right there he's able to get Gen.G their first win despite some really difficult circumstances. That also gets him the Viper's Pit. Munchkin has the null command as well, so a lot of interesting ults to play around with. Now, Knives now popping with a great read. Sprays up on top of the box and does बेचारा टेक्सचर हर राउंड अपड्राफ्ट डैश गलत मर रहा है भाई अभी लो हो गया फुकट का Killjoy Kings of last season. And he snuck up through mid there to get that kill, so nicely done by Elmore. Do they read Xfero has the he's repositioned here? Because this would be fairly we're not ready for it, but now they swing around in from behind, but Elmore and Jemkin have arrived. RRQ बहुत strong लग रही है बहुत the rug pulled out from beneath Gen.G's feet. I mean, RRQ is happy to take these fights on B. Elmore is just absolutely impossible to get through. Him and Xfero are doing a phenomenal job. और के प्रेशर की वजह से प्लेयर्स अंडरपरफॉर्म करते हैं क्या पता नहीं भाई मैं खेला नहीं हुआ उससे खेला ऊपर इतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ उससे खेलने का Gen.G at all wasn't ready for the fast rotates in from RRQ. पता नहीं होता भी होगा नहीं भी होता होगा मोस्टली तो नहीं होता होगा इतना तो नहीं भाई Fairly static hits from Gen.G. They're trying to dial up some executes to just get themselves onto the sites. They're not even getting to that point most of the time. Dizzy flash drive sent out just to try to escort them forward up towards this nest. Decent firepower, 3 sheriffs plus that blade storm there for texture. ये लोग क्यों नहीं क्लियर करा
शायद से नाइफ डाला था और फिर कोई रिवील नहीं हुआ शायद से, मैंने चेक नहीं किया लास्ट राउंड. Yeah, so this is good. I was going to say at the beginning of this round that I'd really like to see Gen.G do a little bit of a bait and switch. Use that Gecko utility to buy a little extra time to keep RRQ on दुष्यंत भाई कैसे हो? and shift over, because pretty much you always know that the Gecko देखो वापस कोई रिवील नहीं हुआ, फिर उसके बाद फिर यहाँ पे वॉक करके जा सकते हैं वो वापस. starting to approach us when they send up that 0 point, but then they really grind it to a halt. Rotations are in position. They're just waiting on Meteor to थोड़ा नीचे कर. whether or not he spots anything, to see if they want to try to rotate back, but they're running out of time to do so. Sparrow will make his presence known. Top rope, sending out that bite, and yep, that's going to be the rotations now coming in. And this time RRQ, they're not privy to it. And there's no ability to gather info here, except for Blips. Has that thrash. Now trying to buy a little bit of time, keeping that duelist on the other side. Quick clear on that recon, but with those sheriff shots coming through from Meteor, it seems like RRQ now realizing what the play actually is. Wingman goes forward. That's going to be the thrash coming in to try to find a lockdown. Does jump forward, manages to get the detain onto one. His texture drifting across. Short. He will shut down Elmimore. Estrella, however, now arriving, finds Karon, ends up getting taken down, but Jemkin still very much a concern here for Gen.G in this post plant. But now Thrash going forward to chase in, but they manage to clear it out. Meteor with the sheriff in hand, finding one. Flip shot of the last man standing. Player decently tagged up, but now a knife into his shoulder. The swing out of the corner. Gen.G get their second round win and their second thrifty. Yeah, great utilization of their utility here. Stop buying rifles. Yeah, you don't need them. Dog, yeah, who cares? Just screw it. I mean, that's texture. Snappy. Yeah, and I mean, I think for texture, you know, for him, he really wanted to go back to duelist. I mean, Meteor. Look, the guy's got gun skill, that's for sure. He's got that in spades. He was the duelist carry for Gen.G last year. This year, shifting over to that sentinel role more often than not, and he's still got plenty of talent. That is an absolute fact. Still a lot of ults for Gen.G as well here in this rifle round. Let's see if they can use them. Again, getting blinded, but manages to exit. Flip shot now caught. Moving up under Nest towards Great. Trying to get that flank angle, but Meteor was ready for it. Shuts that down. Gecko now gone. A hell of a lot of utility lost here for RRQ in this defense. There's still so many ults to work with on the side of Gen.G if they even feel the need to invest them here. You got that flank coming from Xpharaoh potentially. Here you go. Counter for lockdown. Counter ult, nice. Lockdown's going to be employed. Munchkin on that no command still yet. And you have Charon's ult, so a lot of post plant. Oh, timing. Faces away. Oh, did you not see him? No, he didn't see him. He turned away just before Xpharaoh was going to round the corner. Still, though, he started taking his time, so isn't ready to strike. He's going to rely on the rest of his teammates to be able to stave this off, slow down Gen.G for a bit, but also keep their attention occupied towards the front of the site. Going out, Charon able to find one. Texture taking down Jemkin. Texture finding a nice one. Now it's all on that flank. 30 seconds left. Smoked off the turret. आ रहा है Gen.G का गेम प्ले आ रहा है धीरे-धीरे आ रहा है. Munchkin's ready for this though. 3 बजे आओगे क्या बिंगसियात? पता नहीं, let's see. एनर्जी रहा तो. फिर अभी मेरे को बताओ guys, अभी ये खत्म होगा around 10:30 11. फिर उसके बाद मैं आ सकता हूँ वापस सोने के बाद. शायद से आ सकता हूँ फिर मैं रात को भी. 10:30 11 को अगर मैं खत्म होगा ये, तो फिर मैं वापस आ सकता हूँ सोने के बाद. आऊँगा, let's see. अब सो जा भाई, मेरे को 3 घंटे भी नींद मिली तो काफी है भाई. 3-4 घंटे भी, क्योंकि मैं इतना पूरे हफ्ते से बस सो रहा था भाई. भाई मैं वंडर करता हूँ, मेरे को मतलब पता नहीं है, जस्ट क्यूरियोसिटी है. कुछ क्या बोलता होगा भाई, क्या बोलता होगा टाइम आउट में, भाई तुम्हारा ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए. क्या बोलता होगा पता नहीं भाई. कभी ऐसा कोच के साथ खेला ही नहीं मैंने. क्या गलतियां निकालता होगा कि क्या गलती कर रहे हो, क्या करना चाहिए.
So everybody going in relatively blind as far as देखो अमेरिका से परमिशन मिली है गुड क्वेश्चन इसके लिए भी परमिशन चाहिए तो नहीं है मेरे पास नहीं है शायद से नहीं है We got to see a little bit of Gen.G. But this is certainly surprising. I mean, I thought देखो पूछना पड़ेगा परमिशन के लिए Sage at least potentially because the sights didn't change. Oh my. Sure, again going for it, but I mean RRQ kind of just opting to play this one out a bit more quietly, but the lurk does get spotted. Nice one. As does Xpharaoh. So the sneaky tactics, unfortunately here for RRQ, not going to be coming up with a profit for them. 0 point identifying there's no P4C नहीं है RRQ में. Swing on the corner. Wingman can go ahead and get the plant down. Let's see, there's a guardian for Jemkin. रूलिश को बोलता रहेगा गांड देना बंद करोगे भाई अगर मेरा कोच रहता था देखो पक्का बोलता था पक्का हाँ रोहित भाई कैसे हो शॉट कैसे हो पता लाकिया या तो तुम्हें लाकिया क्या मारता था पहले भाई क्या खेलता था लाकिया पहले आज भी मारेगा शायद ऑब्वियसली पंप्स चाहिए दूसरी बढ़ेगी and they're still able to finally get it to work here. They've been shut down really well by RRQ for the first couple rounds, but now able to best them. RRQ decides to push a little bit further than we had seen them do early on in that round, and they paid the price. I mean, of course, it's an eco, so you know, not the biggest of deals, but still Karon with that hit, man. He's been sitting on that for a while. Set there. वो नया फ्लैश है कियो का मैंने पहली बार देखा अच्छा है वो फ्लैश tackling this A side very aggressively. Stray gonna be forced off the angle and hit comes in. Texture able to find Elmi more. Dark darts bit too late there. I believe Texture was spotted. Full flash coming in. Stray playing off the back of that one very nicely. He's able to collect the kill. गाइस ये बहुत क्रूशियल राउंड है ये राउंड चाहिए बस अगर Gen.G राउंड जीतती है 101% Gen.G जीत सकती है मैप बस ये राउंड जीतना है Gen.G को No, actually they're just going to take the fight to him. Meteor and Lockheed now both going to get picked apart. You're dropping down, swings out, can't adjust to try to get the kill. Looking for the spray there is Munchkin to try and stop the defuse, but RRQ will be able to find इसको सपोर्ट कर रही हूं मैं तो Gen.G कर रहा हूं Gen.G Yeah, that one felt a bit disjointed from Gen.G. Texture so far out there without any real help to bail him out off of that flash push. Yes, Lakia, हाँ ना Just stuck on the other end of the site. Yes, Lakia क्या मारता था बे सच में Post plants for Gen.G and RRQ says cool story. Why didn't you use your pit? Like we're just gonna push this space, shut you down from being able to use anything like snake bites, fragments, those kind of things that are gonna be available. Like an evolve, guys. जो भी नया शिट पे don't forget to like, subscribe, बस like, subscribe. Still the pits, and now another thrash for flips. Oh, Jemkin. मेरे को लगता है Jemkin मारेगा एक, at least एक लेगा. Down through Hall, but I mean, look at this close angle. Meteor is watching for this, and you'll obviously see the gun barrel first. Dizzy. Ooh, nice one, nice one. Meteor ready for that one. Trap was set and bait taken. Fantastic kill to shut down Jemkin, who got himself up to 12 kills, but hasn't been able to add any to the tally here in a while. Flips now trying to defend that Dizzy. Nice. Meteor just pushes forward, counts him down. Texture spots it straight up. They're on back rafters. Plant now coming in. Only more work to be done. Just getting started nicely. They're going to be taken down. That's the snake bite aspect eliminated here. ये round तो Gen.G का है भाई. 0 point not going to be spotting anything, but seems like, I mean, they're aware that Meteor is between them with that catch coming through. RRQ, do they want to commit to the नहीं आ सकती है round Gen.G. Seems like the answer Save ही कर रही है. to be yes, or maybe just a wraparound from behind. They want to try to catch any exits, it would seem, and recover the operator. Save कर रही हो. Okay. So that's going to be Gen.G. Monit bhai, कैसा Monit bhai? Meteor just reading that place. लेकिन मैं पहले कौन सी टीम में था पता नहीं. To play off of that Dizzy. Lakia is wondering towards this. Chat बोलेगी, chat बोलेगी. The shot. Making it hurt a little bit more, but the purse strings not too tight here for Gen.G. Plenty of cash still in the bank.
as they tie things up 5-5. भाई कैसे ये राउंड Teams just inseparable in the season. एक राउंड Gen.G जीत रही है, एक राउंड RRQ. Here as well. And so much of it, you know, last year was their fates intertwined, right, leading down to that ending. You know, for the fate of RRQ within Gen.G's hand, you know, things like that came up, and they just absolutely insane. And their face off in LCQ. क्रैशिस अल्ट है, क्रैशिस है, रिकॉल्ड है, जीत सकती है भाई, RRQ राउंड जीत सकती है. Expectations. I mean, this one certainly felt like a 3-mapper from the get-go. Yeah, gonna have to back up a little bit as Xpharaoh. पर दोनों के पास है. Get any real vision necessarily on the full and the full forces of Gen.G that are going to be coming through towards B. Pings are out, but now you've got flips sliding over here. Meteor back tucked into that corner. We end up seeing a bit of a thrash v thrash. Xpharaoh actually pushing forward. Does get a little bit of fake information. हो गया, ये राउंड Gen.G जीत रही है, सिंपल है. Round back yellow. They know that he wasn't playing. सिंपल है. I like the attempt though. Great delay here though from RRQ, preventing this plan. Oh my God! Meteor. Shot base, shot. Jeez, man. Snaps on shuts down flip shadow. Meteor भाई full focus में. Out of the picture. Full Flash focus. Ellie more out to the open. Texture able to scoop the kill and finds himself a second one, eliminating Xpharaoh as well. Nice try. Straight up does manage to stand tall. Should sound the enemy jet, but given that the operator is still in the hands here of Jemkin, just gonna have to wait this one out and भाई allow कब तक सेव करेंगे ये लोग अब? Yeah, it's got to be a save. If you want to keep the op, you have enough for rifles. Vexy bye, कैसे Vexy bye? What's up? We're sitting on 32. Yeah. Really avoiding getting the spot. इसकी ऑफ तो चली जाएगी भाई. Meteor मार देगा. इसकी ऑफ को. The feeling आ रहा है. Very hungry to take that op out of his hands. On the hunt, the swing around, he spotted him. He is not going to be able to retain that one. Meteor इसको भी मारेगा. Like now coming in, and Estrella not going to be able to find anything else. Prediction तो है. Prediction तो है. As RRQ losing everything and losing the lead. And I mean, you think back to who it was that ended, you know, the LCQ and ये वाला shot था बेपर. last year. Obviously, it was Gen.G, but Meteor was a big part of it. And he is showing up in a big way. Different role, different agent. Still having tons of impact. He is all over the mid part of this map, just causing so much disruption. It's so hard when you've got a player that deep into Earphones Mundra Varia. Texture's got the op. They have 3 ops. Texture, Lakia, and Meteor all have Shot, babe. What the fuck? Shut down Jemkin. What a shot. Shot, babe. This is interesting. Tons of ults to work with. Karon still has the pit. My goodness. The flicks just in the last 2 rounds have been astounding. Well, this is why I am the lone Gen.G believer today. Meteor बहुत sexy खेलता है पर उसका थोड़ा divided है. Texture, I've said this before and I'll say it again. I think one of the most balanced duelists in the world. He can do a lot of things really well. He's not one of those guys who has like a calling card where he's just a great opper, he's great blade storms. He's just really good at all of it. And other than that one time he overextended, I think he's playing great. 0 point revealing nobody far forward here, as that's going to be the Thrash to go and check the site. Xpharaoh just tucking back on the opposite side of the wall. There's a jump up over the top, makes his presence known, managing to find one, gets a second before getting taken down by Munchkin. He gives the rest of the team a chance. Xpharaoh खेल गया पता है? 3v3, Spike still in the hands of Lakia, the wingman at the ready. Sends it now, the pop flash timing looking good, but Elwimore still full flash, managing to find the kill, and he stops the plan, and he gets Munchkin to boot. Chasing, it gets the stun. Meteor detained. It's only going to last a little bit longer here as they try to flush it वो out. stun कैसे हुआ? Maybe he was going to be able to redraw his weapon, but no. They will just wall bang him to death. And RRQ will be able to recover here. इसलिए मुझे earphones. Multiple rounds there over to Gen.G, but it's 6 and 6 the half. भाई ये भी close आने वाला है. ये भी बहुत close आने वाला है. Two phenomenal teams लग तो रहा है भाई. going back and forth. Maybe a Close little जाएगा भाई, close जाएगा. Kind of miscalculation here from Gen.G, thinking that 3 ops, sure, why not? We've got a ton of great oppers on this team. I mean, you got लोग Gen.G बोल रहे हैं यहाँ पे. They're quite good. Munchkin's no slouch. A lot of great players on that team who can grab 50 to an 48 damage, but didn't really befuddle RRQ too much. Able to stop that plant.
bailing each other out, even though the flash displaces, I believe it was Elmimore, but they're able to back him up right away. Now we switch sides. Now we really see, with these very, very similar comps, if RRQ do a little bit better on their attacker side, Tides अच्छे बन गए. defender side that holds stalwart. 25 more 8 आवर से लाइव भाई, और अभी 10 घंटे भी होगा, शायद 2 और घंटा चलेगी इनका मैच. Leads here going into the second half. Solid start for RRQ, but a great rally back. Gen.G very much alive and well. And if they're going to keep hitting shots like we just witnessed from them, this could be a very bloody second half. Oh, yeah. I mean, it's just been a phenomenal first half. Texture, 15 and 8. Oh, yeah. I mean, we saw Jemkin. He got up with 12-3. Yep. And that impact just hasn't been seen. Gen.G were doing so well to shut him down and just play around him, if not away from him. Well, they shift over to that defending side. RRQ going to be trying their hands here on the attack. Let's see what they've got prepped for us. Munchkin is spraying through here. Again, the defenders have a little bit of extra room to get some good angles there. You can even do a high-low off a yellow. It can see really deep down in towards the attacker side. So, for now, though, it's going to be cleared out as there was only one player over here. It's Munchkin. You have a deep push through mid. Didn't make any contact, so an immediate rotate back over. They're just cutting their way in under tube. Shots going up top, trying to spot anything that they possibly can. Lockett was revealed there for a brief little moment. Now the wingman flank going to be coming through inside the poison orb. His own wingman going to be sent out just to try to get a daze off, but nothing to be found. अगर ये राउंड Gen.G जीती, Really clean plant here from the side of RRQ. As pop flash timing is absolutely gorgeous. No way for Jeff to turn from that one, but Flipshider swings out. तो Gen.G गेम जीत सकती है. Things nice and even. ये राउंड चाहिए बस. Slight firepower diff here in the hands of Gen.G. It's Meteor with that Sheriff. Managed to put the good use coming up with the kill on Estrella. Can't find anything. Nice round. Finds two more, but Meteor will be the last one alive. Gets the defuse, tying up the pistol count and giving Gen.G the lead. Retake तो है भाई. Gen.G का retake तो है. RRQ committing to this B hit from the get-go, and again, with all that information that Gen.G is able to gather with their mid-push down through the tunnel, too hard. What a beautiful flash, by the way, from Munchkin. Just absolutely. Strixx भाई आने वाले 2 मंथ्स के स्ट्रीम की कोटा पूरी करते हुए भाई 24 घंटा करूंगा एक दिन, फिर सीधा 1 महीना गायब. Valiant attempt to hold, and now Texture is going to be grabbing an outlaw. Munchkin with the Guardian, Meteor with the Sheriff still, Karen Spectre. आउटलॉ तो बहुत ओपी है भाई, मैं भी चला था आउटलॉ. सेकंड राउंड आउटलॉ इजी है भाई. Gen.G and immediately taking some damage, trying to get that recon on. Shot. Great shot. Okay, Texture. The only other players that we've had bring Lift that किया. outlaw into the fold, and puts it to very good use. Great answering shot though. Elmimore has always been fairly crisp when it comes down to those Sheriff shots, but this time Texture will be able to get the better of him. ये देखने के बाद ऐसे का गेम प्ले इतना गंदा है प्रो सीन में. गंदा नहीं बोल सकते, बट इतना अच्छा नहीं है इनसे कंपेयर किया तो. इनका एम भाई, क्या एम है भाई इनका. लेजिट मैं आज इतने टाइम बाद ये देख रहा हूँ, क्या बोलते हैं, टूर्नामेंट के मैचेस देख रहा हूँ भाई. एम तो है भाई, इम्प्रूवमेंट होती है भाई हर एक टूर्नामेंट. Gets the collat. Our first one so far here of the season. Jemkin. सिर्फ आउटलॉ कर सकते हैं, सिर्फ आउटलॉ. ना मार्शल ना कोई और गन, गार्डियन भी नहीं, सिर्फ आउटलॉ. Spike stranded down behind him. 30 seconds remaining. Shot bे, shot. Isolate this fight. Can he predict it? No, he cannot. And we'll take him out. Weapons can be. Outlaw. And that's going to be Gen.G taking away that anti-eco. Is your father? No. To see if they can get back on the horse. Yeah, I mean, all things considered, this is not a bad round for Binks as an IGL कैसा Strixx? Binks का IGL अच्छा है, मतलब वो करता है, ये वो रीड कर सकता है, अच्छे से रीड भी होता भी उसका. बट अगर एक दिन उसका रीड नहीं हुआ तो उसका पूरा मैच रीड नहीं होता. ऐसा है, मतलब उसका रीड अगर नहीं बराबर तो उसका पूरा सारे मैचेस उसका रीड बराबर नहीं जाता वो दिन. सब मैंने नोटिस किया भाई.
4 position. बट उसका एजल बहुत अच्छा है, नोट करने लायक बहुत अच्छा है। Covering fire, and what is that texture? शॉट पे टेक्सचर Doing this. It's not fair, man. That is not fair. Invested, diving forward. थ्रो कर दिया, ये थ्रो कर दिया भाई। It's gonna be Locky and texture getting swept under the rug. Man advantage now here into the hands of RRQ, but again, just given that this is the bonus, Gen.G, any more damage they could deal, even with a round loss, is still going to be feeling pretty decent for them. As everything grinds to a halt. Munchkin pushed so far forward. Boys cut. They check up over the top. No, they did not. अरे Absolutely perfect. मुंह पे थूक दिया था। Maybe he was still going to be able to come away with something there despite the flash. नाइस नाइस। Take it down. Spot there on Elmore for a brief little moment, but a great read from RRQ. Shoot. They start assessing, they start spraying through the box. They get that kill across. You got a tag in there. सर टैग दिया। Now in. Okay, Meteor on the hunt to try to find some extra value, but wasn't expecting Jemkin up top. Ends up falling, and RRQ widely managed to go ahead and take the bonus for themselves in fairly. Goodbye, what's up? Welcome to the stream. Are you adapted by Binks? Binks is adapted by me. Big kills. Nice little coordination there with the thrash. बेटा है भाई। A couple angles, couple big इससे मत बोलो। kills. And they're able to just identify a player behind the box, isolate, take him out, and then not much for Meteor to do there. Jemkin just waiting with open arms. Texture Blade Storm. One away from his own is Jemkin, but he went from 12 and 8 to 17 and 9. So I think he's back on it. Texture now on the hunt. Jemkin, oh yeah. एक शब्द मार लो please. Here in the meantime, however, able to find Elmi more. Killjoy now eliminated. And Lakia escorted into a very far forward position. Watching that A-main approach. Sparrow going on a lurk. Here's that movement. Able to strike. Munchkin going to be caught off there on the rotate. That's going to force Gen.G out towards that attacker spawn. This Meteor, oh man, nearly flushed out of this one. Taking so very low, swings back out, finds one. Eventually does fall. Sparrow trying to hold that back line. So one kill, but it's all on Texture and Lakia. And as the swing up comes in, Lakia shuts down Jemkin. Estrella, the newfound IGL. I think निकाल लेगी around Gen.G. In a 1v2, Texture at 10 I think Gen.G निकाल लेगी मैं। I mean ये round. And he clutch it out. Noise cut. Approaching. Oh, but he checks through. फिर भी निकालेगी। नहीं निकालेगी। 10 HP है। The massive advantage. Texture just down below. Weapon not spotted, but he creeps in underneath and behind, and Texture will be able to close it out. Unlucky. man, oh man, this looked so good for RRQ off the rip. They seem तो प्रॉपर पुणे का है क्या? नहीं, मैं नासिक से। Then he steps out and causes all kinds of chaos. Karan on the other side, finding some impact. A6 तक कब खेलेंगे ऐसी? हाँ ना। सच में ब्रो, सच में। That is nasty from Lakia. Just quick adjustments and Texture remembering to look up. The boy's back and he is happy. Able to play duelist again. H5, what's up? कैसे हो? No, he gave up his duelist spot on this team to Texture because he wanted this team around him. You can see why. It's really good. Jemkin with blades. Sphero does have a pit if they can get to it. So they've got rifles. Otherwise, some extra money in the back pocket. Gen.G's economy, on the other hand, is pretty dire other than Munchkin. It's been a little bit brutal. Nice. Consistent kills coming in. Not allowing to really bank up anything. Man now going to be going forward. ये मैप में गेको नेसेसरी है ब्रो, नेसेसरी है, नेसेसिटी पूरी। गेको की बिना ये मैप में प्लान करना बहुत हार्ड है। ओह, पोजीशन है, पोजीशन है। Hit is going to prevent him from seeing much of anything though, but got him playing forward. Position है। Snaps over the side, takes down Texture. Pulls back, goes for the reload. Jemkin there to try to protect. Flip shot now, finding himself a third. Meteor gone. Lock, however, able to put an end to that reign of terror, but the man advantage is still very much here in the hands of RRQ. Not wanting Gen.G to get up to double digits quite just yet. Sparrow with another, taking down Munchkin. Straight up will be the finisher coming out from mid. And RRQ keep things nice and tight. नहीं है क्या अब तक स्ट्रीम कर रहा है भाई? पढ़ाई वढ़ाई कौन करता है भाई? स्ट्रीमिंग करो, स्ट्रीमिंग। कौन सा चेहरा है पता नहीं, इसी दुकान से खरीदा था बाजू वाले। Post plant so tricky to deal with. Flips just pushed up. Heard
the shots from Karan. Moved up to keep him off आपके टीम में आईजीएल कौन है? अभी जो करंटली टीम था उसमें कोई आईजीएल नहीं था, उसमें हम सब लोग कॉल्स दे रहे थे एक दूसरे को। स्पेसिफिक आईजीएल नहीं था, ये राउंड क्या करना है, नेक्स्ट राउंड क्या करना है। इसमें पानी लेके ठीक है। 30 सेकंड में, 30 सेकंड में पानी लेके 30 सेकंड। Yeah, I mean, even though, I mean, obviously the core of RRQ very much the same. Jemkin, the kind of, you know, the one new addition coming through. Meteor, the only mainstay from Gen.G. But either way, everybody on these two teams has now inherited this rivalry from last year. Gen.G wanting to keep up appearances with new head coach Solo there in the booth, wanting to be able to deliver a third shutdown to RRQ's hopes. Yeah. It's tough, man. I mean, RRQ certainly had revenge on the mind. I'm sure as soon as they saw this matchup come through, they were chomping at the bit. See if they can do what they could not last season. Let's get a win against Gen.G. Lakia has the thrash. So does Flips. A lot of info given over here. Here. Not sure if that was meant to try to clear out early util or if it was an oopsie on the shock dart there. Either way though, Drone trying to escort forward. Strixx dart out there onto Meteor. He'll back away. Coming through. Jemkin spotting him for a brief little moment. 5v5. 5v5. Now over towards screens. 5v5 retake. Working their way over. Is the mosh pit going to be thrown down? That interrupts that plan. Man now sent out. Is he connecting? I think Gen.G निकाल लेगी. Spearing, crashing across. Elmimore pushing up. Eco, माफ करो, eco है. Gives himself a second. Munchkin is able to find one with the classic, but that's RRQ. going to get here. RRQ. The weapon advantage, push forward aggressively. They managed to tie us up 9-9. Yeah, and obviously it's tough. You're on the eco. You know, you're so outgunned. It's very difficult to get something going in that situation. And they had to rotate. G होने वाला है नहीं, G कल होगा. कल 11:30 बजे. From the screens in the back of Morning. Really well covered. Chasing down Texture there. कुछ सीख ले बड़े. काली नहीं अभी भाई, काली नहीं. Now operator, Texture very good with it. Very consistent. I mean, honestly, the other big thing is that Estrella, he did commit the Hunter's Fury there, and you have that lockdown now in the back pocket here for Meteor, so true. Clearing it out is going to be very difficult. They'll rely on, you know, Killjoy ult. A lot of different lineups. Counter ult मारते हैं Killjoy. Killjoy का ult legit सिर्फ retake जब सामने वाला Killjoy नहीं है या फिर सिर्फ काउंटर अल्ट के लिए यूज करते हैं Killjoy का ult. Still leaning over towards the A site with this spike. It's going to be Lucky on point of contact, yeah. That's all enough there. It's going to be the back away and the rotate now coming in from Munchkin. Lockdown used preemptively. The wingman is there to go for the plan, so they can grab this one, and now they have that slightly delayed, but with the spike getting interrupted, plant not coming through, so still plenty of time to work with here for Gen.G. Safe counter ult, Killjoy ult. Just pushing up far enough to try to grab the spike, seemingly impossible here for RRQ in that little window of opportunity that they had. Right now coming through, there's the full flash coming in. Is Texture nahi. Meteor not realizing that Estrella was still going to be pushing forward. Jemkin now puts Munchkin down. They lost only more in the process, but Locky going to be taken Texture को मारने से तो पता है? Rez unlikely. Texture nearly finding himself another. Come back, Texture bhai. Cleans up one, but still everything for him to do. The Thrash on the hunt. Time dwindling. Spike needs to be planted. And Texture, he might be able to ruin their day, but no. Nice shot. Close. Nice. And RRQ will once again take the lead. It's phenomenal movement there from Texture. Dodges the Thrash. Able to avoid the first attempt में 97% आया. कौन सा attempt भाई? किसका attempt? They're not expecting it, and yet still RRQ able to react. Snappy stuff from them. Elmimore and others. इसका one tap मारा. Looking very good. X-Pharaoh as well. Really feeling it. So you gotta like what you're seeing from RRQ. Is finally seemingly start to come together as Gen.G once again going to be put on an eco now. They've been pretty decent on ecos here on this map. But on the defender side, maybe a bit of a different story.
Nice shot though. Going to be punished nice and early, and that was the heaviest investment they had. The Guardian. भाई हर एक मैप क्लोज है हर एक मैच भाई पहला भी मैप क्लोज गया. Trying to take that forward space in A. Meteor trying to hold things down from Kitchen and Tube, and he absolutely will. 2 kills for him, and that's exactly how Gen.G continue to get these thrifty round wins. What is that, Meteor? That isn't fair. I mean, you got the dizzy right in your face. Just ridiculous. Oh, do they know? Yes, Oh they my do. God. Estrella now taken down. Munchkin wanting a piece of the action. Finds the kill. Spike still all the way back here outside of A main. Only more gets himself into a forward position. But he is going to have to be the one that slams the door in Gen.G's faces if RRQ. Strixx आपके GFN नहीं यार. Moved up. टेंस का मैच रात को 3:30 को है. टेंस खेलेगा क्या आज? पता नहीं. Signing out now, but you can see the pings coming. खेलेगा शायद खेलेगा. Very good idea of where he's at. He cannot get the follow-up shot. Xbarrow now left all on his lonesome in a 1v3. They're lined up for him just a bit, but can't kill Lockyer fast enough to try to get the transfer. Munchkin with a recovered weapon will put him down, and Gen.G will keep it neck and neck. Unbelievable. These ecos from Gen.G are just fantastic. I mean, didn't you say it earlier that they should just use sheriffs? Yep. Just, you know. I think you may be onto something. We'll take a look back. I want to here see at this. Meteor's This is POV. Yeah, after the dizzy is the one I want to see. Oh, he hits it and then repeats. Disgusting. भाई कितना easy लगता है ना कितना simple लगता है. पर ऐसे लगते नहीं भाई. It's enough to get him punished. 2 very crucial kills into the finisher there from Munchkin to pick up 3. Gen.G not going quietly into the very late night. You can see, despite the delays and everything like that, everybody in this lobby is wide awake. For sure. Once again, trying to get that operator to get some value for texture. Early util plus pickup of the orb. If there's any more comes out, should kind of give it away. Yeah, here you go, executes on. Dart goes out, Dizzy as well, but really being noted, Gen.G in a fairly disconnected position. Likely going to be trying to clear out that wingman. The nano swarm is going, and that's going to be the spike once again interrupted. Sad. Timing's just working out very well here for the side of Gen.G, not allowing for flips to just get those easy free plants down. Now ये क्या गया? Recover it. Sees the nano coming through, backs away. Still time available to RRQ if they want to. Smoke filled up dense. क्या बात कर रहा है legit? Elmimore in a very Woman खेलता है. position outside of A main. What the fuck? 0 points gonna tell all. But मैं एक चीज बोलता हूँ. डुअलिस्ट के बाद अगर तुम लोग सपोर्ट रोल पे जाते हो, बट जो डुअलिस्ट का तुम्हारा वो रहता है ना, वो डीएनए रहता है ना डुअलिस्ट वाला, वो जाता नहीं है. मतलब तुम सपोर्ट लेके भी मारोगे और टीम को भी सपोर्ट दोगे, ऐसा ये एडवांटेजेस रहते पता है. मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मेरा. Now it's all on Flips and Elmimore. Full flash on a Meteor, but they just don't know it. Flips can't try to go for the swing out. He's eating that team flash, so they try to go ahead and get the 50. Nice retake, nice retake. Crucial round था पता है, crucial round. With 3 with the operator as Gen.G once Hi, again Shreya. working their way into a lead. Maybe just a little bit too वो static. मैंने गया हाँ गया. See this from both teams on their attacker side. दीपक भाई कैसे हो दीपक भाई? What's up? On committing to a certain side of the map, and you know with the toxic screen there, you feel like you kind of have to use that to get your approach. Bro, Meteor को ही देख ले. क्या Meteor ये था? क्या बोलते हैं? डुअलिस्ट था? Earlier in this half. Now not so much. मैं पता है मैं स्काई और कियो खेल रहा था ना ये वाले VCT में क्वालिफायर्स में. भाई सीधा वाइड पिक, सीधा वाइड पिक, सिर्फ वाइड पिक और कुछ नहीं. फ्लैश करो वाइड पिक लो, फ्लैश करो वाइड पिक लो. भाई ये क्रूशियल राउंड था Gen.G के लिए. हाय मेहुल भाई कैसे हो? रैंक विंक ना पूछो लक्ष्य भाई, ऐसा मत करो. Yeah, I mean, I think ideally you want to spread the map a little bit more. Try not to overcommit some of that utility because they dump so much of their. सीख ले कुछ टेक्सचर से, सीख कुछ. भाई मैं अभी जेट नहीं खेलता by the way, मैं भी खेलता हूँ स्काई और कियो. And right, you have to commit to
get flips back up there to get the spike. Nerf by कैसे nerf by what's up? Gen.G, but Gen.G's got enough information over on the other side of the map that they don't really need to budge either. 24 आवर स्ट्रीम तो नहीं होगी भाई. भाई ये मैच के बाद मैं जा रहा हूँ सोने. उसके बाद मैं आ रहा हूँ रात को 3:30 बजे. But the question is, क्या मेरे को स्ट्रीम करने के राइट्स मिलेंगी? और कहाँ से मिलेंगी? क्योंकि मेरे को पैसिफिक वाली राइट्स है शायद से. It's all about the plushie luck. 7 more. Yeah, you need to accumulate a fat stack of plushies. Actually going for the very fast push up here. Situated on Ven. A very narrow close angle, but drone sent in will get cleared out, allows him to stick around. Caron actually able to find one. Flipshider taken down. Over at green. Now the back away. Gen.G 12-10. Simple. Gen.G 12-10. I mean, this is just such a tough 12-10. RQ likely with a great idea that operator is going to be situated on A. A member gone over on that B site. You know that the double stack is there. 12-10. Simple. Waiting. Saying, hey, X-Fair, you know that they added a window here? Tough angle to check. It's a tough angle for Meteor to hold, actually. You know, it's just not something that ये कौन सी टीम लगती है जीतेगी VCT पैसिफिक? पता नहीं यार, क्योंकि क्यों नहीं बता सकता, क्योंकि हर एक टीम का नया नया रोस्टर है. ऑन पेपर देखना पड़ेगा. बहुत सारे नए प्लेयर्स भी यार, जैसे ऑक्सी हुआ. ऑक्सी तो सीनियर में है, पर हर एक टीम में से नए नए प्लेयर्स है जो अलग अलग, जैसे इजो हुआ. You have nothing but a nano for utility for this post plant. Izu, sorry, Izu. Have to be on raw aim. Jemkin with that hot start. Can he keep them in this? The dash not going to be able to be used. No flanks to be concerned about here, not that they are aware of it. Defuse हो रहा है बाबा. Munchkin, snappy. Switches back over to the right. There you have it. Munchkin will be put down on the floor. Gen.G retake. And it is a flawless Gen.G now. Look to steal the map away. भाई गेको RRQ. कितना अच्छा है डिफ्यूज. पोकेमॉन के पे जो डिफ्यूज करने खुद मारो इन पे. सिंपल. गेको का सेट है भाई. सच में भाई सेट है. क्या मारा? This is like just, you know, Meteor in a better position, but that shot from Caron was not fair. That ain't. It's. I mean, things happen. It's stuff like that that just goes to show, like, this is why this guy got picked up. सिंपल है भाई. इससे क्रॉसर में आने वाले टेक्सचर के एटलीस्ट एक मारेगा टेक्सचर. एटलीस्ट एक. अरे बाबा क्यों पिक किया टेक्सचर भाई? Enemy Gecko is RRQ very much all in here on that A site. Texture lurking in the back. Able to scope in. Draws out the blades. Finds the straight. For a little bit more. Dash over the side. Nice. The damage is dealt. Flip shot it down to 39. The 2v3, the pit, still available. Is Xparrow going to be investing his? Meteor drifting around from a potentially unexpected angle. Comes in from the back, finds the kill. Flip shot it out. Last man standing, gets the headshot to keep them in the game. RRQ. ये तो रोता. One more round to take us into our second overtime of the night. The thing I'm struggling with right now is not just टेक्सचर ने क्या मारा बे? like, that's not it. You're supposed to be back at the home by now. What? Sorry you missed apple pie night, Grandpa. Yeah. केको का विंगमैन वाइपर मोनी से भी नहीं मरता. क्या बात कर रहा है? नो जो Caron has इसमें ult again for forever. And he could have like counter pitted around the corner or something there, and at least caused a little bit more confusion. I mean, that's what's actually giving me a little bit of pause. As good as Caron is with his guns, टेक्सचर बाइक किल हो गया. खत्म. गेको मर गया, प्लांट ही नहीं होगा. गेको मर गया, प्लांट ही नहीं होगा. खत्म. All the way up here to safety, but now the lockdown going to be coming through. He's और किल ले लो. ले लो बस होल्ड करके रखो. I thought maybe he was actually going to agree to try to get the shot across, but instead he's just going to have to try to make it out, get around to safety. कोई सी नहीं, प्लांट ही नहीं होगा. He was going to be detained for sure, but now plant. कैसे हो रहा है प्लांट?
led forward. Chase coming in, and I believe the taint is there, and Texture Easy. Gen.G out. Gen.G wins. Easy. Khatam. Just find one, but there's so much more work to be done. Texture finds himself a third. Texture भाई थोड़ा आराम से. Saved for this moment, it would seem. Texture भाई आराम से थोड़ा. 33-16. What the fuck? Gen.G will get the defuse. Texture ने 33 kills ही है. Away from RRQ. Well, if you had any doubts about Texture as a duelist, you probably shouldn't. At least so far. Texture he just भाई. dropped a 33 bomb on that map. Game and तो again, है. it's because he's so well balanced. I mean, other than one or two moments that I thought were maybe अच्छा खेले बेजेंजी. अच्छा खेले. overextended a अच्छा little खेले. bit or overheated a little bit, he was just normal Texture. I mean, you and I have been watching this guy for years and years, since day one. Oh my god, I just looked at his ACS. Yeah. Well. यार इसी स्टार्ट से जीती है Xbox पे. हाँ क्या? What I will say is he had 7 first bloods. Did a good job. The next highest was Karon on his team, who had 4, and then it was Meteor who had 3. It went well. And Jemkin who also had 3. He was nuts. Meteor भाई का aim तो है भाई. Good God. What can I say? I didn't expect a lot of what we just witnessed. Big Sock greater than Texture. इतना झूठ मत बोलो यार. इतना झूठ मत बोलो. I mean, damn near mirrored aside from that KO Sova being the only difference. But I wasn't sure if Gen.G was going to be at this point quite just yet. And I was also having a little bit of concerns about how Karon was going to adapt to a significantly bigger stage. Because yes, we did get to see him in the offseason. He played over at Convergence. It was a LAN. There was a crowd. But damn, he looked right at home here. Texture कितना goated है, हाँ ना? Alongside Gen.G in this debut series. Just use your pit, brother. Just use your pit. Just use the pit, indeed. We'll take a look here. Well, map 1 15 first kills. What the is fuck? in the bag for Gen.G, and you know what? That wasn't very obvious going through every single round back and forth between Gen.G and RRQ. Jemkin ने proper throw किया. Both sides had amazing plays. Throw तो नहीं किया, but nice try RRQ, nice try. Close enough. It just didn't feel like he could create enough space. You know, a lot of times RRQ were trying to formulate their plans around. Next map कौन सा guys? Icebox split. It's just so much more difficult. I think split में Gen.G takes it easy. Gen.G's game plan centered around making sure that Jemkin would not be able to get kills. Yeah, and that's a Gen.G ले लेगी easily. Gen.G proved that all 5 of them can take the duel against Jemkin. Meanwhile, on the RRQ side, not all 5 of them could take the duel against Texture. वैसे तुमने देखा पर Texture on the duelist और Meteor duelist ना duelist रेके भी duelist ना खेल के भी कितना impact दे रहा है टीम को. इसीलिए कोई अच्छा duelist अगर सपोर्ट खेलता है तो कितना बड़ा इम्पैक्ट आता है टीम में. 33 kills. What the fuck? 33 kills. He has a 2.0 KD. भाई Meteor का impact frags तो है भाई पर Meteor बहुत अच्छा खेला. Following Korean Valorant for a while to see Texture and Meteor put up these numbers together, like this is what the Gen.G roster was meant to produce. Yeah, and so many of those first kills or even kills alone came from op kills and also just support from Munchkin. There were several god flashes, especially around B site that Strixx तो पुणे रहता है नासिक मैं पुणे में रहता हूँ. RRQ didn't really know how to react to it. I mean, Gen.G in this form just really looks incredible. At the same time, the Gecko coming in was also another thing that was really useful. Yeah, the double Gecko. Yeah, well, the Gecko. I remember you, bro. I remember you. Tying in with the KO. Clearly, they have practiced this. How are you, bro? Long time no see. The Dizzies alongside the flash drives, just timing their utility. In fact, while this was RRQ's pick, I would say in terms of chaining utility, Gen.G looked better prepared. Also, they worked. Short था बे वाला short था. They knew how to strike onto the site with it, and then they didn't feel the need to push out once they were on the defensive side because their retakes were. इनमें लाकिया आज दिन नहीं है. लाकिया मारेगा भाई. Next map मारेगा लाकिया. Feeling तो है भाई. They definitely had some questionable push-outs on the defensive side as well, just trying to go for these contact plays when you have a lot more info gathering abilities. And then again, I mean, when Texture's hitting shots like this, what do you do? Now, one thing that was really surprising was not 1, not 2, but 3 thrifty rounds. इस बार फिर हो जाए पुणे मीटअप. पुणे मीटअप. भाई कोई नहीं आएगा भाई. 2-3 लोग आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा. कोई कौन आएगा भाई?
what happened? How did they kind of lose that? It's just something that you really want to think about because G का मैच कल होगा कल 11:30 Gen.G really knows how to pick them apart and RRQ doesn't expect it. Rombai कैसे Rombai? What's up? RRQ was kind of playing. They were expecting to play the Gen.G that I mentioned I was afraid of seeing, the slow Gen.G, the one who's always going to wait for fights. So then they just said, well, we can always push through and get contact first on these eco rounds, or anti-eco rounds rather. And then they forgot that these are just some god aimers here in Korea on the squad of Gen.G. They start to lose out on that. So I think that was was a healthy mix of RRQ maybe greeting a little bit, not being patient enough, but then also Gen.G just saying, listen. CS उसी कॉलेज से कर रहा MITW. Right, there are several rounds. Texture really went for that Blade Storm or the Sheriff, and then hit up around a nest, and really expected for RRQ to show up, and then pick them off that way. And that's why RRQ really struggled. I will say though, RRQ had some little moments of greatness. I really like, you know, those rounds where flips, for example, will. खाना खा लिया तूने? नहीं, मेरे को खाना मंगाना पड़ेगा. देख तो अगर ये मैच जल्दी खत्म हो तो फिर मैं ऑफ स्ट्रीम खाऊंगा. अगर थर्ड मैप गया तो फिर मैं मंगा दूंगा फिर. मोस्ट ऑफ द सेकंड मैप में खत्म होगा. Now, what do we need more of from Gen.G? Lag मामा थोड़ा तमीज से ठीक है. Firepower was brilliant, but you know, Rahul bhai कैसे Rahul bhai? What's Karan? There was MIT का वीडियो देखने यार. great firepower. There was something really critical MIT वीडियो पे डालती है. the end of the match where he didn't end up using his Viper utility. Yeah, and we see this a lot with a lot of new recruits that are picked up for their mechanical skill. They kind of forget that I could make this even easier for myself, or they're like, well, I would rather just like take the aim duel because if I go into the pit, then like I don't have as much vision. And obviously they won, so it's like sure it worked out, but yeah, there are some questions to be had there. However, I would say, I mean, maybe the other veterans can help him out with that a little bit more. And I think they're also just trusting in him a little bit, right? Just not calling for that before the round, because they could always just like put up the pit right away, right? On any round, like the IG. Thanks यार, Bings रात को 3:30 बजे वो करेगा अमेरिका वाली वॉच पार्टी. मे भी कर सकता हूँ अमेरिका वाली वॉच पार्टी, बट फिर मेरे को राइट्स का पूछना पड़ेगा. Not necessarily just mid-rounding, but taking previous round Right, and इसका पूछना पड़ेगा भाई. this is what RRQ's default is. This is how they want to play their comp. These are the weaknesses. And then correctly applying that. Starting to put Meteor on these aggressive lurks, taking those aim duels because Meteor is strong enough to do that. That really started to shake RRQ up. Oh yeah, that one round where Meteor was watching the window up around mid, that was amazing. And it's something that, you know, Gen.G can really make use of. Now, I mean, this was just Icebox. They were really good at that. But then moving forward, I think they picked Split for a reason, right? I mean, you have to think about this entire roster and of course texture on the Jet. Split is a map that, like you mentioned, will really contact heavy. Once you go in, you're already in the site. So how can they really Fatima जी को पूछ लो, को मेल डालना पड़ेगा. I haven't really seen much from both sides now. Yeah, फिर देखता हूँ मैं, पूछता हूँ. What they showed on Icebox was a composition that was meant to set up Gen.G, right? And once other people started taking content and losing duels, or Gen.G just not giving them the space to do the full setup, they couldn't break in. If you have a single duelist setup where you're waiting for the beautiful set plays to come out on Split, it's not going to work out. And it Astra is Viper. duelist, but look at the side of दोनों में Gen.G. Astra Viper है. Double duelist with Jet and of course Raze. It's going to be Texture and Meteor. I mean, that's why you have players like that. Yeah, we're going with a Sentinel free play from the side of I think Gen.G ले लेगी map. RRQ though, you know, Raze and Jet not bad. the first map, but it was a Gen.G ले लेगी शायद. Meteor on Jet ले लेगी शायद Gen.G. This is going to play out, Quack. I mean, I feel like I'm just getting excited because Meteor is back on that Jet. That was something that I really liked watching him last year. I was a little bit sad thinking he's going to be on that Sentinel, but now he's showing up again. It's more for RRQ that they have to catch up against Gen.G in this map. All right, well now we're going to find out if this stops here or we're going to continue on to the third map. We're going to go up to our casters, Achilleos and Paper Thin. Thank you guys very much. Yes, here we go. Let's jump into map number 2, see whether or not Gen.G are going to get the clean closeout. Like मैंने पूछा हाँ पूछता मैं भी. will be able to fight back and take this all the way into that third and final map of Sunset, which the sun has long since set. As we now crest past midnight here in South Korea. Players on stage being real troopers here. Move forward, Texture blast packing himself up over the top. Takes a bit of damage there. And this is what
I was kind of curious about coming into split if we were going to see the double duos from Gen.G. Both Texture and Meteor can swap between Jet and Raze efficiently, and it's going to actually be Texture on the Raze, giving Meteor an opportunity to once again shine on the Jet. See how this is going to work. Cypher, though, could be tricky to deal with eventually, but he's over on the other side of the map. Yeah, considering he's pushing that wall right there. Oh, almost gets caught with util in hand, spotting another one there. Munchkin making his way forward, up through the cloud. Let's get taken down. Xparrow trying to anchor the site. Finds one. One enemy. Good fire there from Flipshider in from behind, comes up with a decent little bit of damage. Just find the kill. Now Meteor, last man standing, 10 HP with a frenzy in hand. Almost dashes out into the open. It's there double facing him, and he will get taken down. RRQ will find themselves a second pistol round win here in the series once more. Yeah, that's a big win for RRQ. The more you can shut down Where is he? He lost today. of Gen.G. He lost his game. Really, really fast fence control there from the side of Gen.G, but yeah, not quite ready for all the wraparounds that come from past them. Yeah, and it was really good bailout play from Estrella. Even though he gets stuck in kind of a bad spot, he's got great cover from क्या लगता है like guys? you said. Great reaction from RRQ. क्या लगता है guys? Gen.G जीतेगी RRQ? मेरे को तो लगता है Gen.G जीतेगी वापस क्योंकि Meteor on Jet plus Texture on Raze strong composition है भाई. Nice double peek. Try to put him low. The spray comes through. Damn, थोड़ा ऊपर कर लो क्यों? Does get taken, I believe. Yeah. Meteor just gonna go creeping forward. Dash is gonna expire, so now just has to stay. RRQ? He's got that sheriff again. He does. पता नहीं यार RRQ का भी अच्छा लग रहा है ये वाला composition. Defense sided लग रहा है पूरा. इसलिए अच्छा है. Johnny on the spot when it comes down to these shots, but Xparrow will be able to get the double headshot to finish him off. Flash sent through, spray continuing. भाई दोनों लो. So much damage across. Texture down to 3, Locky at 42. तो भी जीत जाए जल्दी खत्म करो. Absolutely wrecked here on the side of Gen.G. अगर जल्दी खत्म करना है तो फिर Gen.G को जीतना पड़ेगा. Very easy collections here on the kills for Gen.G. अभी कौन सा आई है मुंड्रा पारिया. And they're just trying to creep their way 30 up. seconds left. And they're going right into his open arms, turns away for a moment. And yeah, they just slow creep up. Great read. बेचारा. Expecting the flash. टाइमिंग हो गया बेचारे के साथ. Ends up getting caught off guard, and that is a weapon recovered in the hands of Munchkin now. Only more, however, waiting inside the nebula. Goes for the spray. Flipshider able to find one. Taking out Texture, but Plant can come in. It's an opportunity here. ये राउंड अगर Gen.G जीती तो ये गेम पूरा Gen.G जीतेगी पूरा. ये राउंड जीतना बस Gen.G को. Does manage to find the kill. It's a hell of a lot of damage, down to 1 HP. Rocky just juggling that weapon back, hoping that Karon's going to be able to put it to good use. Finds one, can't get the second fadeaway headshot from Estrella. Will spare them here. 2 losses in the round, but RRQ Why do controller? quite nicely, much like they did on Icebox. Yeah, and just a really pivotal point in this round is Elmimore. Why do controller? Because being thrown out, knowing that he is just two controller से बहुत सारे मैप का ये मिलता है, कंट्रोल मिलता है भाई. अटैक में, डिफेंड में भी मिलता है. डिफेंड में रिटेक्स के लिए बहुत यूजफुल है भाई दो कंट्रोलर. भाई क्या शॉट मारा? Pretty sick there, Australia. That was pretty clean. The ghost, but okay. So you did what you got to do. A little bit of damage done by Gen.G, but still the judge to be considered. Guardian as well for Estrella. A couple Bulldogs. Still a ghost floating around in the mix for RRQ. And crucial round है Gen.G का. Be taking their time exploring garage. Cam set up. ये राउंड Gen.G जीत भी जाएगा. उनके पास वैंडल है भी नहीं. It's the reveal. More now. Considering whether or not he wants to go for the ADS. There's the jiggle peek. There's the punish again. Cage triggered. Cage now pop. Swings out. It's just a second too late to potentially find the kill. Just forcing them back for now. Yeah, both teams reading each other well. Meteor making contact in mid with Estrella. Neither finding any damage. Estrella, ooh, close. The one shot there. Yeah. Look at the chase. Meteor rushing forward. Nice one. Just catching him before he can recover the weapon. Kill comes in. Elmimore now.
to be in a world of pain, but no, somehow that Trailblazer does not Nice. connect. What tracking? Does Nice, manage to nice, find nice. Texture, jumps down with Meteor quick on the reply. Shadow will intercept, takes out Karen, but Meteor Gen.G जीती है round. picking up a third, suddenly is in a potential position to find an ace. Munchkin का position बहुत अच्छा है. Lots of damage done already. Les Munchkin takes this one. Oh! Munchkin. Somehow coming away with that kill. Now Meteor, yeah, feeling it. Ace, ace, One more ace. to go. You can see the wraparound coming Ace. from Jemkin. Rotating around Come on, towards come on. Garage. Ace, ace. Time is dwindling. Meteor by ace, please. To try to work with. ये tournament का second ace रहेगा. Ace मार दे बस. Sussing out that it maybe is in Garage, but no! Turns away for a brief little moment. Ends up getting taken down. Ace denied and potentially. Time नहीं है, please. Time नहीं है. Please throw नहीं. Win this out, and he does! 3 kills for him in the round. As RRQ, again, just echoing their performance that we saw in Icebox. 3 rounds consecutively right off the bat. The question is, does Gen.G get another thrifty going into round 4? Yeah, I mean, this one, just a bit off there is Munchkin. A little bit ये wider than round he crucial expected. था. ये round नहीं हारना था. It was a ला swing किया there. भाई, मत करो यार ऐसा. Jemkin Please ला किया got भाई. that first kill. Started opening up ला things किया भाई, ऐसा मत for करो RRQ यार. himself. Meteor does have a blade storm. ला किया भाई. I think nervous हो रहे. Munchkin, couple stingers. Maybe some reassessment on the buy, but it seems like Judge is going to stick through. Get out of my way. And maybe just a very fast hit here onto the A site. Double push up ramp for a brief moment before they drift back down. Trailblazer sent out. Pain shells towards Oh! head in. Head spotted, but Elmi Moore catching Meteor just a little bit faster than he gets caught. Push up now into the cyber cage. Ring around the Rosie. Oh! Snappy from Elmi Moore finds भाई ये the मारता है headshot, भाई. sends out that Nero theft. इसका aim तो Down है. onto the rest of the players. The push up. Lakia dead. Abandoning the spike at the base of the ramp. What was the OT score in T1 and Bleed? 18-16. For a couple more kills. Try swinging out. The Judge is going to be put to use, but it's going to be the one kill found. It's, I mean, a triple face now at the top of the ramp. Karen able to find one, but won't get much more than that. Still closer than he might have considered, but this time RRQ भाई do वो stop round नहीं आना था. Gen.G from picking up the thrifty. Yeah, Elmi Moore is feeling it on this cypher. He's so quick to react with not just his utility, but his guns. Estrella as well, having some snappy shots. Just trying to push up this ramp and the crossfire, too much to deal with. Yeah, Karen able to find the wallbang with the Sheriff, but Gen.G flirting. First match again. This is the second match. Round to go. You do have Cosmic Divide for Karen. And my boy got a good ult. Let's use it. So they'll only 3 orbs collectively away from 3 ultimates are RRQ. Their own Cosmic Divide, Showstopper, as well as the Seekers. ये round जीतना पड़ेगा Gen.G को. नहीं तो वापस ही कोएगा. Into that Astra ult, the Seekers can certainly help spot out everybody as that guiding light from Estrella, noting some players here over at ramp. And look how quick they are to shift off that little bit of info. Gen.G hasn't been really keen to switch sides of the map. Shots exchanged between Texture and Estrella. Estrella getting the worst Close, of it. close. Down to 43. Headphones. Maybe a Mood little drop more आ रहा. than they expected here. A little bit more Exclamation contact earphones. than they'd like. You're going to leave Meteor, try to buy a little bit of time, try to show that you're still using Strixx, that is jet. it Over on the other side of the map. Me more or Leme more? I think Leme more. The wall comes back up, and that does allow for Meteor to drift his way back Leme to more the is lane and get out scot-free. Meanwhile, the rest of the team set up here. At B, pushing through Garage. Trailblazer will spot Xfero here at backside. Paint shell sent his way. Nice. Jump forward, but the grab well, setting up for the kill. Full flash is there. He pulls back away to safety, but can he find more value? Paint shell's By pushing him forward. crucial Xfero, frags. good for 3. Now is surrounded. He's got some rescue. Coming in though, is Meteor up over the top. ये क्या throw है Meteor भाई? पत्ता एक side पे, पत्ता है Meteor भाई. कैसे? RRQ continuing on their merry way. I mean, just so Nice well trap, nice handled trap. here by Xfero, all on his own, able to use Meteor his भाई को own पता था utility, एक his side own पे. फिर भी dash मारा. Gen.G, knowing that somebody's going to be coming at him, catches a perfect timing on that grab well to slow up Texture. Swings to the other side, finds a couple more. Just reading that so well. Yeah, you got to take a timeout now. This is going really sideways, really fast for Gen.G. This is their map pick. Expecting to maybe I guess feel it's comfortable and instead they're Love Me getting More.
shellacked. Maybe. Been a very dominant beginning here. RRQ seemingly having an incredibly strong read regarding how Gen.G is trying to pilot this defender or this attacker side. ओ भाई Gen.G का कोच full focus mode में क्या करना चाहिए The more well poised you are as you get ready to go onto it yourself. Pen flip And precisely. इसे करते हैं बे वो pen flip We're on split. तो है नहीं If you're going to lead into that, you're hoping to do a little bit more damage. And this time around, Gen.G, it just hasn't quite been there. Haven't really been able to get comfortable on any of their executes. You know, they try to push some space. They try to find an early pick, and rarely are they able to find it. With RRQ, they're reading their positions really well, and the snappy shooting is certainly helping. Some of those shots from Elmi Moore and Xfero have been, and Estrella as well, have been really on point. Watching this spot. And now you've got Easy है भाई to worry about. The Seekers you were talking about earlier. G का मैच कल होगा play their own cosmic divide. शायद से कल होगा क्योंकि रात को अभी सियोल में ऑलरेडी 12 बज गए होंगे. Few ults really close to being online for Gen.G. Yeah, which will time out well for them getting ready to go into the next buy round. Oh no. Meteor wanting to try to clear through. Spots one, goes for the spray. Full flash coming in, but up over the top, back down into the poison orb, and somehow. Nice one, Meteor. Nice one. Had that blast pack been a little bit closer, he might have just died. But Kara does it again. 2 quick kills. The sheriffs. Meteor का round है. Meteor का round है. Open. And Flipshatter not noting that Meteor was still hovering around there. Flip's now dropping down. On the push forward, Boombot getting the spot for a quick little second there. Swing out though. This time इसका aim तो है. A little bit faster with it, and that is going to send texture packing all the way back over towards that A site. But Meteor gets himself in Meteor position to find the flank. Should be able to snag up a gun along the way. Help me more. पोजीशन पहले ही अच्छा था बे. अभी उसने फिर पुश करके खराब हो गया. Maybe Meteor conscious about somebody coming in from behind, pushing down the stairs to try to go on this rotate, but now the cam's identified texture. He knows he's just got to go for the site. Is going to get caught by the trap wire, is going to get slowed up. Moves the dart. Plant would give him a showstopper. Can he use that to find 2 quick kills? They're closing in on him so fast, and I think he pulled it. I think I saw the animation. I could be wrong, but time will tell. I couldn't hear the audio cue, but if he lost it there, oh, Elmi Moore fired up. अल्टो नहीं मारी इतना पता है. अल्टो नहीं मारी है. It's just kind of overreading the map Is here. You know, Meteor 13-1700k 40-70 good enough for Valo? Yep, that is catastrophic. Extremely overkill for Valo. If I just clear this corner. Yep. Sam का lens link करो. खराब है. That's painful for Gen.G. खराब है. कि नहीं. That is a cherry on top. वो middle में reflection आ रहा है क्योंकि less piece of util to क्योंकि worry मेरा about. light की वजह से reflection आ रहा है. But so far, getting them into angle change करना पड़ेगा. To be able to actually utilize them has been difficult. Showstopper going out. Lockyer going to be taking a little bit of damage as Elmi Moore is able to find one. Straight up, pushing up, Lockyer taken out. Tradebacks come through, and Jemkin, I think, was trying to turn from the flash, ends up getting caught and eliminated. As this is just one of the wonkiest rounds we've seen so far. Seems like RRQ still in a strong position. Heron rotating out. Does have the spike in hand, but has to shoot. He used his ult. Jig is up. Ult मार दी. By unlucky texture. Getting caught by it. Sees flips, knows that he's dropped down. And Straya will just be able to hold a hard line. Gen.G. Eliminating him as RRQ continue just running away. 7-0 now. I mean, this crunch looked like Gen.G might have been able to bail Gen.G out कुछ कर ही नहीं पा रही बे. outside of B main, but in the lobby. भाई RRQ लेची डे मैप में कितना अच्छा है. किसका पिकता है ये? Just such a snappy team. These Phantoms working a treat. किसका पिकता है? For RRQ. And no answers to be found for Gen.G. They've tried fastest. They've tried to. Elmi Moore क्या मार रहा है बे. सच में उसका एम भाई क्रिस्प है भाई. क्रिस्प. एक्सर बेचारा 0 किल पे 7 राउंड लाके अभी. Underestimating the positioning of कमबैक हो सकता है. फिर भी हो सकता है कमबैक. They've got a pit. Give Flips the opportunity. Try to get in. Really keep them at bay, or potentially now going to be secured. Elmi Moore with another neural theft. Xfero still sitting on his wall.
Munchkin now with a pit. Lakia has the seekers. Let's see if they भाई ये can पोजीशन बहुत अच्छा है RRQ की. clear space. Double heaven, double ramps. The judge actually passes it over to Munchkin for the pit. Coming through and looks like fire will be met with fire. Seeker's going to be cleaned out, but Heron able to find two, but Estrella answering back. Tries to keep them in this one, but ultimately ये round throw नहीं. Gen.G ये round. ये एक round है. जहाँ से comeback होता है. That's the pit. Swiftly dealt with. The pit is going to be gone. But now Flipshider having to deal with Texture and Lakia. Sends out a shot. They know his position. They're playing a little bit more spread out there. Spike going to be sent down, trying to force him back, trying to stop him from wrapping around. Flips, you can tell he just has no idea where Texture's positioned. It's just back screen on the site, but he's just मुझे लगता है RRQ हार जाएगी round. statuesque. Sat in place, and as he tries to go for the drop down, the kill will be found. In round 8, Comeback Gen.G 7-5. will finally get themselves a win. 7-5. And it's still not easy. It's still tooth and nail just to get that one round. I mean, that Actually Gen.G के पास double duelist रखे भी right at the bottom of ramp here. rounds नहीं आ रहे. Great stuff from Karan, and then Estrella answered right back. I mean, Estrella is really in it on this map. 33 से 0. Quick RRQ here, just क्या पता कुछ तो गलत हो रहा है. nicely after that tough loss on Icebox. There's no chance to even try to celebrate off the back of that one. Stay focused up. I mean, Gen.G are in a potential spot where they could rescue this half. They can make it up to 5. Hell, even an 8 and 4. अबे इतना ऊपर अपड्रिफ्ट कैसे हो रहा है इसका? But as that trap wire gets the reveal, Lakia gets struck down. Only more quick to collect. Spike now going to be picked up. Jemkin stopping Media from pushing forward. अबे यार unlucky. Trigger gets the kill, and Jemkin will find himself a second as well. Girl step out. Karen surrounded. Taken down. In reply, RRQ, they find themselves with a flawless win to continue pushing forward. 8 rounds now for them. And this is just RRQ happy to give up a little bit of space, and Meteor just pushing too far on his own, not able to win these duels that they so desperately need. Jemkin just waiting with open arms a little bit. What a drag across. Yeah, that was not easy to recorrect that aim. Able to do so. But again, they dodge all the early utility. भाई just wait back लेमिमोर बहुत मार रहा है भाई सच में. One trapwire that isn't accounted for that catches थर्ड मैप जाएगा शायद in से. transition with Spike, and that's the round just शायद से thrown जाएगा. into disarray and falling apart for Gen.G. Big change up here from Xfaro. Hasn't taken this position yet. 9-3 है. 9-3 भी हार्ड लग रहा है भाई. मुझे लगता है 11-1 ही होगा. Whichever one decides to go first, do they go for the quick look left? Oh boy. Well, Sand Flash comes in, and yep, Texture. Oh, nice. To it. Comes up with the kill. Just back down. A little bit of damage, but nothing too concerning. Nice. Drop down from Flips. He ends up getting full flash, but Jemkin भाई क्या? Potential for an ace here. It's Karen so low, but Elmi Jemkin ने ये क्या मारा? Means that it's all on Munchkin, Sheriff in hand, rotating through the defender's spawn. One shot will finish मेरा हो off गया the भाई. raise, but मेरा हो गया. Elmi Moore, with as snappy as he's been, prove to be a much more resilient target. Are they going to be able to read this is the real question. For the time being, neither of them playing in towards his sight line, so Munchkin has to come well out into the site. They split apart, so... Does he pit first? बूस्ट किया पता नहीं. So risky. Guys बूस्ट करना अलाउड है कि नहीं? मैंने सुना अलाउड नहीं रहता. Munchkin is watching for it, has noted it. Doesn't get the shots in the manner that he was looking for, but... Oh! Okay, the readjustment comes in. Munchkin able to find the kill, and Elmi Moore not trying to rush it down. Now he's in with a shout, but can't Nice quite try, line nice up try, the nice try, head. nice try. Elmi Moore still standing, keeps them well in the lead. It's just so tough for Nice try. Gen.G. उसने almost whiff किया बे. whiff ही कर दिया उसने. So well off of each other here for RRQ. What in the world, Jemkin? Just Absolutely disgusting. Just ridiculous. Not allowed. And just it seems like at every Boosting actually allowed चाहिए but क्योंकि वो game के mechanics है. अगर वो allowed नहीं है Munchkin able to तो find फिर one, but game के mechanics fix करो. Yeah, I mean, ना कि boosting को ban करो. पता है मेरा opinion है. timeout has to be burned. अगर वो game के mechanics है तो फिर allowed चाहिए. Doing everything in the kitchen sink at this one here to see
If they can get something back, 9-3. I mean, that used to be the borderline, the absolute limits of feeling okay about old Split when it was so defender-sided. These days, when you're running a double duelist especially, not so much. Exactly, and I'm just really curious to see how Gen.G ने मारा तो है भाई is पर. going to adapt here. I mean, I think they just need to play for each other a little bit more. To keep it simple, if I'm a coach in this situation, I'm probably just saying just play off of each other, guys. It seems like a lot of times some of these fights get Gen.G isolated को or at least एक दो round निकालने very पड़ेंगे well भाई. with who's positioned where and who's covering what angles. It seems like every once in a while RRQ able to find some opportunities to get some freebies, and that's really सुबह तेरे editing by salute तेरे montages के पहले पता नहीं था इंडिया का है. हाँ क्या? Thank you bro, thank you. Another divide and pit. Oh, when Sen versus Loud? And divide on the other side for RRQ. So I think Sen ults available. One away from a showstopper is Texture. should be as Sen well. by. See if they can make a play for him to get potentially that showstopper available, but instead they're just going to try to push up mid, and Flip's reading it pretty well here to at least buy a little bit of time and then bail out as he doesn't have any real assistance available from the other side. Pulls back. Until they're still worried about that Viper wall, so concern with potential push up onto that A ramp. As Jemkin continues to hold forward. Looks like he's going to try to go to the back of this one. Nice Dash shot. away. Showstopper not going to be able to find much value. A little bit of damage. It was pushed out there, but the heal comes in, locking Nice shot, nice try. up to full HP. जिंदा तो at least. I just don't think he was quite ready for how many people he saw outside of the garage. A little bit of a panic ult. Gives his regards to Rosa, as now Lakia going on a hunt, but won't come up with anything. And it's all 5 of Gen.G here, so RRQ has to turn their attention Loud back जीतेगा. towards Male because no one's watching it. They have to be aware of it. पता नहीं भाई, Loud की टीम तो अच्छी है. But भाई मेरे को बताओ सेन कब से little bit of a flank angle potentially. Let's see if कब से सेन जीती नहीं है भाई. बहुत टाइम हो गया. I mean, the covering fire from Jemkin and Xfero. Too damn good. Straying out as well. Finding his legs. कुछ तो करेगी इस बार सेन की जीतेगी भाई वो. That should just about do it. कुछ तो करेगी भाई. Win that one to give Munchkin any hope in hell. He falls down and RRQ, I mean the pain. They are pushing out onto Gen.G right now. It just absolutely continues. it is just tremendous what they're doing. Pen versus Loud का रात को It's देखेंगे so अपन. impossible right now for Gen.G to accomplish anything that they want to do. Trying different looks. And every twist and turn, you know, RRQ so well dialed in. The communication so good. Hey, we don't have anybody watching. B Heaven. We just got a bunch of contact. Look for the lurker. Look for the flanker. See if they were trying to set up a crunch. Okay, it's not there. Let's get right back into position and set up for this B hit. And they just waiting with open arms. Shot goes wide from Flip. Showstopper on the chase, and Texture finds Flipshider, taking him down, but Xfero peeking out of that nebula, able to find one. Gets caught by that full flash. Goes out once more, but Kara, nice shot from him. Shuts him down. And keeps Gen.G with the man advantage. Hit available, the Seekers let loose. The final round of the halves, of course. Yes, Everything. Elmore able to find one before getting taken down, but Jemkin arrives, takes out Texture. Still 1v2 है, alive, still 1v2 in this है. fight. Gen.G नहीं हार सकती है. Keeps him in with the advantage. Stray up the latest player, the one who needs to try to get it done, can't make it happen. He ends up falling. And that is going to be a 10-2 half as Gen.G hope and pray that they can replicate DRX's success versus Billy. Sorry Strixx भाई, ये YouTube का कुछ glitch था, इसलिए मेरे को notification नहीं आ रहे थे. इसलिए मैंने बहुत सारे streams miss कर दिया. Really sorry, अब regular streams miss नहीं करूँगा. आशीष भाई, no problem आशीष भाई, आपके लिए कोई problem नहीं. इतने सारे मैं इतने सालों से stream कर रहा हूँ, आप आए नहीं तब. कोई सीन नहीं ब्रो, कोई सीन नहीं, माफ कर दे. प्लीज मेरा माउस का बैटरी गया. But I'm not so sure right now. I think RRQ is a very different beast, a very different animal on this map, and Solo, not sure what he can do to rally the team as they were beat at almost every twist and turn, and even in that final round when they got the win, it was still scrappy, and Ewok's having a chuckle. I mean, those RRQ guys, they're a funny bunch. Somebody was doing the Olay chant. Ah, were they? That's it. Yeah. Flips.
I would bet money. Demon 1 कौन से टीम में से है? Demon 1 NRG से है. Well, I mean, every reason right now to be in high spirits on the side of RRQ. भाई Demon 1 का team actually NM one of the best team है भाई. A hell of a way to fire back. On paper भाई बहुत अच्छा team है उनका. Properly here in VCT Pacific. And Sunset was the map that Gen.G was banning during Convergence, so kind of curious to see what they've been cooking. They didn't want to show it there. Cloud का duelist कौन होगा? आसपास तो हाँ लेवी गया हाँ. Cloud का duelist पता नहीं देखना पड़ेगा. याद नहीं मेरे को. The numbers that we saw from Texture in the last map? No. Is it still impressive? There just aren't enough rounds available to get to those numbers. I know, exactly. This has been so one-sided. Come on Gen.G, come back time. Getting aces in every single round. Yeah. Well, they try to go for the push, slowed up momentarily by the wall. 10 Zeta Rane, 10's Omen. Entry. Manages to stick it, plant his feet, finds Texture, looks for a little bit more. Nice, nice. Looks for the fourth, can't make it happen. But he's done so much work here for the team. Straying out. Easy win. Last one standing, almost takes out Lockheed, puts him down to 5 HP. Meteor watches for the ramps approach and nice one. Come back here. 10-3, 10-4. Eco जीतेंगे लोग. 10-4 के बाद 10-5 वाला जीता बस. Simple. Come back. Easy come back here. So at least spirits remain high for Gen.G. You know, sometimes you have a bad half. If you can just shake it off, things can quickly turn your way. Karon, oh my, lined up nicely there for you. Everybody just pushing through that wall. Shut down one after the other. First map कौन जीता? First map Gen.G जीती. Gen.G. Chip damage there, helping out a bit as well. Meteor with the Marshall. वैसे गलत क्यों दिखा रहा है? We're back to 2023 VCT Pacific. Okay, well, Huh? that forward push coming in. That's a हटा lot दिया. Flip's not going to be catching any of that one, but Meteor back in mid will be able to find Elwin more. The jump shots coming through. Look at the try to pressure him out, but Munchkin from above up on the Raptors able to find the kill. Shot from Jemkin will get Meteor taken down, which gives him a Marshall. It feels like a bit of an overheat there from Meteor. Get that first kill and kind of. I mean, look, who dive knows? deep. I mean, look, it is Who Meteor. knows when he's going to be able to play Jet again? That's true. You know, if people start banning Split, actually, I don't think after unless they run this back, I don't know if anyone's going to be banning Split against them. But that's true. And इतना ऑर्डर कर दे. that ace he had with the करता हूँ. ये मैच मत करता हूँ. He just pushed and just kept killing. So you know what? If anybody in the world is allowed to do it, it's him. And Aspas. And well, okay, yeah. And there's many, yes. There's many who it's allowed. Buzz. Yeah, Buzz isn't really that kind of player usually. Nah, not really. Not with a Marshall. Well, Texture now looking to put an end to this round. Swing out. He is going to get clipped by that Marshall. 30 seconds left. Nice. Joining in. Jemkin going to get finished off as he just tries to grab that orb. Nice. And just the spray through. He'll be rewarded with the kill. Straight up, once again, last man standing. See if he can find anything to top up that round. He cannot. Crucial round है big. Crucial round. ये round जीतो पूरा game जीतोगे. Going the way of Gen.G here. Crucial round. Well, we saw, you know, that bonus get picked up from RRQ back over. अभी तक कर रहा है. Gen.G replicate the beginning of this map now. Can they stop it? Can they get the Hey, conversion? stream में professional streamer हो भाई. Monstrous streak to come back. Yeah, and if they can, it starts to creep in the back of your head as RRQ that, oh boy, maybe neither team just really has an attacker Last side भाई set up मारोगे for please each थोड़ा other. सा. Texture. He's very animated today. He is very animated. This is, Texture is usually a little bit on the quieter side, but today, man, ये क्या अच्छा है. he wants this bad. And I think that might be a testament to kind of the things that Gen.G has been talking about in regards to just the team setup this season. You know, the players were very openly admitting, like, last year, like, we weren't really getting along super well. And it seems like right now everybody's getting along. Because even with this 6-round deficit they find themselves in, they're still high-spirited and animated. Guys, 2000 likes के बहुत close है. 2000 likes हो सकता है. हो सकता है. As well. These are gamers. That's true. None of these players are going to bed until like 3 or 4 hours from now. Anyway. They're probably still going to go home and play solo queue after this. 100%. Meteor does go for timing. Oh! Lakia does. Lakia को बोला मैंने मारा उसने. Well, you won't, I will. Finds the kill. Nice shot. He got a hit. Yeah. Jemkin clipped by that one down to 15. Heals will come out.
It's just going to be the dry peaks coming Nice shot. this time. No. He'll get finished off. Meteor good for the shot. Pop flash up over the top of the screen. Sparrow on the side. The spray through. Both of them so very low. Meteor Nice shot. goes for the hip fire. Finds one. Once again, it's all Crucial round, the crucial round. Come back here. Gen.G come back here. Crucial round tha. Gen.G do in fact convert the bonus. I mean, it's just Crucial round tha. madness. Neither team seems to really be able to break the other's defenses. I mean, this is so well read here. घर पे रहता है फिर रूम में मैं रहता हूँ मेरे विला पे. Behind the pillar to kind of set up this double angle with Meteor, and both of them playing it so well. I get it now. It's because Lockett, he jumped down and did the spray. So as long as he jumps off a surface before spraying, that's his superpower. Lockett will get a kill. He is one of the worst. Come back here, Gen.G. Come back here. डरो मत. मैं हूँ तुम्हारे लिए. मैं supporter हूँ. That is going to force the first timeout here from RRQ in this map. Still a very comfortable lead, but as we get ready to go into, what should be a fairly low buy from them, they run the risk of allowing for Gen.G to get back within touching distance. Initially, I was thinking maybe they were actually going to tie their most dominant map score versus Gen.G. We saw them, 10-2 on Lotus before, or 13-2. You have been streaming from last 9 hours. Salute, man. भाई 9.5 घंटे हो गए. What the fuck? Now it's starting to get away from them. अबे ये क्या है? And that map was the only one that they were able to take away from Gen.G last season. ये क्या है? For sure. But now, well, from Marshall to Guys, what the fuck? वो क्या था? Playbook? Pain could very well continue here. This time being dished up by Gen.G. And now it's going to be RRQ who's going to be sitting on that back foot economically. They're forcing up. Yeah, they are. Flip's just walking his way forward. Guiding light. A nice little micro adjustment here from Meteor off that light contact, knowing that somebody could be close. It's going to be. ये लोग कितना कॉफी पीते हैं पता नहीं भाई. हर एक के टेबल पे 3 ग्लास at least. What are these reads? Come on, man. Nice one, Munchin. Nice one. All your entry power taken away. Now more pressure on the rest of the team. Meteor up the dash. One's over to the left. And in the meantime, Texture catching Elmore on the lurk. The push. Nice. Munchkin claims the second one, just holding down mid. Now stranding the spike. Nice. As well. Yeah. 3 kills, and suddenly it's just Flipshider. This force up. Nice one. Get them much of anything. They'll avoid the flawless with that final kill coming across, but Gen.G now 5 consecutive rounds across the halves. Yeah, Lakia headbutted a bullet there for Meteor. I'll take one for the team here, bro. Make sure we get this. मेरे को समझा नहीं ये वेंट्स में बैठा है फिर भी वो ओपन में क्यों वॉक कर रहा है? In all the same ways that RRQ was, just picking them apart at every point of contact. Not really allowing any utility to affect them, and in some cases just, like you were saying, out-reading their opponents. I mean, how many kills have we seen through smokes that didn't really have a lot of information? Short. Going to be taken down. Had the showstopper available. One of those big entry tools. Short. Gone. Meteor again avoids the flash. Flipshider able to find the kill. He's looking for the flick there. Flipshider will get getting taken out by the bite. Come back here. मैंने बोला था come back here. Come back here. As Gen.G just plowing on. Today's an interesting day. It really is. Interesting day to I'm so glad you're here to enjoy this with me. I think that this has just fully confirmed, though. Do I want to say this? Screw it. I accept the consequences. Everything has been going smoothly. Yeah. Oh no. Since T1 got off stage. That's where you're going with that. So I think it really is just them cursed on opening matches. I mean, it could we need be. to stop putting them at the top of the schedule. I kind of am starting to feel that way now too. I mean, this has been a lot of good gameplay, a lot of enjoyable Valorant that we've been seeing. Yes. And I am a Valorant enjoyer, so this is going great. तो बता उसके ऑफिंग में तो अपने को इमेजिंग कर रहा था ना तुम्हें कैसे पता बे तुम्हें कैसे पता मैं क्या सोच रहा हूँ tries to pull the showstopper and Karen just shuts it down instantly. Ooh. Able to find one though, trading out for the enemy raise.
It's Texture with the pocket, finding one. Oh, Oh, nice, nice. snappy for the first. Couldn't quite adjust that vertical adjustment. Always so difficult as Lakia trying to send the pop flash. Nice. He does. Lakia bhai, come on, Lakia bhai, come on, come on. Time to shine, Lakia. It's the tag out, but Lakia stands his ground. Gets himself a 4K. Lakia bhai, time to shine. Gen.G rallying back. Come back here, come back here, come back here. Lakia stood up and gave him a little something, and it's a drop down. He came down. It's been a while since we've seen it, but we know that Lakia's got the showmanship in him. It was him and Suggest cutting the ears off of Vanity at the end back in Reykjavik. Oh my god, I had forgotten about that. Oh, ये क्या game है? अच्छा game है. And he dropped down off a ledge that round. Just saying. It's the superpower. Yeah, I mean, hey, if it works. Well, right now he's not playing around too many ledges. See, goes rushing forward into mid. Take a bit. Lakia bhai, बस मस्ती नहीं. बस. Overzealous. We'll just go ahead and pull back here. Working towards heaven alongside Texture. This round feels like it is a must-win for RRQ with so many of these ults in their hand. Oh yeah, I mean, if they don't, they either have to Thrifty or it's going to be tied up. Ooh, उसका dog टूट गया. On that Trailblazer as the Strand starts getting spammed through the box. Jemkin trying to hold that angle, maybe catch Munchkin swinging out. Just managed to back away. I was kind of hoping Munchkin might pit there in mid to slow this up. Nice. These lurks, these reads here from Karen. Munchin round है, Munchin round है. Now Munchkin dropping the pit over here on the A side. He wants to flush up Nice. right over into this thing. He puts down so much Nice. damage. Jemkin on 1 HP, but Exparrow there with the rescue. Takes Nice. the Meteor. 2 quick pumps with the judge. Oh. Can't make it happen, but Texture will clean up the last 2 kills. Gen.G बोलते हैं. Gen.G come back. They cannot be stopped. Gen.G का come back. What phenomenal movement there from Munchkin. What तेरे बोलती है मारने लगे लाकिया हाँ ना. लाकिया को बोला मैंने. He just holds down the trigger and says, if you guys push this angle, I'm going to at least do damage. लाकिया को पता है वहाँ तक बात पहुँची. Strixx भाई बोल रहे मारने. अभी मारना तो पड़ेगा. Soften them up for Meteor, and that gives Meteor खेलता था पर. You know, easy kills, they're easy because they're already so weak. Even at that range with the judge. Come on, come on, come on. No problem. Meteor almost finds the third. Just fantastic individual. Come on, crucial round, crucial round. Eco उनका ये round जीता है बस. And look at this, the outlaw, because they know that it has to be half armors or just, you know, no armor because of the economy. नहीं बस अबे. He finds the perfect timing. Now Showstopper is going to come through. Texture jumping forward, looking for him. That's just going to be Jemkin dead to rights. I know exactly. Now Neural Depth can be invested. अबे यार. Can't quite make it happen. Flipshider going to find himself a third. As well ये as crucial round था. advantage here for the side of RRQ. The flank around from Estrella completely unread. Takes him down, and now it's all to play for here for Lakia. Everything to do to stop RRQ from getting up to 11. The win streak has been massive for Gen.G so far, but it could very well come to an end right here. Cash aplenty. Come on, Lakia. Time to shine. Time to shine. Far away from having those ults, but there you go. भाई उसने सीधा smoke through walk in किया बे. Shut down what was an 8-round win streak from Gen.G. Massive stuff here for RRQ. Back on track, and Flips gets it started. Able to find a couple big kills. Texture gets the showstopper, but Estrella there on the lurk. Flips ready and waiting. Taking Meteor down, so really nicely handled. A little bit of a pacier hit. Meteor back into that operator now. Karen has a Cosmic Divide once again. He's been phenomenal here on this defender side, just reading the movements and the timings. Okay, well. Cage sent. Heard the push up onto this one, so see only more drifting very far back. Trailblazer not spotting anything, which could lead them. Come on. And there's the peek out. There's the shutdown. Meteor planning another first. Easy win. Easy win. There. But you still have Flips lurking, so a couple extra layers here that Gen.G may have to consider. Lakia. Ooh, fake किया. Pressured. Jump fake किया उन्होंने. Rethinks this hit. Karan going to set up. Ready for this. Good communication now for Gen.G. Push up. Not sure if they saw the gun barrel. Astra की position पता है.
Maybe it backed away in time to avoid being spotted, but Gen.G sending that boom bot over towards stairs. Karan now going to be noted, but Texture pushing forward. Managed Nice. to find one. That blast pack offsetting Xferal allows him to get the kill. Nice. Spongekin quickly shutting down the push. 1 HP, 1 HP, 1 HP. No HP to work with. Estrella will be the Nice one, nice one, nice one. Gen.G continue to keep क्या बोला था guys? Comeback होगा. क्या बोला था? क्या बोला था मैं? Comeback होगा bro. बोला था. The opening pick, and when Lakia isn't getting pressured through ropes, then he's like, okay guys, there might be the opportunity that they're going to come through. Be ready. Karan right on spot with his star, right where it needs to be, and a good attempt. Gravity well. Prediction तो है भाई. Prediction तो है. Offsetting the aim brilliantly worked by Texture. मेहर भाई कैसे मेहर भाई? Long time no see यार. कैसे मेहर भाई? Started feeling it, couldn't quite find it. Eventually able to stabilize the aim. He even gives a little bit of a Come on Gen.G, come on Gen.G. ये मैप जीतना है. Come on. Felt like he should have gotten that a lot sooner. RRQ, it's time out. Woo. Well, we're back to banger territory. It would seem that way. ये क्या म्यूजिक चल रहा है? कहाँ पे? First half. कहाँ पे चल रहा है? To get themselves at least up to that map point where that potential overtime could come into play. Eluded us in the first map. And that's what this timeout is. If they're not able to find the round win, could very well be the series just falling out from beneath them. No doubt. सब ठीक तुम सुनाओ. मैं भी ठीक. बार-बार माउस मत हिलाओ. माफ करो. Getting involved. And shout outs to all of them for sticking around as late and as long as it has been, as well as all of you who've been tuned in since the very beginning of the day. And all the co-streamers who had to find ways to entertain their fans. Well done. Tip of the cap. All right, well, Meteor. I mean, there is very little. Come on. Meteor by. Round it. Nate as well. Emmy Moore going to be able to find one, but Texture takes him down the swing around. Come on, Meteor. Shot. Finds it. Gen.G taken down. Shot. Back in somehow. Estrella not able to find the punish, not able to find the kill. Meteor catching. Shot. Gets the third shot. And Munchkin arrives to get. क्या बोला था? Meteor on Jet. And Texture on Grace. बहुत अच्छा composition है. Meteor by थोड़ा सा आराम से. Just the brilliance. That's all that is. Just भाई क्या sexy मारा Meteor ने अभी. Expecting the swing Sexy मारा बे. After this first shot, he might even caught a glimpse of a pixel there from Estrella and just is ready for it. भाई ये वाला बहुत अच्छा फ्रैग था. अच्छा पे. Screens above the snake bite. Just nuts. Absolutely nuts. And now he's going to the judge with a blade storm. I mean, that's the critical round right there. भाई crucial round. Crucial, very crucial round. The push out from Texture over at Garage manages to find the kill. Cam set up as well. Emmy Moore trying to dissuade. कोई सीन ने Texture मारा तो भी जीत सकता अभी भी. Very early Cosmic Divide. Push up Gen.G. Quick to respond, quick to readjust, finds Meteor, keeps RRQ with an advantage. Come on, Gen.G. All that contact on the other side of the map, I think, gave Meteor a little bit of false confidence that he could push. And he paid the price. Gen.G had snuck up there underneath his nose. Everything slowing down. RRQ. Get your squats in. Not looking to overextend, not looking to become overzealous here. Push on the corner. Not getting caught. Manages to stay safe, stay alive, stay healthy. ठीक है 3v4 हो सकता है. आराम से हो सकता है. यूटिल है. नहीं है यूटिल, एक्चुअली नहीं है. Invested to try to go for the retake. Nice. It's going to be a solid start. Lock-in pushing forward. Find Gen.G. Munchkin going to take it down at the same time. Nice. Tries to hold it. It's taken low. Come on. And down. As it's now all on Karan. Doesn't read it though. Nice try, nice try. And now RRQ have map point in their hands. I think RRQ can they close it out? जीतेगी ये round भी. Give us a second overtime here today. I think RRQ जीतेगी. That Cosmic Divide, not very deep. Gen.G's still able to get a few kills.
giving themselves an opportunity, but सुमीर भाई कैसे हो मेरे भाई? हाय बैट बी कैसे हो? I think RRQ it is. RRQ it is. Gen.G ने अच्छा कमबैक किया बट उनको अर्ली पिक्स नहीं देने चाहिए थे राउंड. let's see now. Nice try, nice try. Marshall tried something a little bit different. Showstopper for Jemkin. He's gotten up and towards A heaven, but Meteor's waiting here. Boombot. Just waiting out the Trailblazer there. वो और एक पिक करेगा. That was a pretty shallow. करेगा और एक करेगा. To actually spot this. White will actually force them back. Showstopper Nice. over the top. Texture finds Jemkin Australia taken down by OT. Counterpart Sky eliminated there, and now it's a 3v5 to try to close this map out. Otherwise, Gen.G will be pushing us into overtime, elongating this series. Gen.G fully committed to that. जरा चेयर से उठो 9 घंटे बैठे हो भाई. उठता हूँ मैं बीच में. OT. Yep. We wait for the plant, and then we get ready to strike. Allow for the rest of the team to come back over, go for that full 5-pronged approach. It's a little bit dicey, especially for Lakia. He's gonna have to take his time coming through mid. They have no information in that part of the map, but pretty soon here. भाई लाकिया को मिड पे छोड़ दो बस. बाकी सब बराबर है. Sphero going to be the only one playing here within the site. Double snake bite, poison orb is set up. बस. There is no way Gen.G हार सकती है राउंड. No way. About around trying to get this flank through. Full flash coming across, and Sphero not going to be able to find anything. The first bite. पीछे देखो. I'm ticking away. They have to be able to get onto this one. Can't wall bang that one, but it doesn't matter. They'll be able to find the kill and abuse being held, but there it is. RRQ. Replicate the scoreline from map number 1, but this time they get the win. 13-11, ladies and gentlemen. This evening does not end here. RRQ continue to seek their revenge. I mean, that round looked like it should have Gen.G written all over it. It looked like it should have overtime written all over it. And 2 players left, and they shut it out. I am flabbergasted with RRQ, the way that they're able to maintain their composure after a rough first map, you know, coming up so close, and now here coming back. Yeah, well, we'll go ahead and throw down the analyst desk. 3v5 कैसे? वो भी सब बराबर था सब. बस एक बंदे को मिड देखना था. बस एक बंदे को मिड. But honestly, that was more like a pudding sort of wading through the mush, because it looked like they were just gonna clean sweep it, and then something happened. Gen.G showed up with their double duelist comp, which Nice we were होती also भाई. in doubt of. मेरे को बताओ कैसे 3v5? Took it back into their hands. I'm just so exhausted, and not because the night is. But nice comeback, Gen.G. Nice comeback. Nice comeback. Very nice comeback. I've always had hope that I think RRQ's direction is good and their philosophy is good. It's just that we saw once again some Nice of the comeback. weaknesses they had last year, which was they start to run out of steam, and once they run out of steam once, it's really hard for them to regroup. Now, obviously, result-wise, देखो क्या लगा जल्दी खत्म हो जाएगा तो सोने मिलेगा. like you said, it was अबे यार काला मंगाना पड़ेगा अभी. So many rounds, right? Especially on the second half, we were all saying these were rounds that they could have won. They should have won, but then somehow just not quite able to cross over that finish line. Meanwhile, Gen.G, I mean, the stats really show it. Texture was having a field day. Meteor was having a field day. They got a lot of first kills, and they managed to bring it really close. But towards the end, भाई 24 kills. Meteor ने मारा तो है भाई. Meteor बहुत अच्छा खेलता है भाई. MVP for sure on the Gen.G side. That was a little. 3 बजे आओगे आऊँगा भाई. मेरे को पहले एक्सेस मिल दो. एक्सेस मिले तो आऊँगा भाई. His hams. He went ham. Actually, that's what he did. मैं पूछा एक्सेस मिले. Let's see. With the operator in his hands. But here's the good news for Gen.G. Despite the loss on map 2, okay, Meteor, once again saying, I'm still good with the operator. I can still, you know, somewhat do my job on Jet. Now, I would question how their attack rounds went, right? Because you have double duelists. There's more ways you could have utilized that explosive power. However, on defense, they understood that RQ doesn't have स्ट्रीम देख रहे हो आपके घर में कोई नहीं है क्या? आप अकेले रहते हो? अकेला तो रहता हूँ मैं. Kind of push out on an offbeat that really caught RQ off guard. Once again, similar to Icebox, where RQ is like, well, Gen.G doesn't do that. These players don't ever play aggressive, and it's like, no, now we do, because we're all really strong aimers. So I would say overall, you know, I think Gen.G maybe had a better third map कौन सा है? specific opponent.
opponent. But RRQ, so they picked defense Icebox on split, and then they picked a composition that's very heavy on defense. So if they didn't have those Icebox 10 rounds, split. I think this would have been over a long time. That was one of the big things, at least for RRQ, because in the first half, you can really see they had that game plan. Not a lot of like individual crazy performances, not like what Meteor did, but as a team, they knew what Gen.G was about to do. If they got information about a site hit that was incoming, they would vacate the site and just allow for that take to come through, and then pin some maneuver. I think sunset. Gen.G tries to go in for that spike plant. भाई sunset में RRQ जीत सकती है, पता है? It was just the second. Sunset में RRQ अच्छी है. Oh, it's so painful. They finally, at the 11-11 round, they took it back and bringing us to the final map of tonight. कौन से कॉलेज से बीटेक कर रहे हो? MIT WPU. Again, we didn't see any of these maps yet. We didn't see. गाइस मैं वॉशरूम जाके आया, ठीक है? गाइस तुम भी जाके आओ. फटक से 5 मिनट में. 5 से नहीं, 1 मिनट में. 1. On both sides, especially on RRQ side in the second half. What are some things are we looking to see improved going into Sunset? Well, I think they started to work off of these assumptions, right? Like assuming, okay, Gen.G's gonna wait for a peak. They're just gonna hold the angle. And then they're getting spammed through the smokes. I would also say RRQ, I'm glad to see a team still gambling on the half armor economy to try to kind of build up for a longer run, but you're playing against a team with 2 guys who are known for their scopes play. They're picking up those outlaws again. I mean, I think these are risks that you have to kind of accommodate for your opponent. So I think after these 2 maps, recognizing, okay, this Gen.G is different. They are living up to the expectations that a lot of the fans had. How do we adjust that on map 3? It was in that VCT Pacific Outlaw video. Almimore is like, I'm not a fan of this half armor thing. And then the Outlaw really does come in texture and Meteor really showing us what they're capable of. But I mean, apart from all these little things, assumptions and whatnot, I do think, at the very least, both sides, they had several times individual players like Kara what's up? individually try to catch players off. It doesn't really work, especially when Gen.G is, performing at this level. So I would like to see tighter gameplay at the very least. I would also say it does seem like, again, the sky changes are impacting. वापस end करके पोल वापस से पोल डाल रहा हूँ. You can be much more active with. You used to be able to be much more active with the sky here on Split, and now if you don't have the double duels, once you use that like first guiding light or the first trailers, you're like, whoa, like maybe we don't want to take this space because if we use it now and like there's no opposition, then like how do we get into the site? So. There's some questions to be had about composition as well. I'm sure they'll review that. Bunks हो रहा है. I think we've seen revitalized, good aim as well, good operator. But my big question is, Cypher once again, an agent that we've seen time and time on Sunset throughout the off season. Clearly, Elmimore has always felt comfortable on the Cypher, but when it comes to Gen.G, is Meteor ready to play that? आज लगता है पूरे साल की स्ट्रीम एक दिन में हो जाएगा. अबे वैसे मैं कल भी करूँगा. मैं अभी जितना दिन होगा शायद से उतना दिन करूँगा क्योंकि देखते हैं. बस मंडे को मेरा प्रॉब्लम हो सकता है शायद क्योंकि मेरा मंडे को क्लास रहता है. Picking that up as well, but the chamber is definitely something that's on my mind right now. Meteor, we saw that op, it's gonna come back, or maybe on a killjoy in fact, and on a map like Sunset where there's just so many long angles, so much that you can block off. Either agent can be useful. Yes, and also I know some fans are looking at that scoreboard earlier of map 2 on splits, and even though RQ won, they're probably like, oh, well, after a great performance in Icebox, Jemkin went 15 and 22. He bottom fragged for the team. Let us just remind you, he's still top fragged after having 0 kills on a map at Ascension. Sure, they eventually lost the match, but like this guy does not let a performance like that get to him. क्या देख रहे हो फोन में? टाइम टेबल मंडे का. Prove that I'm in the game. I'm still focused. I'm in it for the long run. I was totally not going to bring up that game, but I guess well, everyone did. else is going to anyway, so we might as well. Yeah, we might as well just bite the bullet here on Des. One thing is for sure, we're seeing a brilliant gameplay. Jemkin, Meteor, Texture have been completely on fire. It's been so impressive, and I have to say. Monday holiday. Oh yeah. Monday to holiday. Korean and the English. Makes sense. Makes sense. Right now, we had the Korean casters come over, and they were saying the moment Texture has his Raze ult in hand, that's it. RRQ's done for in that round. I'm really wondering how things are going to be playing out going to Sunset. We have not seen it in Pacific yet, obviously, because it was only launched after Champions last year. But we saw a bit of off-season. But coming into this now, what's in store?
Yeah, and again, MIT वाले कब से क्लासेस करने लग गए भाई? करता हूँ मैं भाई, करता हूँ. मैं तो करता हूँ. Gen.G looking a little bit better for the haul here for map 3, just because I think even on split, they're the team that showed us that they understand how to adapt to how their opponents are playing today on that stage. Whereas RRQ, like their set plays are good, their prep is good, some of their theory is good. Obviously, they were firing on all cylinders at the beginning of split, but it felt much more like, hey, we gotta like get back to what we prepped, right? Rather than saying, hey, Gen.G is doing this today, so how do we adapt to that? How do we counter Winner order the list match. stage? Thank you, thank you, thank you, thank you. You know, maybe if Gen.G is able to do that again on Sunset, Swiggy. sure, but we all know momentum is a big thing. क्या कहो बताओ, जल्दी बताओ. Just clinched out that win. Ganesh Behel. This best of 3. It was Momos. dragged out by Gen.G. Sandwich. So I think momentum on either side. Although RRQ won the last few Subway. rounds on split, Gen.G might be feeling a little bit hot coming from that as well. So Look at this party pooper. यार सैंडविच खाओ यार आज. Calm down. Okay, I have to ask. सैंडविच और चीज केक क्या बोलते हो? Is going to be facing against our Pacific champions, PIIIIIIIIIINK, and that is no small ordeal. How do, that might be getting ahead of myself. How do you think that's going to play out? Gen.G or RRQ? Are they going to stand a strong chance to beat PIIIIIIIINK? And are they going to, who are we going to see, you know, in the lower bracket? Are these two teams going to face again, or is it going to be a PIIIIIIINK, Gen.G, PIIIIIIIINK, My RRQ predictions game? were that if RRQ wins, they are Healthy food खा ले. However, Food. you're gonna have to show Sunset. If you're showing Healthy this food full list of sandwich 3 तो healthy रहेगा the भाई. winner here, able to identify all that. And Gen.G, Meteor will be playing that Cypher, so it's back to the single duelist. Meanwhile, RRQ, okay, it's gonna be the double controller, the Omen and the Harbor. Not an Omen and a Viper, not anything else. It's Omen and Harbor. So X again. Feed, raise बराबर, Harbor बराबर, Omen बराबर. भाई RRQ का लाइनअप बहुत अच्छा है. मैंने Gen.G का देखा ही नहीं. Careful with how you execute, and that's what I want to see from RRQ. All right, the sun has long since set, but we're going to go to the sunset anyway with Achilleos and Paperthin. Raise, Sky, Viper. Here we go. Let's top off this evening. Nice Oh. as we go into map 3 of Gen.G का better है. the final series here of the evening. Gen.G का better है. See who is going to be walking away with that win and who's going to be falling down to the lower bracket. Because this is the first meeting of the season of these two teams, but given that PIIIIIIINK is the only team in the group, they could be meeting again. Pizza best. Biryani भी नहीं. Yeah, that is a possibility here. मैं सोच रहा हूँ ये मंगाता हूँ. सैंडविच ही मंगाता हूँ. My memory is correct and my brain isn't oversleepy. I don't think either team's played Sunset yet. Are you interested in cybersecurity? I'm starting cybersecurity. Only interested in cybersecurity. Nothing else. Meteor trying to hold the line, able to come up with one, but Helmy more with a nice pivot, finds himself another Nice kill. try, man. That crossfire coming in from Xpharaoh. They get the punish on the textures. The two members going to be going in for RRQ. 3 on the side of Gen.G. As the spike gets wrapped around. Through Belbet now in towards this B site. Keeping things quiet. Harbor will be more beneficial in this map. A little bit closer. मेरे को तो लगता है Viper beneficial है. Suss out where they could be. Harbor not bad, but good Viper better than Harbor. Where's the smoke gonna go? And now you have to deal with this as well. Oh. Paranoia comes out. A little bit of damage going to be found there. Elmore will be able to fund Come on, Caron. Can he get that fourth? The answer's going to be no. Estrella takes it away. Nice. Two Bye, members left bye. standing here for the side of RRQ is, well, once again, first pistol round of the map. They managed to pick it up. Yeah, it's a good hit, and Elmy Moore is once again picking up right where he left off on split with some very clean shooting. Now upgrading to a Bulldog. A few others in there. Guardian for flips. फॉर्म दिया गया सर्टिफिकेशंस के बिना कोई नहीं देगा. मैं सिक्योरिटी प्लस प्रेप कर रहा हूँ. On the raise. Wasn't able to find as much impact as he did with that jet on Go for OSCP. भाई OSCP बहुत difficult है, but कर सकता हूँ मैं. Be spotted there by Elmy Moore. Right now, hit though. That ain't it. There. Close. It doesn't. I think he now has it, or it was reclaimed. By the way, not in play. Jump in. Zooming around, Prowler. Over, shop door was shut. Now going to be broken down. Given Gen.G's affinity for
these, thrifty rounds in the game so far. Don't blame RRQ for taking their time with this one. यहीं पे लिया गया हाँ Drifting back. Puts himself behind the box, waiting to get Shot. the headshot. No, he does. Come back here, come back here. What a high value target it is. Flip shot are going to be taken down. That's going to be half the smokes eliminated. It's now just Xfera's walls remain. Texture shifting over towards Alley. Has to clear out the boombot, however, so pulls away from the angle. Doesn't find any further kills yet. Shells getting sent. Helmy Moore able to find Kara on Prowler. Spotting one back sight. Texture. One shot for finishing Nice. off Jemkin, who will fall to Munchkin's hand. 30 seconds left. Then get flushed out. Nice है बे Meteor. Munchkin. थोड़ा difficult है अभी Safe goes in towards back sight. Oh! Munchkin with the classic finds one plant committed to. Come on, by together, Xfero. together. The push forward, can he get the transfer? Yes, he can. पहले चला गया Meteor RRQ move up 2-0, but it damn near cost them everything. Yeah, it's just a phenomenal hold here from Texture. Just buying time. Initial crosshair placement. Really, और BTech एंड गेमिंग कैसे मैनेज करते हो और हाँ CGPA कितनी अभी CGPA है some good util. 8 होगी मेरी अभी CGPA कम हो गई क्योंकि मेरे को अभी थोड़ा कम मेरे को पिछली बार कम आया था इसलिए मेरा CGPA कम हो गया अभी बट 8 है अभी करंट 8.3 समथिंग We are potentially in for an interesting one. Doesn't seem like we're gonna have a repeat of split potentially. Now, oh Texture. Hello. Texture is really having a good start now. If you had Greenland's citizenship, you would be Greenland's biggest YouTuber. हाँ क्या? YouTuber as in subscribers. ये क्या? So far, RRQ have been able to convert every first bonus round. Helmy Moore is also very good with the Sheriff. Oh yeah. That has been a known quantity for quite some time. Prowler going out. Texture. Shot. Pushing up here along the wall as Texture comes up with 3 more kills in the blink of an eye to make it a Texture on raise. His eyes going wide there for a moment. तोड़ नहीं है भाई ये चीज को. Unbelievable. It's that little stutter step he does on the back of this cascade. I think you're right. That flash just kind of. He might have got stuck, or I think he got bogged as he was trying to exit. Was flash. Look at the timing. Timing on the back of that cascade by Texture, and then his turn, the 180 to mow 2 more down. Yeah, no wonder Lakia's eyes went wide. There was a split second, I believe, at the end of Texture's player cam where he just was like. Obviously, the audience can't see what face I made, but hey, you can always rewind it, screen grab it. फिक्स पता है ग्रीनलैंड में आइस है और आइसलैंड में ग्रीन है पता है. Well, now. आइसलैंड में भी आइस है बट नहीं इतनी आइस नहीं है जितनी ग्रीनलैंड में. As strong of a start here that we've been seeing from RRQ. Still in 8 है मेरे तो 4 है with 7 backlogs. Also available here for Xfero. मेरे को आज तक एक बैकलॉग नहीं लगा. This is basically lone anchoring A. Not too far off his meteor though. On that peak, he will get spotted. Blinded up there by the Prowler. Just a couple shots into the back. And a lot of the Cypher utility going to have to be dealt with. Camera way on the back of the site. Over on A, a couple traps crisscrossed. It's going to be the reckoning to try to clear that space, and I don't think Meteor cares too much. Jump forward, Trapbar comes in, but Jemkin able to find Karen before getting taken down by Lakia, who's then traded by Flips. Meteor toggling back into the cam, finding the जीत सकते फिर भी. On that Cyber cage here. Wants to push up, trying to intercept. Nice try. Spike plant coming through. Showstopper out. Come on, Texture. Come on, Texture. Time to shine. Time to shine. They know he's right here on the site. Boombot sent. Not going to be able to scout too much. Come on, Texture. Whale around. Can he do it again? Nice one. That's a good start. Taking down the plant now coming through. Thought maybe they had faked their way back over towards the B site. The paint shells don't go high enough to get over the wall. Got to clear out both. Straight low at 59 HP. Certainly is workable for him. Avoids the haunt. Pushes the wall. Come on, Texture. Come on. Creeping up. They're playing together though. Can he get them both? Spots the gun Oh! one. Texture. Is it back to back? 4Ks. Yes, भाई it is. खत्म Back on the duelist. खत्म भाई. Texture. ये क्या है? Dominating. Munchkin. भाई टेक्सचर क्या खेलता है? What the fuck? Step away from the computer there. He couldn't believe what he saw.
I can't believe what I saw. भाई I mean, the showstopper to kick things off. एक्शन ने निकाला तो है भाई And राउंड able to navigate his way back. क्रूशियल राउंड था, पता है, एकदम क्रूशियल राउंड, That smoke against एकदम RRQ. क्रूशियल राउंड This guy is truly feeling it today. भाई टेक्सचर बाय थोड़ा सिखा दो कैसे खेलते हैं। This goes here. Unreal performance from him so far, and we're just 4 rounds in. Let's see how he fares. मैंने खाना नहीं मांगा। Here again, trying to hold things down, and he does. Only more taken out. Gen.G trying to stomp out any hope of a thrifty. It's Jemkin, Singer in hand, but Judge on the opposite side, and yeah, I don't think that is a fight that you really want to take. Paranoia will get sent through though. The push on the back end isn't found. Texture just spraying away, trying to find something. Push into the smoke. Jemkin finding one, but as he launches his way back into mid, he's completely and utterly surrounded. Flips. It's very swiftly dealt with. Xfero saying, well, guys, I'm just going to get us a little bit of extra cash. Does get the spike planted. Spots the cam. Paint shells. Sends him back out in towards the open. Finds a great headshot right as the bounce is getting ready to come through, but don't get too much other than that. Gen.G now taking the रियल ओपिनियन बिग्स गेम प्ले, बिग्स खेलता ठीक है बट ठीक खेलता है, मतलब वो रेज बहुत अच्छे से खेलता है, बाकी सब एकदम ठीक खेलता है, रेज अच्छे से खेलता है, पर वो अलग बात, स्ट्रीम पे बहुत हकता है वो, बट अगर सीरियसली खेलेगा वो खेलता है, अच्छे से खेलता है बहुत, अगर सीरियस खेलेगा तो। Already the timeout coming through. Play Strixx after every round, crucial round. नहीं भाई, वो वाला crucial था भाई, वो वाला crucial था। भाई हर एक मैप में एटलीस्ट 5 से 6 crucial rounds रहते हैं। Strixx भाई, I'm a CJ artist. I do a little bit of gaming. I think my work hours are around 8 to 10. Which chair should I go for, gaming or office? Go for a gaming chair. एक बार तुम्हें गेमिंग चेयर की आदत लगेगी, तुम नॉर्मल चेयर पे शिफ्ट नहीं हो सकते, मतलब मेरे को तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी भाई, क्योंकि मेरे घर पे गेमिंग चेयर थी और फिर यहाँ पे पुणे में आने के बाद नॉर्मल चेयर पे नहीं होता, एडजस्ट नहीं होता वो। So they're kind of feeling each other out. I was a little surprised I didn't see a Gecko. Especially with the Harbor in there, I thought maybe you could combo that for RRQ. Get some of those plants down and that kind of thing. Jemkin with a showstopper, Texture with a showstopper. इसका गेम सेंस अच्छा, बस एम थोड़ा है। हाँ भाई, गेम सेंस तो बहुत अच्छा है। एम भी पता नहीं कैसे मार लेता है बे, अजीब ही मारता है, मार लेता है बे। Come on. Showstopper sent, Texture finding one. Elmore with a quick reply, however, will nice बे। not allowing for any more. वो लोग ने दोनों साइड से सैंडविच किया, बट इक्वल ट्रेड हो गए। Finds the kill, but where's the pivot going to be? Elmore for now drifting his way over here in towards the market. And as he swings in, Munchkin wasn't quite prepared for him. Munchkin by the ring around the Rosie in towards. This is the showstopper going to be let loose, but Munchkin still comes away with a kill. Nice trade. Unable to find the kill early enough to prevent his teammate's death. And now Meteor finds one. Location ping still coming through from that neural theft. We go into the 2v2, the re-ping. So he's not going to find anybody. Great trades on both sides. Gen.G going to readjust. Try to come from Boba. This is a huge round here for RRQ. Gen.G break their banks pretty considerably on a couple of the players yet again. पिंग करो स्पाइक, स्पैम करो। Not quite good. They don't find the diffuser. Oh, Lakia. They realize this, but no, Lakia. He pulls off it anyway. The retap coming through. Ping's coming down. As this time, nice try, Lakia. Push out of the smoke to finish the job. Tied up now, 3-3. भाई मैं CSC ड्रॉप आउट हूँ, मेरे को क्या करना कुछ समझ नहीं हो रहे, कुछ करियर एंड क्या करना। विलिंग टू स्टडी दो, विलिंग टू स्टडी देन कंप्लीट कर लो भाई। तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो भाई, जिसमें इंटरेस्ट है उसमें। हर एक चीज में कुछ ना कुछ फील्ड रहता ही है भाई, ऐसा नहीं कि वो चीज में स्कोप नहीं है। स्टिक करना था, अबे वो उसने ये डाला, फेड ने रिकॉन डाला, इसलिए वो
उसको मतलब डिफ्यूज छोड़ना पड़ा. Oh. Really good. And they're reckoning for the rush here onto the A side. Texture. Shot. Himself, but Collat, Jemkin and Straya both going to be taken down. RRQ trying to rush forward, but Meteor यार. it is going to be a 3v3. Advantage है Managed Meteor. to find Meteor. Still, they have their work cut out for them here. See, they're Come on. potential wrap back over towards that B site. Right, as Locky finds Xfero, flips will fall. Only more now the last man standing. Flash pick. Clears up the Trailblazer. One flash left available here for Locky. Flash. With that smoke down, he's got to rush out of it. Elmimore finds Flash. one. The pop flash, he can't turn from it. He has no idea where Locky is. And Locky will finish the job. This is a great डिफरेंस क्या है गेमिंग चेयर और ऑफिशियल में? from Lakia, sensing that he's in गेमिंग चेयर का जो बॉटम रहता है ना, जिस पे हम बैठते हैं, वो बहुत सॉफ्ट रहता है भाई. फिर उसके बाद बैक रेस्ट भी बहुत मतलब ऐसा स्टडी रहता है बैक रेस्ट, तो बैक को अच्छा सपोर्ट मिलता है. मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है? और भाई ऐसा प्रीमियम लगता है भाई, दिखने में भी बैठने में भी. भाई ये वाली ऑफिशियल इतनी खराब है भाई, मजा ही नहीं आता भाई. 10 बार तो बचती है भाई आगे पीछे होने पे. Things getting a little dicey on the economy for RRQ. They're on the back foot. 2 rifles in terms of a Guardian and a Phantom. Neural theft there, but hit for Munchkin. This is interesting. We got the same bedsheet. क्या bedsheet क्या? Oh bedsheet. Kind of use it against his opponents deeper into the round. Amazon bro, Amazon में सबसे best seller. Shots try to just get a corner check there. See if they can find stray headshot. Bite at the ready. Trying to shut down this push is the paranoia. Munchkin trying to exit, takes a couple of tags on the way out as Jemkin last packing out. Stinger still manages to steady that aim to find the kill. It's quickly traded back here by Meteor. Prowler coming through, Meteor finding one. Nice shot, babe. Line spraying out of that cyber cage, does trade it back, does keep this into a 3v3. As they scoop up some weaponry to try to even the score. Spike now planted. Sparrow, however, low on HP. Needs to try to stay alive. ये राउंड निकालना पड़ेगा Gen.G को. Nice shot. Texture able to get the catch, swaps at the weapon, sprays down the door, pushes through, but is not ready for Xfero to be right up against it. दोनों वहाँ पे उनको पता है ना? Kills found. Flips to the TP. Does he try to reposition? It's one tag across. They're knocked down to 60. The spray in. He's going to manage to hold this one to half. Does finally मेरे को बताओ ये क्या कर रहा है लाकिया? ओह! अच्छा खेला लाकिया, अच्छा खेला. Let's go. Let's go. Barely scraping by with the round win, but they're keeping themselves out in the lead. I mean, every round so close now. I mean, what a jump out from Jemkin, able to get one. Texture, nice little flick down. Right around the corner though, waiting behind that door. Was a member of 12th में कितना परसेंटेज था? इधर डिप्लोमा किया ना? सीधा 3 years diploma, 3 years BTech. I mean, he believed it. He was like, okay, I fully trust that you are TPing away from me and not going पेपर फ्राई से लेने का बेडशीट? What the fuck? पेपर फ्राई से बेडशीट कौन लेता है? Seeing through a potential one. कौन सी चेहरे है वाली? पता नहीं, लोकल चेहरे भाई. I feel like our Vipers have been making interesting decisions with their Vipers. I think only 4,000. Let's put it that way. Only 4K. Well, for now, he's just holding it. Maybe I think 3,500. Just hold on to that one. Locky in the meantime, though, able to find 2 quick kills. Xfero and Elmimore going to be taken down. It's just a bloodbath in mid. Jemkin trying to play off the back of that Moombot. Straya coming up with 2. Jemkin with the third, suddenly into a 2v2. Come on. Takes the forward position, just crouched down. Nightfall going across. I don't think it gets a connection on the 1. Okay, so Heron does get caught by that. Just going to be waiting this out. Seems like maybe the double market approach. Have to make that operator sing for texture. Well, this could be painful though. Jemkin not watching the angle. Yeah, वो लोग एंगल क्यों नहीं देख रहे वो वाला? A nice little tune as Strand tries to swing out, tries to take the fight. But Gen.G continue to persevere. Nice one, Ray, Gen.G. To 3 now. Putting themselves in a strong position thus far here on Sunset. वैसे तुम्हें पता है Gen.G का टीम कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है. Gen.G मतलब साथ में बहुत अच्छा खेलती है सबके साथ.
5 प्लेयर के साथ। RRQ का कोई ना कोई एक ही बंदा 2 या 3 किल लेके जीत रहे राउंड। बहुत बार नोटिस किया मैंने। RRQ एज अ टीम मतलब एक एक फ्रैग नहीं ले रही है, एक ही प्लेयर 2 या 3 किल करके जीत रहे हो लोग। Gen.G there needs to get a little more info before they start making those clumped up pushes. Could have cost them that round, but tons of ult now for Gen.G. Did I mention that Munchkin has a Viper's Pit? Maybe once. Well, now he does it. Well, no, he does in depth. क्या nice one RRQ नागा भाई। Gen.G support हो मैं Gen.G for the win bro. Try and deliver a more even score line. It's a good start. This Meteor is very much changing up the playbook. Super far forward lurk here in mid. Seekers on the hunt. Smoke here in mid, getting ready to expire. Texture off, still in hand, managing to find a kill. Flip's gonna be Nice. taken down. Now Meteor pushing forward, finds the elimination. Throws down that Nero theft. The reveal comes in. Gemkin able to get the punish there on a Meteor. Get on by name. Nice. Microwave it, locking out, identifying the spike location. 1v2 है, 1v2 है, Throny. Taking down his counterpart, Raze. Trailblazer more than identifying Estrella's position. Spike is in hand, but I think footsteps may be heard. Texture set up on the corner, and this would have to be one hell of a shot. Abbe. Manages to whip that one. Estrella is waiting for him to re-peek, but Texture says, you gotta come to me. 30 seconds left. You got 30 seconds. 30 सेकंड है, कुछ नहीं होगा उससे। And pretty much all the util to try to force him off the angle has been burned. Double face, the shot, not connecting. He jumps across the gap, manages to get himself over to the site and can have this plant come down, but how does he play this on the back end? The haunt is at the ready, the showstopper drawn out. That is not going to be it. No, it doesn't go deep enough. He's trying to buy the time. Lakia, he's not believing in it. Now swing. Oh boy, Estrella nearly दो ऑफ के शॉट। see that they're having a mighty chuckle about it, but that round almost. उसको 4 चांसेस मिले, 4 Texture now showing us 4 चांसेस मिले बचने के। Very uncharacteristic of Texture to miss that first shot. The second one was just Estrella reading the situation well, knowing that that angle is going to be held, kind of playing with Texture. 8.3 तो मेरी इसी ब्रांच की। आप कैसे मैनेज करते हो गेमिंग के साथ भाई? उसमें क्या है भाई, एग्जाम के एक दिन पहले बस रिडक्शन आई मीन पढ़ाई करने की हो गया। नो जॉब, पढ़े कर दो, पढ़े सिर्फ पढ़े। All these ultimates to work with on the side of RRQ. How many does it take to piece together a round win? It's Texture now 19-7-2. Showstopper out, but Texture doesn't matter if he doesn't have the off. Manages to find one. And okay, Karen manages to just TP right into the Showstopper, so Gemkin gets maximum value. Push out of that cyber cage. However, Munchkin is able to find Elmi more. As the pings come down. Man advantage should do more than enough to set up RRQ for the round win. Yeah, Munchkin's gonna readjust. Going to try to come up through Link कोई से instead. नियर राउंड शायद Seems to be all angles नहीं covered. निकलेगा, शायद से RRQ जीतेगी राउंड। Munchkin, man, you never know. वो इस पे राइट बड़ी है। Gotta clear this one out first, though. And Estrella is here to सबके पास होगा राइट बड़ी। the haunt over the top to push in. Nearly gets him, puts quite a bit of damage. Nice, nice. As Meteor falls, RRQ, they will finally be able to break the streak. हाय कुशल भाई, कैसे हो? In this game, potential for a 7-5 half. कितना मॉड्यूल होता है मतलब? Able to kind of break things down pretty early. Gemkin, yeah, that's nice. I mean, that's a gift. Karana under pressure from the other side, and Gemkin able to pinch in. रात को लाउड का मैच देखोगे, लाउड का वो थोड़ा स्पेलिंग तुम्हारा गलत है, उसके आगे ई लगा दिया तो कुछ और होगा। Yeah, I mean, Texture, he's just going glass cannon. Yeah, why not? Strixx भाई, ये टेक्सचर जी वाला क्या? हाँ। For his teammate being handed over the operator. पर टेक्सचर तो बहुत से गिल रहे हैं। But I mean, here's the ultimate question. Yeah. Do we see the pit? Does he use it in this half? Or does it just go completely unutilized? It seems to be in Gen.G's playbook that the Viper's Pit actually doesn't exist. Yeah, it's about the implication. Come on, come on. It's the implication of danger. Nice. Judge in hand, Gemkin swing in the corner, able to find the quick headshot there to shut down Karen, making sure that he can't find any more value. But Lakia ठीक है, good trades. 3v3. even numbers.
Sees finding no one. It's the haunt. Will get Meteor. He finds one, finds the other, and now it is all on Xpharaoh. क्या मारा है? Spike planted just a cove to Bulldog से वो भी. Tide still. Bulldog से. Looks like he wants to go on a walkabout, but getting ready to rotate. भाई Bulldog से. Line of sight, but Texture pulls off the angle now. I mean, I feel like, though, with the judge in hand, that Munchkin was actually considering the pit this round. Potentially, although that might have been just a cost-cutting measure to get Texture and Operator. Why? Why no pit? कितने chapters होते हैं? Around 5 to 6. There it is. Okay, thank you, God. Maybe 5. Pit sent. Texture. Shorty in hand. That'll be Nice one, Ray. finishes the half. क्या बोलते guys? Gen.G या फिर RRQ अभी? बताओ. 8-4. Gen.G या RRQ? I think Gen.G is winnable. Round you need the pit for. That's it. I mean, whatever. They're winning. 20 T1 versus Bleed end. When he is, I guess 7 बजे. Especially with those operators. Tremendous player. And early on, getting himself started with those 4Ks. Again, setting the pace, setting the tone for Gen.G. तेरा study place और gaming setup same है क्या? हाँ, same है. When I predicted this team today, it was almost purely on the back Gen.G, of Gan.G क्या रहता है भाई? God, I'm like, there's just way too many nutso players. And I'm not saying that RRQ isn't just as good. Any plans for Masters? Right now, no plans. They are pound for pound, basically at the same caliber, but Gen.G just seems to have a little bit more steadiness, especially in that operator department. That is really, you know, Texture is really setting Gen.G apart from RRQ right now. Well, it's not over until it's over. We saw the Hi Mango. very close run back from Gen.G. The attempt there. Why they use earphone and headphone both? Earphone for the game sound and headphone for the noise cancellation. Earphone से तुमको सारा गेम का साउंड आएगा. हेडफोन से तुमको माइक थ्रू वॉइस कॉम्स हो गए और तुमको बाहर का आवाज नहीं आएगा. मतलब बाहर कोई चिल्ला रहा है, एक बंदा सामने एक बंदा है, उसका साउंड आ ही नहीं सकता तुमको. I think it's a Tom Yon. Oh, you know, I glanced at it and my brain is also at about 20% capacity currently, so... and you're already usually running pretty low. That's true. It's 20% of my usual capacity. Yeah. So that's, we're into the low fractions here. Yeah. All right. You live alone? No, I live with my friends. Anemic were they on split? They've been good about getting the second half pistols. Oh, Jemkin. He's in such a far forward position. I think you're kind of staring into this corner. Seems like he might have a decent idea that they're taking these spots on the map. Exactly what I was just thinking, man. I think they at least have an awareness of it. I think that might have spotted him. Yep. Look at that. There's the paranoia. The counter swing now coming through. 3 players now, 4 all vanishing in the blink of an eye. भाई Gen.G खेल तो रही है भाई. Left is just going to be the full send over now towards that B site. It's going to be 3-3 in pistols at the end of the day here. But Gen.G are going to be the ones moving up to 9 rounds. Worst possible moment. Yes, Estrella gets one. Meteor answers right back with a frenzy of his own. I mean, the good thing about this round, I had to give it rented flat. I mean rented villa. Takes it slow. Rented 3 BHK private swimming pool and instant response from Karan with that paranoia. It's a bunch of helipad people. Villa. And you know, Elmimore tries to swing to with bail a out, but garden is view accounting for it instantly. So everybody doing their job, everybody being on point for Gen.G. Communication good, Meteor feeling good. Everybody vibing here. Let's see, the kill picked up, but it's just going to be that one Sheriff coming in with Estrella's hands. This Texture rushing forward, grabs the sword, but Xpharaoh doesn't want to give his position away at all. Decides not to go for any kind of spray. Zeta कहाँ की team है? I think Japanese team है. The old Paper X here. Oh boy. Grab the orb and then immediately shift over to the other side of the map. Very low. Only more down to 25. So making their way now through B main paint shells to try to slow them up. Nice. Does manage to find the headshot. Meteor going to be taken down. Ooh. Weapon he had, but Lips कितना low गया. 4v4, but wildly outgunned. They're just going to go for post plants. They've got a lot of utility. Easy Viper. 2 mollies, 1 smoke. खत्म भाई, खत्म. Munchkin, the only
ये राउंड हार ही नहीं सकते, इसीलिए वाइपर हर बार से बहुत अच्छे हैं मैप में, इसीलिए Still relatively healthy. And to try to check. Dart might have been stuck there onto one player, but now they're just trying to rush them down. They're trying to able to find one before falling. Headshot there. Nicely done from Estrella. It's finding some extra value, and honestly, you know, the scoreline is not going well for them, but as far as this is concerned, Estrella, he's got no time. Wants to try to chase in for the kill, but widely, I mean, the damage dealt here is fantastic for them. Exactly. I mean, that's yet another rifle there with that sheriff shot. फिर From Gen.G, so that's tremendous value. So yeah, okay. Around 25k. Kind of reminiscent of the other side of the map where RRQ takes the pistol and immediately has a very difficult eco. ओली कहाँ है? डाला, दोनों डाला. And Gen.G just replicated that. This goes here. Let's see. Now everything's all squared up in terms of guns and shields. भाई दोनों साइफा वन वे खेलते हैं ये मैप में, वन वे केजेस. Gen.G. Unlucky. Jemkin strikes him down. Flipshider swinging out. Will catch Meteor as well before he gets traded out by Lock. Winnable है. Things very much slow down here for Gen.G. कितने लोग रहते हैं विला में? 3. A little bit tricky to get through. I mean, any utility should just kind of give it away, but they're just going to slow push. Oh my. Yep, they had the double face. Stray ends up falling. 3v3 now, back into a winnable position for Gen.G. I like what they're doing here, though.Ey're not giving away any information, any cues. थक गया भाई, कितने घंटे में? 10.5 घंटे. जी भाई खत्म कर दो, मेरे को सोना है यार. जी भाई ऐसा मत करो. Nice Villa, thank you. विला टूर कब? विला टूर के लिए वो ओनर परमिशन नहीं देते. वो बोलते हैं स्ट्रिक्स भाई तुम बहुत बड़े यूट्यूबर हो, अगर तुम लोग विला टूर दे दोगे बहुत सारे लोग आएंगे, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा. फिर बहुत सारे लोग घर के नीचे आएंगे, दिक्कत होगी. Maybe they were concerned as to whether or not this was just going to be a save, but yeah, even the non-rotates. But now the Seekers coming through, 2 of them going to be cleared out very swiftly. Guys, look at this. Lakia going on the flank. Followed the Seeker. I think एक ये है, एक मौली है. I think ये जीत सकते हैं. Sent out, Elmimore down, so very low in HP. Spotted. Shoulders enough to get the kill. जीत सकते हैं. Finding much of anything here. The cope set up. नहीं लाकिया. Angle there on the flank. To get the defuse to half. Shots coming down at the wall. Will fall. Munchkin finding the kill. And now it is all on Jemkin to try to get this done, but he's just running out of time. He's running out of life. Jemkin भाई कुछ भी कर लो नहीं होगा. And that's going to be him taken down as Gen.G continue upward and onward, trying to bring this night to a close. Yeah, again, fantastic calling for Gen.G. Assumption is it's still Lakia doing the IGLing, but sometimes those things shift around unbeknownst to us. But मेड भी होगी अलग से. फिर तो भाई मेड वो क्या सीन है, मैं सोच रहा था मेड लगाने के लिए. फिर मेरा दोस्त बोला स्ट्रिक्स भाई आप इतना मेहनत करते हो स्ट्रीम में, आप इतना काम करते हो, इतना पढ़ाई करते हो, मेहनत करते हो. स्ट्रिक्स भाई मैं साफ करूंगा पूरा घर आपके लिए. मैं बोला थैंक यू यार, अच्छा दोस्त है ना, अच्छा रूममेट है भाई. Takes out one. Sparrow still lurking now within the smoke. Is going to be good for the kill. Finds it, but then the rest of the players is coming from behind. Garrett spraying down into the smoke. Takes him out. Man advantage already here in the hands of Gen.G. This round win takes GG. 12-14. GG. Swing out. GG. With a great headshot. A bit of a quieter map from him thus far. Nice value to be found. Paint shells to try to clear them out, pushes them out into the open. Estrella able to find one. थोड़ा जल्दी बोल दिया मैंने. Hello? Takes down the other. Showstopper infested. क्या मैंने थोड़ा जल्दी बोल दिया? When the team needed him the most. He'll be the one to dive in on top of the snake bite and help get the. क्या मैंने जिंक्स किया है?
over yet. We're not going to be seeing Gen.G. Is this RRQ come back? Locked in. RQ staying afloat, but barely. Yeah, and maybe now you can get that economy under control for RRQ. It's been bottom of the barrel, just scraping by with some of these. EJ was a better duelist than Jimkin. Here, the showstopper as well has to be used to make sure that it gets done. Maybe. मेरा भी opinion है. Maybe. Because at this point, it's going to take everything in the kitchen sink to claw your way back into this. Yep. And see, finally, you know, a dent dealt here to Gen.G's economy. केबल कहाँ से लिया? ये वाला IKEA, ये वाला पता नहीं पुणे में कोई तो लोकल का दुकान था. Hidden for the time being, but given the cash, you can expect that there's going to be at least a hero rifle in this. There's the swing out. Jemkin, good to shut down. Looking for a little bit more as they go back. Oh! Estrella, pushing finding the headshot, runs out of bullets, has to pull away. Lock in with a nice answering headshot. We'll take out Jemkin, making sure they don't get away scot-free. Estrella just backing away. फेड के पास अल्ट भी है भाई. ये राउंड भी गया. Alley access. Zlakia says, well, I might as well take this orb because G match कल पिन किया देखो ना. So what's the use? Yep, that's precisely, I believe, the mentality. I mean, what an interesting situation that Gen.G found themselves in. They rattled off, what, 4 in a row here to start? And they're already back on an eco. So, I mean, that's how close it has been, even though the scoreline doesn't indicate it. It's a crossfire setup there. Munchkin will be able to find one more for his troubles. And I mean, again, you know, cash on both sides, not very strong. So any damage that either side finds is still going to be overall quite good. पिला में फर्नीचर नहीं थे. नहीं ब्रो वो हमने ओनर को बोला विला वाले ओनर को कि आप फर्नीचर मत दो, हम खुद करेंगे. वो क्या है, आपका फर्नीचर अच्छा है बट हमें खुद से कुछ करना है. Into another deep second half. Unexpected on split in a way, and Gen.G just answered the call, almost taking us to overtime. It's going to be RRQ's turn to rattle off a bunch of rounds in a row. Texture so deep. Oh, yeah. I mean, pretty sure his feet were spotted. Flipshider just hanging out on top of market. Manages to avoid the Trailblazer. No stun to be found. Paranoia sent in. Swings the corner, finds Texture, looks for a little bit more. And he manages to get him with one bullet left in the clip. भाई ये थ्रो कर रही है अभी. Gen.G थ्रो कर रही है अभी. So much damage is swiftly finished off by Elmi Moore. Karan now the last one standing is RRQ. Now you just posed the question. I think they replied. Mahir Patel. They are looking to run this. क्या चाहिए महir पटेल? बोलो भाई क्या चाहिए आपको? हाँ? आप क्या अंधे हो थोड़े? थोड़ा अंधे हो थोड़े? ऊपर दिख नहीं रहा? महir पटेल को 50 दिन का टाइम आउट. एटलीस्ट 50. प्लीज एटलीस्ट 50 दिन का टाइम आउट. Starting to hit their shots when they need them. We're seeing that RRQ that we saw so often on their defender side on split, where every reaction, every decision seemed to be nearly flawless. And here it's going to come down to Karan. Really probably would like to save this gun. I think he's going to have to. Ideal situation. And just hold on to it, pass it to, you know, Texture. Pinned message check karo please. Hero rifle into the next round. I'd like to see a timeout here from Gen.G. I'm curious as to when they're going to decide to do that. Maybe this is the moment as they get ready to go into. So rude यार. महir पटेल कितना rude यार. ऐसा मत कर यार. I think now's the time. And they have that full loss bonus coming through, so we'll see what they can scrape together. Call might be, you know, let's go for like a half armor purchase, something like that. Bulldogs in the mix, etc. We'll have to just wait and see though. But for now, I mean, Strixx baby girl, जब वो message vote कर रहे हो, माफ करो. Need to keep up this momentum. Yeah. So rude, dude, again. Kind of found a lot of the success that I think we saw on Split, where they're absorbing a lot of the early utility, putting themselves right before. Top 3 teams from all regions. NRG. I mean, that second Yeah, NRG. and then doesn't have many bullets left. PRX. Puts them to good use. So, but I mean, they're doing a good job of. Yes. Thank you, Solo. He heard my cries. ये मीया का नहीं पता भाई. Doesn't want this to get any closer. ये मीया क्या करेगा? So far, this is only one time, so as things continue to get closer, you know, one team tries to stretch away from the other, we could see them, the rest of those utilized here very quickly. Oh, for sure. I mean,
देखो इसमें एनर्जी Gen.G win the next round. इसमें नहीं पता यार, इसमें मेरे को इसका लाइनअप ही नहीं पता। इसमें PRX Fnatic how incredibly fast and furious this kickoff is, how little room for error there is to get yourself to Masters Madrid, which is so important for getting those championship points. भाई ये वाला रोस्टर तो अच्छी है भाई। भाई 1 million winnings, what the fuck? That's true. We can say that out loud. 1 million. Oh my god. It feels amazing. It's no longer the quiet part. It is now the out loud part. Obviously भाई मास्टर्स जीते। They're putting their proficiency for pulling off thrifty wins on display throughout the first 2 maps. And you nailed it. They just gave Texture the rifle. They're like, here you go. Yep. Also has that showstopper. Looks like he's just baiting, trying to see if anyone's going to swing off that Prowler, but seems like RRQ knowing better. कुछ तो नहीं आता ये, कुछ तो नहीं आता ये। Something new. Towards that alley. Showstopper at the ready. Could find an immense amount of value. Still have one more flash to clear an extra angle. Here to use that paranoia. T69 इंडिया का बेस्ट टीम। But they're सपने भी नहीं होगा। RRQ's mind here a little bit, because a lot of times it's either been kind of like fast hits or they get contact, but they're pulling up and they're waiting, and now trying to get back into the mix is Estrella. Team Liquid also good. In the corner for now. I think they've quite spotted him out yet, but maybe with that spray fire coming through, maybe they had. Haunt still at the ready. Paranoia has been used. Lakia, the first one to push up. And that's going to be the spike noted. Texture in the meantime, set up on top of the box, swings out, but Xfero is a little bit faster, managing to find the kill. Estrella taking down Meteor on the flank. Seems like they're going to be good for this one. Now set for a flawless RRQ. Just need to find this last player. हाफ गया था, कोई सीन नहीं, हाफ गया था, कोई सीन नहीं। Two within the smoke. The camera not spotting anything. The Paranoia going to go wide. He gets the dink, but cannot get the kill. The counter swing out. Xfero will find the last elimination. As RRQ now 4 rounds consecutively here for themselves. उसको वैंडल का साउंड नहीं देना था। हाँ वही समझा मेरे को। और वो बेट भी कर रहा था कि कोई पीक करे। वो जब प्रॉलर एक्टिवेट होता है तब। It pays dividends. See all those bullets in that box. That's all Jemkin there, just baiting for Estrella, just diverting all the attention of Gen.G. कर दिया ना जिंक्स। भाई मैंने कहाँ से जिंक्स किया भाई? भाई वो खुद नहीं मार रहे। अभी मारेंगे, देखो अभी मैं बोल रहा हूँ। लग गया 2 किल। मीटियोर 1 किल। खत्म। अब देखो। हो गया। Cycled back in if this goes really sideways. Oh, Texture jumping forward with that showstopper. Now sees him. Flipshider is paranoid actually. Didn't know where he was running. Ends up getting taken down. Boombot goes off inside of the smoke. It's a little. ये राउंड तो हार ही नहीं सकते। Impossible है ये राउंड हारना। Not looking to get spammed out. As the pit will be invested. Oh hell yeah. Munchkin decides to use it, but now the reckoning coming through, just trying to force them back. भाई वो साइफर सीधा भाग के मिट गया है। Fight still at the ready. One. भाई उनको पूरा रीड है, पूरा रीड है Gen.G को। Finding one pushes up, takes out Karan, but now fight in to delay. The cove gets broken down. पूरा रीड है, पूरा। Pick up as he finds Xfero. Estrella's just sat within the pit, 1 HP, and no hope in hell. Creeping forward, he will be found, and Gen.G, they will break. ये राउंड तुम लोग बैक जाके देखो, वो साइफर ने सीधा नाइफ लेके भागा है, सीधा नाइफ लेके। सीधा नाइफ लेके भागा साइफर ने। पूरा रीड था, पूरा। The tip of the site. They're able to get that plant down quickly and force the hand of RRQ where they have to contest that pit, but there's enough room in the back that Munchkin can stay obscure. माफ करे Strixx, माफ कर दिया ब्रो, once that कर initial दिया माफ। barrage of mollies is dodged by Gen.G, then that pit is so difficult to displace. इन लोग का FPS का क्या होगा? ये लोग को भी 300 FPS आता होगा, उससे कम नहीं जाता होगा। बट सबसे क्रूशियल मोमेंट में 300 आता होगा, बाकी अराउंड 600-700 आता होगा। भाई क्या टाइम है सीओल में? The last time out here for RRQ, Gen.G still have one more. So even if this does come down to an 11-12 score line, बेचारे they can once again pump the brakes and try to तेरे रात के 2 बजे तक खेल रहे हैं। things around and finally close things Imagine this was OT. Probably get another ult or 2 back into cycle by then. भाई एक्चुअली ये गलत चीज है, पता है?
There's a pretty good chance of that. So that's इतना लीड बजे तक मैच so huge for Gen.G. रखना So much was riding on इसे उनकी भी कुछ गलती नहीं है in बट terms of money economy and ult economy. Yeah. And they had to invest absolutely everything into it with the 3K picked up in the back. जी मैं स्टूडियो tomorrow Recently close, halfway now to that neural theft, which is the only ult that we have available right now for the side of RRQ. ये लोग 360 हर्ट्ज पे खेल रहे हैं हाँ Stopper if Gem can get the ball rolling here. maybe 540 हर्ट्ज For now, it's just going to be clear 500 हर्ट्ज कौन सा आने वाला big wraparound over in towards mid here from Estrella, leaving Elmimore very much on an island. इमेजिन इसके बाद जी का मैच होता है भाई अगर होगा जी का मैच मैं फिर भी करूंगा भाई नहीं होगा पर मोस्टली तो नहीं होगा क्योंकि रात के 2 बजे रहे ब्रो कास्टर्स प्रोडक्शन को भी सोना रहता है And Gen.G might just be ready to finish this one out. The trap wire around the back. Gonna give the reveal. Now they know. Munchkin turning his sights over there for a brief moment now. Just retreats in towards the site itself. Allows for Texture to move up. Get tucked away. Center amplifying one. Meteor gone. The wall. जीत गई है Gen.G. Maybe look at the push off the back of this one. And there it is. What is that transfer? Texture coming up with 2. And it's all on Flipshider. Everybody corralled in the वैसे मैंने नोटिस किया बहुत सारे लोग फैंटम यूज कर रहे हैं बहुत सारे लोग बहुत सारे प्लेयर्स हैं इन He's seen enough, he's had enough, he finishes the job. प्रेडिक्शन तो है प्रेडिक्शन तो है प्रेडिक्शन तो है Shut down the hopes and dreams of RRQ. क्या बोला था Gen.G कमबैक करेगी किया कमबैक Gen.G जीतेगी जीता Gen.G ने This rivalry delivers once again, but if you're an RRQ fan, it is another heartbreaker. So close, so many times. Finally, so Gen.G. many rounds that were on the precipice of going their way. They were often one player away from taking Gen.G out of a round that could have maybe swung the whole match. Instead, Gen.G holds firm. Texture there in that last round with a great flash from Lakia to set him up for the push out, and then a beautiful transfer. एक बार चेक करके जाएंगे अपन कि जी का मैच है कि नहीं ठीक है कंफर्म करके जाएंगे शायद से नहीं है बट कंफर्म करेंगे to his comfort zone of being a duelist and showing you why we thought very highly of him for years and when we were just VCT Korea before we grew into the Pacific. भाई ये Sure, I mean we've had our eyes on him for a very भाई ये स्पैम भाई ये जो भी स्पैम करे भाई दे दे भाई 5 महीने का टाइम आउट दे दे भाई 5 महीने का भाई 4 days in time out 24 hours here today 3-0 as far as the orgs are concerned in their overall head-to-heads across last season and now today. Gen.G is not allowing them ट्वीट आया नहीं होगा ट्वीट आया क्या ठीक है ठीक है ठीक है फैमिली फोटो It is crazy to think about. I mean, it is a very different Gen.G from last year, and a somewhat different, you know, with Estrella coming through. And I mean, but this Gen.G is wildly different. I mean, just Meteor is the holdover. You know, you've got some players who played with each other from time to time on Gen.G. RRQ भी अच्छी खेली बट nice RRQ. The way that they're already gelling, they're already coming together. You know, you can kind of see glimpses of it at Convergence, but this was certainly the bigger test, and they stood up to it. Oh, fist bumps exchanged. भाई बेचारे थक के हो गए बे रात के 2 बजे तक खेल खेल के Yep. And I bite my thumb at you, good sir. But anyway, as we can see, we've got a player making his way out onto the stage, so we will go ahead and get ready to hand it over to Jen, who is standing by with Meteor for a winner's interview. Come on in. All right, good. More the merrier. Who wants the bear? 누가 곰돌이 가지실래요? Okay, greedy Texture. Congratulations, Gen.G. I'm standing here with Meteor and Texture. पर टेक्सचर ने क्या सेक्सी खेला है Today it was a long day, but first off, Texture, you were firing on all cylinders. You know, do you have a secret for today's performance? 오늘 텍스처 선수 너무너무 잘했습니다. 뭔가 아까 먼치킨 선수와 색다른 이야기를 나누고 나서 갑자기 또 퍼포먼스가 확 올라가는 느낌. गाइस जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करके जाओ ठीक है नहीं तो अच्छा गुड लक मिलेगा अगर तुम लोग जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करोगे तुम्हें गुड लक मिलेगा नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा I was really angry, so I was telling
the guys. Come on, let's go. Let's have some food. Close it out, and I was able to put up. मैं भी यही बोल रहा था. जल्दी खत्म करो, खाना खाना है. Well then, what's for dinner? 그럼 이제 가서 뭐 먹을 거예요? 그거는 이제 좀 정해야 말을 따로 하진 않았어요. 네. 정하려고요. 네. Undecided, soon to be decided. Well, I'm gonna turn to you, Meteor. Congratulations. भाई Meteor. Too. Are you satisfied? Meteor का fan हो गया मैं पता है. Today. 오늘 경기 젠지가 정말 무서운 모습을 보여줬는데요. 경기력 만족스러우신가요? ड्यूटी तो है ना. 사실 2대0으로 이길 수 있을 거라 생각했는데 좀 저희가 너무 실수가 많았어가지고 아쉬움이 좀 남는 경기인 것 같습니다. We expected it to be 2-0. It could have been a 2-0, but we made some mistakes. So there's still a little bit of regret, and I feel like we have some stuff to work on when we get back. Well, Meteor, kind of giving up the primary duelist role, it's not an easy thing to do for any players. So can you talk to me about the decision to do so and your transition into more of a duelist and other flex players type of role? 그러면 이제 미디어 선수, 메테오 선수, 사실 팀에 메인 듀얼리스트 자리를 좀 이렇게 내려놓는 नाइट मार्केट में रिकॉन ले लूँ क्या? रिकॉन फैंटम यू. 이런 결정과 그리고 이제 다른 요원들을 फैंटम कौन यूज करता है? वैंडल यूज करो भाई. 사실 아직까지도 엔트리에 욕심이 좀 있는데. भाई यार ये कैसे आया वापस? बताओ मेरे को यार ये कैसे आया वापस? 둘중 한 명은 मोड से क्या सीन है यार? 상황이라서 그냥 감독님이 결정해 주신 대로 놓게 되었고 그리고 지금 감시자 아직 배울 게 많아가지고 형들이나 이제 같은 멤버들이 도와주고 있어서 더 노력. वो सैलरी कट है ये साल. सैलरी कट है भाई. Well, yeah, it wasn't an easy decision, and I still kind of missed the duelist role, but somebody had to give up on our team, and well, our coach told me to, take on the sentinel roles, and there's still a lot more to learn, but my teammates are helping me a lot, so yeah, definitely I do enjoy playing both roles, and there's still more work to be done. Well, Texture, to you again. Gen.G भाई बिंगसन हरीश भाई को टाइम जल्दी हरीश भाई लैंग्वेज तमीज से. बाय बाय हरीश भाई गुड नाइट बाय बाय. 이제 젠지가 공격적이고 화끈한 스타일을 좀 추구하는 것 같아 보이거든요. 올 시즌 팀 컬러나 플레이 스타일에 대해서 얘기를 좀 해주시죠. 좀 공격적이게 할 때는 하고 아니면은 이제 좀 수비적으로 할 때는 수비적으로 하고 좀 그때 좀 맞춰서 하는 것 같아요. 저희가 공격적으로도 잘하고 좀 이제 그냥 말 맞춰가지고 그냥 운영하는 것도 되게 잘하는 팀이라고 생각을 해서 그냥 그때 맞춰서 하는 것 같습니다. Well, it really depends from time to time. I think we're both good at being aggressive or playing it more disciplined. We're pretty confident in either style. So, yeah, I think ट्रांसलेट करो. मैं कैसे करूँगा? For the future. Well, congratulations once again, guys, and it's time to sign the bear. So I'm gonna start with you holding the bear and Meteor. मैं पता है मैं esports player नहीं बना क्योंकि ऐसे इंटरव्यूज देने पड़ते हैं MVP के बाद, इसीलिए नहीं बना. पता है मैं थोड़ा शाय हूँ, मेरे को थोड़ा नर्वसनेस फील होती है, इसलिए मैं देता नहीं हूँ भाई. Alright, and Texture. Sign the bear. Bye bye Ritik, bye bye, good night. What is this? Hold on. Is toxicity नहीं, please chat में toxicity नहीं. Okay, a little hard too. Wait, I'm gonna go to the camera and this is what you get. फोकस करो कैमरामैन, जल्दी फोकस करो. फोकस बराबर हो रहा है कैमरामैन, कोई सीन नहीं है, बराबर फोकस है, बराबर है. Who's gonna be your lucky winner? 누가 던지실래요? Okay, it's gonna be Meteor throwing the Tech the Bear. Make some noise! 무대 가까이 가서 던져주시면 돼요. 무대 가까이 가서. कैमरामैन भी सही चीज पे फोकस कर रहा है. And we have our lucky भाई Well, thank you guys for the interview. Go get some food, go get some sleep. रात के 2 बजे तक बैठने का ये फायदा है, सॉफ्टवेयर मिलेगा.
interview for today. I'm gonna toss it over to the desk for one last time. पहले MVP तो बन. Thank you, Jen. That's right. The texture insanity is. इसका IG तो देखना Strixx भाई. Apparently, all it takes is a bit of hanger. And Language guys, language please. Behave guys. Behave good please. We saw a totally different Gen.G today. Wow, I'm glad your brain's churning tonight because mine is just mush right now. Post ID guys, please behave यार please. मेरा watch party के rights चल जाएंगे please. 4 out of the 10 post plans from RRQ. That's not a stat you want if you're Generally able to naam hai, no by the matter way. what the score line is. So clearly, there's some very distinct things that RRQ wants to work on. But I love that you call out Texture because here's the thing: Texture was absolutely the best player in the server today, regardless of any of the. But RRQ को ज़्यादा channel points दे. Why he's always been a shining talent in Korea. I mean, yeah, a large portion of those first kills definitely came from Texture, and if we can take a look America's का watch party होगा क्या? I have a feeling Texture Let's see. has been the Who most knows? consistent duelist out of all 3 maps between this matchup. Bye. 377 in map 1 and 357 Texture bye. God. Really high scores. God. Monster. I mean, Jemkin's a monster. लाकिया भाई ने मारा. मैंने बोला तो मारा उसने. Makes it look so easy. Texture भाई God है भाई सच में. Texture शायद highest skill रहेगा आज तक. मतलब Pacific का अभी तक. thing about Gen.G looking a lot more aggressive, very apparent. They are going for the first kill. शायद Texture highest skill रहेगा. Tournament का अभी तक. They didn't always convert it in the theoretical way they should have, but you know, over on Icebox and now here on Sunset, they definitely made it work. Just really exploding. खत्म हो गया ना guys? अभी कुछ नहीं है. And you can see that RRQ I think time to sleep or no? more lagging a little bit, or just Texture really performing on a next level. RRQ couldn't quite hold them back, and that's the other thing because this Gen.G is, you know, gelling together really well, kind of like what Paperthin and Achilles said. Lakia was supporting him, Munchkin and Karen were doing Time their to sleep. best at defending as well. And Time to eat. फिर इसके बाद sleep. उसके बाद फिर 3:30 को wake up. quite find some of these rounds. No. Bye bye heads. Bye bye. What our predictions are and what my hopes and dreams might have been for certain teams throughout VCT Pacific. Absolutely, Gen.G looked like the better team, and I would actually. हो गया ना? चलो bye bye guys. Good night. See you all at 3:30 maybe. Maybe 3:30 maybe. देखते. चलो bye bye guys. Good night. Bye bye. What the cause T1, is, to figure out on their GE. own, but for now we're seeing that it hasn't quite been solved. Who knows? T1 versus GE क्या होगा? Is that Gen.G moves forward to face PIIIIIIIIINK Gen.G RRQ. RRQ. Deja vu. It was both Gen.G and PIIIIIIIINK that stopped them from going to Master. So whoever they face in the lower bracket. Gen.G. RRQ Gen.G वापिस होगा. RRQ Gen.G वापिस होगा. Group C में. You're right. It was PIIIIIIIINK's victory against RRQ in the very last match of the round robin that denied them the score line to go over Gen.G. RRQ Gen.G वापिस होगा. I would not want to be in the shoes of those players. Oh man. You were casting that much, I think, right? Yeah, that's one of those things. Look, if you were चलो guys, bye. See you all. Good night. Bye. See you. Bye. That says a lot about your team's performance. It's 2024. We've had a whole off season to